Welcome everyone. Today we'll start a sessions particularly which is majorly important for your prelims point of view. Kahinki OCS prelims exam bartaman very nearer. Okay. October 27 hochi ta purpuru kichi your we are geography part is now is much vital. जदि देखिबा कि मोर देन 20 क्वेश्चंस पाखा पाखी हमर आछि हला 18 रु 20 टा इवन इफ मोर दैट वन जदि एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव रे भी देखियो आछि तो जो जो चैप्टर गुडा पढेबी दैट इज डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन योर रिवाइज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमें डिस्कशन करबा भितर ओके ठीक अछि सो स्टार्ट करिया प्रथमे आज इंडिया रे मु नेबी हला व्हिच इज मोस्ट योर वाइटल इंडिया कथा विल सी दिस वन इंडिया जब देखा कि इंडिया क्वेश्चन जब एनालिसिस करूँ एज पर द एनालिसिस इंडिया क्वेश्चंस मोस्टली तुम योर फिजियोग्राफी सेक्शंस प्लस योर ड्रेनेज पैटर्न एंड योर एंसिलरीज पार्ट रू तुम रामसेस कन्वेंशन मोस्टली दोज कमिंग्स योर पर्टिकुलरली कमिंग दो सेक्टर्स आर ओके लेट अस नो है इंडिया प्रथम जब आम कह मेजरली इंडिया फिजियोग्राफी को मेजरली आम देखा फिजियोग्राफी इज अ मेजर पार्ट इंडिया क्वेश्चंस टू मेजर से पचार फिजियोग्राफी पार्ट रे है हिमालयज ऊपर को जिनस मेजर मेजर जिनस गुड़ा जोड़ा कि तुमको रिफ्लेक्ट करी आउ टिके फिजियोग्राफी टिके डिफिकल्ट इन द सेंस इट हैज गॉट योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग पर्टिकुलरली इट नीड्स योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड बेसिक्स जो कि तुम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी रही देखिबा फिजियोग्राफी रीजन्स जब इंडिया कहबी मेजरली फिजियोग्राफी रीजन्स विल गो फॉर है फिजियोग्राफी रे on the basis of the physiography regions on the basis of the physiography India is usually divided into the following 4 divisions चारटा main division है हमारा India रा physiography को mainly divide कराई छी following 4 divisions majorly following 4 divisions basically the your physiography India रा divide छी कौन से physiography यदि देखिबा the following mountain ranges of the Himalayas, that is the mountain ranges of the Himalayas one by one mountain ranges of Himalayas. Second, the triangular plateau of the peninsula triangular plateau, the triangular plateau of the peninsula mainly, that is your Deccan plateau, the south of the Vindhyas, Deccan plateau and the south of the Vindhyas. Then the great North Gangetic Plains, the Great North Gangetic Plains, or it is also called the Great Plains. It is also called the Great Plains. Next, your coastal plains and islands. Okay, that is your coastal plains and islands, that is also covered under such. We'll cover one by one. Okay, first we'll cover the Great Plain regions of the Himalayas. पढ़ला बेले सब गोटे जिन मन रख you have to follow this atlas. Okay, this is your Oxford School Atlas. Okay, Oxford School Atlas is really important. Oxford School Atlas, right? School Atlas रे जोड़ा जदि देखिबा तमे your brown colors are basically brown color, those are your physiography physical, your colorful pages are your political, right? देखिए फर्स्ट योर द डिवीजन ऑफ द हिमालयस और डिवीजन जब देखिए मेनली सेग्रीगेट हिमालयस द डिवीजन ऑफ द हिमालयस इनटू मेनी पार्ट्स ओके डिवीजन ऑफ द हिमालयस विल सी दैट इज योर फर्स्ट देखिए द डिवीजन ऑफ द हिमालयस ज्योग्राफिकली द हिमालयस डिवाइडेड इनटू मेजर 4 ग्रुप्स व्हाट क्वेश्चंस आसे केमती मु एई आंसर पढ़ला बेले क्वेश्चंस भी जो टाइप रो तमर क्वेश्चंस दोछ पचारचंदी से हिसाब रे म बुझे देबी हला डिवीजन कोन वन इज योर ट्रांस हिमालय, देन द ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री, द लेसर हिमालय और हिमाचल, देन शिवालिक्स और द आउटर हिमालयस मेजरली हला ट्रांस हिमालय एंड ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स. क्वेश्चंस तुमको केमती पचारिबे क्वेश्चंस दे मे आस्क यू arrange, note it down, arrange the following question pacharibe, arrange the following mountain ranges of Himalayas
from south to north direction. South to north direction. बेले बेले तुम कौन हुए उल्टा पचार दिखते नॉर्थ थ्रू साउथ और साउथ थ्रू नॉर्थ दीटा देखो नॉर्थ थ्रू साउथ और साउथ थ्रू नॉर्थ आंसर्स योर दैट इज सिवालिक्स कौन हम जब मुझे कहबी एटी हला जब मैं देखिबी कौन कौन योर आंसर इज योर 4 3 2 1 माने दिस इज द आंसर आंसर तुम एबीसीडी चॉइस देथियो केमती ए बी सी डी है दिस इज सपोज ए रे अछि 4 3 2 1 आंसर this is Siwaliks or the outer Himalayas, lesser Himalayas or Himachal, greater Himalaya or Himadri, then trans Himalaya. ठीक है? So these are the chronology. ये वाला तुम्हारा question बच्चा है. You can see this one diagrammatically भी तुम्हें भी दिख ले. This is your Siwaliks, then this is your middle Himalaya, Himachal, then greater Himalaya, then this is your trans Himalaya. Right? This is the correct chronology order. This one. Okay? South through north. माने Siwaliks ରୁ ନେଇକି ଉପରକୁ till ଯିବ ଲଦାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରେ. Right? Next देखिए प्रथमे first we will start the trans Himalaya. Himalaya देखिए trans Himalaya कौन देखौछि trans Himalaya जो देखिए हला the mountain ranges immediately north of the greater Himalayas are known as trans Himalayas. Right, the mountain ranges that is immediately north of your greater Himalayas are known as your trans Himalayas. From south to north they are as follows. From south to north again trans Himalaya again it is again subdivided into many parts. Okay, I will draw a diagram for this one. This is trans Himalaya. Let's draw a diagram. Trans Himalaya केमती लिखियो केमती तमे पढिबो trans Himalaya ठीक है जी ट्रांस हिमालय प्रथम मुझे कहली नहीं प्रथम आ गोटे डायग्राम बोलूँ डिवीजन ऑफ हिमालयस जब मुझे कहली प्रथम डिवीजन ऑफ हिमालयस रे तुम कौन देखिल केमती दिस गोटे स्मॉल डायग्राम करिवो तापर हम दिगर बोल स्मॉल डायग्राम इज लाइक दिस वन ट्रांस हिमालय दिस इज योर स्मॉल दैट इज योर trans Himalaya, greater Himalaya, middle, then Siwaliks. Okay, this is your 1, 2, 3, 4. 1, that is your trans Himalaya, then greater Himalaya. Third, middle Himalaya, then fourth is your Siwaliks. These are the things. Next, trans Himalaya भी कोई भी how trans Himalaya trans Himalaya again you will go for this one trans Himalaya that is your again division that is your Karakoram, Dhaskar, Karakoram, Ladakh, then Kailas, then Dhaskar. Okay, you see here again this is the mountain ranges immediately north of the greater Himalayas are known as trans Himalaya. From south to north they are this one again from south to north that is your Karakoram. South to north pratham your Dhaskar, then Kailas, then Ladakh, then Karakoram. So I can write here this is your 1 2 3 4 this is 1 2 3 and 4. Okay, this one 1 2 3 4 this one. So 1 is your Karakoram range highest Karakoram. This is your केमती मन रखियो this is your Karakoram range. This is your Karakoram range. Then second is your
Ladakh range, then your Kailash range, then fourth your Janskar range. So these are the things that how you remember this one. Your Karakoram, Ladakh, Kailash, Janskar. How? This is from north to south. This you can go for north to south. पढ़िला बेले सब मन रखिथिबो हैला केमति तमे मार्क करिवो आउ atlas रे भी देखिवो से जिंस सेम जिंस गुडा हाउ यू सी इन द atlas सेठी जदि देखिवो ऊपर काराकोरम देन लद्दाख देन दिस इज कैलाश देन झास्कार सो गो बाय दिस वन सब बेले मैप रो क्लैरिटी रखिवो मैप रे क्लैरिटी रखले तमरो अंडरस्टैंडिंग भी सेते इजी रहइबो ओके सो नेक्स्ट देखो दिस इज द थिंग ट्रांस हिमालय देखिछ काराकोरम रेंज यू कैन सी दिस वन this is Karakoram okay this is your Ladakh range this is Janskar and this is epote hela tomar Kailash this is your Kailash and this is your okay Karakoram Ladakh Kailash and Janskar these are the four right next dekhiba one by one cover kariba if you go for the Janskar range prathame jodi koibi Janskar range okay is an offshoot of the Himalayas okay Janskar range is an offshoot of the Himalayas or Himalayas jodi koibo it is an offshoot hala offshoot of the Himalayas okay straightening at 80 degree east and runs parallel to the greater Himalayas hala Janskar range to dekhibo hala eta hala trans Himalaya ro your southern portion परीक्षा बेले तुमरो लास्ट टाइम क्वेश्चन इन पचार थिला एला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जोथरे भी कि पर्टिकुलरली सदर्न हिमालय रो सॉरी काराकोरम रो तमरो सदर्न रेंज ताला तमरो झास्कार पर्टिकुलरली सदर्न रेंज ताला तमरो झास्कार पर्टिकुलरली हला सदर्न रेंज ताला तमरो झास्कार पर्टिकुलर झास्कार रो हला व्हिच इज रनिंग पैरेलल टू द योर ग्रेटर हिमालयस ता माने मु जदी कहबी झास्कार रेंज जोटा कि तमरो जदि मु कहबी झास्कार रेंज ग्रेटर हिमालय संगे गोटे टाइम रे आसी इंटरसेक्ट करूची हला आ मन रखो झास्कार रेंज इट मु लिखुची इट इज द सदर्न हला इज द सदर्न रेंज ऑफ हला सदर्न रेंज ऑफ ट्रांस हिमालय सदर्न रेंज ऑफ योर ट्रांस हिमालय then we'll say the Nanga Parbat and Devsai peak lie in the Janskar range. जब मैं कोई भी the Nanga Parbat and Devsai peak lie in the Janskar range. Janskar range क्या है? Nanga Parbat and Devsai peak. Two things. Nanga Parbat and Devsai peak. Again, the Ladakh range lies to the southeast of the Karakoram range. Karakoram range or southeast your Ladakh range is there. Okay, Karakoram range is southeast. If we see here, okay, Ladakh range, Karakoram range, this is the southeast. If I draw the diagram, this is the portion of southeast. Your Karakoram ro Ladakh rachi tamala Ladakh southeast rachi tamara Ladakh range, right? Having an average elevations of over 5,000 meter. देखियो average elevation पाखापाखी it is your 5,000 meter. Average elevations. Ladakh plateau is the highest plateau of India. India जति भी plateau होची ता भीतर Ladakh plateau है ना highest plateau in India. Ladakh plateau, right? Which is visible from Aksai Chin, Langzitang, Depsang, Soda plains, okay, Soda plains and Changchenin plains particularly. Okay, these are the plains where you see this one. Where this particularly this is this Ladakh plateau is visible. Ladakh is one of the okay the beautiful place in India. It is कहा कि इंडिया का जन्नत है बहुत सुंदर जगह because Ladakh रे average elevation देखियो it is more than your 6,500 meter ऊपर को हैला Ladakh particularly it's a very beautiful area Ladakh valley and say after the your withdrawal of Article 370 okay. Then this is your Ladakh is a separate. Jammu Kashmir was no more. Ladakh, Jammu Kashmir was formed. Where from Jammu Kashmir, Ladakh is the major part. Okay, most of the part is your Ladakh. Okay. Next, see the Kailash mountain range. The Kailash mountain range
is an offshoot, okay, or outer growth of the Ladakh range. Kailash range, it is an offshoot of your Ladakh range, Kailash range. Okay, the Indus River, if I say the Indus River originates from the northern slopes of the Kailash range. Okay, the Indus River that originates from the northern slopes of the Kailash range. Kailash range ro northern slopes ru tomaro Indus River originate heji. Okay, Indus River originates from this Kailash range. You can see here in the diagram also, you can see how the Indus River has coming. The exam re padile tame kemti lekhibo. See this one. ମୁଁ तुमको ये क्लियरली देखौछि देखो दिस इज कैलाश रेंज सपोज पड़ला भल भाव डायग्राम देखो कैलाश रेंज एइटु तुमर इंडस रिवर टा एइटु बाहर ठीक अछि दिस इज फ्रॉम हियर कैलाश रेंज इंडस रिवर इज फ्रॉम देयर so we can know that one that Indus river that originates from your particularly your northern slopes of the Kailash range, right? Next, the Karakoram range. Okay, Karakoram range ku jodi koi juwa, it is your northernmost boundary. If you see Karakoram range, you can see this is the northernmost boundary of the Himalaya, Trans-Himalaya. Trans-Himalaya, जो तुम देखियो northernmost, it is your Karakoram range. Okay. So Karakoram range is the northernmost range of the Trans-Himalaya. Trans-Himalaya, your northernmost range is your Karakoram range. Okay. Then the K2 peak is the second highest peak in the world. K2 peak, it is the second highest peak in the world. K2 peak, okay, it is located here. K2 is also known as Godwin-Austen. K2 is also known as your Godwin-Austen. It would questions हमें बनी परियो कौन? One question, suppose बचाला, which is the highest peak, which is the highest peak of India, highest peak of India. Then your first Kanchenjunga, B, K2, C, Mount Everest, D, Nanga Parbat. Which is the highest peak of India? One is your Kanchenjunga, K2, Mount Everest, and Nanga Parbat. Your answer, your answer is your K2. Don't go for Kanchenjunga. Maximum students I have seen, they go for Kanchenjunga. No, prelims re बहुत confusing. जब इतने wording रे difference अच्छी. Kanchenjunga नुहो. Kanchenjunga is basically, you can see Kanchenjunga. Okay, केते बड़ा हबो? जदि एटी देला क्वेश्चन, सपोज क्वेश्चन रो लैंग्वेज हला, सपोज नेक्स्ट आगो क्वेश्चन थी देखिबो, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2, सपोज दिस इज अनदर क्वेश्चन आई कैन सी. Next, another question, that is your the undisputed peak of India is known as, which one is the undisputed peak of India? Undisputed peak. Then if the question language is undisputed peak, then you would have go for the answer is your Kanchenjunga. Then your answer is your Kanchenjunga. One rakho. काहे को एटा कहूची, this already एई बडे क्वेश्चन से माने पचारि सकछन. Undisputed, K2 is disputed एथि पई because K2 is located in Pak occupied Kashmir, POK region K2 fall करछि, and that is why it is a disputed region. So is it clear?
क्वेश्चंस पढ़ला बेले इंडिया रे क्वेश्चंस गुड़ा बहुत इजी लगे, इट सीम्स वेरी इजी, बट एक्चुअली जब देखियो कि इट इज नॉट लाइक दैट वन। हमको बहुत टिके माइन्यूटली फोकस करिया को पड़िबो, पर्टिकुलरली लैंग्वेज और वर्डिंग्स ऊपर, दैट विल बी हेल्प यू आउट, राइट। Next, the Great Himalayas or Himadri. We can say the Great Himalayas or Himadri. Okay, this is the innermost of all the Himalayan ranges. जत्ते भी Himalayan ranges अच्छी ता भितर सबुठु innermost है your Greater Himalaya or Himadri. Innermost range, innermost of the all the Himalayan ranges. हमें जान लेती कि Trans Himalaya, then your Greater Himalaya, Middle Himalaya, and 𝐤𝐿𝐼𝐀. It is like TH, then GH, Greater Himalaya, then Middle Himalaya, then your 𝐤𝐿𝐼𝐀. देखो तुम तो सब एनसीईआरटी रे पढ़छ, बट एटा हला तमर गोटे रिवाइज हबो, रैपिड रिवीजन हबो, जोथरे तुम मैक्सिमम जिंस गुड़ा आउथरे तुम फ्रेश अप करि परिबो, सेही हिसाब रे मु तुमको कहबी। बट सेही बडे क्लास रे वर्डिंग्स रे ध्यान दो। इंडिया रा क्वेश्चंस जो पढ़े मोस्टली दे फोकस ऑन योर वर्डिंग्स, वर्डिंग्स आर बेसिकली मोर इंपोर्टेंट। जेमती दिस इज योर इनरमोस्ट, मु कहली इनरमोस्ट ऑफ ऑल हिमालय, पर्टिकुलरली इनरमोस्ट, जस्ट लुक एट इनरमोस्ट, okay, of the Himalayan ranges. Its average height is about 6,100 meter above the sea level. Average height है 6,100 meter above the sea level. Sea level ऊपर 6,100 meter ऊपर को अच्छी. Okay, have an average width of 25 kilometer. You can say the average width is your near about 25 kilometers. So you can say the length is your, if you see, you can see here Greater Himalaya. You can go for this one. See, if I see this one is your Greater Himalaya, this is Himadri. Himadri, okay, this is your 6,100 kilo, particularly, your height is 6,100 kilometer and width is your 25 kilometer. This is entirely, it crosses through total Nepal. Greater Himalaya maximum crosses through your Nepal. The entire Nepal is dissected by your particularly Greater Himalaya, right? See, next, its average height is about 6,900 meter and the sea level, and have an average width is 25 kilometer. This is the loftiest and the most continuous range of the world. Loftiest and most continuous range of the world. Also known as the name as Himadri Mountains. This is also known as your Himadri Mountains. Himadri Mountains बोली आपको जाना चाहिए, है ना? Himalaya is also known as your Himadri Mountains. Next, see this one. If I say this from this diagram, one information. This is the particular where our area, our area ta केमती माने Pakistan और China use करछन. See this one. This is particular जो तुम कहली, this is Pak occupied Kashmir. जो भूलटा मिस्टेक हेतला इंडिया संगरे जितला नेहरू जी थिले ई जिंस गुडा सब these are the grave mistakes that done by India, हैला इंडिया साइड रो. बट आज भी एटा को एक्सेप्ट कराउनी यूएन रे, स्टिल इट इज इन डिबेट. ओके, यूएन रे स्टिल इट इज इन डिबेट. दिस इज ओके, दिस इज योर कंट्रीज प्रॉपर्टी, national property, not individual property. That is what India जोटा की claim करछि कोठी यूएन रे. This is line of control, territory ceded by Pakistan to China, that is 19. पर्टिकुलरली एतिकी जतिकी इंडिया नेहरू देइतले, नेहरू देला पर कोन हला पुणी एतिकी एरिया कोन कला पाकिस्तान देला का को चाइना, माने जागा कार घर कार से माने तांकर बंटाबंटी चलछ. दैट इज व्हाट द मेजर मिस्टेक्स which is 1963 रे जो हला चाइना को दे देला पाकिस्तान. Then Aksai Chin, this is the area, that is India and China line of actual control. This particular area is controlled by your China. This is also China was okay. Your forcibly taken this one. जो 62 war है इतरे China कहला. This particular area was taken off by China. Your China from India to Negla China. Then if you see here,
This is the actual, this is the line of control, this is the line of control. See this one, this is particularly. Okay, and this is mostly your now this particular area. This is major problem. Major disturbances. Major disturbances in this area. Major disturbances in this area. And this is your LAC, line of actual control. This one, line of actual control is this one. Okay, line of control LOC olga, line of actual control. That is a major difference. Line of actual control where there is no any movement is suspicious or action can be taken. But in LOC, action may not be taken. They can be one, but here direct shoot in LOC. Next, again. So we'll go continue this one. Greater Himalaya. If you see the Greater Himalaya, the tallest peak of the world, such as Mount Everest, Kanchenjunga, Makalu, Dholagiri, Nanga Parbat, Annapurna, and Nanda Devi are in Greater Himalayas. Greater Himalaya, those who are in Greater Himalaya is your Mount Everest, Kanchenjunga, Makalu, Dholagiri, Nanga Parbat, Annapurna, and Nanda Devi. Okay, Nanda Devi, they are the great peaks of your Greater Himalayas. Right? So, important mountain passes. Who are the mountain passes? That is your Jojila Pass, Burjil Pass, Baralacha, Sipkhila, Jojila, Burjil, Baralacha, Sipkhila in Himachal. Then Nitti Pass, Lipu Lake, and Nathula, and Jalepla. These are all are Sikkim. We'll one by one we'll cover this one. Okay, Jojila, Burjil, Baralacha, Sipkhila, Nitti, Lipu Lake. Okay, these are all mainly Jojila, Burjil, Baralacha, Sipkhila. This is in Himachal Pradesh. Nitti, Lipu Lake in Uttaranchal. We'll cover this one. Okay. See, before that one, again mountain passes will cover one by one. Parikhar ei question uta pacharchunti. Mountain passes majorly को जगह किए कनेक्ट कर दैट इज कवर्ड ता पूर्व आमे देखितबा हाईएस्ट पिक्स इन द ग्रेटर हिमालय रे हाईएस्ट पिक किए अछि दैट इज मेजर हला ओनली मन रखो हाईएस्ट पिक्स इन ग्रेटर हिमालय मींस ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू योर ग्रेटर हिमालय दैट इज ओके ग्रेटर हिमालय को मेनली हाईएस्ट पिक ग्रेटर हिमालय रे किए अछि मेजरली ओके देखिबा माउंट एवरेस्ट दैट इज आल्सो माउंट एवरेस्ट अलगा ना कोन दैट इज योर सागर माथा मन रखो सागर माथा और चोमोलुंगमा इन नेपाल तिब्बत है चोमोलुंगमा इन नेपाल तिब्बत हाइट इज योर 8850 मीटर 8850 मीटर है माउंट एवरेस्ट और सागर माथा ता ना हला कण चोमोलुंगमा मेनली देन कंचनजंगा दैट इज इंडिया नेपाल 8586 कंचनजंगा दैट इज 8586 इंडिया रे 8586 इन नेपाल कंचनजंगा राइट then your Lhotse Nepal that is 8516 Lhotse Nepal है 8516 Lhotse in Nepal Makalu that is Nepal China it is 8485 Makalu in China रे इते 8485 meter Makalu is in China okay just you can see here see this one here Mount Everest just you can see Chomolungma or Everest here. This is your Chomolungma or Everest. 88. This is number 1 Chomolungma. Then second, so all are maximum see Kanchenjunga, India, Nepal. Kanchenjunga. Kanchenjunga, this one, third. Second, why? See this one, Kanchenjunga is in Greater Himalaya, but K2 is in Karakoram range. This is just have to remember, K2 is in Karakoram, but Kanchenjunga is in Greater Himalaya. Just remember this one. That is why it is second rank. But in height wise, it is third. Okay, then next year Makalu. Just see, Makalu is here. That is 8485.
Third is Lhotse. Lhotse, just see. Lhotse also here. This is in Tibet. Also, this is Nepal, Tibet. See this one. Fourth. This is first rank. This is second. This is your third, Lhotse, and Makalu is your fourth. Right? Then Cho-Yo, Nepal, Tibet 8188. That is your Cho-Yo 8188. Next, Dholagiri, Nepal 8167 meter. That is Dholagiri. You can see 8167 meter. This is fifth Dholagiri 8167 meter. Cho-Yo, you can see this one. This is your fifth and this is your sixth rank. Next, Mansalu, Nepal. एगुड़ा सब जो तुम पढ़ो आटलास यही जगह मार्क कर नेपाल ये खोल तुम मैक्सिमम है प्रथम पेज यू कैन सी दिस वन दिस पेज फर्स्ट पेज ऑफ ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलास आई एम रेफरिंग ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलास दिस इन ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलास यू कैन गो फॉर दिस वन राइट हियर दिस पेज नेपाल रे एटी तुम मैक्सिमम कंटेंट पाइबो ओके मैक्सिमम तुम your heights your mountain heights in Greater Himalaya. Mansalu, Nepal 8163. Then Nanga Parbat, that is India POK, that is 8126. Nanga Parbat 8126. Then Annapurna, that is your Nepal, that is 8091 meter. Annapurna, that is your 8091 meter. Next, Sispangma, that is Nepal also, that is 8027. You can see your see this one, Annapurna is here, then Sispangma, there is also, see, maximum, just look at here, a diagram ray, maximum, you can see your maximum, your mountain ranges or particularly mountain peaks, okay, sorry, maximum mountain peaks are in your Nepal, either Nepal, Tibet, okay, or only one जोड़ा कि इंडिया संगे सटिकी अछि that is your particularly Kanchenjunga. Rest maximum are your Nepal Tibet region, right? Tibet and Nepal माने China and your Nepal. Tibet is not an autonomous body. Tibet still it is under the control of your China, but Tibet is claiming to be separate. मन रखी था बेटा है ना. अच्छा आगु proceed करिवा. एटा हला तमरा highest peaks in the Greater Himalayas. So exclusively these are all Greater Himalayas. Greater Himalaya mani exclusively these are all, right? Next we'll see your important mountain passes in Western Himalaya. Important mountain passes in Western Himalaya. Western Himalaya mountain passes किए one by one देखिए है just first यदि देखिए major mountain passes किए है major यदि मैं कहूँ just see जब तुम कहूँ वर्तमान 𝐎𝐿𝐴 Pass. This is I can write here 𝐎𝐿𝐴 Pass. 𝐎𝐿𝐴 Pass एटी लिखि दोछि लिखि नेबो कोटा कोटा केमती एग्जाम रे सपोज पचारला तमर कॉलम A और कॉलम B एमती पचारिबो कॉलम A and column B. Match the following column A and column B. So you can see 𝐎𝐿𝐴 Pass that is in Ladakh. Now this particular is in Ladakh. Important. This is 𝐎𝐿𝐴 Pass. Another. Okay. 𝐎𝐿𝐴 Pass you are seeing here. Okay. Then you can see. You can open this one. This you can see here. Ladakh. It is in 𝐎𝐿𝐴 Pass. Next you see important pass. Then you see the Burjil Pass secondary. This is another important Burjil Pass. This is your Burjil. You can write here. This is your Burjil Pass. Okay, Burjil Pass important. Then Khardungla Pass. Important पचारती Khardungla Pass. This is both are in your Ladakh. Both are in your Ladakh, right? Khardungla Pass and Burjil Pass. They both are in your Ladakh.
can see Khardungla Pass and Burjil Pass. Exam रे तमरे एगुडा ही पचारिबे Khardungla and Burjil Pass, right? Right, this is. Then another is your Jojila Pass. Okay, Jojila Pass. La mane pass. Man rakho. La means pass. In Tibetan language, La means your pass. Particularly, La means your pass. This is also in Ladakh. Jojila Pass is also in Ladakh. Jojila Pass also in Ladakh. Also your, this is your Pir Panjal Pass, I can say Pir Panjal Pass. The Pir Panjal Pass, this is Pir Panjal Pass is in particularly the Pir Panjal and Banihal. You can write exam rate of this is important. A to put Lekhinio. Pir Panjal and Banihal Pass, they both are in your particularly your Jammu and Kashmir territory. These are all Ladakh. This is your Jammu Kashmir territory. Okay. Next in Himachal Pradesh, you can see this is your Baralacha Pass. Okay. Then Sipkhila Pass, Baralacha Pass, Sipkhila Pass. Okay. You can see here that you have studied Baralacha, Sipkhila. See this one, Baralacha, Sipkhila, Debang. Okay, and this is your Khardungla Pass. This is your Khardungla Pass. Khardungla Pass. These are all four are these are very important. These are all in, change the color here. This is your Himachal. This is your Himachal Pradesh. These are all Himachal Pradesh. Khardungla, Baralacha, Debang, Khardungla and Sipkhila. Baralacha, Debang, Khardungla and Sipkhila, they all are in Himachal Pradesh. Same thing, also Uttarakhand, so we have covered. Ladakh we have covered. Then here also we have covered Jammu Kashmir. This is Jammu Kashmir we have covered, and this is Ladakh part area. This is also we have covered. These are all your Ladakh part. This is your Ladakh we have covered. Ladakh, so we have completed Ladakh, Jammu Kashmir and Himachal Pradesh. Now you come down to your particularly Uttarakhand. If I say Uttarakhand, if you see the Uttarakhand, see this is your Niti Pass. Just note it down. I will change the color. Niti Pass. Okay. Lipulek Pass. Lipulek, Nitti, then Manna Pass. This is your Manna Pass. These are the important passes of your Uttarakhand. This is Uttarakhand. Okay. So Uttarakhand also we have covered. Nitti, Manna, Uttarakhand. This is. Next, this is your, if you see, this is your Jalepla Pass, then Nathula Pass. Okay, Jalepla Pass and Nathula Pass. These are the two important that you have covered. This is in Jalepla and Nathula. These are in Sikkim. So we have covered
majorly we have covered, that is your Sikkim, then Uttarakhand, then your Ladakh, J&K and Himachal. These are the 4 regions we have covered. And another, I can say, in Arunachal Pradesh, it is not here, you can write down here, Arunachal Pradesh, majorly Arunachal Pradesh, you can see Arunachal Pradesh, it is your Bomdila Pass. Bomdila Pass is majorly in your Arunachal Pradesh. Bomdila Pass. Okay, right? Bomdila Pass majorly it covers your Arunachal Pradesh, right? Next you see, so mountain passes रो बहुत important परीक्षा रे एउटा पचारुचन से माने in either way तमरो एटी काम होला कि को पास रो कोटा कनेक्ट करो अछि तम सेटा टिके गोटे गोटे लाइन तमरो नोट तमे लिखि परियो लास्ट मोमेंट रिवीजन एटा हेल्प हबो ठीक अछि स्ट्रेट आउ यूटी वाइज मु तमरो कवर कर देली को जगह रे जेंत अरुणाचल प्रदेश हला सिक्किम हला उत्तराखंड हिमाचल लद्दाख ओके मैक्सिमम जगह कवर हला सेमती तमे कवर करनो ठीक अछि Next देखिए, so we have covered Trans Himalaya and Greater Himalaya. Now comes to your Lesser or Middle Himalaya. Lesser or Middle Himalaya, जो तुम कहोगे Lesser or Middle Himalaya. The Lesser or Middle Himalayas are also known as your Himachal. है Lesser or Middle Himalaya are also known as your Himachal बोली कहा जाता है. These are जदि कहबी these are having elevations lesser or Himalayas रे these are having elevations between 3500 meter to 5000 meter हला 3500 meter ru 5000 meter ऊपर तमरा आसी lesser Himalaya. Let's see look one, this one. Now see this one, this is your Middle Himalaya. You can see this one, this is great, and this is your Middle Himalaya. This is your middle MH. I can write here MH or Middle Himalaya, right? And average width is 60 to 80 kilometer. I can say the average width is 60 to 80 kilometer. The Middle Himalayas run parallel to the Greater Himalaya. Middle Himalaya is run parallel to the Greater Himalaya. That you can see here, Middle Himalaya. This is middle MH. And this is your GH. Middle Himalaya is run, this is middle and this is your greater. So it is there, Middle Himalaya or Greater Himalaya, they both are run parallel to each other. Okay. The important ranges, which are the important ranges in the Himalaya? That is your Dhauladhar range, the Pir Panjal range, the Naktiba range, the Mahabharat range and the Mussoorie range are included in this. If we discuss this one, which are the important ranges that cover in the Middle Himalayas, these are the main. Dhauladhar, Pir Panjal, Naktiba, Mahabharat, Mussoorie range. But here again we have to find that one, which ranges are fall in which particular state or the country. Let's see. Dhauladhar range. Dhauladhar range if you take the atlas, you can see this one. Open that one atlas and see Dhauladhar range re tame see this is in Himachal Pradesh. Dhauladhar range you can see, just see, look at here. Punjab Himalaya, this is Dhauladhar. Just see this one. Pir Panjal tale tamar dechi Dhauladhar. ठीक है. So Dhauladhar is in Himachal, लिखी कोड़ा कोड़ा करछि Himachal भी plus Punjab भी Himachal Punjab. Pir Panjal जल्दी question पढ़ियो, this is also Himachal plus Punjab. लिखुछि Himachal plus Punjab. No, I'm sorry. Himachal, Punjab rahibani. Himachal and author likhi deuchi. Himachal plus Dhauladhar katha कहली मु. Dhauladhar रे Himachal plus
J&K Jammu Kashmir, एटी भी हिमाचल प्लस J&K Jammu Kashmir, then okay Jammu Kashmir माने UT, this is as an UT परीक्षा पचले UT ला यूनियन टेरिटरी Jammu Kashmir यूनियन टेरिटरी परीक्षा केम इनोवेटिव जेतल भी कोन से मैप तक इनोवेटिव वे रे पढ़ो that will help you out. Okay, then Naktiba is in your Uttarakhand, you can say Naktiba is in UK Uttarakhand. Naktiba is in Uttarakhand. Then Mahabharat range, I can say Mahabharat range is in your Nepal. Mahabharat range is in your Nepal. Mussoorie range, Mussoorie, that is also in Uttarakhand. Uttarakhand. Mussoorie is in Uttarakhand. Right? So this is the way how you are getting the questions. Just remember, questions tame kemti paucho, that is more important than what you are doing particularly. This is the thing that how we are covering this one, right? Next, the hill stations. Again, now comes to the hill stations. So these are the things kemti padla bale kemti dekhucho, eguta tumu rakhi rakho parikha di pacharibe ko range ko jaga re, and definitely sure shot tame itru question paucho. This is guarantee. Hela jodi tamra padhibo questions tame paibo plus tame question mane paucho mane mo if I say question जब पढ़ो तुम रिजल्ट निश्चिंत रूपे कर जदि तुम क्लास रे भल कि बुझुच ए क्लास रे आउ प्लस सब बड़े तुम एटलास टाक धरिक रखिए मन रख ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलास दिस इज मेजरली मेन स्कूल एटलास इज द मेजर थिंग दैट यू हैव टू फॉलो दिस वन सेम थिंग नाउ वर्तमान विल कम टू द हिल स्टेशंस को हिल स्टेशन इंपोर्टेंट जेमति कहली द मेजर हिल स्टेशन लाइक शिमला मसूरी नैनीताल अल्मोड़ा रानीखेत दार्जिलिंग चक्राता आर स्टडीड द ranges. मिडिल हिमालय जदि मु कहबी मिडिल हिमालय मेजरली माउंटेन हिल्स बट पर्टिकुलरली जदि हला माउंटेन पासेस मेजर एटी मु गोटे जिंस लिखुची हला नोट रे लिखिनियो हला नोट रे कोन लिखली हिल स्टेशंस are mainly found at middle Himalayas. Middle Himalayas are mainly hill stations. Okay, where majorly जति भी तुम देखो hill stations majorly. Okay, hill stations mainly. But if you see the mountain passes, mountain passes are mainly found at Greater Himalaya. तो आम देखिले हिल स्टेशन है मिडिल हिमालय आउ माउंटेन पासेस है तुम ग्रेटर हिमालय तुम यही सब क्वेश्चंस गुड़ा केमती आसीबो सपोज है तुम एगुड़ा केमती हेल्प होबो दिस इंफॉर्मेशन एसेसन रीजनिंग तुम करछो है एसेसन रीजनिंग की हो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो दिस आर तो तुम ट्रू और फॉल्स मेनली एसेसन रीजनिंग रे है एसेसन रीजनिंग पचले तुम एटा कहि परियो कि योर हिल स्टेशंस आर बेसिकली इन योर मिडिल हिमालयस है एटा particularly जति के हमर देखा है as per the geological study most of the hill stations हिमालय रो जोटा कि मिडिल हिमालय रे आछुंदी but where the mountain passes जोटा कि हम आउट पूर्व पढ़ले जलेप्ला नाथुला हांगला नीति हैला मैक्सिमम से माने फॉल करछन ग्रेटर हिमालय ओके okay the study in these ranges the Kashmir valley the Kangra valley the Kullu valley lie in the lesser Himalayas or the Himachal जब मैं कहली Kashmir valley Kullu valley Kangra okay Kullu valley this lies in the lesser Himalaya or the Himachal even if जब मैं कहबी Kashmir valley भी जदि आसी Kashmir valley चापी ही रची का भितरे Greater Himalaya और Middle Himalaya भितरे but mostly most portion of the Kashmir valley जोड़ा आसी तमरो हैला
मिडिल हिमालय रेंज रे कांग्रा वैली है जेमती काश्मीर वैली इना वर्तमान मते कहबी काश्मीर वैली कोठी काश्मीर वैली इज इन योर J&K हैला जम्मू काश्मीर रे कांग्रा वैली कोठी कांग्रा वैली इज इन हिमाचल हैला हिमाचल रे कुल्लू वैली आल्सो इन हिमाचल हैला लाइक द लेसर हिमालयस और द हिमाचल पर्टिकुलरली हैला हिमाचल प्रदेश माने हिमाचल प्रदेश मु कहली को जगह रे को स्टेट रे दैट इज योर हिमाचल प्रदेश दिस इज योर हिमाचल प्रदेश मेजरली दीज आर द हिमाचल प्रदेश मेनली नेक्स्ट लास्ट जोटा कि हैला तमरो माउंटेन सेक्शन में कौन कौन देखिले वी हैव कवर्ड योर here we have covered that we have covered here trans Himalaya we have covered the greater Himalaya covered lesser Himalaya covered then last one is your outer Himalaya or the lesser Himalaya है sorry 𝐒𝐄𝐈𝐀𝐋 last one is your 𝐒𝐄𝐈𝐿𝐾 or outer Himalaya mainly so these are the synonyms 𝐒𝐄𝐈𝐿𝐾 or outer Himalaya lesser or Himachal Himadri or greater trans so let's see now now see so outer Himalaya is also known as your 𝐒𝐄𝐈𝐿𝐾 or 𝐒𝐄𝐈𝐿𝐾 also called as your outer Himalaya 𝐒𝐄𝐈𝐿𝐾 भी outer Himalaya कहा जाए जब देखिए the 𝐒𝐄𝐈𝐿𝐾 range are also known as your outer Himalayas है 𝐒𝐄𝐈𝐿𝐾 range are also known as your outer Himalayas located in between the Great Plains and Lesser Himalaya माने जब जब देखिए तार लोकेशन टा है ना कोटा this is 𝐒𝐄𝐈𝐿𝐾 so 𝐒𝐄𝐈𝐿𝐾 जो अच्छी this is your 𝐒𝐄𝐈𝐿𝐾 I can say this is your 𝐒𝐄𝐈𝐿𝐾 𝐒𝐄𝐈𝐿𝐾 एटा तळे अछि कि तमरो ग्रेट प्लेन्स तमर परीक्षा रे पचाले तमे केमति करिवो तळे अछि तमर ग्रेट प्लेन्स ऊपर अछि तमरो हैला योर मिडिल हिमालय so 𝐒𝐄𝐈𝐿𝐾 is mainly in between your middle Himalaya and your great plains दीटा भितरे 𝐒𝐄𝐈𝐿𝐾 चापी कि अछि क्वेश्चन पचाले तमरो आराम से हे परियो असेसन रीजनिंग रे आराम से तमे कहि परिवो ओके again the altitude varies from 600 to 1500 meter जदि हम 𝐒𝐄𝐈𝐿𝐾 रे कहबा 𝐒𝐄𝐈𝐿𝐾 रो altitude ता vary करछि 600 ru 1500 meters लेकि 𝐒𝐄𝐈𝐿𝐾 रो altitude vary करछि okay runs for a distance of 2400 kilometers you can see here 𝐒𝐈𝐿𝐾 सबुठ बेसी रन करछि 2400 मीटर 𝐒𝐈𝐿𝐾 कोटू रन करछि पाकिस्तान रा पटवार रु नेकी टिल अरुणाचल प्रदेश पर्यंत इवन 𝐒𝐈𝐿𝐾 is running mostly near about 2400 kilometer right from the Patwar plateau of to the Brahmaputra valley Patwar plateau जोटा कि तमरा this is in Pakistan okay and Patwar plateau and this is in your Assam right this is in Assam so having an average elevation between 900 to 1500 meter average elevation is your 900 to 1500 meter right these are the youngest mountains of the Himalayan mountain system 𝐒𝐈𝐿𝐾 कथा आदि कहबी these are the youngest mountains of your Himalayan system हिमालय रो जति कि सबटू एई चारिटा पढिलो तमे ट्रांस हिमालय ग्रेटर हिमालय मिडिल हिमालय आउ 𝐒𝐈𝐿𝐾 भितर 𝐒𝐈𝐿𝐾 सेला सबटू यंगेस्ट हैला एटा नोट करनी परीक्षा रे पचारबे एटा हैला कोन हैला youngest mountains of the Himalayan mountain system again the main hills of the 𝐒𝐈𝐿𝐾 के the main hills are Jammu Dafla Miri Abor and Mismi all are in the Arunachal Pradesh सबु जंक अरुणाचल प्रदेश रे अछंती हैला डाफला मिरी मिस्मी अबोर just you can see here just एटा खोला इतरे तम टोटली पूरा क्लियरली एटी मेंशन हेची डाफला मिरी मिस्मी अबोर
देखो ए पेज रे पूरा क्लियरली मिस मी हेची हला दिस इज डाफला दिस इज मीरी ऊपर है मिसमी ठीक अच्छे डाफला मीरी मिसमी अरुणाचल प्रदेश रे तीन टाक आउ ये रही डाफला मीरी मिसमी जदि नंबर रहा ऑल आर इन अरुणाचल प्रदेश मन रख डाफला मीरी मिसमी आबोर सबू जाक तुम अच्छा कौटी योर अरुणाचल प्रदेश रे ठीक अच्छे दिबांग आउ धानसिरी मझीरे तुम रोचे किए आबोर हिल्स दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ऑल आर ठीक अच्छे जम्मू जोटा है तुम आरंभ हो शिवालिक्स बर्तमान फॉर्मर ईयर करंट ईयर जम्मू एंड काश्मीर राइट नेक्स्ट द पूर्वांचल हिल्स or the eastern Himalayas. If I say the Purvanchal hills or the eastern Himalayas, they are included the Patkai hills, the Naga hills, the Mizo hills and the Garo Khasi and Jaintia. Garo Khasi Jaintia, okay, the Naga Mizo and Patkai hills. Naga Mizo and Patkai hills. Okay. Naga Mizo and Patkai hills and Garo Khasi Jaintia. They all are in your पूर्वांचल हिल्स रे समान आसुन पूर्वांचल हिल्स माने जोटा कि पर्टिकुलरली मु कहबी पूर्वांचल हिल्स रो एई पटे पूर्वांचल हिल्स आर बेसिकली दिस स्पॉट गारो खासी जानते दिस इज योर कम्स योर नॉर्थ ईस्ट हला मु लिखुची पूर्वांचल हिल्स हला आर मेनली फॉल्स or covered in northeastern states. Purvanchal hills mainly northeastern states, they are mainly covered in your northeastern states. Okay. So next पूर्वांचल पटकाई नागा मिजो एंड गारो खासी जाइंतिया हाउ यू लुक एट देखियो केमती कोथरे देखियो तमे पाइबो प्लस अगेन एटलास रे खोलिबो ए पेज रे जस्ट यू लिख इट हला गारो खासी जाइंतिया इज इन मेघालय ओके पटकाई बूम नागा हला नागा माने नागालैंड पाखरे पटकाई बूम सब जंग एटी सीरियल दीची मिजो हिल्स जोटा कि वर्तमान को होची मिजोराम रे ताकू पुराना आगुर को होतला योर लुसाई हिल्स आल्सो एटा मन रख परीक्षा रे पचरंती Mizo Hills is also previously known as your Lusai Hills. Okay. Lusai Hills. Mizo Hills also previously known as your Lusai Hills. Okay. So about Himalayas we have completed. So we have completed the Himalayas portions particularly. Just this part, if you see. These portions we have completed. That is the mountain regions of Himalayas. Now come to the triangular plateau peninsula, that is Deccan south of the Vindhya. This is also important. Okay, these are all the physiography very important. Physiography बहुत vast India रे. Quick revision पाई particularly जो गुड़ा तमर exam point of view definitely will हला cover करियो सब. Next here come to the Deccan south of the Vindhyas. कौन देखियो Next, the physiography of triangular peninsula. On the basis of physiography of the peninsula, India may be divided into the following. Physiography of peninsula, India may be divided in the following. First is the central of land. समस्त atlas on जितले भी जोड़ा पढ़ुछो तमे atlas टा on करके रहिबो हैला atlas कला माने तमर clarity बेसी रहिबो the central offland, the Deccan Plateau, the Western Ghats and the Eastern Ghat. ठीक अछि central offland, the Deccan Plateau, the Western Ghat and the Eastern Ghat. Majorly एमने cover रुचंती right. प्रथम आसला the central offland. Central offland कथा कहबी the central offland consists of the Aravalli range, the Malwa Plateau, the Bundelkhand Plateau. The central offlands consist of the Aravalli range, the Malwa Plateau, the Bundelkhand Plateau, the Vindhyas, the Meghalaya Plateau, and the plateau of Chota Nagpur Plateau. Central offland major imane cover hochandi hela central offland. One by one we will see.
The diagram you can see here. ठीक है? See, the Aravalli range that extends from Gujarat through the Rajasthan up to Delhi. Aravalli range that extends from Gujarat, okay, from Gujarat through Rajasthan up to Delhi. It is a relief mountain. Relief mountain माने कौन? अला particularly अला Aravalli range. Aravalli range ऊपर जो तुम कहोगे Aravalli range is the oldest fold mountain. Oldest fold mountain in India. Oldest fold mountain in India. ठीक है? Oldest, the oldest माने याटे सबुठ पुराना. ता परे तमर विंध्या आसु. ऊपर तुम कोई भी Aravalli है the oldest fold mountain in India, right? जब तुम कोई भी Aravalli रा, it forms है relief mountain. Relief to मास्सी relief माने मुझे भी आके. Then was formed in pre-Cambrian period. Aravalli formed in pre-Cambrian period. Pre-Cambrian period माने कितने? Pre-Cambrian period यानी near about 3,500 to 4,000 okay million years ago. Can you imagine? जब हम कहीं भी है pre-Cambrian age रो माने particularly 3,500 रु 4,000 million years ago पूर्वरु तमरो Aravalli form हेतला particularly oldest. तो तुम देखुछ कोठी Aravalli majorly कोठी रहउची हला राजस्थान रे. Just look at here, look at the map atlas रे देखो. just कहि दोची Aravalli हला mainly एठी हला. Aravalli वर्तमान कोन गोटे relief mountain हला. relief mountain, it is a relief mountain particularly माने small portions of mountains having 600 meter elevations, plus 600 meter to 800 meter elevation, particularly Aravalli elevation has left. गोटे टाइम रे Aravalli हिमालय ठू ऊंचा थिला, बट जेतले सब्जेक्टेड इते वर्ष हला है ना, इट सब्जेक्टेड टू योर डेनुडेशंस माने वेदरिंग एरोजन. देन एवरेज हाइट Aravalli रो only 600 to 800 meters. Guru Shikhar is the highest peak. We can say this one, okay? Guru Shikhar is the highest peak. Guru Shikhar is the highest peak of Aravalli. Guru Shikhar is the highest peak of Aravalli. Guru Shikhar is the highest peak of Aravalli range. Guru Shikhar. Okay, Guru Shikhar is the highest peak of your Aravalli range, basically. Guru Shikhar is the highest peak, basically. Okay, Mount Koti Guru Shikhar. Guru Shikhar lies in your Mount Abu. We can say Mount Abu. Guru Shikhar achi koti Rajasthan re. How Mount Abu? This is your Rajasthan. Okay, Rajasthan particularly. Next, its average elevation is between 300 to 800 meters. Right? Okay, Guru Shikhar is the highest peak of Aravalli range, the famous Mount Abu, that is 1722. You can see the map diagram रे भी तमे देखि परिबो Mount Abu हला तार highest peak. See this one Guru Shikhar 1722 here. देखि राजस्थान रो southern Rajasthan तमे देखिबो उदयपुर पाखरे एकदम सिरोही पाखरे it Guru Shikhar 1722 meter is located there particularly. Located city अछि. Then this is the this is your Aravalli particularly third desert hala. Next Vindhyas. Vindhyas जदि कहबा मध्य प्रदेश रे majorly flow माने जदि रही छि Vindhyas. Vindhya upland okay is having an average elevation of 300 meter.
विंध्या को जदि देखिबा एवरेज एलिवेशन विंध्या रहला 300 मीटर जोटा कि अछि ओके द विंध्या स्ट्रेचेस फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1050 किलोमीटर विंध्या कथा यदि कहबी विंध्या मोस्टली स्ट्रेच करछि 1050 किलोमीटर हला विंध्या स्ट्रेच करछि ओके इट स्लोप्स टुवर्ड्स द नॉर्थ ओके स्लोप होइछि particularly north को विंध्या स्लोप होइछि particularly okay and south of the Vindhyas lies the narrow rift valley of Narmada la Vindhyas रा particular तमे एटी देखियो दी narrow rift valley एटी करछि this is Vindhya I can say हला एटी ए फिगर को देखो टिके this is your Vindhyas mountain this is your Vindhya mountains okay Vindhya mountain तळे एटा हला तमरा narrow rift valley this is your narrow rift valley this is your narrow rift valley जोटा कि विंध्या ठीक अछि ओके एटी जदि हम कहबी जस्ट यू कैन लुक एट द हला एटी लिखिछो विंध्या इज आल्सो ओल्ड फोल्ड माउंटेन दिस इज आल्सो ओल्ड फोल्ड माउंटेन इन इंडिया ओल्ड फोल्ड माउंटेन विंध्या आल्सो जदि हम कहबी कि पर्टिकुलरली इफ आई से आरावली पर जदि के ओल्ड आछि ताले तमरा विंध्या जस्ट रिमेंबर दिस वन आरावली पर जदि ओल्डेस्ट हला जदि के ओल्ड आछि ताले तमरा योर विंध्या दिस वन this one okay आ विंध्या जदि मोस्टली तार देखिबो मोस्टली एटा मध्य प्रदेश रे विंध्या तमर लाइक करछि डायग्राम मध्य प्रदेश हला एंटायरली मध्य प्रदेश रु नेकी राजस्थान पर्यंत लंबी छि हला देन यू विल कम टू योर छोटा नागपुर प्लेट्यू जदि तमे देखुछो दिस इज द बेसिन्स ऑफ पर्टिकुलरली हम कहबी छोटा नागपुर प्लेट्यू दिस इज द एरिया ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू दिस इज द एरिया This is the area of Chota Nagpur Plateau. Mostly, Chota Nagpur Plateau. This is the area of Chota Nagpur Plateau. Okay, mostly in Jharkhand. Then देखिए Chota Nagpur Plateau lying west of the Bay of Bengal. Bay of Bengal रो west रहला तुम्हारा Chota Nagpur Plateau. You can see here Bay of Bengal. This is Bay of Bengal. Bay of Bengal रो west right. Towards west is your Chota Nagpur Plateau. Okay. This is consist of several plateaus. It covered by your lava and terminates in the Rajmahal Hills. So तुम देखियो Chota Nagpur Plateau हैला terminates कोडी करछि राजमहल हिल्स मु छोटा नागपुर प्लेट्यू विषय किछि जिंस कहबी हैला सी दिस वन छोटा नागपुर प्लेट्यू हैला राजमहल हिल्स हैला दिस वन राजमहल हिल्स ओके टर्मिनेट राजमहल हिल्स कोडी राजमहल टर्मिनेट्स एटा परीक्षा पचरंती कोडी से टर्मिनेट करछि राजमहल हिल्स इज इन योर पर्टिकुलरली राजमहल हिल्स इज इन योर झारखंड ठीक है झारखंड छोटा नागपुर प्लेट्यू विषय लेख टिके छोटा नागपुर प्लेट्यू मु कहली छोटा नागपुर प्लेट्यू हैला छोटा नागपुर प्लेट्यू छोटा नागपुर प्लेट्यू कौन कहा जाए इट इज आल्सो लोकेटेड मेजरली इन झारखंड झारखंड स्टेट यदि देखिबो लोकेटेड छोटा नागपुर प्लेट्यू हैला मेजरली इन झारखंड also it shares its area with
वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ है मेजरली क्या संगे वेस्ट बंगाल, ओडिशा आउ छत्तीसगढ़ संगे तार एरिया शेयर कर थर्ड अर्थ कौन कर दिस इज also called as Ruhr of India, Ruhr of India, also called as Ruhr of India because of variety of mineral resources availability. Variety of mineral resources सेठी मिले से जो गेटा को कहा जाए कौन Ruhr of India. Ruhr is a place in Germany. है Ruhr is a place in Germany से जो ताको कहा जाए है particularly छोटा नागपुर प्लेट्यू रे बहुत सब variety. It is very rich. Okay. Then छोटा नागपुर प्लेट्यू को जदि मु नेबी ऊपर हैला तमरा किए हजारीबाग प्लेट्यू. दिस इज योर हजारीबाग प्लेट्यू छोटा नागपुर प्लेट्यू अपर पर्सन हजारीबाग प्लेट्यू and this is your particularly can say Ranchi plateau, छोटा नागपुर plateau है. So these are the major information जोटा कि तम परीक्षा point of view रे these are very important. छोटा नागपुर plateau विषय रे कौन सब वेराइटी आयरन ओर हो, एल्यूमिनियम हो, आयरन ओर हो कि बक्साइट हो कि कॉपर हो कि एल्यूमिनेट हो कि सिलिमेनाइट हो मैक्सिमम कि कोल मैक्सिमम तम ये छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया रे पाइबो. नेक्स्ट तापर थिला छोटा नागपुर प्रोडक्ट परे योर मेघालय प्लेट्यू. दिस इज एन आउटर पेनिनसुलर प्लेट्यू. पर्टिकुलर पचारे कौन कहा जाए आउटर पेनिनसुलर प्लेट्यू. कौन आउटर पेनिनसुलर प्लेट्यू द गारो खासी एंड जैंतिया स्लोप फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. आउटर पेनिनसुलर प्लेट्यू कौन मेघालय प्लेट्यू पर जदि म कहबी मेघालय प्लेट्यू जदि म कहबी जस्ट अगेन दिस इज this is your Meghalaya plateau. This is Garo, Khasi और Jaintia. This is your Garo, this is your Khasi, and this is your Jaintia. This is your Meghalaya plateau. This is your Meghalaya plateau. मेघालय प्लेट्यू है मेजर जो कि गारो खासी और जैंतिया मेजरली है एथर रहे मेघालय प्लेट्यू. जस्ट यू कैन सी डायग्राम रे भी तुम देखि परियो मेघालय प्लेट्यू. जस्ट लुक एट हियर दिस इज मेघालय गारो खासी और जैंतिया तीनटा. ओके देन सतपुरा रेंज वी कैन से. ओके आउटर पेनिनसुला कौन पे पर्टिकुलरली पेनिनसुला एटी तुम देखियो जदी हैला दिस इज जस्ट ए डायग्राम दिस इज बेटा हैला दिस इज पेनिनसुलर इंडिया. सी दिस वन दिस इज पेनिनसुलर इंडिया. दिस इज आई कैन से दिस इज वी कैन से दिस इज पेनिनसुलर इंडिया. पेनिनसुलर इंडिया रा एटा गोटे पार्ट. दिस इज एन आउटर एटी कनेक्शन टा गैप ही एटी गोटे हैला गंगा ब्रह्मपुत्र ये जो गैप है जियोलॉजिकल इवेंट रे से गैप रे गंगा ब्रह्मपुत्र आनी की पकाउछंती तंकर सेडिमेंट्स. ठीक अछि तो एई पार्टटा दिस इज योर गारो खासी जैंती. ए जो गैप टाला सेटा को मालदा गैप कहंती हैला जो गैपटा दिस इज योर मालदा गैप. दिस इज योर मालदा गैप. जियोलॉजिकल इवेंट रे पढ़ले एटा कहि परिबो मालदा गैप एठी दिस गैप से जो कोन हैला दिस इज एन आउटर पेनिनसुलर प्लेट्यू ताको कहा जाय. Okay. Next, the Satpura range. Satpura range lies between the Narmada and Tapi river. Narmada और Tapi river मझे की अच्छी your Satpura range. Okay. Dhupgarh
is 1350 meter is the highest peak in the vicinity of Panchamadi hill station. So देखियो एटी this is Narmada. So here it is Tapi. Thus I will make a diagram. This one. This is your Tapi river. Tapi is this one. Just see. This is your Tapi. Tapi again drain to your Arabian Sea. Satpura is lies here. This is your Satpura. This is your Satpura range. So Satpura range is in between Narmada and Tapi. This is your Satpura range. Satpura range, Dhupgarh. बेले पचारे कौन पचार थे क्वेश्चन टा दिस इज ऑलरेडी प्रीलिम्स रे पचार सारछि धूपगढ़ हला प्रीलिम्स रे पचार सारछि कोटा यार धूपगढ़ हला गोटे पिक हाईएस्ट पॉइंट कहार पंचमाड़ी हिल्स रे मन रख बहुत भला भाबे सातपुरा रेंज रो पंचमाड़ी हला तमरो कोन दैट इज पर्टिकुलरली पंचमाड़ी हिल स्टेशंस हला हाईएस्ट किंतु धूपगढ़ हला सबटु गोटे हाईएस्ट पॉइंट धूपगढ़ सेटा कोन दैट इज 1350 मीटर. Okay, and Satpura is also this is maximum lies in your Madhya Pradesh. Madhya Pradesh re mainly tamara lies karchi your Satpura range. In the eastern part again it is known as Maikal range. Maikal range kotha puni eti kahiba Maikal range koti aschi eastern part re gote ki achi tamara Maikal range. Okay, Maikal range jodi ki Mahanadi. This is your Maikal range I can say. Or better, this diagram re, this is your Maikal range. I can say this is part your Maikal range. This is your Maikal range. Maikal range के बाहर ची महानदी, नर्मदा and सोन. महानदी इटी बाहर ची Maikal range. This is your Mahanadi. ठीक है जी. This is your Narmada. आओ ऊपर बाहर चुकी है Son river. Son is a tributary of Ganga. है ना? Majorly मैंने बाहर चुकी Mahanadi, Narmada and Son. Majorly मैंने बाहर चुकी Mahanadi, Narmada and Son. Maikal range is a very important part, eastern part of Maikal range जो कि तमर तीनटा इंडिया रो तीनटा प्रमुख नदी एटू बाहर चंदी महानदी, नर्मदा एंड सोन. Next, the Deccan Plateau. Now come to your another, that is your Deccan Plateau. Deccan Plateau जानिबा कौन Deccan Plateau तमे एटी देखुछो particularly areas के better देखा Deccan Plateau तमे देखो it is lies in between Narmada ei part. This is part of your Deccan Plateau range. Just look at here. This is your Deccan Plateau, right? Deccan Plateau is this one majorly. So Deccan Plateau what? Deccan Plateau is a triangular in appearance, mainly covered by the thick basaltic lava. Jodi mu koi bhi thick basaltic lava, Deccan Plateau is also known as your black soils particularly. It is also Deccan Plateau is okay black soils, area of black soils. It mu koi bhi area of black soils covered by your thick basaltic lava. Thick basalt lava mainly covered करछि your Deccan Plateau को. It is drained by the Godavari, Bhima and Krishna Kaveri river mainly. Godavari, Krishna, Kaveri और सेमानकर total Godavari system जदि कहबी then your Krishna and Kaveri. ठीक अछि. Bhima हला तमरो कृष्णा रो गोटे tributary. Majorly, this is mainly Deccan Plateau. It is covered an area about 7 lakh square kilometers. So, it is covered mainly an area of
your 7 lakh square kilometer. Its elevation varies between 500 meter to 1000 meter. जब मैं कहबी 500 meter to 1000 meter तार elevation vary करछि. Okay, Deccan Plateau. It stretches in Madhya Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra and Tamil Nadu. ठीक अछि को जगह रे मेजरली मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. ओके मेजर हमें देखिबा एटी पुणी आ गोटे जिनस लिखुची एटी हला डेक्कन प्लेट्यू ऊपर कौन इंपोर्टेंट मेजर डेक्कन प्लेट्यू कौन रहिबो तमरो शॉर्ट नोट परीक्षा पे इंपोर्टेंट रहिबो कौन डेक्कन प्लेट्यू रे मेजर डेक्कन प्लेट्यू हला chiefly covered by black soils, black lava soils majorly. है लेकिन it is good for the cotton and sugarcane कल्टिवेशन. परीक्षा पे एकदम रेडीमेड दे दूची पढ़ी दबो है कल्टिवेशन कॉटन और सुगरकेन कल्टिवेशन मेजरली. नेक्स्ट थर्ड रे डेक्कन प्लेट्यू रे है गुड फॉर योर कॉटन एंड सुगरकेन कल्टिवेशन. देन मेज देखियो डेक्कन प्लेट्यू the Maharashtra state maybe the better the maximum black soil area of Deccan Plateau is covered by the state Maharashtra. है जब तुम देखियो डेक्कन ये मैक्सिमम एरिया की कवर करछि देन इट इज योर महाराष्ट्र. जस्ट यू कैन लुक हियर दिस इज योर महाराष्ट्र. महाराष्ट्र रो मैक्सिमम पर्सन्स जदि हम कहबी इट इज योर डेक्कन्स हला योर डेक्कन लावा सॉइल्स. डेक्कन लावा सॉइल्स हला मेजर पार्ट हियर हला महाराष्ट्र कवर करछि. देन third fourth ray in terms of percentage of black soil है डेक्कन लावा ब्लैक सॉइल टिके terms of percentage of Deccan lava soil in terms of your maximum percentage your Deccan lava's black soil area is covered by Telangana. So Telangana is the area where maximum percentage of Deccan lava black soil is covered. Deccan lava जब तुम कहबी maximum persons okay Telangana रे cover होछि.
Fifth, both metallic and non-metallic minerals are found here. Both metallic and non-metallic minerals are also found here, right? So these are the major points of Deccan lava plateau जोटा कि तुमको एग्जाम रे हेल्पफुल हबो. Okay, this is Deccan lava plateau रे तुम देखुछो मेजर को रिवर गोदावरी कृष्णा कावेरी तुम एटी पाउछो गोदावरी कृष्णा कावेरी they are majorly known for this one, right? Next हमें देखिबा the Sivasamudram falls of Kaveri river, the Gokka falls है Sivasamudram rivers है Sivasamudram falls Kaveri river ऊपर जोटा अछि Sivasamudram falls, the Gokka falls in Belgaum district रे तमर अछि तुम एटी भी देखि परिबो है Sivasamudram waterfalls है आउ कोडा कोडा देखिबो मैप रे देखला बेले तुम को पर्सन देखिबो these are the persons है पर्टिकुलरली तुम एटी कवर करि परिबो Sivasamudram falls, Gokka falls एटी देखिबो Sivasamudram कर्नाटक रे देखिबो Sivasamudram falls है आउ कावेरी रिवर ऊपर है then Gokka falls in Belgaum district रे धुआंधार falls near Jabalpur are the great tourist attractions. धुआंधार falls को कहा जाए जबलपुर रे है जो जदी जदी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट रो मैक्सिमम रेवेन्यू गोटे यार्न होची है दैट इज बिकॉज ऑफ द टूरिस्ट पाई दिस इज योर धुआंधार फॉल्स है धुआंधार फॉल्स जोटे के है ए मेजर टूरिस्ट attraction place tourist attraction place in Madhya Pradesh. धुआंधार फॉल्स जबलपुर है कोडी अछि दिस इज एन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है पर्टिकुलरली इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट एटा सो लेखिनिया जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ठीक अछि परीक्षा पे एगुडा सब तमर मेजर जिनसडा है सेमती तमरा शिवसमुद्रम फॉल्स शिवसमुद्रम वाटरफॉल्स इदिन कहबी हैला मैक्सिमम शिवसमुद्रम फॉल्स ऊपर एटी हम कहबी मेजर हाइड्रो पावर प्लांट इन कर्नाटका ठीक है शिवसमुद्रम फॉल्स ऊपर जब कहबी इट इज मेजर हाइड्रो पावर प्लांट इन कर्नाटका. देन सेकेंड रे आउ कौन कहि परिबा शिवसमुद्रम फॉल्स इट इज द ओल्डेस्ट एचपी इन इंडिया द ओल्डेस्ट लेकिन एगुडा सब वेरी इंपोर्टेंट द ओल्डेस्ट एचपी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर in India. Sivasamudram Falls is the oldest HEP in hydroelectric power in India. ठीक है जी आपको किए करते M Visvesvaraya. You know this one किए करते M Visvesvaraya. This is very important to know. Sivasamudram Falls है HEP है सेठी HEP जनरेट होची गोटे जिंस तुम कहबी गोटे जिंस तुम पढुछ ता ऊपर आ किसी जिंस जानि नियो so that it will help you out to resolve the questions. सपोज तुम शिवसमुद्रम वाटरफॉल खाली तुम मन रखले कोन शिवसमुद्रम वाटरफॉल्स एचपी किए करते हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट आज जब कह शिवसमुद्रम फॉल्स वाटरफॉल जब पाखापाखि 130 वर्ष 20 वर्ष पुराना है एचपी पावर किए करते एम विश्वेश्वरैया जहाँ तुम इंजीनियर्स डे सेलिब्रेशन होगा मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया भारत रत्न इज वन कौन भारत रत्न अवार्ड एम विश्वेश्वरैया इज मेजरली मेड है पर्टिकुलर किए शिवसमुद्रम एम जब तुम कह दिस एचपी जब तुम कह शिवसमुद्रम HEP was made by built by
है built by भारत रत्न highest award, highest civilian award, भारत रत्न अवॉर्डी विश्वेश्वरैया विश्वेश्वरैया है एम विश्वेश्वरैया मेनली बनते कोटा योर पर्टिकुलरली है योर शिव समुद्रम वाटरफॉल्स सो ये भाया जब तुम पढ़ पर्टिकुलर सपोज मुझे कहली गोटे चैप्टर तुम पढ़ुच है तुम कर्णाटक देखुच लेट्स से इफ यू आर स्टडीइंग द कर्णाटक तो कर्णाटक रे को रिवर जाइए को वाटरफॉल जाइए ये तुम कौन हम ये लास्ट मोमेंट तुम रिविजन कर भी तुमको हेल्पफुल रहा रिवाइज करने है जमी तुंगभद्रा तुंगभद्रा है मुझे तुमको ड्रेनेज सिस्टम क्लास भी नेबी से ठीक अच्छे ओके भल भाव रिवाइज कर पुणी नेक्स्ट टॉपिक रे हमें पढ़ा है आप रिमेनिंग जो तुम अच्छी फिजियोग्राफी से भी विल कंप्लीट इन ए रिवाइज मैनर पर्टिकुलरली जो जिन पढ़ाओ धीरे आटलास संगे पढ़ आई विल रेफर आटलास को प्रोवाइड करके तुम रेफर करके पढ़ो इट विल बी मोर हेल्प अबाउट ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू इंडिया रु कंटिन्यू पुणी देखिबा जदि हमें देखिबा वी हैव टिल हमें कवर करते डेक्कन प्लेट्यू पर्यंत डेक्कन प्लेट्यू रु नेक्स्ट विल गो फॉर दिस वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट अगेन वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट्स कहबी कि मोस्टली वेस्टर्न पर्सन्स ऑफ इंडिया है जदि हमें देखिबा कि वेस्टर्न पर्सन ऑफ इंडिया इट इज मेनली बाय योर दिस इज योर वेस्टर्न घाट ओके एंड योर दिस इज योर ईस्टर्न घाट this is your eastern ghat and western ghat right western ghat and this is your eastern ghat next देखिए the western ghats are also known as Sahyadris, we can say Sahyadris. Sahyadris are the known as your western ghat are stretching from the southern Gujarat and Khandes to Maharashtra in the north to Kanyakumari in the south. Okay, that is stretching from your southern Gujarat and Khandes of Maharashtra in north to Kanyakumari in the south. You can see here. This is Khandes. Maharashtra, Khandes of Maharashtra, this is your Khandes of Maharashtra, okay, Khandes of Maharashtra to the Kanyakumari till, that means, जब हम देखिए till Kanyakumari माने total, that is your southern point of our India's mainland, that is your Kanyakumari, you can write, this is your Kanyakumari, this is your Kanyakumari, this is Kanyakumari, till. This is your western ghat. Western ghat जदि हमें देखिबा कोन एटा मन रखो खंडेस ऑफ महाराष्ट्र दैट मींस गुजरात रो सदर्न गुजरात रो भी किछि सदर्न पर्सन भी तमरो वेस्टर्न घाट तमरो फॉल करछ सेतरे राइट नेक्स्ट कन्याकुमारी इन द साउथ द एवरेज एलिवेशन इज 1000 मीटर जदि देखिबा तार एवरेज एलिवेशन हैला 1000 मीटर राइट सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स के डोडा बेटा हैला वेस्टर्न घाट रो हाईएस्ट पीक के डोडा बेटा दैट इज 2637 मीटर अन्नाई मुडी 2695 मीटर मकृति दैट इज 2550 मीटर मकृति इज योर 2550 मीटर वाम्पादी सोला 2470 मीटर कालसुवाई 1646 मीटर आर सम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट रो एमाने हेले सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स द मेनी agile active rivers like Godavari Krishna and Kaveri are the sources of Western Ghat. Western Ghat ro major source भी तमरो किए Godavari, Krishna and Kaveri also, right? Important mountain passes and trade routes like okay. So mountain passes पूर्व मु पुनी कहबी कि major many rivers important rivers जदि तमे देखुछो हैला खाली तमरो एटी हैला तमरो जेमती this is your you can say this is your this is your Godavari, I say Godavari, this is your
है जो पट को मु दौची चिन्ह कृष्णा एपट को आसी देन दिस इज योर कावेरी है दिस इज योर पल्लार मेनी इंपोर्टेंट रिवर्स एंड दिस इज योर जमती है वैगई मेनी इंपोर्टेंट रिवर्स जोटा कि तुम वेस्टर्न घाट रू बाहर के मैंने पढ़ी कौटी है योर कृष्णा कावेरी पल्लार वैगई गोदावरी मेजर तुम बाहर एपट ईस्टर्न गोदावरी इज नॉट फ्रॉम योर वेस्टर्न घाट रिमेंबर दिस वन है गोदावरी वेस्टर्न घाट रू बाहर गोदावरी बाहर कौटू माइकाल रेंज रू गोदावरी बाहर यहाँ इट हैज टू बी क्लियर राइट तो ये देखिए अन्नाई मुड्डी तुम जो ये आटलास भी देखुच यू कैन गेट इट क्लियर दैट अन्नाई मुड्डी कालसुबाई है अन्नाई मुड्डी कालसुबाई मान भी रोचंदी एठी यू कैन सी हियर सी दिस इज योर अन्नाई मुड्डी एठी है नीलगिरी है अन्नाई मुड्डी नीलगिरी है दीज आर द थिंग्स कवरिंग हियर अन्नाई मुड्डी हियर राइट अन्नाई मुड्डी so दोडा बेटा जोटा अच्छी दोडा गोरा is the highest peak of Nilgiri you can say दोडा बेटा is the highest peak of your Nilgiri अन्नाई मुड्डी है अन्नाई मुड्डी is the highest peak of your western घाट इटी हम लिख परियो कौन है अन्नाई मुड्डी है अन्नाई मुड्डी हम लिखि दूची अन्नाई मुड्डी is the highest peak of Western Ghat and the Annamalai range and Annamalai range Western Ghat and Annamalai range the time. Then Doda Beta, you can say Doda Beta is the highest peak of Nilgiri mountain. नीलगिरी दोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ योर नीलगिरी नीलगिरी रहा दोडा बेटा आउ एटा मन रख ये क्वेश्चन पचारे अन्नाई मुड्डी है भूल भी दोदा बेटा मार दोदा बेटा नीलगिरी ओवरऑल है अन्नाई मुड्डी वेस्टर्न घाट रो एंड अन्नामलाई रेंज रो ओके क्लियर नेक्स्ट important mountain passes and trade routes like your Thal Ghat, Bor Ghat and Pal Ghat are existed. Okay, here. अच्छा, एटी मु खाली जस्ट कहूँ important sources एटी मु कहली Ajay rivers, Godavari, Krishna are sources Western Ghat. Godavari तमरा बाहर इन Western Ghat रू, किंतु Western Ghat रू many numerous stream joins Godavari. Okay, एटा हला major. हला एटी मु कहबी कौन? हला many नो जस्ट एट मु करेक्ट कर गोदावरी गोदावरी तुम बाहर माने दैट इज एटा जो तुम कहबी हियर ओके जस्ट मेकिंग करेक्शंस कि गोदावरी तुम जो बाहर गोदावरी है गोदावरी मेजरली तुम बाहर एठू जस्ट मुझे करेक्शन कर दउछु गोदावरी तुम मेजरली बाहर एटा मु जोटा कहितली सेटा भूल रे नर्मदा कहितली एटा हला तुम गोदावरी गोदावरी तुम बाहर एठी त्रयंबकेश्वर ठीक अछि गोदावरी जो तुम देखिबो है दिस इज एटा जो नहीं एटा भूल रे एटा गोदावरी नो दिस इज योर नर्मदा है गोदावरी दिस इज एटा मु कहि दउ चौथरे जस्ट माउथ रे कहि दउ छी दिस इज योर गोदावरी दिस इज कृष्णा एंड दिस इज योर कावेरी है गोदावरी कृष्णा कावेरी और एठी हला तमरा नर्मदा these are the things है
तो एटी जब तुम देखुच गोदावरी तुम बाहर कौटू एटी है तुम पर्टिकुलाली त्रयंबकेश्वर बाहर गोदावरी है त्रयंबकेश्वर नासिक पाखर गोदावरी बाहर है जोटा कि आम पढ़ा ड्रेनेज सिस्टम बड़े पढ़ा बट गोदावरी को न्यूमरस स्ट्रीम से पानी जोगाऊँ से मुझे कही भूल कही नर्मदा जोटा कि नर्मदा बाहर माइकाल रेंज है ठीक अच्छे क्लीयर हे देन नेक्स्ट जीवा आम माउंटेन पासेस जमी तुम माउंटेन पासेस कौटी देखते आम पढ़ते ग्रेटर हिमालय जमी माउंटेन पासेस अच्छी सेमती एक्जाक्टली वेस्टर्न घाट भी माउंटेन पासेस अच्छी देर आर है माउंटेन पासेस इन योर वेस्टर्न घाट है जमती थालघाट पास कनेक्ट्स नासिक टू मुंबई ठीक अच्छे मुझे कौन कहली थालघाट पास दैट कनेक्ट्स नासिक टू मुंबई ठीक अच्छे ये मुझे गोटे डायग्राम थालघाट नासिक टू मुंबई दिस इज नासिक टू मुंबई थालघाट पास जोटा रोची दैट इज कनेक्ट टू योर नासिक टू मुंबई this is your थालघाट है ना दिस इज योर थालघाट है नासिक टू मुंबई सेमती बोरघाट कनेक्ट्स पुणे मुंबई एंड पालघाट कनेक्ट्स तमिलनाडु एंड केरला है भोरघाट तुम देखुच ये भोरघाट जब मुझे बनैबी ये है भोरघाट पास ठीक अच्छे दिस इज योर भोरघाट पास दिस पुणे है एंड एटा को जब नेबी दिस इज योर भोरघाट दिस इज योर भोरघाट आउ एठी नब तुम दैट इज योर केरला तमिलनाडु दैट इज योर पालघाट है दिस इज योर तमिलनाडु एंड एठी है केरला दिस इज भोरघाट तो थालघाट ओके थालघाट बोरघाट एंड पालघाट दिस आर द थ्री जोटा कि तुम कनेक्ट कर ओके तो माउंटेन पासेस एठी भी हमर वेस्टर्न घाट रे हमें पाइले दिस आर द मेजर एगुडा परीक्षा पे दिस इज इंपोर्टेंट थालघाट बोरघाट तुमको पचारे कोटा कोठी कनेक्ट करूची नासिक मुंबई ओके आउ मुंबई पुणे तमिलनाडु जोटा कि तुमको कनेक्ट करूची एतरे कि तमिलनाडु केरला हैला एटा प्रीलिम्स पे दिस आर द इंपोर्टेंट हैला प्रीलिम्स क्वेश्चंस पे दिस आर कवर्ड राइट नेक्स्ट विल कम टू देन पुणी आसवा ईस्टर्न घाट को है वेस्टर्न घाट सरला देन ईस्टर्न घाट जब देखा ईस्टर्न घाट को पटे आसुची मेजरली ईस्टर्न कोस्ट है ईस्टर्न पार्ट ऑफ पोर्शंस ऑफ इंडिया ये देखिए कौन द ईस्टर्न घाट्स आर द डिसकंटिन्यूअस है दे आर द डिसकंटिन्यूअस एंड लो हिल्स पर्टिकुलरली दे आर अनलाइक योर वेस्टर्न घाट से माने कंटिन्यूअस नुहंती दे आर डिसकंटिन्यूअस माने भांगी भांगी अच्छा एंड द लो हिल्स इट रन्स पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट है ईस्टर्न कोस्ट को से पैरेलल रन होचंदी द इट्स एवरेज एलिवेशन इज 760 मीटर पाखापाखी है पाखापाखी 760 मीटर द महेंद्रगिरी इज द सेकंड हाईएस्ट peak that is 1501 located in Odisha after Devamali है 1672 देवमाली है तुम्हारा हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट तापर आसछि तुमरा महेंद्रगिरी द सेकंड हाईएस्ट ठीक अछि देवमाली is the highest peak है देवमाली is the highest peak then महेंद्रगिरी is the second highest peak है किए महेंद्रगिरी राइट देवमाली पर देवमाली है कोठी देवमाली is located in your Koraput district है देवमाली is in Koraput district where महेंद्रगिरी है महेंद्रगिरी जति कोठी it is your गंजाम है महेंद्रगिरी है तुम गंजाम रे आउ ये है तुम कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे दिस हैव टू रिमेंबर ठीक अछि एटा मन रख ठीक अछि सेमती ओडिसा रे हला आ गुटे अछि नियमगिरी भी अछि जोडा कि म कहि दोछि नियमगिरी एटा लिखि नियो नियमगिरी कोठी नियमगिरी माउंटेन्स
that is in the Balangir हैला बलांगीर की अछि योर नियमगिरी माउंटेन्स हला तमरो बलांगीर राइट सेमती नॉर्थ ऑफ द महानदी हला इट हैज सेवरल पीक्स above 1000 meter north of the mahanadi mu कहली it is the several peaks that is above 1000 meter in height like the Meghasini, the Thakurani, the Gandhamardan and the Malaigiri हला Meghasini, Thakurani, Gandhamardan and Malaigiri. The Nilgiris कथा यदि mu कहबी हला is the blue mountain एटा तमे बुझिलो कि महानदी has several peaks जोतरा कि तमे असला किए हला नॉर्थ ऑफ द महानदी रो नॉर्थ ऊपर को तमे यदि देखिबो एटी ओडिसा रो मैप रे एटी क्लियरली पूरा देखै छी बहुत जिंस हला this you can see this is the map of Odisha जोतरा कि तमे क्लियरली देखिछो बहुत पिक्चर रे हला that is your Meghasini, Thakurani, Gandhamardan and Malaigiri. These are the main, right? Same thing, the Nilgiri is also known as your blue mountain, is the joining of the western Ghat and the eastern Ghat. Nilgiri ke kaun kaheba? It is also the joining of the western Ghat and eastern Ghat. Important hills like Annamalai, Cardamom and the Palni hills are the part. Annamalai, Cardamom and the Palni hills, they are the part. ठीक है Annamalai, Cardamom and the Palni hills, they are the part of your particularly we can say eastern Ghat. Eastern Ghat रो जति तमे देखिबो various states रे अलगा अलगा प्रकार रो हला समस्त अलगा अलगा अच्छा केमती मु तुमको सजेस्ट करबी हला एथिरे तमे सब देखिनो जेमती एठी अछि पालकोंडा वेलिकोंडा सेवरय जाबादी हला सो पर्टिकुलरली हला नीलगिरी रो जदि मु कहबी ईस्टर्न घाट रो हला इट जदि मु कहबी ईस्टर्न घाट हला ईस्टर्न घाट हला has different ranges, different mountain ranges in different states hela jemti mu kahili that is your andhra pradesh alga then second your hela Tamil Nadu hela major Andhra Pradesh Tamil Nadu हला जंदी फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश रे ईस्टर्न घाट रो की के आस्ती देखो टिके इतरे देखिबा देखो नल्लामल्ला हिल्स जदि मु लिखिबे कि आंध्र प्रदेश रे नल्लामल्ला हिल्स एटा सब परीक्षा रे पचारिबे नल्लामल्ला हिल्स हला नल्लामल्ला हिल्स देन योर वेलिकोंडा नल्लामल्ला वेलिकोंडा then एरामल्ला हला एरामल्ला then your पालकोंडा हला एरामल्ला and पालकोंडा these are the asla तमरो आंध्र प्रदेश रे हला then also Seshachalam hela Seshachalam मन रखो Seshachalam hills then Javadi Sebroy Palni hela Palni hills Javadi Sebroy Palni hills hela then your Pachai Malai hela major
एमाने सब कार ठीक अच्छे है तमिलनाडु एंड ऑल्सो योर नीलगिरी है नीलगिरी तो ये मैंने पर्टिकुलरली ईस्टर्न घाट पार्ट पार्ट एगुड़ा सब तुमको मन रखा ईस्टर्न घाट दे आर द पार्ट ऑफ योर ईस्टर्न घाट दे कवरिंग ओके योर आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु परीक्षा तुम एग्जाम पचारे यू हैव टू रिमेंबर दिस वंस जमी तुम ओडिशा रे कहली सेमती आंध्र प्रदेश आउ तमिलनाडु नेक्स्ट देखिबा नीलगिरी के भी ब्लू माउंटेन कह जाए कहीं से गोटे फुल फुटे नीलकुंजरी है नीलकुंजरी फुल ब्लू फुल जोटा कि तुम इवन इफ एवरी 12 years रे सेटा तुम फुटे एंड इट इज सो ब्यूटीफुल ओके से जो नाटा ब्लू माउंटेन्स है वेस्टर्न घाट एंड इंपोर्टेंट लाइक योर अन्नामलाई कार्डमम एंड पाली नेक्स्ट द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया है सो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट आम कवर कले नेक्स्ट द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया ग्रेट प्लेन्स कथा तुम कहि ग्रेट प्लेन्स पर्टिकुलरली इज जानिबा कौन द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया और ताको कौन कह जाए इंडो गैंजेटिक प्लेन ताको कह जाए इंडो गैंजेटिक प्लेन भी कह जाए ताको ओके द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया इज क्यूमुलेटिव एक्यूमुलेशन ऑफ द सेडिमेंट्स ऑफ इंडस गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स है कार इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र क्यूमुलेटिव जो सेडिमेंट्स ताको नेकी तमरो इंडो गैंजेटिक प्लेन तैयारी होची रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज है आउ सेमानकर ट्रिब्यूटरीज को नेकी in front of the Himalayas lies the Great Plains of India which spread of an area of 7.7 lakh square kilometer ठीक अछि जदि आमे देखिबा फ्लैप हिमालय ऊपर there is an huge area that is called your 7.7 lakh square kilometer it is covered by your Indo-Gangetic plains right okay that is mainly your Indus Ganga and Brahmaputra river तीनटा Indus Ganga and Brahmaputra river हला तीनटा को नेकी मेजर होची that include कौन सिंध plains पंजाब हरियाणा plains कोटा मेजरली सिंध plain पंजाब plain हरियाणा plain पंजाब हरियाणा plain the desert plains of Rajasthan the Ganga plains of UP Bihar and West Bengal and the Brahmaputra valleys of Assam एते बड़ एरिया लेके तुम तुम किए द ग्रेट प्लेन्स जो कौटू तुम पंजाब प्लेन दिस इज देन अपर गंगा मिडिल गंगा दिस इज गंगा लोअर गंगा प्लेन द ब्रह्मपुत्र टोटल जदि मुझे भी नियर अबाउट 2400 किलोमीटर है तुम ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया एटा मन रख ठीक अच्छे द ग्रेट प्लेन्स एक्सटेंड्स नियर अबाउट जदि आम मिसेबा पाकिस्तान पटवार पाखरु 3200 kilometer it is 3200 kilometer between the mouths of Ganga including the course of Brahmaputra and the Indus along the foothills of the mountains with a width varying between 150 to 300 kilometer hala there is a width varying between 150 to 300 kilometer right 150 to 300 kilometer the region width that also varies from 150 to 300 kilometer माने जदि देखिबो गंगार तंकर मेजर विड्थ ता हमरो ई मिडिल पर्सन ने बहुत अधिक आइ है मेजर विड्थ इज हियर विड्थ इज मोर हियर ला विड्थ मोर हियर और आई कैन से विड्थ मैक्सिमम हियर ला मैक्सिमम हियर आउ लो अछि 80 दिस इज लो ला दिस इज लो एंड 80 हला तमरो मैक्सिमम ठीक अच्छे लिभे देले बेटर रहेगा ये देखा होनी जस्ट लिख कौन विड्थ इज मैक्सिमम एट सेंटर width is minimum here maximum or minimum right
तो विड्थ वैरी करछि 150 रु 300 किलोमीटर भितर विड्थ तमरो वैरी करछि ओके जनरली जदि मु कहबी तामाने हम जानले कोठू एठू नै कि इंडस रु नै कि टिल हला टिल इंडस ग्रेट प्लेन टा हमर इंडस गंगा आउ ब्रह्मपुत्र हला ए तीनटा को नै कि तमरो रहउची के प्लेन टा ग्रेट प्लेन्स तमरो रहउची कोन इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनटा को नै कि तमरो रहउची ग्रेट प्लेन्स टा मेजरली हला तो इट देखले कोन जनरली द डिपोजिटेड ओल्ड एलुवियम जदि हम देखिबा कोन ए प्लेन्स रे ओल्ड एलुवियम को कोन कहउची डिपोजिटेड ओल्ड एलुवियम इज नोन एज योर भांगर हला ओल्ड एलुवियम को भांगर कहउची वेयर एज द न्यू एलुवियम is known as your खद्दर हला ओल्ड टा को कहउची भांगर और न्यू टा को कहउची your खद्दर however भांगर्स are formed at offland area जदि हम देखिबा हला भांगर्स गुडा फॉर्मेशन होचनी तमरो ऑफलैंड एरिया रे ओके माने formed at the offland माने अपर ठीक अछि where having calcareous formation calcareous माने तमरो कैल्शियम सिदरे मेजर कंसंट्रेशन इज योर कैल्शियम हला calcareous formations means major concentration is your calcium called conker and the khadar lowland areas mostly along the flood plains and river banks flood plains और river banks रे majorly माने अछन हला कोड खद्दर खद्दर ला न्यू alluvium खद्दर is main your new alluvium न्यू alluvium को कौन कह जाए योर खद्दर ओल्ड alluvium है हमारा भांगर है देन धायास आर द फीचर्स ऑफ द फ्लड प्लेन धायास कौन कह जाए दे आर द फीचर्स ऑफ योर फ्लड प्लेन व्हेन खद्दर alluvium is cut or broken by the river courses the new खद्दर belt is known as the wetlands जेमति फॉर एग्जांपल अच्छा या पूर्व मु एतिक तम बुझियला खद्दर जोटी जेमति बढ़ी आसिला बढ़ी पानी बॉडी छाड़ी गला नदीरे हला फ्लड छाड़ी गला तापर जो तमरो डिपोजिशन हला जो alluvium और alluvials सेगुडा हला हमरो माने सेडिमेंट सेगुडा हला तम कह जे खद्दर भांगर माने जो alluvial सॉइल गुडा बहुत पूर्वरु डिपोजिट हेछि हला सेगुडा कह जे तमरो योर खद्दर ए सॉरी भांगर जेमति कि फॉर एग्जांपल मु कहबी सतलुज ऊपर सतलुज बीज रिवर तमरो पंजाब से माने बहुत पूर्वरु सेठी डिपोजिट कर रखछन जेमति फॉर एग्जांपल बरेली आगरा हला बरेली रे तमरो गंगा आसला और धर्म कहली सतलुज और बीज रहले तमरो पंजाब रे हला सेटा हला तमरो भांगर्स ओके नाउ कम्स टू हियर दैट धायास आर द फीचर्स ऑफ द फ्लड प्लेन रे एई सब टर्मिनोलॉजी तुमको पचारिबे कोन धायास पर्टिकुलरली हला धायास आर द फीचर्स ऑफ द फ्लड प्लेन when khadar alluvium is cut or broken by the river courses hela river course ki hela khadar alluvium broken by river courses the new khadar belt is known as hela wetlands then for example mu kahili chambal hela chambal river ठीक अछि your creates gully erosion एगुडा को ऊपर बढ़े कौन करिवो when it मतलब आगु के बढ़िवो it कट करिवो कौन gully erosion forms creates gully erosion in Chambal river creates gully erosion in Vindhyas Madhya Pradesh Vindhyas mountain Madhya Pradesh MP then the chose kata कहली chose are the features of the intensive gullying erosion chose जब को आबो they are the intensive gully erosion the almost similar figure are marked by Yamuna Chambal course hela similar figure is known as by your Yamuna Chambal course known as the badlands so badland topography जदि कहबा Yamuna Chambal कोठी that is your Chambal river mainly हला at lower reach Chambal river हला lower reach रे देखा जाए ठीक अछि then Bhabbar and Tarai belts which are very well
well noticed or conspicuous at Uttar Pradesh areas है उत्तर प्रदेश एरिया रे क्या पर्टिकुलर तमर देखा जाए योर भब्बर एंड तराई जानिबा कोन भब्बर और तराई काहा को दिस आर वेरी इंपोर्टेंट मन रखो मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन से पचरा होची भब्बर तराई रो कोन है भब्बर जंत मु कहबी एई पार्ट को आसी पछरे भब्बर आर फॉर्मड अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक्स माने जदि एटी बनौची ठीक अछि जस्ट शिवालिक्स माने तमर कोठी हला दिस इज शिवालिक्स पर्टिकुलरली ए पर्टिकुलर एरिया दिस इज शिवालिक्स हला भाबर तमर हला ई जगह मेनली फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स दिस इज द भाबर एरिया माने उत्तराखंड पहले उत्तराखंड एरिया इज योर भाबर ठीक अछि उत्तराखंड एरिया रे दिस इज भाबर तराई particularly this is Nepal this is Nepal रे तारा एरिया है नेपाल तारा एरिया में आसी भब्बर भब्बर रे कोन हुए एटी मेनी हिमालयन स्ट्रीम्स में यदि कहबी मेनी हिमालयन स्ट्रीम्स एटी माने फॉर एग्जांपल हरिद्वार कथा कहली मेनी हिमालयन स्ट्रीम इधर एटी डिसअपियर हो जाते अगेन द रीएमर्ज इन तारा एरिया. Let us know Bhabbar are formed along the foothills of the Shiwaliks and since are the highly porous and mainly Himalayan streams disappear here. Mainly कौन हुए Himalayan streams are majorly disappear here. Okay, at Tarai region of the re-emergence of the stream पुनी कौन हुए जोड़ा जोड़ा disappear हो जाती पुनी they re-emerge these streams here in the Tarai areas. And basically जेतु स्ट्रीम्स गुड़ा रीइमर्ज होते कौन हुए स्वाम्पी एरिया माने दलदल पंकुआ एरिया सब देखा जाए स्वाम्पी स्वाम्पी मींस ड्रेनेज सिस्टम इज वेरी पुअर जो स्ट्रीम्स गुड़ा ता माने एटी मु कहबी इफ आई टेक द एग्जांपल एटी जो डायग्राम बनेले हरिद्वार पाखरे न्यूमरस स्ट्रीम्स हला एटी कौन लिखली स्ट्रीम्स आर disappeared here. Streams are disappeared here and emerge again in Tarai area. है जोटा डिसअपियर हेले अगेन एमर्ज हेले इन Tarai एरिया. ठीक अछि तो स्ट्रीम्स जो माने डिसअपियर हेले अगेन से माने emerge in Tarai area. Okay, so this is the thing. Okay, and because of that region chada hela swampy area hela dal pankwa. Then likewise duars are the depositional alluvial features of Assam in Brahmaputra river. Duars mane Brahmaputra river pakar they are also the depositional features of your hela Assam. Duars same thing. अच्छा द्वार पर तापर पुणी लिखिबा भूर भूर कथा कहली इट इज एन एओलियन डिपोजिशन जदि तमे जीवो पंजाब आउ हला पंजाब पाखरे दिस भूर्स आर एओलियन डिपोजिशन पंजाब हरियाणा आउ माने साउथ वेस्ट हरियाणा जोटा कि तमरो राजस्थान पाखर सटीची हला मोस्टली हरियाणा आउ राजस्थान भूर आर द डिपोजिशनल टोपोग्राफिकल फीचर्स ओके यूजुअली फॉर्म्स ए बेल्ट ऑफ अंडुलेटिंग सैंड ओके जनरली कौन करंदी दे फॉर्म द बेल्ट्स ऑफ अंडुलेटिंग सैंड at upper Doab and upperland areas of eastern bank of Ganga. हला गंगा रे ईस्टर्न बैंक रे से माने मेजरली सिटी फॉर्म करंती राइट ईस्टर्न बैंक गंगा रे ईस्टर्न बैंक रे से माने मेजरली फॉर्म करंती जोटा कि तमे पाइबो योर स्टेट्स ऑफ योर हरियाणा पंजाब ओके से स्टेट्स रे पाइबो प्लस एठी भी तमे पाइबो मोरादाबाद यूपी रे मोरादाबाद रे भी तमे से जिंस मोरादाबाद बरेली है ना सही जगह भी तमे पाइबो दिस भूर एरिया राइट नेक्स्ट देखिबा लाइकवाइज सेम थिंग जेमते हमर डिपोजिशन देखि तमे भाबर ताराई सेम थिंग एग्जैक्टली सेम जिंस दुआर्स भी तमे पाइबो दुआर्स कोठी दुआर्स आर द डिपोजिशनल alluvial features of Assam's Brahmaputra river
आसाम रो ब्रह्मपुत्र रिवर रे भी डुआर्स भी तमे सेम डिपोजिशन पाइबो तमने देखो सेम जिनसटा सब जगह अलग अलग ना डुआर्स हला तमर कोठी ब्रह्मपुत्र रे सेम डिपोजिशनल फीचर दिस इज आल्सो ए डिपोजिशनल फीचर्स okay same thing the Kerala plains the backwaters of 𝐤𝐄𝐈𝐀 are the shallow lagoons or the inlets of the sea hela jodi mu koibi the Kerala plains the backwaters or the 𝐤𝐄𝐈𝐀 are the shallow lagoons hela they are the shallow lagoons basically or the inlets of the sea basically they are the inlets of the sea shallow lagoons or the inlets of the sea Kerala backwaters जदि मैं कहबी Kerala backwaters these are the backwaters of Kerala जदि तमे देखिबो these are the backwaters of Kerala it is माने पस जांदी हैला these are the backwaters हैला 𝐤𝐈𝐀 एई जगह जोटा देखा हुए that is called your 𝐤𝐈𝐀 हैला 𝐤𝐈𝐀 it is called as your 𝐤𝐈𝐀 ठीक है बैकवाटर को आ जाबे 𝐤𝐈𝐀 सो एठी तमे जानलो एठी हैला तमर कोठी ब्रह्मपुत्र ताने एठी मो डायग्राम रे करछि डुआर्स आर हियर हैला पाइलो एठी तमे पाइलो हैला तराई आउ एपटे पाइलो तमरो भब्बर ओके आउ एपटे रीजन तमे पाइलो गंगार भूर एपटे रीजन तमे भूर पाइलो ठीक अछि सो दीज आर द थिंग्स जोटा कि पाइलो दुआर भब्बर ओके भब्बर देन तराई भूर and 𝐤𝐈𝐀 these are the main places that you got this one right next we will come to the coastal plains हैला को जगह रे को plains अछि coastal plains of India जेमती coastal plains को कहै छै कोन हैला कोस्टल प्लेन्स मेजरली एटी बुझौछि हैला ए डायग्राम रे बहुत जिंस अछि इंडिया रे कोस्टल प्लेन ता हमरो दुईटा मेनली जोटा कि एटी कहबो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मन रखो हैला दुईटा गोटे हैला दिस पार्ट इज योर मेनली योर हैला वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न coastal plains how एपटे जदि देखिबो दिस इज योर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हैला गोटे हला वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आ गोटे हला ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स अच्छा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रे की ऑब्जेक्टिव लिखिबा जदि मैं कहबी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की आछि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रे हैला इट कंप्राइजेस हैला के कच्छ प्लेन्स लिखि दउछि काठियावाड़ प्लेन्स इट लिखिने हैला कच्छ प्लेन्स काठियावाड़ प्लेन्स ऑफ गुजरात हैला कच्छ प्लेन्स एंड काठियावाड़ प्लेन्स ऑफ गुजरात थर्ड रे दैट इज योर कोंकण प्लेन्स कहली कोटा कोंकण प्लेन्स of covering both Maharashtra plus Goa ditanga fourth ray it is Kannadi plains Kannadi plain Kara Karnataka fifth Malabar plains
coastal plains है Malabar plains is mainly your Kerala. So एटी आम से जिन कवर कले है कोंकण मालाबार और कन्नड़ मझे कन्नड़ माने मेजरली कर्नाटका इज मेजरली योर कम्स अंडर दैट वन राइट. ओके मालाबार प्लेन्स ये तुम देखुच मालाबार प्लेन्स है तुम मेंटेनली केरला उपरे. तो कोस्टल प्लेन्स जो देखा कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरो बेसिकली से नैरो है बहुत नैरो. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर बेसिकली they are narrow. You can say western coastal plains they are comparison है लिखि परिवा है they are narrow है and है narrow and their width and they run parallel to the coastline. ठीक है they run parallel to the coastline. Same thing मैं देखुची eastern coastal plain eastern coastal plains ये देखो सेम थिंग eastern coastal plain ने क्या आछी सेम थिंग उत्कल plain northern Sircar and Coromandel coast है मेजर मेजर किए खाली मैं क्रक्स कह दूची किए उत्कल plains you can say it again it comprises Utkal plains northern Sircars then Coromandel plains है उत्कल प्लेन से की क्या उसकी मेनली उत्कल प्लेन रे एटी बोथ टिल है जदि नेबी उत्कल प्लेन से तमरा एटा भी कवर रोची उत्कल रे है तमरा टिल हुगली रु नेकी हुगली ब्राह्मणी महानदी ऋषिकुल्या मन रख ये सब लिखी नव टिल टू ऋषिकुल्या है उत्कल प्लेन्स रे माने आछंदी नॉर्दर्न सिरकास रे तमर आसी द एरिया बिटवीन महानदी एंड गोदावरी right. Coromandel plains include from to south of particularly Coromandel plains जो तुम ये देखुचो है this is your south of Godavari to till tip of Kanyakumari है गोदावरी कृष्णा Coromandel plain रोचे तमरो northern Sircars till Godavari पर्यंत ओके कैन राइट मैप रे भी तुम देखि परिबो हला एटी तुम देखि परिबो टिल दिस इज क्लियरली जेतले जो भी जिंस पढु छ मैप को रेफरेंस नियो हला मैप को रेफरेंस नले तुमरो राइबो हला गोदावरी पर्यंत आछी तुमरो नॉर्दर्न सिरकार्स रा हला नॉर्दर्न सिरकार्स मन रखो से गोदावरी पर्यंत देन एटू आछी कोटू साउथ ऑफ गोदावरी हला साउथ ऑफ गोदावरी माने नॉर्थ ऑफ कृष्णा साउथ ऑफ गोदावरी टू टिल कन्याकुमारी है टिल कन्याकुमारी टीम यहाँ तुम करमंडल कोस्ट टोटाली तुम यहाँ आस ठीक अच्छे. सो उत्कल प्लेन्स नॉर्दर्न सिरकार्स आउ करमंडल प्लेन्स तुम कवर कल मेजरली दे आर कवरिंग ओके मेजर पार्ट. सो ये तुम देख लो दिस डायग्राम रे क्लियर नॉर्दर्न सिरकार्स उत्कल प्लेन्स जोटा कि तुम हुगली रू नहीं मात्र कहूँ हुगली सुवर्णरेखा ब्राह्मणी महानदी नहीं ऋषिकुल्या पर्यंत उत्कल. नॉर्दर्न सिरकार्स है तुम कौटी है पर्टिकुलरली महानदी नहीं गोदावरी
महानदी नहीं गोदावरी आउ देन करमंडल कोस्टल साउथ ऑफ गोदावरी नहीं टिल तमरो एपर्यंत एंड एठी आ गोटे कोन लिखिबा हमें माने कन्याकुमारी टिप पर्यंत दिस इज कन्याकुमारी और हला एठी आ गोटे कोन लाइन लिखि परिबी द ईस्टर्न coastal plains are broader and wider than the broader and wider than the western coastal plains. Okay, broader and wider than the western coastal plains, right? Okay, so this is all about जोटा कि western coastal plain और eastern coastal plain विषय तमे देखिलो हैला western coastal plain और eastern coastal plains they are significant एटी जदि तमे देखुचो हैला numerous ports are there जेमति तमे एटी हल्दिया कोलकाता पोर्ट हैला सेमती पारादीप धामरा काकीनाडा हैला तुतिकोरिन हैला देन चेन्नई एन्नोर एपट रही गला हैला एटी मु लिखि दूची को पोर्ट को पटे आछंदी जेमती एटी तमे देखिलो नंबर ऑफ पोर्ट्स रे की आछे एटी तमरो पोर्ट्स की पोर्ट्स एट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स छोटे मु लिखिली पोर्ट्स को पोर्ट्स एट द रेट ईस्टर्न कोस्ट मु लिखिली पोर्ट्स एट द रेट ईस्टर्न कोस्ट की रोचंदी आछंदी तमरो हल्दिया कोलकाता पारादीप है पारादीप पूर्व तुम लिखियो कि धामरा देन योर कम्स योर धामरा पारादीप देन वाइजाग काकीनाडा एन्नोर चेन्नई आउट किए तुतिकोरिन है तुतिकोरिन एन्नोर चेन्नई तुतिकोरिन एटा हला ईस्टर्न कोस्ट रे वेस्टर्न कोस्ट रे मेजर की पोर्ट्स एट द रेट है वेस्टर्न कोस्ट है ये किए आसला कांडला जामनगर कांडला जामनगर देन पोरबंदर देन अदानी है पोरबंदर पर लिखुचु देन अदानी देन बहारुच मुंद्रा दहेज सब गुजरात रे दीज आर ऑल इन गुजरात दे आर ऑल इन गुजरात देन एपटे आसला जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई मैजागन डॉक अगेन एटा है महाराष्ट्र मार्मागांव गोवा है गोवा देन ये लिखि दूची देन कर्नाटक रे की कहबो कर्नाटक रे करावार आउ मैंगलोर मैं दीटा हले तमरो कर्नाटक रे आउ हियर केरला रे कोझिकोड
Kochi, Kollam. These both are in Kerala. Like Kozhikode, Kochi, Kollam, माने सब हेले केरला. So these are the major important ports जोटा कि तमे देखुछ mostly in the western coast और eastern coastal plain रे तमर आसला है माने प्रायतः these ports are your international ports basically. These ports are basically your international ports. Remember this one है basically international ports और एठी भी जेंति एठी हमर newly develop हला your धामरा port है सेमती पारादीप वाइजाग काकीनाड एन्नोर चेन्नई है चेन्नई एटा सब सीरियली नॉर्थ टू साउथ तुतिकोरी है एटी जदि मु कहबी हल्दिया और कोलकाता एमान हेले वेस्ट बंगाल रे धामरा और पारादीप है पारादीप हेले तमरो ओडिशा रे देन वाइजाग काकीनाडा इज योर आंध्रा ठीक अच्छे एन्नोर चेन्नई आउ तुतिकोरिन एमान हेले तमिलनाडु. दिस इज आल्सो तमिलनाडु रे ये भी आसला तमर तमिलनाडु हैला मेजरली माने कवर कर. सो दिस इज ऑल अबाउट इंपोर्टेंट योर कोस्टल प्लेन्स जोटा जानलो आउ तार पूरा डिफरेंशिएशंस तमे एटी देखुछो हैला ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ठीक अछि हैला बहुत सारा इथर तमे पाइबो इवन इफ तमर पोर्ट जोड़ा कहली तमर इकोनॉमिक ज्योग्राफी जोड़ा रहइबो कमर्शियल इथर भी पचाले तमे आराम से करि परिबो को पोर्ट को जगह रे हैला एई जगह तमे देखि परिबो. दिस इज द क्लियर पिक्चर. नेक्स्ट देखबा आइलैंड्स ऑफ इंडिया हैला जोटा कि हमें मेजर फिजियोग्राफी डिवीजन कवर करले ठीक अछि हिमालयस कवर करले सेंट्रल ऑफ लैंड डेक्कन प्लेट्यू हैला डेक्कन प्लेट्यू कवर करले वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट ता प्रोग्राम में कवर करतले अरावली विंध्या हैला मलबा your particularly your Maikal range हैला छोटा नागपुर प्लेट्यू धारावाड़ प्लेट्यू सब जिनसे कवर करले एठी हमें हैला वर्तमान देखिबा लास्ट वन इट इज योर फिजियोग्राफी रो आइलैंड्स ऑफ इंडिया. आइलैंड्स ऑफ इंडिया कोन करबा द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज एन यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ 572 आइलैंड्स. अंडमान एंड निकोबार जदी कहबी हैला इट इज एन कंसिस्ट ऑफ योर 572 islands of which 38 are inhabited. Okay, 38 are inhabited at the junctions of the Bay of Bengal and the Andaman Sea. Junctions of the Bay of Bengal and Andaman Sea. It comprises two island groups basically. The Andaman Islands, that is partly, and the Nicobar Islands, separated by 150 kilometer, that is a 10-degree channel. 10-degree channel एटा हम देखिबा 10 डिग्री चैनल सेपरेट करछि काकू अंडमान और निकोबार दिटांगु सेपरेट करछि हला 10 डिग्री चैनल दैट इज 10 डिग्री नॉर्थ पैरेलल हला एटा हला तमरो कोन 10 डिग्री हला एटा हला तमरो लैटिट्यूड्स मन रखो. दिस इज योर लैटिट्यूड 10 डिग्री पैरेलल जोटा हला दैट इज कॉल्ड योर लैटिट्यूड. द अंडमान सी lies to the east of the Bay of Bengal. To the west the islands of Achaeans are thought to be submerged extension of the Arakan-Yoma mountains hela that is thought to be your extension of your Arakan-Yoma mountains basically. Okay, Arakan-Yoma mountains ko basically Andamans lies hela thought to be your Arakan-Yoma mountains. Okay, देखिए वर्तमान this is the clear picture. अच्छा एठी हमें देखिबा कोन कोन हला को जिंस ऊपर हमर मेजर फोकस कर एटा हला तमरो पर्टिकुलरली लक्षद्वीप हला इंडिया रो दीटा मेजर गोटे हला तमरो अंडमान निकोबार आइलैंड आ गोटे हला तमरो लक्षद्वीप हला देखिया वर्तमान जेंति एठी तम लिखा हिची 10 डिग्री चैनल कहा को तमरो एटलस पढ़ला बेले तमे एटा भी खोल एटा खोजिबो एटा भी तमरो बेटर देखा हबो हला दिस इज योर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. दिस इज अंडमान एंड दिस इज योर निकोबार आइलैंड. This is your 10 degree channel जोटा सेपरेट करछ अंडमान और निकोबार को हला. This is part your Andamans, this is your Andamans and this is your Nicobar island ए पार्ट हला. अच्छा एठी तमे देखुछ अंडमान केमती डिवाइड हिचे अंडमान हला तमरो नॉर्थ अंडमान मिडिल अंडमान साउथ अंडमान और हला लिटिल अंडमान. अंडमान हला तमरो कोटा गोटे हला तमरो नॉर्थ अंडमान गोटे हला दिस इज योर नॉर्थ अंडमान हला देन मिडिल अंडमान देन साउथ अंडमान आ गोटे हला लिटिल अंडमान पर्टिकुलरली हला दैट इज ऑन दी दिस इज योर
Little Andaman. You can say Little Andaman. This is your Little Andaman. Andaman, particularly. Then Nicobar group of जति देखिबो Nicobar group रो सबटु बडो किए Great Nicobar. एटा हला तमरो Car Nicobar. This is your Car Nicobar. I can say this is your Car Nicobar and this is your Great Nicobar. मन रखो Great Nicobar. Indira Point जोटा अछि इंडिया रे हला Indira Point is the your farthest point of India. India रे सबटु जति देखिबा इंदिरा पॉइंट है फारदेस्ट पॉइंट मेनलैंड जदि पचारियो ताले तमर कन्याकुमारी हो मन रख इंडिया रा फारदेस्ट पॉइंट किए ताले जदि आंसर देथिबो यू इंदिरा पॉइंट कन्याकुमारी थिबो गो फॉर इंदिरा पॉइंट जदि तमर कन्याकुमारी देथिबो ताले तमर सेठी जदि मेनलैंड पचारथिबो ताले तमर कन्या हला हबो तमर योर मेनलैंड ताले तमर कन्याकुमारी हो मेनलैंड हला एटा तमर समुद्र भीतर अछि जोटा कोटा एई तमर इंदिरा पॉइंट ठीक अछि सो वार्डिंग ऊपर ध्यान दबो तो वर्तमान देखिबा हला लक्षद्वीप बेसिकली जदि कहबी अंडमान्स एटी मु लिखली दिस इज योर अंडमान्स हला अंडमान्स आर बेसिकली योर वोल्केनिक ओरिजिन बेसिकली एटा हला वोल्केनिक ओरिजिन और जदि एटी तमरो लक्षद्वीप देबी हला लक्षद्वीप दिस इज योर कोरल ओरिजिन हला volcanic origin and this one is your coral origin coral lake हला एटी देखिबा हला एटी देखिया some facts of figures the highest peak of जदि हम कहबे highest peak of Andamans is your saddle peak जदि कह जिवो हला Andamans रे हला तमरा एटा ऑलरेडी क्वेश्चन पचारि सरछि saddle peak हला तमरा highest peak that is 3737 meter placed in the North Andaman एटा place अछि saddle peak right North Andaman. Mani, if you see here, see this one. It is clearly दिखाई. This is Saddle Peak. Saddle Peak it is. Then the Nicobar is a group of 19 islands. Nicobar को यदि कहबा it is a group of your 19 islands. Nicobar. एटी तमे देखियो जेमति Car Nicobar, then your Nancowry, Tin Cat, Great Nicobar. एटा सब मिसी की तमर हैला particularly Nicobar Islands. 19 islands among which Great Nicobar is the largest. I will सबटु बडो किए your Great Nicobar. This is majorly they are volcanic origin. Samane basically majorly they are volcanic origin. Nicobar emane. पुणी देखिबा the Great Nicobar is the southernmost islands which is only 147 km away from the Sumatra Island, Indonesia. तो देखियो इंडोनेशिया पाखरु एकदम पाखरे जस्ट जदि केमति जानिबो फर्स्ट यू सी दिस मैप इतरे तमे बेटर देखि परिबो वर्ल्ड मैप तमे खोलो वर्ल्ड मैप रे तमे और क्लियरली देखा हबो इट इज कि हाउ इट इज फार इट इज क्लोजर दिस इज हला सुमात्रा दिस इज सुमात्रा एंड जाभा सुमात्रा पाखरु तमरो इट इज वेरी क्लोज राइट देन two volcanic islands in the Andaman, that is your Barren and Narcodam. Barren and Narcodam islands basically. This is Barren Island. देखो ये पचार थिला ये 2018 रे पुनी volcanic eruption सही थिला ये जगह रे Barren Island हला and Narcodam. Barren Island was last erupted in October 2018. October 2018 मसिया रे Barren Island last erupt हेतिला Barren Island. Narcodam ta question pachare koti the place of your Barren Island is your southeast of your Barren Island it is located southeast of the Middle Andamans. Southeast of the Middle Andaman Barren Island. Southeast of the Middle Andaman. Okay, where Narcodam is located. It is
located northeast of the North Andaman है नॉर्थ ईस्ट ऑफ द नॉर्थ अंडमान ठीक अच्छे कौटा योर नारकोटाम नॉर्थ ईस्ट एटा तुम पचारे धरे क्वेश्चन पचार केमती नॉर्थ अंडमान एपट को यहाँ तुम कौटा तुम मिडिल अंडमान ठीक अच्छे सेमती आहरी छोट छोट आइलैंड देछि जोटा कि तुम फॉर्मेशन है जमती ये तुम देछि कौन पर्टिकुलरली तुम शहीद द्वीप आइलैंड जोटा कि बर्तमान ये नील आइलैंड ताकू नुआटा आगुरी थिला कौन बर्तमान नील आइलैंड आगुरी थिला बर्तमान शहीद द्वीप सेमती स्वराज द्वीप आइलैंड ता आगर ना थिला हावलॉक आइलैंड देन रॉस आइलैंड आगुरी जोटा थिला बर्तमान ना है सुभाष चंद्र बोस आइलैंड एगुड़ा सब परीक्षा पचारे जोटा क्लीयरली तुम 36 एडिशन में देछि आको देखिबो आ तुम रिपीट करछि सुभाष चंद्र बोस आइलैंड बर्तमान जोटा कि तुम पर्टिकुलरली साउथ अंडमान रे जो अच्छी आगुरी कौन थिला सेटा हला तुम रॉस आइलैंड थिला ता नाटा सुभाष चंद्र बोस आइलैंड जोटा एबे हेछि ता आगुरी था रॉस आइलैंड जोटा आगुरी ता ना थिला नील आइलैंड सेटा हेछि बर्तमान शहीद द्वीप आइलैंड आ गोटे हला तुम हावलॉक आइलैंड जोटा आगुरी थिला बर्तमान ता ना हेछि स्वराज द्वीप कौन पे एटा गवर्नमेंट करछि गवर्नमेंट एथि पे करछि कि तुमरो टूरिज्म को प्रमोट करिया पे हला रेवेन्यू बढ़िबो रोजगार बढ़िबो लाइवलीहुड बढ़िबो हला सेथि पे गवर्नमेंट करछि सेमली मेजॉरिटी ऑफ द आइलैंड्स इन द अरेबियन सी आर कोरल ओरिजिन जदि तुम देखिबो मतलब अंडमान साला निकोबार को जिबि जदि निकोबार रो मेजॉरिटी ऑफ द आइलैंड्स दे आर बेसिकली कोरल ओरिजिन हला कोरल सन बेसिकली कोरल ओरिजिन सेठी निकोबार आइलैंड्स हला एठी तुम देखुछो कोरल ओरिजिन अंडमान निकोबार रो जेमति कैपिटल धर पचाला इट बोली कैपिटल हला तुमरो पोर्ट ब्लेयर कोठी इट इज इन द साउथ अंडमान हला पोर्ट ब्लेयर हला तार कैपिटल सेम थी तुमरो जदि देखिबा हमें योर लक्षद्वीप रो कैपिटल किए कब्राती इज हियर ठीक अछि कब्राती इज हियर ठीक अछि कब्राती इज द हियर जोटा कि तुमरो हला लक्षद्वीप रे कब्राती एंड मिनिकॉय हला तुमरो पर्टिकुलरली सदर्न मोस्ट मिनिकॉय हला तुमरो लक्षद्वीप रो हला सदर्न मोस्ट आइलैंड हला मिनिकॉय अच्छा दो 9 डिग्री चैनल जोटा अछि 9 डिग्री सेपरेट करछि मिनिकॉय को रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप हला एटा मन रखता दिस इज 9 डिग्री चैनल इट separates Minicoy Island from the rest of the island from the rest of the Lakshadweep ठीक अच्छे मिनिकॉय आइलैंड 9 डिग्री चैनल जोटा कि मिनिकॉय को रेस्ट ऑफ द करछ हला तो एडी तमे पाइलो 9 डिग्री और 10 डिग्री सेमती देखबा कोन मेजॉरिटी ऑफ द आइलैंड इन द अरेबियंस आर कोरल ओरिजिन आइलैंड सराउंडेड बाय फ्रिंजिंग रीफ नॉर्थ ऑफ द लक्षद्वीप टू मिनिकॉय फ्रिंजिंग रीफ माने जो कोरल रीफ गुडा फॉर्मेशन होइतांती एंड दे रन पैरेलल टू द कोस्ट लाइन राइट सेमती 8 डिग्री चैनल that separate Minicoy Island from Maldives and 9 degree channel separates Kabrati from rest of the from Minicoy ठीक अच्छे तो 8 डिग्री चैनल तुम देखले कौन मिनिकॉय और मालदीव्स तो ए डायग्राम तुम देखियो कौन एटा हला तुमरो 9 डिग्री हला और मिनिकॉय एटी हला तुमरो कोटा एटी म लिखली दिस इज योर 8 डिग्री चैनल माने एटा सब हला तुमरो लैटिट्यूड एटी रहला कि मालदीव्स तळे हला मालदीव्स इशू हमें जानी एमती होता लास्ट रे दिस इज मालदीव्स तो 8 डिग्री चैनल सेपरेट कला माने मिनिकॉय को सेंटर नेले कौन हम मिनिकॉय और मालदीव्स भीतर 8 डिग्री चैनल पुणी मिनिकॉय और रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप तुमरो एटा हला तुमरो 9 डिग्री चैनल हला एपटे हला तुमरो मेजरली लक्षद्वीप सेमती
10 डिग्री चैनल जो देखिए 10 डिग्री चैनल ये सेपरेट योर अंडमान एंड निकोबर। अच्छा कोरल आइलैंड विषय जब मुझे कहबी लक्षद्वीप है जी आम यूनियन टेरिटोरी अच्छी अंडमान निकोबर भी आम गोटे यूनियन टेरिटोरी ता भितर स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटोरी है आमर सबुठू है लक्षद्वीप। इट इज ओनली द एरिया ऑफ लक्षद्वीप जब मुझे कहबी है द एरिया ऑफ Lakshadweep island is 32 square kilometer only है 32 square kilometer only of your Lakshadweep island only 32 square kilometer ठीक अच्छे। सो रेस्ट आम देखिले 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स काब्राती। सो दिस इज ऑल फैक्ट जोटा कि आम जानले अंडमान निकोबर आउ जोड़ा तुम सब आइलैंड ऊपर मुझे कहली पर्टिकुलरली स्वराजद्वीप आइलैंड नील आइलैंड हैवलॉक आइलैंड है एगुड़ा तुम सब देखी नब आ पर्टिकुलरली मैपिंग नहीं कि तुम पढ़ो है मैप नहीं कि पढ़ले तुम बेटर रहिबो ठीक अच्छे। लक्षद्वीप एगुड़ा तुम यही मैप कोड को लेकिन तुम रेफरेंस नहीं पढ़ो इट विल हेल्प यू आउट बहुत जिन तुमको इतना जानवर अच्छे मैक्सिमम जिन इट विल कवर्ड बाय दिस पर्टिकुलर मैप थ्रू रे तुम बहुत जिन कवर कर अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट आ मुझे तुमको सजेस्ट करी तुम अधिका मन रही तुम मैप यूज कर है सो दैट इटा बेसी मन रहा ठीक अच्छे। नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू पुणी विल कर दटा सरला इंडिया पार्ट जियोलॉजिकल टाइम स्केल जोटा कि परीक्षा में बहुत क्वेश्चन पकाउछन एटलिस्ट गोटे क्वेश्चन आसूँ से कवर कले बहुत जिन तुमको इजी रहा ओके ठीक अच्छे थैंक यू गुड डे। We'll continue with our Indian geography that is your geological time scale, right? So before that, I would like to say समस्त गोटे जिन कहबी कि हमारा OPSC वाला PW family तरफ we have got your many attractive offers. Basically जो माने competitive exam देबा गोटे स्वप्न होता है but इथिरे PW तरफ जोटा कि कोर्सेस प्रोवाइड करा होची that is mostly affordable for all जोटा कि तुम देखुच कलिंग वीर बैच जोटा ओडिशा पुलिस ओनली 699 एंड सक्षम OPSC बैच जो कि OPSC प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ऑल गाइडेंस विल गेट ओनली ओके दैट 4499 एंड प्लस क्लियर 360 अछि जो कि तुमरो your interview guidance paper checking evaluations all you can get that is additional 1999 तो ओनली जब तुम देखो 6500 टंका भी लेस रे तुम सब जिन पाई परछ इट इज ओनली अवेलेबल इन PW फैमिली OPSC वाला तरफ जोटा हमर दिया होची विजय बैच रे से बडा OCS प्रीलिम्स रे यू विल गेट 999 रे पाउछ and Odisha disaster police batch junior clerk में 1299 and Odisha exams महापैक that is also everything is included here that is also 4999 and Diksha batch you will get 1999 so all facilities तुम इथरे पाउछ जोटा कि PW तरफ गोटे रेवोल्यूशनरी स्टेप्स आ समस्त स्वप्न साकार करिया पे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एवरीवन कैन अटेंड ओके। तो देखिबा जियोलॉजिकल टाइम स्केल जमती मु कहितली जियोलॉजिकल टाइम स्केल हला हमरो सही टाइम पीरियड को बताए जो कि सूचाए जो कि वेयर इट इंडिकेट्स और टेल्स अबाउट what was exactly happened in the earth's surface in the past time जदि मु कहबी कि आज की 4000 मिलियन इयर्स वर्ष पूर्व कौन होता आरावली केबे फॉर्मेशन होता विंध्या केबे फॉर्मेशन होता ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट ऑल थिंग्स जो देखियो तमे पर्टिकुलरली जियोलॉजिकल टाइम स्केल रू ही आमे सेटा जानि पड़ी जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज द बेस्ट दैट टेल्स अस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट इवेंट्स जो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर इट विल डेफिनेटली समस्त बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे और मोस्ट प्रोबेबली जदि एथरे जोड़ा पढ़िबा एग्जाम ओरिएंटेड बहुत क्वेश्चंस एथरो पचाउछन से माने जियोलॉजिकल टाइम स्केल रू फॉर अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ठीक अछि। आगु देखिबा जियोलॉजिकल टाइम स्केल जदि मु कहबी जियोलॉजिकल टाइम स्केल as per geologist it is divided into the vast span geological time into 4 major divisions like चारटा major division जे ताको करा है that is your Precambrian era or Azoic, Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic जदि हम देखिबा that is Precambrian era or Azoic, one is your Paleozoic, the Mesozoic
and Cenozoic चारटा era रे mainly divide करा है your geological era को सबुडू हला question रे पचारे arrange the following in terms of your youngest to oldest हला तो एठी तमे देखिवो जदि मु टाइम स्केल रे आसुची हला तो एटा हला तमरो oldest हला this is oldest and जदि मु कहबी this one is your youngest सबुठू है नुआ बर्तमान आम जो एरा रे अच्छु बर्तमान नेला एटा सेनोजोइक एरा ठीक अछि हला मेसोजोइक एरा रे डायनासोर थिला देन पैलेजोइक एरा देन प्री कैम्ब्रियन एरा वन बाय वन सब आज कवर करबा इथरे पास देखिए बर्तमान हला कि केमती पढ़ा जाए जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हाउ यू विल स्टडी दिस वन जियोलॉजिकल टाइम स्केल लेट्स सी द जियोलॉजिकल एरास आर सबडिवाइडेड इनटू पीरियड्स एपॉक्स एंड एजेस periods epochs and ages geological time period scale टा को mainly divide करा जाए जोटा कहा जाए केमती हमें पढ़िबा how to study a time scale generally 365 days हला 1 year हला 365 days जोटा हुए जोटा को 1 year कहा जाए then many years is one age बहुत गुडे years ना that is गोटे only one age several ages into one epoch हला several ages हला तमरो one epoch multiple epochs are one period multiple periods are one era and multiple eras is one year so these are the segregation जोटा कहा जाए हला जेमति हम देखुछु 365 दिन हला गोटे वर्ष many years हला गोटे age many ages हला गोटे epoch many epochs हला your one era and multiple eras are one year so एई बडा भाबरे तमर segregations हुए हला जोटा कि तमर जियोलॉजिकल टाइम स्केल रो वेरी बेसिक्स फंडामेंटल और वी कैन से ABCD of geological time scale right वर्तमान देखिवा अच्छा एथिरे हमरो फिजिक्स वाला एठी लिंक दिया है छि जोतरे कि थ्रू दिस लिंक यू कैन डायरेक्टली एक्सेस लैंड टू आवर पेजेस जोतरे कि तमे हला all benefits you can get by landing that page right these are the geological time scale वर्तमान देखिवा geological time scale रे कोटा कोटा रहूची हला geological time scale रे देखिवा एथिरे सब जिंस बार बार एई पेज टा को आज हम पढिबा कोन कोन एथिरे जदि हम कहली दिस इज योर होलोसीन हला एठी देखो प्रथम आसला प्री कैम्ब्रियन हला प्री कैम्ब्रियन जेमति कहली देन पैलियोजोइक देन मेसोजोइक देन सेनोजोइक ए बडा बाबरे प्री कैम्ब्रियन ने तमे देखुछो हेडन आर्कियन प्रोटोजोइक ओके हेडन आर्कियन प्रोटोजोइक प्री कैम्ब्रियन भी जेतु एटा कहा जाय कि अर्थ रो मैक्सिमम टाइम टा तम जाय छै प्री कैम्ब्रियन जे तमे एज देखियो बाउंड्री डेट्स एटा एम ए हला मिलियन इयर्स एटा कहला तमरो दिस इज योर मिलियन इयर्स हला दिस इज योर मिलियन इयर्स पर्टिकुलरली मिलियन इयर्स जदि हम कहबी को किए मिलियन इयर्स रे हला तो प्री कैम्ब्रियन देखो 4600 मिलियन ईयर रु नियर अबाउट बाउंड्री 542 माने देखो हला अर्थ रो जति की टाइम स्केल अछि 542 रु 4600 माने पाखा पाखी 4100 हला मिलियन इयर्स केवल प्री कैम्ब्रियन ईयर तमरो नोच टाइम पीरियड देखिबा आगु को हला प्री कैम्ब्रियन एरा जोटा कि कहा जाय ताकू एजोइक एरा भी कहा जाय प्री कैम्ब्रियन एरा इज आल्सो नोन एज योर एजोइक एरा हला एजोइक एरा जति कहबी दिस पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 4800 मिलियन इयर्स टू 570 मिलियन इयर्स पाखा पाखी 4800 मिलियन ईयर रु 470 मिलियन इयर्स पर्यंत तमरो प्री कैम्ब्रियन एरा टा जाय then again the era is of this era of violent volcanism and large scale contraction of the earth ए era रे कोन हितला violent volcanism बहुत volcanism very violent and your large scale contraction of the earth we can say large scale contractions of the earth violent volcanism okay and large scale contractions okay of the earth existence of Pangea the land masses जदि म कहबी एटा कोन थिला the existence of your Pangea बोली गोटे बहुत बड़ो थिला that is your existence of Pangea only the land mass आगुर जदि म कहबी डेटा हमर थिला that is your हला प्रथम एतर पृथ्वी तले आरंभ होइतिला तुम जस्ट कहि दोची there is गोटे जेमती गोटे बड़ो लैंड मास थिला that is known as your Pangea how this is
एटा हला पांजिया एटा थिला तमरो पांथालासा हला पांथालासा एटा मन रख बेसिक जिंस पांजिया हला तमरो कोन थिला लैंड मास हला पांजिया जदि म कहबी दिस इज हला तमरो वाटर बॉडी हला एटा हला तमरो वाटर बॉडी थिला पानी पांथालासा आउ एटा थिला तमरो पांजिया थिला तमरो होल लैंड मास आगरु एटा थिला एटा हला तमरो बेसिक जिंस पांजिया आउ पांथालासा एटा मन रखियो पांजिया आउ पांथालासा पांजिया थिला लैंड मास आउ पांथालासा थिला योर वाटर बॉडीज तो एई समय कोन हितला प्री कैम्ब्रियन एरा रे एक्जिस्टेंस ऑफ पांजिया द लैंड मासेस हला लांजिया पांजिया तमर थिला एक्जिस्टेंस ऑफ लैंड मासेस जियोलॉजिकल चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग दिस एरा कोन हितला ए एरा रे कोन जियोलॉजिकल टाइम चेंजेस हितला जोटी के हम एडी देखिले हला एडी हां जियोलॉजिकल टाइम स्केल रे पर्टिकुलरली एपोक और बाउंड्री जियोलॉजिकल टाइम स्केल कोन हितला देखा वायलेंट वोल्केनिज्म हला because a period रे बहुत सारा volcanoes your erupt होइतिला and that basically volcanism जदि म कहबी it is widespread अर्थ सेतबे थिला माने जदि म कहबी एटा केबे आज की 4600 मिलियन इयर्स वर्ष पूर्व हला इट्स ए क्वाइट लॉन्ग टाइम बैक এই সময় কোন ଥିଲା জিওলজিক্যাল চেঞ্জেস ইন্ডিয়া ওয়াজ এ পার্ট অফ গন্ডওয়ানা ল্যান্ড সেই সময় ଥିଲା এগুলা দেখো এগুলা যে মু করুছি এগুলা সব গোটে গোটে তোমার क्वेश्चंस আকারে সমানে তুমি পচারিবে সো এটা টিকে মাইন্यूटली এই জিনিসটা বুঝিবো হলা প্রায় তুমি জানিবো এই লাইন এই যাহা भी পড়া होची सब लाइन रे गोटे गोटे क्वेश्चंस अछि इंडिया इज ए पार्ट ऑफ गंडवाना लैंड से समय थिला द पेनिनसुलर प्लेट्यू comprised three land masses basically peninsular plateau जोटा हम इंडिया रा comprised three land masses हला generally that is your Aravalli Singhbhum and Dharwad Aravalli Singhbhum au Dharwad basically तीनटा थिले Aravalli Singhbhum Dharwad तमरो आस्तो मन रे केमती सर कोन कहउचंदी Aravalli कोठी मु जदी कहबी इटी डायग्राम कले तम आउरी बुझी परियो बेटर हला Aravalli Singhbhum This is your Aravalli mountain. This is your Aravalli mountain. And this part, Chota Nagpur plateau area, this part your Singhbhum, and this is your Dharwad plateau. This is your Dharwad plateau. Okay, basically. से समय एटा थिला Aravalli Singhbhum आउ Dharwad जोटा तुम देखिलो द पेनिनसुला प्लेट्यू कंप्राइज्ड तीनटा लैंड मास थिला वन इज योर Aravalli देन Singhbhum एंड योर Dharwad important fold mountains were formed actually important fold mountains were formed at geosynclines रे important fold mountains are formed that is your Aravalli विंध्यास सतपुरा ईस्टर्न घाट हला एमाने सही समय फॉर्म होइतले इंपोर्टेंट फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म्ड एट जियोसिंक्लाइन्स हला जियोसिंक्लाइन्स रे पर्टिकुलरली जियोसिंक्लाइन्स माने इट्स एन शैलो बेसिन्स एरिया वेयर द सेडिमेंट्स गेट डिपॉजिटेड एंड बिकॉज ऑफ योर कंप्रेशन and folding and compression compaction we can say compression or compaction the sediments get folded and eventually they took the shape of your fold mountains right so ei samay ki heitile fold mountains form heitile ki Aravalli Vindhya Satpura Eastern Ghat dekhucho ei samay ki heitile Aravalli eti hela amaro Vindhyas this is your Vindhya Aravalli Vindhya this is your Vindhya okay and eti tamaro Satpura this is your Satpura this is your Satpura Aravalli Vindhya Satpura out and Eastern Ghat bhi sahi samare eta these are the Eastern Ghats we can say okay these are all your Eastern Ghats this all are your Eastern Ghats
ईस्टर्न घाट सो एठी हम देखिले नेक्स्ट आसीबा द पैलियोजोइक एरा तो एठी तमे आउथरे म कहि दोची हला तमे एठी जो देखिलो पर्टिकुलरली कि प्री कैम्ब्रियन एरा तमरा हाइडेन आर्कियन एंड प्रोटोजोइक हला एई ये रे तमरा से माने सेग्रीगेट हेइचंदी प्री कैम्ब्रियन एरा रे माने आछंदी हला एंड पर्टिकुलर जदी कहबी 4600 मिलियन रु 500 बेड जदी तमर केतबेला आर्कियन पचाला हाइडेन पचाला तो जानियो दिस आर ऑल योर प्री कैम्ब्रियन पूरा टाइम स्केल भितर माने आछंदी पर्टिकुलरली हला एंड इयन रे माने पर्टिकुलरली हला इट जो तुम पढिलो हला मल्टीपल एरास हला इयन्स रे हला तो देज आर ऑल आर इंक्लूडेड इन प्री कैम्ब्रियन एरा और इयन रे माने आछंदी नेक्स्ट आसीबो तमरो पैलियोजोइक टाइम स्केल जदी देखिबा पैलियोजोइक टाइम स्केल को विभाग कर हाइछि केते पीरियड रे मल्टीपल पीरियड्स रे तमर पैलियोजोइक कोन कोन जेमति कैम्ब्रियन ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन डेवोनियन एंड कार्बोनिफेरस पर्मियन ठीक अछि दिस आर द वेज जोथरे तमर करा होछि कैम्ब्रियन ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन डेवोनियन कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन एथरे तमर मेजरली तमर डिवाइड करा हाइछि ठीक अछि एठी यदि देखिबा पुनी कोन हला वन बाय वन देखिबा पैलियोजोइक एरा रे कोन हियर द पीरियड इज नोन एज प्राइमरी हला जदि हम कहूँ जेमती एरा को डिवाइड करा होछ तमर पीरियड टा एपॉक रु एज रे हला तो एथरे पुनी देखिबा कोन हियर द पीरियड इज नोन एज योर प्राइमरी द पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 570 मिलियन इयर्स टू 245 मिलियन इयर्स हला जदि तुम देखुछो 570 टू 245 मिलियन इयर्स देखो एठी तुम देखुछो 570 ए जगह नै कि 245 और 250 भितर हला एपट सपोर्ट ठीक अछि दिस इज योर टाइम्स ऑफ योर पैलियोजोइक टाइम दिस इज हला पैलियोजोइक टाइम दिस वन this period extends to 570 to 45 million years the primary period is grouped into several epochs so tum कहबी the primary periods is grouped into several epochs this is epoch tom period पर आस तमर epoch हला epoch पर ages आस several epoch then those are named as कौन Cambrian Ordovician Silurian Devonian Carboniferous and Permian जोडे के हम देखिले एबे हला तब देखियो एठी हला अगेन ओटी देखौची तमरो कैम्ब्रियन माने एठी तम जदी ताकू डिवाइड करिवो केमती माने जदी ग्रुप करिवो ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट अगेन हला ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट तम जदी पचारिवो दैट यू हैव टू अरेंज दिस वन परीक्षा रे पचारंत केमती एडा सब मन रखियो कैम्ब्रियन देन ऑर्डोविशियन COSDCP हला कैम्ब्रियन ऑर्डोविशियन Silurian, Devonian, then Carboniferous, then Permian. So these are the things जोटा कि तमे young रु नेकी old रु नेकी young पर्यंत तमे Paleozoic era टाकू कवर करछो ओके आगु जिबा पुनी एगोडा सब परीक्षा रे पचार जंती तुमको देई देथिबे अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली हला देखि देथिबे एमती Permian तापर पुनी Ordovician Silurian एमती सब एपट सपोर्ट कर देथिबे बट करेक्ट ऑर्डर हला तमरो Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous and Permian हला एई ग्रुप रे तमे ताकू मन रखियो पुनी कोन दिस एरा इज विटनेस्ड मेजर हर्सिनियन एंड कैलिडोनियन माउंटेन बिल्डिंग्स मेजर हर्सिनियन एंड कैलिडोनियन माउंटेन बिल्डिंग तमे एथरे देखियो दिस एरा इज विटनेस्ड मेजर हर्सिनियन एंड कैलिडोनियन माउंटेन बिल्डिंग एपिसोड हला माउंटेन बिल्डिंग एपिसोड ता तमे एथरे देखियो हर्सिनियन और कैलिडोनियन बेसिकली हला हर्सिनियन ओरिजिन कैलिडोनियन ओरिजिन तले तमे को भी जगह तमर देइथिबो तमे सेतरे कंफ्यूज हेबार नाही एटा हला तमरा माउंटेन बिल्डिंग पीरियड्स को से इंडिकेट करो हर्सिनियन आउ कैलिडोनियन अच्छा आगु देखिया पुणी जियोलॉजिकल चेंजेस कौन कौन हेतला एई टाइम रे कौन जियोलॉजिकल चेंजेस मेजर हेतला कौन देखिबा जेमती Pangaea and Gondwana land began to break. Pangaea और Gondwana land break करथिले जेमती हैला द सेही समय कोन थिला ए जो Pangaea टा म कहूची ए जो आगर जो Pangaea टा तुमको देखैली ए Pangaea टा
पांजियाटा दीटा भाग रे विभक्त थिला ए पांजियाटा दीटा भाग रे थिला पांजिया गोटे हला तमरो हला अंगारा लैंड ऊपर थिला दैट इज योर अंगारा लैंड आ एटा थिला तमरो गांडवाना लैंड हला गोटे थिला अंगारा लैंड आ गोटे हला तमरो गांडवाना लैंड दीटा थिला तमरो पांजिया पांजिया ब्रेक हे कि दीटा हला नॉर्थ रे थिला तमरो अंगारा लैंड और साउथ रे थिला तमरो गांडवाना लैंड इंडिया हला गोटे गांडवाना लैंड रे गोटे पैट तो ए जो गांडवाना लैंड थिला ये भी पुनी सेतरे से समय भाग्य गला केते बळे पैलेजोइक टाइम रे हमें देखले पांजिया गांडवाना लैंड began to break the continental collision resulted in the Ural Mountains formation से समय जतले कंटिनेंट कॉलिजन हेतला तमरो यूरल माउंटेन सेते बळे तमरो फॉर्मेशन हेतला यूरल माउंटेन फॉर्मेशंस को से योर फैसिलिटेट करैतला ओके बायोलॉजिकल चेंजेस कौन कौन आस्तिला लाइफ बिगन इन द ओशियंस हला कौन कौन आस्तिला लाइफ बिगन इन द ओशियंस बट इवेंचुअली ट्रांजिशन इनटू द लैंड एंड बाय द लेट पैलियोजोइक इट वाज डोमिनेटेड बाय वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हला एटु कौन कहबी लाइफ बिगन इन द ओशियन से समय लाइफ ओशियन रे बिगन हेतला एंड ट्रांजिशन ऑन द लैंड and by the late Paleozoic it was dominated by various forms of organisms okay various forms of organisms towards the end of the era large sophisticated modern plants coniferous appeared end of the era बेलु कोन हबो large sophisticated coniferous से माने appear हे ए टाइम पर बेलु हम जति कहबा हला coniferous plants large हला से माने appear हेतल end of the era large sophisticated modern plants that is your coniferous हला coniferous माने कोटा जोटे कि हम देखु जो हमरो coniferous plant this is your coniferous ठीक अछि this is your conical shape और pine tree जोटा कि हम को pine tree तो माने बेसिकली conical shape रो राइट conical shape रो coniferous नेक्स्ट देखिबा द कैम्ब्रियन एपोक हला एडी देखिले हला कैम्ब्रियन वन बाय वन देखिबा कोन कैम्ब्रियन एपोक रे कौन कौन होता दिस इज वेरी इंपोर्टेंट सबूर पैलेजोइक टाइम देखलो कैम्ब्रियन एपोक रे कौन कोडितला वर्तमान काहे कि ना स्पेसिफिक तमे लास्ट ईयर क्वेश्चन देखाओ ओपीएस रे मस्ट समान क्वेश्चन टा पचार जल्दी ओके इनफैक्ट एटा सिविल सर्विस पई हला ओपीएससी यूपीएससी दिस इज वेरी इंपोर्टेंट टू योर for the questions that are coming from this section geological time scale definitely you will get much ideas about to resolve the questions जो बड़ा तमरा आसी either OPSC कि UPSC definitely will get this one right कैम्ब्रियन पीरियड ताको कोन कहै छै रोमन नेम्स ऑफ वेल्स हला कोड आसी रोमन नेम्स ऑफ वेल्स हला रोमन नेम्स ऑफ वेल्स जेटा आसी ओके कोन हेतला एज इज अराउंड 505 मिलियन इयर्स पर्टिकुलर जदि म कहबी एज इज अराउंड 505 मिलियन इयर्स एज तारा ओके मेजर एनिमल लाइफ फॉर्मेशंस जदि म कहबी मेजर एनिमल लाइफ फॉर्मेशन that is was molluscus कौन हेतला molluscus worms corals etc rocks of the period have the fossils of the oldest life हला जदि कहबी rocks of the period कौन थिला that is fossils of the oldest life रो fossil सेटा कि तमरो एथरे देखैतला एथरे मेजर ओके then तमरो ऑर्डोविशियन पीरियड पुनी ऑर्डोवेसिक्स और सेल्टिक टाइप्स ऑफ नॉर्थ वेल्स माने एटा पर्टिकुलरली यूके यूनाइटेड किंगडम रो एटा देखो एटा भी सेमती वेल्स हला तमरो कार पार्ट रो यूके रो पार्ट ऑफ यूके किंगडम हला और पार्ट ऑफ यूनाइटेड यूके किंगडम और ब्रिटिश आइसल्स रो पार्ट माने सब ब्रिटिश आइसल्स रो हला ब्रिटिश आइसल्स ये भी सेम जिंस ब्रिटिश आइसल्स रो इट इज अराउंड 425 मिलियन इयर्स हला जदि कहबी एज around 425 million years 425 million years age major animal life formations कौन थिला first traces of vertebrates हला प्रथम स्ट्रेस आस्थिला कहारा vertebrates माने को माने जो मानकर मेरुदंड थाए हला vertebrates दी प्रकार थाए जो मानकर मेरुदंड थाए तांको आजे vertebrates और जो मानकर मेरुदंड न थाए they are known as your invertebrates हला तो दीटा जिंस vertebrate and invertebrates vertebrates, worms, etc. Among the evolution of animals, evolution of trilobites is important. Kuda thila evolution of trilobites. Hala evolution of trilobites is also important. This one.
राइट एवोल्यूशन ऑफ ट्राइलोबाइट्स है गोटे तुम कौटे से पर्टिकुलरली से एनिमल टा तुम पानी रे से माने प्रथम देखाई है ट्राइलोबाइट्स नेक्स्ट द सिलुरियन एपोक कौन थी सिलुरीज सेल्टिक ट्राइब्स ऑफ वेल्स अगेन सब जंक से ये ना गुड़ा सब दिया जो जो साइंटिस्ट दे बिलोंग्स टू दोस पर्टिकुलर एरिया सेल्टिक ट्राइब्स माने से वेल्स यूके नेक्स्ट age is around 360 million years major animal life formation is corals molluscs and sharks है major formation के corals molluscs and sharks ए समय shark माछ ए समय इतना shark माछ माने जो माने कहते हैं most deadly marine fish माने particularly जहाँ को देखियो माने माने टिके यदि blood कोटी भी देखिला blood रो human blood से संगे संग पूरा रॉकेट बड़े मारी आसीबे हैला जोटा कि पैसिफिक ओशियंस रो इवन इफ तमे मूवी भी सब अच्छे तमे देखि परिबो कि शार्क ऊपर बहुत सारा बड़े बड़े मूवी अच्छी हैला एंड प्लीज डोंट गेट स्कैर्ड बाय ऑल सीइंग दैट मूवीज राइट ठीक अछि बढ़िया बढ़िया देखियो जरा बहुत बढ़िया लगे शार्क रो अच्छी सब पिक्चर शार्क ऊपर मूवी हॉलीवुड रो देखियो इट विल वेरी इंटरेस्टिंग ओके अच्छा तापर देखियो कोन जेंति सिलुरियन कहले सिलुरियन हैला मेजर लाइफ फॉर्मेशन तमरे कोरल माने हम जोटा को ओडिया रे कहउछु शैवाल हैला हमें कहउछु शैवाल जोटा कहउछु एटा हैला तमरा प्रथम ये मलुस्कस माने छोट छोट शंख गेंडा टाइप है मलुस्कस कहते हैं छोट गेंडा टाइप माने ये कहवा जेटा मलुस्कस है गेंडा टाइप छोट छोट जिनस मलुस्कस एंड दिस आर द फिश है वन योर डेडली फिश वी कैन से वेरी डेडली फिश दिस वन सेमती डेवोनियन पीरियड कौन होता मेराइन सेडिमेंट्स ऑफ डेवोन ताकू डेवोन भी कहा जाए ए आर नाटा है डेवोनियन This is age around 325 million years, है 325 million years. Major animal life formation कौन था known as your age of fishes. आपको कहा जाए कौन age of fishes, है age of fishes कहा जाए. Coral rocks also began to form in the oceans. इस समय कौन इतना coral rocks also began to form in the oceans. This period is known as coal period. आपको कहा जाए कौन this period is also known as your है कोल पीरियड डेवोनियन को कौन कहा जाए डेवोनियन रे तमरो कोल मेजर कोल फॉर्मेशन हेतला जदि एटी तमे देखो एटी डेवोनियन रे हला सो हमें कैम्ब्रियन पढ़ले ऑर्डोविशियन सिलुरियन तो एटा को कौन कहा जाए दिस इज अ पीरियड ऑफ योर कोल पीरियड हला मेजर कोल फॉर्मेशन कोल पीरियड वी कैन से कोल पीरियड हला कोल जो हमरो जोटा हमर जो फॉसिल फ्यूल कोल एई पीरियड तमरो हला फॉर्मेशन होगा को तमरा आरंभ होइतल हला दिस इज द डेवोनियन पीरियड so you can say this is a map that clearly indicates your Permian period late Permian period 250 million years पूर्व जोटा थिला एटी तमे क्लियरली ए मैप रे तमे देखि परछो दिस इज योर पांथालासा ओशियंस हला एटी तमे देखि परछो दिस इज योर पांथालासा ओशियंस हला एटा देखो तमर पांजिया देखुछो दिस इज पांजिया ओके पांजिया रे ब्रेक है कि ऊपर देखो दिस इज योर हला गंडवाना लैंड एठी अछि ऊपरटा हला तमरो सेंट्रल पांजिया माउंटेन्स एठी रहिचला हैला ऊपर हला तमरो एटा दिस इज योर अंगारा लैंड इतरा अछि तमरो अंगारा लैंड रे अछि हला अलास्का अछि साइबेरिया काजाखस्तान नॉर्दर्न चाइना हला साउथ चाइना साउथ ईस्ट सब देखछो इतरे सब अछंती अंटार्कटिका साउथर्न इंडिया है मैक्सिमम से कवर हियर ठीक अछि तो एटी क्लियरली तुम देखुछो पर्टिकुलरली है सेनोजोइक मेसोजोइक है पैलियोजोइक जोटा कि तुम देखुछो प्री कैम्ब्रियन पर तमर आछि पैलियोजोइक है देन मेसोजोइक हियर आल्सो नेक्स्ट है जियोलॉजिकल चेंजेस कौन होता डेवोनियन ए टाइम पीरियड रे माने पैलेयोजोइक रे कौन होता जियोलॉजिकल द इंडियन लैंड मास ब्रोक अवे फ्रॉम द गंडवाना लैंड हैला इट वेरी इंपोर्टेंट मन देखि सुनियो इंडियन लैंड मास ब्रोक अवे फ्रॉम द गंडवाना लैंड रु इंडियन लैंड मास धीरे धीरे तमरा ब्रोक हेतला काहे कि गंडवाना लैंड जोटा आगु तमर कोआ होची गंडवाना लैंड रे की थिले मैं लिखि दोची गंडवाना लैंड रे को कॉन्टिनेंट आज का डेट रे थिले एटा तमे जानि रख गंडवाना लैंड रे की थिले हला गंडवाना लैंड रे
साउथ अमेरिका है साउथ अमेरिका आफ्रिका को कंटिनेंट थे आफ्रिका इंडिया ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका है एमाने समस्त गंडोना लैंड रे थिले अंगारा लैंड रे ऊपर केन थिला जदी तुम कहबी दीज आर द कंटिनेंट्स विथ और रिमेनिंग जोड़ा थिले सेटा तमर थिले अंगारा लैंड है अंगारा लैंड रे की थिले मोस्टली योर नॉर्थ अमेरिका यूरोप है एंड मेजर एशिया पार्ट एशिया मेजर पार्ट था तुम कौन अंगारा लैंड रे माने थिले मेजर तो दीज आर द एटा मन रखियो दीज आर द वेरी इंपोर्टेंट टू नो ठीक अछि तो एटा तो मन रखियो क्वेश्चन पछले गंडोना लैंड रे ई सब कंटिनेंट थिले आउ अंगारा लैंड रे ए माने थिले जोटे कि नॉर्थ अमेरिका यूरोप आउ मेजर एशिया पार्ट आगु जीवा देखिबा पुनी कोन है एई समय इतला कि इंडियन लैंड मास ब्रोक अवे फ्रॉम द गंडोना लैंड भागी जाइतला एंड स्टार्टेड इट्स नॉर्थवर्ड जर्नी अबाउट 150 मिलियन इयर्स अगो गोटे क्वेश्चन सेटा हैला केबे हेतला आज की पाखापाखी 150 मिलियन इयर्स वर्ष पूर्व इंडियन लैंड मास कौन हेतला गंडोना लैंड रो भागी जाइतला त माने को पीरियड रे हबो हैला 150 मिलियन इयर्स माने पाखापाखी एई मेसोजोइक टाइम रे पर्टिकुलर जदि मु कहबी एई जुरासिक पीरियड पर्टिकुलरली हैला volcanic activity resulted cracks in the peninsular India हैला volcanic activity जदि मु कहबी there has resulted cracks in the peninsular India रे cracks इदिला हैला leading to the development of lava plateau हैला leading to the development of your lava plateau that is in the Cretaceous period एठी देखो तो हम एठी जान ले हैला leading to development of that is your Cretaceous period okay leading to the development of your Cretaceous period particularly तो ये हम देखिले दिस इज योर ए पार्ट तक तब केटे हेडिंग टा एडी हेडिंग टा मु देइनी एडी तमे के लिखि दो दिस इज योर मेसोजोइक एरा हैला एटा ला तमरो मेसोजोइक एरा एडी हम देखिले मेसोजोइक एरा रे किए अगेन ट्रियासिक जुरासिक एंड क्रेटासियस मेसोजोइक एरा अगेन तीन भाग विभक्त गाटी हला तमरो ट्रियासिक जुरासिक आ गोटे हला क्रेटासियस हैला आ मेसोजोइक एरा को कहा जाय कोन एरा ऑफ डायनासोर एडी लिखि नबो एरा ऑफ डायनासोर हैला मेसोजोइक एरा को कोन कहा जाय एरा ऑफ डायनासोर ठीक अछि डायनासोर पर्टिकुलरली जो भी जति के एरा थिले तमे चारटा एरा भीतर प्री कैम्ब्रियन हैला प्री कैम्ब्रियन हो कि मेसो पालेयोजोइक कि मेसोजोइक सेनोजोइक एठी डायनासोर एठी तमरो ऐसे देखा हितले एठी आरंभ होइतला एठी लुप्त हो हितले एक्सटिंक्ट हो हितले they came into existence during this era and they get extincted during the last part that is your Cretaceous part रे से माने लुप्त हो हितले एक्सटिंक्ट हो हितले एठी मन रखितो तो आगु जिबा सेकंड बायोलॉजिकल चेंजेस कोन आस्तला mammals appeared ए टाइम रे हैला mammals माने appeared हितले एज ऑफ डायनासोर जो हम जानले एज ऑफ डायनासोर्स mammals माने पर्टिकुलरली जो माने ताको कहंती ओडिया रे स्तनपायी प्राणी माने दोज हु फीड देयर ऑफस्प्रिंग्स ओके नेक्स्ट आसला द जुरासिक पीरियड हैला तो हम एठी जानले कोन ए एरिया रे कोन कोन हितला पर्टिकुलरली हैला ट्रियासिक पर आसला तमर जुरासिक रे कोन थिले हैला ट्रियासिक जानले ट्रियासिक पर तमर आसी ए पार्ट रे तो ए पार्ट रे हम जानले दिस इज योर ट्रियासिक पीरियड है एटी जानि दियो एटा मेसोजिक एरा खाली लिखि नथली मेंशन एंड दिस इज योर ट्रियासिक पीरियड वी कैन से दिस इज योर ट्रियासिक हैला पीरियड
ठीक अच्छे ट्रियासिक पीरियड दिस वन सरला नेक्स्ट योर कम टू योर जुरासिक पीरियड दिस इज जुरासिक ऊपर तुम जानी थो जुरासिक गोटे मूवी थिला डायनासोर जुरासिक मूवी हैला वेरी इंटरेस्टिंग हैला जुरासिक रे कोन थिला द एज इज अराउंड 165 मिलियन इयर्स ओल्ड पाखा पाखी हैला 165 मिलियन इयर्स ओल्ड एज हैला जुरासिक रा मेजर एनिमल्स फॉर्मेशन वाज स्मॉल प्रिमिटिव एनिमल्स diversified reptiles हैला small primitive animals diversified reptiles almost modern form of fish and bird हैला modern form of your fish and bird basically देखा जाए modern form of your fish and bird for the first time हैला एई समय कोन हेतिला हैला modern form of fish और bird माने modern form of fish माने they are having your fins हैला fins थिला आउ जोड़ा कि हमर गाली कहंती सेडा सेडा ताकर सब से मॉडर्न फॉर्म ऑफ फिश फॉर्म से दिला लंबा लंबा कुंगरो भड़िया से देखा नतले बस छोटिया छोटिया मॉडर्न फॉर्म ऑफ फिश हमर गिल्स हला आईलिड्स हला गिल्स आईलिड्स एंड योर वी कैन से द मोस्टली योर वर्टिब्रेट्स कोनटा ताकर थिला पर्टिकुलरली हला मॉडर्न फॉर्म ऑफ फिश हला साइजेस आर क्वाइट क्वाइट नॉट अननेचुरल हला For the first time Jurassic period रे कोन हितला flowering plant हैला जोटा कि flowering plant were evolved during this period flowering plant जम्मी रे जोटा जो तमरो फुल फुटे जो flowering plant एई समय एटा परीक्षा this is also a questions मन रखो prelims ପାଇଁ एटा भी गोटे questions prelims ପାଇଁ this is also a question first time ପାଇଁ तमरो flowering plant तमरो हेतला this is a question हैला prelims question this is then age and evolution of dinosaurs mammals particularly age and evolution of dinosaurs माने particularly a time रे देखा हेतले age and evolution of your dinosaurs right then the Cretaceous epoch हैला कोन थिला that is your Cretaceous epoch the age is around 135 million years old पाखा पाखी कोन कहली age is around 135 million years old age is around 135 million years old major animal life was yearly mammals and birds specialized reptiles early mammals particularly birds and specialized reptiles basically okay also your evolution of dinosaurs mammals so dinosaur माने particularly ए total era रे ही देखा हेतले जुरासिक परे भी तमरो क्रेटासियस रे भी माने मोस्टली एटी देखा हेतले ठीक अछि birds and specially 130 major animal life formation तो मोस्टली तुम देखु छ सब जगह रे कॉमन कोन the age of कहबी age of dinosaurs ठीक अछि age of dinosaurs सेनोजोइक एरा तापर तुम हम चलले इटी कोन दीटा पीरियड हम पढ़ले गोटे हला तमरो हला योर एटी हम पढ़ले पाइलोजोइक पढ़ले कंप्लीटेड देन मेसोजोइक वर्तमान जीवा सेनोजोइक एराटा हला जोटा कि हमें वर्तमान रिसेंट एरा एई जो वर्तमान हम रिसेंट एरा हमें अछु हला सेटा हला तमरो सेनोजोइक एरा पर्टिकुलरली सेनोजोइक एरा रे वर्तमान जदि तमर क्वेश्चंस पड़े इन व्हिच एरा हला now the present civilization your exist or lives that is your this one answer is your Cenozoic era मन रखो वर्तमान हमें एथरे अछु तो Cenozoic era कोन this period extends from 65 million years to नेकी to the present हैला 65 million years to नेकी till present पर्यंत हला तमरो Cenozoic era this era is mainly subdivided into two periods हैला Cenozoic era mainly पूरी subdivided into नेकी तीनटा दीटा पीरियड रे मेनथिला one is your tertiary period वर्तमान tertiary आउ quaternary तो हमें अछु कोथरे वर्तमान चलो देखिबा हमें अछु here in now your tertiary period quaternary period sorry एठी देखो तमे आउथरे अगेन Cenozoic era period रे दीटा कोन हला गोटे हला तमरो tertiary आ गोटे हला quaternary पुनी मन रखो एटा हला तमरो oldest to youngest this is your old and this is your young हला tertiary आउ quaternary tertiary माने 3 quaternary माने 4 और 4 so tertiary हला quaternary तो हमें अछु वर्तमान कोठी अगेन एई होलोसिन एपोक रे हमने वर्तमान अछु ओके देखिबा
टर्शियरी पीरियड जब कहबी दिस पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 65 मिलियन इयर्स टू 2 मिलियन इयर्स हैला जदी कहबी कोन 65 मिलियन इयर्स रे नेकी 2 मिलियन इयर्स पर्यंत सेटा देखाउची ओके जियोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड कोन हितला ड्यूरिंग टर्शियरी पीरियड रे जियोलॉजिकल चेंजेस द इंडियन सबकंटिनेंट लैंड मास ब्रोक अवे फ्रॉम द माडागास्कर हैला इंडियन सबकंटिनेंट लैंड मास कोन थिला ब्रोक अवे फ्रॉम द माडागास्कर माडागास्कर माने कोठी तमे दे एटलास देखिबो एठी आहुर टिके क्लियरली देखि परिबो हैला सब बेले एटलास धरिकी देखुथो इट विल तुमको बहुत सारा आइडिया देबो हेल्प यू आउट आल्सो टू अंडरस्टैंडिंग एठी देखो आज का डेट रे तुम देखिबो एटा हला माडागास्कर अफ्रीका पाखरे तो आगुरु कोन थिला ए माने सब लागि कि थिले हैला माने माडागास्कर तुम देखिबो अफ्रीका संगे लागि कि थिला इंडिया भी आंक संगे सब लागि कि थिले किए गंडोना लैंड जोटा थिला किए थिले एई साउथ अमेरिका अफ्रीका साउथ अमेरिका अफ्रीका इंडिया ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका माने सब गोटे गोटे मांस पिंडुला भलिया सब एकाठी थिले सो इंडिया कौन थिला अफ्रीका रो डिटैच हला माने माडागास्कर पार्टटा इंडिया संगे लागि थिला अफ्रीका रो जोटा ठीक अछि ता परे पछरे माडागास्कर अफ्रीका रो अलगा हला हला तो देखिबा कोन सो इंडियन सबकंटिनेंट लैंड मास ब्रोक अवे फ्रॉम द माडागास्कर नियरली 15 मिलियन इयर्स एगो जदि मैं कहबी आज की 15 मिलियन इयर्स एगो हला इंडियन लैंड मास तमरो ब्रोक अवे हला माने कोठी टर्शियरी पीरियड जदि हम देखिबा नियर अबाउट ए मियोसिन पीरियड्स रे हला देखिबा मियोसिन पीरियड आगु देखिबा डिस्कस करबा मियोसिन पीरियड रे हला नियर अबाउट 15 मिलियन इयर्स 15 मिलियन इयर्स वर्ष पूर्व आउ कौन होता हिमालयस क्वेश्चन लास्ट टाइम ये बहुत पचार है को पीरियड रे कौन होता जाना जमी मुझे कहबी द हिमालयस रोज एज ए रिजल्ट ऑफ कॉलिजन ऑफ द इंडियन लैंड मास विथ द यूरेशियन प्लेट है इंडिया और यूरेशियन प्लेट जो धक्का लगी से कौन होता तुम पर्टिकुलरली योर हिमालय फॉर्मेशन होता आम कह द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय क्वेश्चन पचारती केतबेले इन ड्यूरिंग द टर्शियरी पीरियड ये आम जानले केतबेले टर्शियरी पीरियड रे हैला सो एटी हम कोन लिखिबा एटी हिमालयस have formed during tertiary period Himalayas have formed during your tertiary period है tertiary period रे किए फॉर्मेशन इतला Himalayas have formed during your tertiary period right then the trans Himalaya पुणी आम जानी कौन Himalayas basically केते पार्ट रो आम आगु पढ़ी Himalayas गुड़ा केते आम हला केते टाइप रो पढ़ी Himalayas हला तुम चारि भाग रे विभक्त गोटे हला तुम ट्रांस हिमालय जोटा कि TH कहूँ ट्रांस हिमालय जोटा कहते TH देन सेकेंड रे that is your greater Himalaya है ना GH then middle Himalaya MH then fourth रे it is your शिवालिक्स है तो हिमालयस माने ए भार व्यक्त ट्रांस हिमालय ग्रेटर हिमालय मिडिल हिमालय एंड शिवालिक्स है ना तो देखिए कौन द ट्रांस हिमालय वर डेवलप्ड ड्यूरिंग 150 to 40 मिलियन इयर्स है ना ट्रांस हिमालय दे हैव डेवलप्ड ड्यूरिंग 115 रु 40 मिलियन इयर्स पीरियड रे हेतिले है इन द अपर क्रेटासियस टू इओसिन टाइम पीरियड है को टाइम रो अपर क्रेटासियस रु इओसिन टाइम पीरियड रे एटा परीक्षा रे क्वेश्चन सब आसियो गोटे मन रखियो दिस इज ए क्वेश्चंस ना अपर क्रेटासियस रो इओसिन नेक्स्ट द ग्रेटर हिमालयस वर डेवलप्ड ड्यूरिंग ओलिगोसिन टू इओसिन एपॉक एटी टिके देखि देबो तुमको लागिथिबो कोटा कोन टर्शियरी पीरियड अगेन डिवाइड कोथरे एपॉक रे कोटा जेमति हम कहबा ओल्ड रु यंगेस्ट पुनी तुम डिवाइड करो दिस इज अगेन हला टर्शियरी पीरियड रे एटा सेकंड दिस इज हला टर्शियरी पीरियड ए पार्टटा
है टर्शियरी पीरियड केमती मन रखियो दिस इज द ओल्डेस्ट है पैलियोसिन देन इओसिन देन ओलिगोसिन देन मियोसिन देन प्लियोसिन है एटा ठीक अछि है माने एति गेला तमर आसी कोथरे टर्शियरी पीरियड रे आसी दिस इज योर बिलोंग्स टू योर टर्शियरी पीरियड है टर्शियरी आई कैन से दिस बिलोंग्स टू योर टर्शियरी है ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट पर्यंत एई पर्यंत तमला ओल्ड रु नेकी यंग पर्यंत है तापर पुनी ए दिटा आसला पैलियोसिन होलोसिन जोटा हला तमर क्वाटरनरी पीरियड परीक्षा रे पचार दिस इज वेरी इंपोर्टेंट टू नो है एटा जानले तमे बहुत जिंस सॉल्व करि परिबो परीक्षा रे जो क्वेश्चन आसे यू कैन इजीली रिजॉल्व दिस क्वेश्चन तो तापर कोन देखिबा the greater Himalayas were developed during Oligocene Eocene epoch तमे देखुछो सो Oligocene Eocene epoch तमे देखुछो Oligocene और Eocene so greater Himalaya इथरे आस्थिला हला देन आउ ट्रांस हिमालय आस्थिला कोथरे तमरो एटी हम पढिले ट्रांस हिमालय वर डेवलप्ड ड्यूरिंग अपर क्रेटासियस टू इओसिन माने देखो सब जिंस रे होइतला अपर क्रेटासियस रु इओसिन रे होइतला तमरो कोए ट्रांस हिमालयस है अपर क्रेटासियस एठु नहीं कि इओसिन माने एई पर्टिकुलरली एई पीरियड नहीं कि इओसिन ए पर्यंत हला तमर के टीएच माने पैलियोसिन देखि पैलियोसिन टाइम रे तमर ट्रांस हिमालय हेतला ओलिगोसिन मियोसिन ने आसला तमर के योर ग्रेटर हिमालय ठीक अछि नेक्स्ट द मिडिल हिमालयस were for developed during the Miocene period है Miocene period रे आरंभ हो तमर आसला तमर के है योर पर्टिकुलरली जदि मैं कहबी योर मिडिल हिमालय क्वेश्चन ऑलरेडी पचारि तमर है मियोसिन पीरियड रे ठीक अच्छे ओलिगोसिन इओसिन तमर ग्रेटर हिमालय पुणी मियोसिन रे आसला तमर मिडिल हिमालय ये क्वेश्चन तमर ऑलरेडी पचारथिला कोठी प्रीलिम्स जदि तमे देखिबो प्रीलिम्स 2021 रे ये क्वेश्चन ऑलरेडी पचारथिला दिस क्वेश्चन है Prelims 2021 रे this questions already asked middle Himalayas were developed during the your Miocene epoch रे पचारथिला the outer Himalayas were developed after Pliocene epoch the outer Himalaya जदि मैं कहबी they are your formed your Pliocene epoch रे हैला Pliocene epoch रे एटा फॉर्मेशन हेतिला outer Himalaya राइट Pliocene epoch रे एटा तमर फॉर्मेशन हेतिला outer Himalaya ठीक अछि है प्लियोसिन एपॉक रे तमरा आउटर हिमालय मेजरली फॉर्मेशन है प्लियोसिन आउटर हिमालय आउटर हिमालय माने किए माने मुडी लिखि परिबी दिस इज योर है लास्ट रे योर शिवालिक्स है शिवालिक्स एटी फॉर्मेशन है एटी तमे देखले शिवालिक्स प्लियोसिन है मियोसिन रे मिडिल हिमालय है ओलिगोसिन इओसिन रे तमर ग्रेटर हिमालय आउ एटी तमरा आसले योर इओसिन ने की क्रेटासियस पंत तमरा है ट्रांस हिमालय So ये questions गुड़ा very important for your exam point of view मन रखा so once again आउटर को ट्रांस हिमालय अपर क्रेटासियस इओसिन ला ट्रांस हिमालय ग्रेटर हिमालय ला ओलिगोसिन आउ इओसिन्स ने की पर्टिकुलरली हला ओलिगोसिन इओसिन देन मियोसिन असला मिडिल हिमालय आउटर हिमालय असला प्लियोसिन हला प्लियोसिन माने जतले तमरो लास्ट पार्ट ऑफ योर टर्शियरी पीरियड हला कोथरे पुनी अगेन एरा हला सेनोजेक एरा आगु देखिबा हैला मन रख ए पार्ट ता बहुत इंपोर्टेंट पूरा क्वेश्चन एथरे ही हमर मेजर फोकस रहउची एई समर कोन हेतिला पर्टिकुलरली तमे देखो ग्रेट लेक्स केम इनटू एक्जिस्टेंस सेनोजेक पीरियड जति हम कहबी ग्रेट लेक्स केम इनटू एक्जिस्टेंस ग्रेट लेक्स माने कोठी हमें नॉर्थ अमेरिका जति मु जेबी हैला एई पार्ट रे देखो दिस इज नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका जदि तुम देखुच नॉर्थ अमेरिका रे ग्रेट लेक्स देखुच यूएस और कनाडा मझिरे जो लेक्स गुड़ा अच्छे तांको ग्रेट लेक्स कहा जाए है दिस आर द ग्रेट लेक्स मेजरली है योर नॉर्थ अमेरिका यूएसए और कनाडा ऊपर है तो आसीबा किए है एथरे कौन कौन थिला पर्टिकुलरली जदि मैं कहि दउची ग्रेट लेक्स रे है लेक सुपीरियर ग्रेट लेक्स है तो ये लिखि दूची आ गोटे ग्रेट लेक्स
है ग्रेट लेक्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग है सेमती आम ये देखिले कौन 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 ये देखिले पर्टिकुलरली है टर्शियरी क्वाटरनरी पीरियड रे है ग्रेट लेक्स थिला तमरो पर्टिकुलरली क्वाटरनरी होलोसिन और प्लेस्टोसिन है प्लेस्टोसिन पीरियड रे तमरो ग्रेट लेक्स तमरो आस्तला मेजरली है particularly they are formed your great lakes formed during quaternary periods रे formation हेतले है great lakes है secondary great lakes formed boundary between USA and Canada USA और Canada भितर जीटा जो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट रे मान अछंती आ भितर ए माने इट फॉर्म्स ए बाउंड्री हैला ग्रेट लेक्स नेक्स्ट हैला ग्रेट लेक्स consist of 5 major lakes कौन कौन समझले नंबर 1 लेक सुपीरियर लेक ह्यूरन लेक Michigan Lake Erie and Lake Ontario ठीक है सुपीरियर ह्यूरन मिशिगन एरी ओंटारियो है मेजर 5 ग्रेट लेक्स दे बेसिकली दे कंसिस्ट ऑफ दिस 5 जन है सुपीरियर ह्यूरन मिशिगन एरी और ओंटारियो है दिस 5 लेक्स आर मेजरली फॉर्म्ड योर 5 ग्रेट लेक्स जोटा कि तमें ये मैप रे में देखुले पर्टिकुलरली ठीक अच्छे दिस आर द ग्रेट 5 ग्रेट लेक्स सो एटा हम जानले दिस इज ऑल अबाउट योर जदि मैं कहबी दिस इज ऑल अबाउट योर जियोलॉजिकल टाइम स्केल रे श्योर शॉर्ट तमे क्वेश्चंस पाइबो हैला श्योर शॉर्ट तमे जदि तमे देखिबो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जोटा कि तमे पढिलो हैला एई ऑलरेडी ए सब लाइन रे इथरे क्वेश्चंस अछि एईटा जो हमें डिस्कस कले हैला मैक्सिमम इथरे तमर क्वेश्चंस ही अछि सब लाइंस रे तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर ओवरऑल व्यू जोटा हमें देली हैला ताकू देखिबो एंड डेफिनेटली इट विल बी हेल्प यू आउट फॉर रिजल्विंग तो तुम ओवरऑल गोटे आइडिया आसला कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल आम केमती पढ़ले सब बेले मन रख यही मैपटा को तुम देखुव दिस इज वेरी इंपोर्टेंट है ये तुम सब जिनस कौ जिनस केमती पढ़ मैक्सिमम जिनस ये कवर हो ठीक अच्छे अच्छा बर्तमान जियोलॉजिकल टाइम स्केल आम इंडिया फिजियोग्राफी सारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल सारे बर्तमान आ गोटे बढ़िया टॉपिक जो नेबी क्वेश्चंस तुम प्रायतः यही चैप्टर से भी बहुत पचारती आ जोटा टिके कॉम्प्लिकेटेड थाए जोटा कि बहुत तुमको ट्रिक्स भितर भी तुमको शेयर करी सेटा तुम पर्टिकुलरली जानिबा द वन एंड ओनली वन दैट इज योर द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया है रिवर सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग बहुत जानिबा को नदी को पटरे जो कि आम पूरा कवर करवा है आमर पूरा इंडियन रिवर्स है इधर तुम माने तुम चाहे से तुम योर ट्रांस हिमालय जो रिवर बो कि कैलाश रे जोड़ा बो कि योर ग्रेटर हिमालय रे बो कि तले तुम केरला रे बो सब जिन कवर करवा रिवर सिस्टम को कौन कह जाए बेले बेले रिवर सिस्टम इज आल्सो नोन एज योर
ड्रेनेज सिस्टम को कह ड्रेनेज सिस्टम रिवर सिस्टम इज आल्सो नोन एज योर ड्रेनेज सिस्टम है ड्रेनेज सिस्टम भी आपको रिवर सिस्टम को कह जाए ड्रेनेज ठीक अच्छे सो परीक्षा जब क्वेश्चन तुम पढ़ो डू नॉट कंफ्यूज रिवर सिस्टम आउ ड्रेनेज सिस्टम दे बोथ आर सेम ठीक अच्छे सेम जिनस कौन कौन जब देखा ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया है मेजर जब डिस्कस करवा कौन ड्रेनेज सिस्टम ड्रेनेज ऑफ द इंडियन सबकंटिनेंट हैज adjusted itself with evolution of three physiographic fold divisions है मेजर तीन थ्री फिजियोग्राफी फोल्ड डिविजन्स को ड्रेनेज सिस्टम हमर डिवाइड है द रिवर सिस्टम इन इंडिया ब्रॉडली कैटेगराइज्ड अंडर टू हेड्स दीटा हेड रे हमर रिवर सिस्टम मेनली कैटेगराइज है मेजरली टू हेड्स रिवर सिस्टम कौन कौन है वन इज योर हिमालयन और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर्स अनदर इज योर पेनिनसुलर रिवर्स दी भाग में विभक्त कराई हिमालयंस आउ पेनिनसुलर मन रख पिले क्वेश्चन जो तुम पढ़ुच मन रख माने आटलास सब बड़ इंपोर्टेंट आटलास तुम मुझे देखी दूसरी कमती केमती देख रिवर सिस्टम रे बहुत इंपोर्टेंट तुम आटलास पढ़ला है दिस तुम फिजिकल मैप यहाँ है आउ एपटे तुम दिस इज योर पॉलिटिकल मैप है तो जो गोटे तुम ब्राउन कलर अच्छे तुम सब स्टेट धर मुझे नर्मदा तुम सांगे सांगे खोज कौटी है मध्य प्रदेश जीव देखो से जगह है प्लस सबू जगह तुम एपट सेपट करके रेफरेंस ना पड़ो अदरवाइज तुम डिफिकल्ट रुझे है तो आम जान कौन दी प्रकार रिवर सिस्टम अच्छी गोटे है तुम हिमालयन रिवर्स आ गए तुम मेजरली जदि आम कहवा है जोटा कि पेनिनसुलर रिवर्स ठीक अच्छे तो हिमालयन रिवर्स माने एटी मुझे कह पर्टिकुलरली है सॉरी वन सेकेंड विंध्या माउंटेन जो मुझे नेली विंध्यास माउंटेन विंध्या हला मेन डिवाइड कर मन रख है विंध्या हला तुम मेजरली डिवाइड कर विंध्या माउंटेन्स विंध्या तलू को तुम है दैट इज योर पेनिनसुलर रिवर्स विंध्या ऊपर को तुम हिमालयन रिवर्स देखिए इंडिया हैज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड अंडर टू हेड्स दैट इज योर हिमालयन और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर्स अनदर इज योर पेनिनसुलर रिवर्स है हिमालयन रिवर्स को भी कौन कह जाए एक्स्ट्रा पेनिनसुला जदि तुम क्वेश्चन से पचारा एक्स्ट्रा पेनिनसुला डोंट कंफ्यूज एक्स्ट्रा पेनिनसुला माने तुम है किए हिमालयन रिवर्स की कह जाए तो जानिबा अभी कौन कौन हिमालयन रिवर्स ऊपर जानिबा किए किए हिमालयन रिवर्स तीन टा मेजर है मन रख हिमालयन रिवर्स जदि मुझे कहबी है हिमालयन रिवर्स रे मेजर थ्री सिस्टम इट कौन लिखुची इट कंप्राइजेस थ्री मेजर river systems one is your Indus system, second Ganga system, third Brahmaputra system है तीन टा मेनली इंडस सिस्टम गंगा सिस्टम आउ ब्रह्मपुत्र सिस्टम माने कौन दैट इज योर ट्राब्यूटरीज है सिस्टम माने कौन कहली ट्राब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज
सिस्टम्स माने एटा कह जाय ट्रिब्यूटरीज आउ डिस्ट्रीब्यूटरी को नै कि हमरो सिस्टम कह जाय हला ट्रिब्यूटरीज आउ डिस्ट्रीब्यूटरीज के लिए तो इंडस माने इंडस रे पूरा आसिला हला जेमति झेलम चेनाब रबी बीज हला योर गिलगिट काबुल हला बहुत गुडे इत्र सब हम कवर करबा देन आसला गंगा देन ब्रह्मपुत्र सिस्टम कोनी देखिबा हला इंडस सिस्टम जदि कहबी प्रथमे हम जानिबा द रिवर इंडस हला इज एन ट्रांस हिमालयन रिवर्स इंडस को कह जाय हला ट्रांस हिमालयन रिवर्स इंडस काहे कि तुम एटी देखो हला इंडस ता एटी देखो दिस इज इंडस दिस इज द कर्व हला एमती इंडस एटी बाहर छी देखो एमती उठी उठी जाई छी एटी एटी इंडस ता एटू बाहर छी हला कोन पड़ला आफ्टर फ्लोइंग 1570 किलोमीटर इन इंडिया हला इंडस होई छी तो इंडिया रे 1570 किलोमीटर इन इंडिया हला 860 किलोमीटर इन पापियो के रीजन इट फॉर्म इट्स टोटल लेंथ ला केते इंडस रा पाखा पाखी 2900 किलोमीटर हला 2880 और 2900 किलोमीटर टोटल लेंथ द माइटी इंडस हला जब मैं कहबी द माइटी इंडस रिवर ऑरिजिनेट्स नियर मानसरोवर लेक हला मानसरोवर लेक पाखरे इंडस तमर ऑरिजिनेट हेछि बेसिकली हला एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 5100 मीटर हला 5100 मीटर अल्टीट्यूड पाखरे इंडस तमर ऑरिजिनेट हेछि एंड एटी देखो particularly this is your मानसरोवर लेक हला मानसरोवर एटी देखुछो मानसरोवर लेक दिस वन इज योर मानसरोवर लेक एई पाखरु तमर हेछि आ पटमंडक एडा हला तिब्बत एंड चाइना प्रोविंस एबे भी तिब्बत गोटे नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री इट इज स्टिल हला इट इज कम्स अंडर चाइना बिकॉज यूएन वर्तमान तिब्बतन संघर्ष करछि अलगा भाबे ताइन वर्तमान यूएन को रैटिफाई करिनि हला देखो एट जो तुम देखुछ हला दिस इज लेक मानसरोवर इज हियर राइट एटू हमर बाहर छी ठीक है so the mighty Indus river originates near Mansarovar lake at an altitude from the glaciers of the Kailas range है Kailas range रा glaciers रू से बाहर छी है in the western Tibet रा western Tibet रा से हमरा एटी फॉर्मेशन है this is look at here this is western Tibet है Tibetan plateau टा हमरा 80 टोटल central Tibet एटी हला तमर Tibet है ए पार्ट टा है एटा हला central Tibet एटा तमर ईस्टर्न Tibet ए रीजन टा हला ए रीजन टा दिस इज सेंट्रल आउ हला सॉरी कैलाश हला एटा म सेटी टिके एटी गोटे टिके हा टिके लिखि वेस्टर्न देखो दिस इज योर हला वेस्टर्न Tibet एटा तमरा वेस्टर्न Tibet आउ एटा तमरा ईस्टर्न Tibet है एटी जानि रखो सेंट्रल Tibet ईस्ट Tibet सेंट्रल देन वेस्टर्न Tibet तो कैलाश आउ मानसरोवर जोड़ा अछंती समान अछंती वेस्टर्न Tibet रे क्वेश्चन जदि तुमको पचारियो तुम एतिक जानिबो these are all here in the western Tibet province right western Tibet province so एटी तुम देखुछो near Mansarovar lake at an altitude from the glaciers of the Kailash range in the western Tibet it enters India at an altitude 4260 मीटर इंडिया को एंटर करछि केतरे हला अल्टीट्यूड 4206 मीटर अल्टीट्यूड रे से इंडिया को एंटर करछि इंडस हला जो तुम देखुछो एटी 4206 रे इंडिया को एंटर करछि एई जगह रे इंडिया को एंटर करछि कोठी वर्तमान देखियो इंडिया को एंटर करछि को प्रोविंस टा एटा हला तमरा लद्दाख प्रोविंस दिस इज योर लद्दाख हला लद्दाख यूटी हला दिस इज यूनियन टेरिटरी दिस इज ए पार्ट टा हला एटी तुम मैप रे भी तुम देखि परिबो लद्दाख हला दीटा हमर डिवाइड हेछि आर्टिकल 370 एतला हमर हला इंडिया फॉर्म्स इनटू टू डिविजन्स यूटी वन इज योर लद्दाख अनदर इज योर जम्मू कश्मीर एटी देखौ छि पूरा लद्दाख देखुछ पूरा इंडस एटी एंटर करछि हला क्वेश्चन पचाले तुम एटा देखियो लद्दाख रे से एंटर करछि जम्मू कश्मीर रे नुह
ओके जिते तुम मैप पढ़ुच टिके क्लियर विजन रे पढ़ इट विल बी वेरी हेल्पफुल आउट राइट पुन देखिए कौन enters India at an altitude 4260 meter flowing through Ladakh. It joined by its right bank tributaries. Indus ro major right bank tributaries अच्छी that is किए श्योक सिगार है किए ठीक अच्छे तो देखिले आम सियक सिगार ये देखेबी सियक सिगार सुरु झास्कार काबुल अस्तर गिलगिट गोटांग हुंजा एंड द्रास है तो ये सब यही रिवर गुड़ा तुम ये केमती मैप रे तुम केमती पाइबो तुमको लगुथो सर आम केमती पाइबू सब जगह ये मैप रे देछि सियक है तुम यही प्रथम पेज रे देखिबो है माने प्राय तुम ये पाइज जमी ऊपर मोर देखा कंप्लीट ये देखा तुम सियक रिवर जाइए देखो ये देख देवसांग देवसांग पास पाखे पॉइंट पाखे देवसांग पाखे ये देख सियक जाइए देख ये देख सियक रिवर ये पूरा कंप्लीट लिखाई सियक रिवर काबुल रिवर सेमती अस्तर गिलगिट ये सब प्राय देछि ये जगह देखो इंडस इंडस तलक ये अस्तर देछि एपटे गिलगिट देछि हैला गिलगिट बाल्टिस्तान जोड़ा है सेटा गिलगिट हैला रिवर रही पर्टिकुलरली ठीक अच्छे सेठी कौन है एंड हुंजा एंड द्रास रिवर है पर्टिकुलरली एमाने राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज एमाने कहार है इंडस दीटा थाए गोटे रिवर सब बड़े मन रखी था यहाँ तार इंडस एमती बहुची इंडस जो पटू यहाँ तुम जो कौटी समुद्र ये सी है आईटा तुम सोर्स जो बाहरी यही पटा जोटा रहा है एपटा तुम एपट आड़ को मुह कर जो फ्लो होची है ठीक अच्छे तो एपट है तुम ठीक अच्छे दिस इज योर लेफ्ट बैंक एम राइट बैंक है जो मैंने एपट को बहुत एपट को रही इंडस धर इंडस एपट को बहला एपट को तुम राइट एपट को तुम लेफ्ट ठीक अच्छे यहाँ मन रखिए सब सब नदी केस रे एप्लिकेबल है सेमती नियर मिथानकोट मुझे कहबी अप्रोक्सीमेट मिथानकोट कथा जब मुझे कहबी पाकिस्तान रे मिथानकोट को जगह पाकिस्तान गोटे जगह है दैट इज योर मिथानकोट है इट इज जॉइंड बाय इस लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज किए लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज योर झेलम चेनाब रबी बीज एंड सतलुज है तार मिथानकोट पाकिस्तान को जगह मिथानकोट इज हियर है तो ये कौन कर मिथानकोट पाखे इट जॉइंड बाय इट्स लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज मुझे तुमको आउटे पूर्व कही तार लेफ्ट बैंक इंडस दीटा अच्छा लेफ्ट बैंक आउ राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज ये तुम देख है एपटे लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज किए जॉइन कर कौ अच्छा ये मेजरली प्रथम आसला तुम झेलम चेनाब रबी एटा सतलुज सब तले देन ऊपर है छोटियाटा है बीज ये पांचटा मेन इंडस्ट्रियल लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज माने झेलम चेनाब बीज रबी आउ सतलुज है ये मेजर ये मान मन रख है किए इंडस्ट्री दे आर ऑल लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ इंडस मैं जान ले बाकी जोड़ा है तुम सेपटा राइट ठीक अच्छे तो है जोटा कि तुम ये मैप रे भी तुम जो देख ये क्लीयरली ये देख ये पूरा क्लीयरली देखाई तुम है इंडस रे तुम देखुच मैप रे बहुत सुंदर भाव में देखी केमती झेलम चेनाब रबी बी सतलुज सब मैंने ये जो या भर प्राय समस्ते मैंने इंडस माने देखिए जब समस्ते इंडिया रे बहती किंतु जो पीओ के अलग है जोटा कि बर्तमान कंट्रोवर्शियल डिस्प्यूटेड लैंड है ता भर छड़ा जब इंडिया जब देखिए तुम पर्टिकुलरली
बी सतलुज और रबी आमर मेनली फ्लो कर पीओके रे तमर रोच किए योर झेलम आउ चेन्नाब है काश्मीर भी सेपटे रोचे काश्मीर यदि देखिए तुम झेलम भी देखिए चेन्नाब भी देखिए है बट मेजरली तुम पाइब है रबी बी सतलुज आउ चेन्नाब एम समस्त आमर कौटी ये बाहरी कौटी है इंडिया मैंने प्रायतः मैंने ओरिजिन सतलुज है तुम बाहर कैलाश माउंटेन रू है झेलम भी सेपटू बाहर बाकी यही तीन टा तुम कौटू हिमाचल प्रदेश मैंने मोस्टली दे evolved in the mountains of है हिमाचल प्रदेश है हिमाचल रू से बाहरी हिमाचल ठीक अच्छे यहाँ मन रखी थो सतलुज और झेलम बाहर है इंडिया बाहर क्वेश्चन पचार चेन्नाब रबी बीज है तुम हिमाचल प्रदेश मैंने बाहर फाइनली देखिए जदि है इंडस डिस्चार्ज इज वाटर इनटू द अरेबियन सी नियर कराची है नियर कराची पाखे इंडस ड्रेन है जो देखिए इंडस है कराची पाखे ये देख देख दिस इज कराची इंडस इंडस रिवरटा यहाँ कराची दिस इज कराची ठीक अच्छे कराची है पार्ट रे कराची पाखे ये से ड्रेन नहीं है देखिए तुम पर्टिकुलरली सिंध पंजाब प्रोविंस यही पाखे तुम ये तुम ड्रेन नहीं कराची पाखे है फाइनाली अरेबियन सी पाखे सी तुम ड्रेन नहीं ठीक अच्छे ओके नेक्स्ट पुणी आम कंटिन्यू करवा तुम झेलम रू नहीं पुणी अलग गुड़ा आ बाकी हिमालयन रिवर्स गंगा सिस्टम पूरा कवर है जो दिखाई तुम डायरेक्टली यू कैन लैंड टू आवर पीडब्ल्यू योर कोर्स पेज जो कि तुम बहुत जिन तुम जापर पीडब्ल्यू रो सब्जेक्ट रे को कोर्स प्रोवाइड कराऊँगी है दिस इज द वे दैट यू कैन डायरेक्टली एक्सेस टू आवर कोर्सेस देयर एंड डेफिनेटली जदि कहबी है पीडब्ल्यू जहाँ भी जो जिनस अच्छी इट इज रियली वेरी मच बेनिफिशियल्स फॉर ऑल है जोटा कि तुम कहली है कालिंग बेर हो कि सक्षम ओसीएस बैच हो कि विजय बैच हो कि दीक्षा बैच हो कि ओडिशा महापैक हो कि ओडिशा डिस्ट्रिक्ट पुलिस सब जिन बहुत अफोर्डेबल रेट तुम पाइपर एंड दिस इज डेफिनेटली पीडब्ल्यू इज डूइंग एंड ओपीएससी वाला तरफ इट्स एन यू नो योर डेमोक्रेटाइजिंग द एजुकेशन इज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैन एक्सेस फॉर एवरीवन ओके ठीक अच्छे थैंक यू नेक्स्ट ईयर पुणी विल स्टार्ट फ्रॉम द योर झेलम रिवर थैंक यू so we'll continue with our river system so as we discussed that one ki Himalayan rivers we have already studied India re Himalayan rivers which are also known as your extra peninsular rivers and another is your particularly we can say your peninsular rivers okay Himalayan rivers bartaman chalche Himalayan rivers let us complete Himalayan rivers part then we will go to the peninsular rivers before that mu eti kahibi ki pw tarafru we are providing the exciting offers that is basically that is your competitive exams can anyone can afford in competitive exams in a very affordable rate that is we can kalinga veer that is 699 jodi mu kahibi then Odisha police constable अच्छी then सक्षम OPSC OCS फाउंडेशंस जोटा कि ओनली तमें 4499 रे पाइबो दैट भी जदी क्लियर फिक्स्ड नोस ओनली दैट इज 6500 ओडिसा रे माने जदी देखिबो दैट इज ऑल योर अदर्स योर कोचिंग इंस्टीट्यूशन दे प्रोवाइड about more than 1 lakh here you are only get that is only less than also say 7000 rupees तमें टोटल क्लियर 360 जो कि रही पाइबो तमें एटा अप करले ओनली 1500 और 2000 मैक्स आड हम है माने 6500 भितर टोटल तुम पाइब क्लियर 360 तुम प्रिलिम्स मेन्स राइटिंग आंसर्स इवन इंटरव्यू गाइडेंस ऑल यू आर गेटिंग हियर सेमती विजय बैच रे तबे OSSC प्रिलिम्स पाइब 999 रे ओडिशा डिस्ट्रिक्ट पुलिस आल्सो जूनियर क्लर्क 1299 रे देन ओडिशा एग्जाम्स महापैक जो ओडिशा गवर्नमेंट एग्जाम्स सब पाइब महापैक दैट इज 4 है जो कि से भी 4999 रे ऑल एवरी एग्जाम्स महापैक रे ऑल आर इंक्लूडेड हियर दीक्षा बैच रे आल्सो इंडिकेटेड OCS बैच जो कि 1999 आल्सो यू आर गेटिंग दीक्षा बैच रे राइट
सो इंडिया आम देखा लिंक भी तुमको मझे प्रोवाइड कराई जो कि तुम यू कैन गेट इट नो आल्सो फ्रॉम द लिंक्स आल्सो हिमालयन रिवर्स जो अगेन मुझे कहबी अगेन दिस इज विंध्या विंध्यार एपट को जब मुझे कहबी विंध्या माउंटेन्स दिस इज योर विंध्या माउंटेन्स ऊपर को जब मुझे कहबी दिस इज योर विंध्या विंध्या विंध्यार ऊपर को हिमालयन विंध्या तौक को तुम मेजोरिटी और पेनिनसुला रिवर्स राइट पेनिनसुला रिवर्स इंडस वी हैव कंप्लीटेड झेलम कथा जो मुझे कहबी झेलम रिवर्स दैट ऑरिजिनेट्स at Verinag है झेलम कोड बाहर इट ऑरिजिनेट्स इन द वेरीनाग at an altitude of 4900 मीटर है झेलम बाहर कोड वेरीनाग रू दैट इज altitude of 4900 मीटर 4900 मीटर पूरा बाहर ईस्ट ऑफ द उल्लार लेक है ईस्ट ऑफ द उल्लार लेक माने कोडी अछि हमर उल्लार लेक जदि म कहबी उल्लार लेक इज इन जम्मू काश्मीर इटी देखो ईस्ट ऑफ द उल्लार लेक जब टी आटलास कले तुमको आहरी बेटर क्लारिटी रहिबो ईस्ट ऑफ द उल्लार लेक दिस इज ओके ईस्ट ऑफ द उल्लार लेक रे तुमर बाहर किए झेलम इट फ्लोज थ्रू द कश्मीर वैली श्रीनगर है कोड बाहर इट फ्लोज थ्रू द कश्मीर वैली इन श्रीनगर टोटल लेंथ ऑफ झेलम is 725 किलोमीटर जब मैं कहबी टोटल लेंथ ऑफ झेलम इज योर 725 किलोमीटर टोटल लेंथ है झेलम रो दैट इज 725 किलोमीटर हला वेरीनाग तुम एटी देखुछ हला उल्लार लेक ईस्ट ऑफ द तमने झेलम तमर समाव एटू बाहर छि हला उल्लार लेक रो झेलम ओके नेक्स्ट देखिबा झेलम परे देन चेनाब रिवर Chenab river it originates near Baralacha Pass in the Himachal Pradesh. हला जदि देखिबो Chenab river it is in the Baralacha Pass. है it is the Baralacha Pass in the Lahaul Spiti part of the Jhaskar range. Baralacha Pass रो जदि म कहबी हला originates in the Baralacha Pass. Baralacha Pass it is the famous pass that we know that is in your it is in the Himachal Pradesh. This is in Himachal Pradesh. Baralacha Pass. This is in Himachal Pradesh. Lahul Spiti part of the Jhaskar range. Total length is your 1800 kilometer. Pakhapaki. Total length is your 1800 kilometer. Right? Total length is your 1800 kilometer. The elevation where it originates, it is 5000 meter approximately. को एलिवेशन चेनाब रिवर है एलिवेशन पाखापाखि 5000 मीटर ऊपर है बाहर माने एटा अगेन दिस इज द ग्रेटर हिमालयस मन रख ग्रेटर हिमालयस पार्ट रे तुमर चेनाब रिवर बाहर इट फ्लोज बिटवीन तुम कहबी द पीर पांजाल एंड धौलाधर रेंज दिस इज द क्वेश्चन तुमको पचारले कहा भीतर फ्लो करछि पीर पांजाल और धौलाधर रेंज भीतर देखि पास कर जस्ट यू कैन लिख हियर आल्सो देखो एटी चेनाब रिवर हला दिस इज योर चेनाब रिवर देखो एटी हला देखो एटी देखो इंडस बाहरला ई जगह रु सेम हला एटी चेनाब बाहर देख दिस इज झेलम झेलम बाहर तुम ठीक अच्छे झेलम देख ये पर्टिकुलर आम देखले झेलम बाहर तुम वेरीनाग दिस एरिया इज योर वेरीनाग जदि कह दिस एरिया इज योर वेरीनाग है वेरीनाग चेनाब रिवर ये बाहर तुम कौटू चेनाब रिवर आम देखिले बारालाचा पास पकड़ बाहर चेनाब रिवर दिस इज बारालाचा पास बारालाचा पास पकड़ ये बाहर देन रवि देन सतलुज ओके तो ये आम देखुच है तो क्वेश्चन पचारे तुमको ये पचारे पीर पांजाल और धौलाधर रेंज उपर ये भी तुम देखिपर तार डायग्राम टा दिस इज है देख दिस इज पीर पांजाल ये देखो दिस इज पीर पांजाल रेंज ये देखो दिस इज पीर पांजाल और दिस इज धौलाधर रेंज सो ये कलर चेंज कर तुमको आहरी बेटर देखा सो चेनाब रिवर टा एंक भीतर देखिए आस
Chenab river, this flows through like this one. है I mean it better, it clarity आउरी रहइबो. So it देखो, it हला Chenab river, this flows. है ता माने this is your Chenab river. it देखो, this is your Chenab. है Chenab river पड़ची ता भितरे पीर पांजाल और धोलाधार. है पीर पांजाल और धोलाधार दीटा मझिरे तमर पास करची किए your Chenab river. Okay. So हमें देखिले देन असला रवि रिवर चेनाब रिवर मन रखो अगेन चेनाब रिवर कोठी हिमाचल हैला हिमाचल रे चेनाब सेम देसला रवि रिवर ऑरिजिनेट्स नियर कुल्लू हिल्स पाखरे रवि रिवर तमर ऑरिजिनेट करची मेनली कुल्लू हिल्स पाखरे एट 4000 मीटर एलिवेशन ऊपर नियर द रोहतांग पास को जगह रे रोहतांग पास ऑफ योर हिमाचल प्रदेश है हिमाचल प्रदेश कोठी रोहतांग पास पाखरे इट टोटल लेंथ इन इंडिया इज 725 किलोमीटर जब तुम कहबी टोटल लेंथ केते पकापकी 725 किलोमीटर तमर आसी है रवि रिवर रो 725 किलोमीटर राइट है रवि जब तुम कहबी कोट जगह रे सो एठी हम जानले कि क्वेश्चन थोड़ा पचारिबो सपोज गोटे कॉलम ए और कॉलम बी कर देला सपोज कॉलम ए आउ कॉलम बी कला ठीक अछि कॉलम ए और कॉलम बी सो कॉलम ए कॉलम बी कला तमे कोन देखिबो ना जेमती एटी देला को रिवर को पास पकरे सेमते लिखिला सपोज एटी बारालाचा पास सपोज तमे लिखिला बारालाचा पास हला बारालाचा पास असला कोटू इज योर हिमाचल प्रदेश बारालाचा हला हिमाचल प्रदेश देन सेकेंड रे रोहतांग पास हला रोहतांग पास असला किए योर हला दिस इज हला हिमाचल मेडी खाली गोटेन सर्टिफिकेट रखली बारालाचा पास रे असला को नदी मेनली योर चेनाब रिवर चेनाब रिवर रोहतांग पास रे असला रवि रिवर और दीटांग अच्छी कोठी दिस इज योर हिमाचल प्रदेश रे बोथ आर इन द हिमाचल प्रदेश बोथ आर इन द हिमाचल प्रदेश रे दीटांग अच्छी द क्वेश्चन जोटा कि रवि मैक्सिमम जदि मैं कहबी मेजर पार्ट एटा रही तुमरा पंजाब रे फ्लो करछि एटी रवि मेनली फ्लो करछि कोठी पंजाब रे जस्ट यू कैन सी हियर देखो ये रवि रिवर मेजरली है इंडिया रे फ्लो कर पंजाब स्टेट रे तापरे रवि रिवर पड़ोची कोठी कि पाकिस्तान को फ्लो कर जाउची तमे सबले मन रख जेतले तमे ड्रेनेज सिस्टम पढुछ है ड्रेनेज सिस्टम रे सबुठु बड़ जिंस है रिवर फ्लोट को मार्क करबा अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट ठीक अछि रिवर सिस्टम रे सेटा सबुठु मेजर जेन तमे एटी देखुछ देख है रवि रिवर एटी देखुछ है एटी फ्लो करिकी बाहरी हिमाचल रु किंतु फ्लो करछ पाकिस्तान रे बहुत समय सॉरी पंजाब रे तापरे हमरो हला हिमाचल रु फ्लो कला परे पंजाब रे ओनली दीटा स्टेट रे रवि होईची हिमाचल और पंजाब रे तापरे से पाकिस्तान को पड़ीची रवि रिवर ठीक अछि एडा सब देखला बेले तमे पर्टिकुलरली देखि कि पढिबो करिवो अदरवाइज क्वेश्चंस तमर डायरेक्ट पचार नहांती रिवर फ्लो को सिटीज अच्छी पाखरे को स्टेट देखी जाउची जेंत मु कहली रवि तमर फ्लो कला कोठी हला रवि रिवर मेजरली फ्लो करछु कोठू को स्टेट रे इट इज योर हिमाचल एंड पंजाब हला एई बडा तमे देखिबो बाकी सब बडा करबी तमे पढिबो हिमाचल और पंजाब रे फ्लो कला परे पाकिस्तान को से एंटर करनोछ हला हिमाचल और पंजाब रे फ्लो कला परे नेक्स्ट देखो पुणी द सतलुज रिवर तापर असला कोन हमें पढिले हला को गला इथरे हमर इंडस गला झेलम गला चेनाब गला रवि गला देन सतलुज हला 20 गला लेला सतलुज देखिबो द सदर्न मोस्ट रिवर ला सतलुज तमरो ठीक अछि हला सतलुज द लॉन्गेस्ट अमंग ऑल 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस सॉरी भूल ले छै एरा इंडस इंडिया भूल ले टाइप एरर हे छै all 5 river of your
इंडस हला जति की भी रिवर अछंती ऑल 5 रिवर्स ट्रिब्यूटरीज इंडस रो ता भीतर हला तमरो सतलुज हला among the longest of all 5 tributaries जति 5 tributaries अछंती in sanskrit its name is your satadrum हला संस्कृत रा को कोन कहा जाय it is your satadrum सतलुज हला सतद्रु ठीक अछि संस्कृत को कहा जाय इट इज योर सतद्रु सतद्रु को सतद्रुम कहा जाय इट ओरिजिनेट्स एट तिब्बत प्रोविंस हला तिब्बत प्रोविंस पाखरे एटा ओरिजिनेट करछि तिब्बत प्रोविंस पाखरे नियर लेक हला रक्षास्थल जोटा कि राकास कहा अछि ठीक अछि मानसरोवर लेक पाखरे जोटा अछि सेटा हला तमरो राकास लेक और रक्षास्थल एटी देखो मानसरोवर पाखरे ये देखो लेक राकास और लेक रक्षास्थल ये देखो लेक राकास और लक्ष्यस्थल ठीक है ये देखो राकास और लक्ष्यस्थल ठीक अछि राकास और रक्षास्थल सेठू बाहर तमर सतलुज ठीक अछि आरो जदी देखियो तमे पौराणिक पारे जदी तमे देखियो योर माइथोलॉजिकली हला लॉट्स ऑफ सिग्निफिकेंस एथरे अछि लेक राकास और लक्ष्यस्थल एटा को मेनली कंट्रोल करछि के इंडो आईटीबीपी पुलिस इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस लेक राकास हला एट एन एलिवेशन 4580 मीटर तमे इटी देखि परछो लेक राकास एटी देखो दिस इज हला ठीक अछि सतलुज सतलुज बाहर छै एटी एही जगह रे हला लेक राकास माउंट कैलाश पाखरे एटी हला तमरो लेक राकास और लक्ष्यस्थल तक कहा जाय लेक राकास और रक्षास्थल ये देखुच लेक राकास और रक्षास्थल ये जगह ठीक अच्छे नेक्स्ट द टोटल लेंथ इज 1500 मीटर यदि टोटल लेंथ देखिबो 1500 किलोमीटर हला सॉरी टोटल लेंथ हला जदि हम सतलुज देखिबा 1500 किलोमीटर हला सतलुज रो हला इट फ्लोज बिटवीन द पीर पांजाल एंड धौलाधर रेंज हला तो देखियो पीर पांजाल और धौलाधर रेंज भितरे से फ्लो करछि के सतलुज रिवर पीर पांजाल और धौलाधर रेंज भितरे द फेमस वाकरानंगल डैम जदि कहबी द फेमस वाकरानंगल डैम हाईएस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम इज ऑन सतलुज रिवर हला फेमस वाकरानंगल डैम जदि देखियो ए हाईएस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम इज ऑन सतलुज रिवर ऊपर ही से अछि हला वाकरानंगल डैम हाईएस्ट कंक्रीट भाकरानंगल डैम जदि मु तुम कहबी हला इंडिया हला वन ऑफ द मेजर मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट हला भाकरानंगल डैम और भाकरानंगल डैम ऊपर जदि मु कहबी हला भाकरानंगल डैम भाकरा हला दिटा अलगा मन रखो एटी मु कहि दोची भाकरा प्लस नंगल दिटा अलगा अलगा अछि भाकरा और नंगल भाकरा जदि देखिबो भाकरा हला गोटे डैम जोटा रिजर्वायर जोटा के अछि तमरो हिमाचल प्रदेश रे और नंगल जोड़ा तमरो कोडी पंजाब हला भाकरा और नंगल दीटा भाकरा हला हिमाचल प्रदेश रे नंगल हला तमर कोडी पंजाब हला भाकरा और नंगल हला सतलुज जो तुम कहबी सतलुज हला वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर जति की ट्रिब्यूटरी अछंती ट्रिब्यूटरी देखलो पांचटा ट्रिब्यूटरी इंडस रे तुम जानलो कोन कोन ट्रिब्यूटरी प्रथमे इंडस रो पांचटा ट्रिब्यूटरी झेलम चेनाब रबी बीज और सतलुज सतलुज है सबुठु लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ योर इंडस एटा मन रखियो एटा तुम देखुछो सेटा टोटल ठीक अछि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी तमर आछी नेक्स्ट आस के बीज रिवर हला बीज रिवर तुम एटी कोड देखुछो एटी सतलुज संगरे देखो गोटे रिवर तमर आछी एटी बीज रिवर एटी हला बीज और जदि तुम ये आटलास भी देखुच आटलास भी तुमको क्लीयरली ये देखा देख ये देख पूरा क्लीयरली ये देख भल भाव फिजिकल देख पॉलिटिकल कलरफुल अच्छे बोली देखा देख सतलुज रिवर किंतु ऊपर देख बीज रिवर कौन कर बाट माने फ्लो कला पर सतलुज संगे मिसी जाइए कोटी पंजाब है कौन लिखली The Beej River originates at an elevation 3960 meter 3960 मीटर पाखरे बीज रिवर बाहर नियर कुल्लू हिल्स
है कुल्लू हिल्स पाखे बाहर इन द रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश है रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश पाखे से बाहर है एंड इट्स टोटल लेंथ इज 470 किलोमीटर इन इंडिया जब तुम कह टोटल के 470 किलोमीटर इन इंडिया किए बीज रिवर जब तुम देखिए टोटल के लेंथ है 470 किलोमीटर है टोटल लेंथ इज योर 470 किलोमीटर राइट तो संस्कृत नेम इज विपाशा बीज रो ना कौन संस्कृत ना है तोर विपाशा विपाशा ताको कह जाए बीज रो ना है तुम विपाशा अगेन बीज रिवर क्रॉसेस द धौलाधर रेंज थ्रू ए डीप गर्ज ठीक अच्छे है इट जॉइंस द सतलुज नियर हरिकेन पंजाब तुम ये देखुच बीज रिवर कौन हो तुम बाहर कौटू तुम कुल्लू हिल्स कौटी देख तुम बीज रिवर ऑरिजिनेट्स नियर कुल्लू हिल्स रोहतांग पास पाखर से बाहर जब तुम ये देखुच पूर्वर ये कौन तुम देख ये रोहतांग पास किए बाहर रवि बाहर आउ रोहतांग पास देख तुम सर्टकट लिखुच ये किए बाहर ये बीज रिवर भी बाहर बीज रिवर ऑल्सो ऑरिजिनेट्स हियर है सो रोहतांग पास किए बाहर दीटा बाहर तुम रवि भी बाहर आउ बीज रिवर भी बाहर दी जन जाक बाहर एटू सो बीज रिवर तुम देखुच आसी कोडी पंजाब रो गोटे एरिया अछि कपूरथला तुम जदि एटलास रे देखुच ये क्लियरली देखा कपूरथला गोटे अच्छी फिरोजपुर कपूरथला से पाखापाखी एरिया रे बीज मिसी कोडी सतलुज संगे मन रख कपूरथला एरिया आउ फिरोजपुर पाखे पाखापाखी तुम बीज मिसी कोडी क्या संगे मिसी तुम है सतलुज संगे है ये आमर नीचे रे लिंक दिखाई जो मैंने डायरेक्टली यू कैन यूज दिस लिंक ए लिंक थ्रू रे तुम आमर पीडब्ल्यू तरफ जो भी कोर्स प्रोवाइड करा यू कैन डायरेक्टली यू कैन access to that part how you will have the know how of in detail ठीक अच्छे you can use this link next so वर्तमान आसीबा so इंडस रिवर सिस्टम हमें देखिले पढ़िले हला इंडस विषय तुम जान लो इंडस जान लो झेलम जान लो चेनाब जान लो रवि बीज सतलुज सब ऊपर जान लो वर्तमान में आसीबा द गंगा रिवर सिस्टम को कह जेंति इंडस सिस्टम गला सेमति गंगा रिवर सिस्टम भी गोटे बहुत मेजर पार्ट है गंगा रिवर सिस्टम भी सेमती गोटे मेजर पार्ट गंगा ऊपर जब हम जानिबा कौन कौन गंगा है इंडिया है नेशनल रिवर कह जाए गंगा है गंगा जदि तुम देखुच तार यहाँ है टोटल गंगा रिवर सिस्टम बहुत बड़ गंगा रिवर सिस्टम गोटे बहुत बड़ रिवर सिस्टम गंगा को बुझाए गंगा कहला माने खाली नुह गोटे रिवर गंगा सिस्टम माने ये कौन कह गंगा रिवर सिस्टम माने द रिवर गंगा एंड its tributaries and distributaries ठीक है जी ट्राइब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज गंगा सिस्टम माने कौन है रिवर गंगा माने मेन चैनल प्लस ट्राइब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी जीवा देखिबा आगु कौन कौन The river Ganga जब देखिबा it originates as भागीरथी जोटे हम पुराण रे भी लिखा है हैला गंगा ऊपर गंगा originates as भागीरथी from the गंगोत्री ग्लेशियर हैला गंगोत्री ग्लेशियर से बाहर छी गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हैला उत्तराखंड रे बाहर छी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट रे and joined by another stream that is अलकानंदा at देवप्रयाग तो कौन रोची है गंगा ऑरिजिनेट्स करछि भागीरथी फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर बाहर करछि उत्तराखंड रे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट रे एंड जॉइंड बाय अनदर स्ट्रीम दैट इज अलकानंदा एट देवप्रयाग ता माने जदी कहबी गंगा एज ए स्ट्रीम एंती आसुनी हैला प्रथम आसी भागीरथी देन अलकानंदा इटी जॉइंट स्ट्रीम दिस इज योर भागीरथी this is alkananda
कंबाइंड स्ट्रीम जोटी होची सेटा हला तमरो दिस इज योर एटा हला तमरो रिवर गंगा और कोड साउंड मिशन दिस इज योर देव प्रयाग दिस इज योर देव प्रयाग ठीक है the combined stream of Alkananda and Bhagirathi from Gomukh flows the Ganga below Devprayag. The total length is 2525. तुम एटी देखि परिबो हैला एटी तुम देखुछो हैला ए मैप रे हैला ठीक अछि दिस इज भागीरथी एटी देखुछो दिस इज भागीरथी और एपटल टोटल अलकानंदा स्ट्रीम दिस इज योर अलकानंदा मिसुचंदी कोठी देवप्रयाग रे एटा टोटली मु बुझेबी तुम मानकु पंच प्रयाग जोटा तमर परीक्षा क्वेश्चन पड़े पंच प्रयाग ऊपर है ता पूर्व देखिबा ठीक अछि तो टोटल लेंथ गंगा हला केते 2525 किलोमीटर माने पाखा पाखी इंडिया सबुडु जदी देखिबो हला लॉन्गेस्ट रिवर जदी कहजो कोन गंगा रिवर इज द longest river in India longest river in India ठीक है गंगा कौन कह जाए द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया अच्छा ता पूर्व में ट्राइब्यूटरी आसा पूर्व प्रथम पढ़ा कि पंच प्रयाग किए मुझे लिखी दूसरी पंच प्रयाग इंपोर्टेंस अबाउट योर पंच प्रयाग है इट इज योर पंच प्रयाग है पंच प्रयाग रे किए है पंच प्रयाग रे नंबर 1 मु कहबी पंच प्रयाग है देख ये गोटे जिन तुम देखुच पांचटा प्रयाग रे अलकानंदा है सब मेजर स्ट्रीम हेड स्ट्रीम अलकानंदा सांगे समस्त मिशुचंती ठीक अच्छे जेन तुम कहली प्रथम आसला तुम आसला किए विष्णु प्रयाग ये है नंबर 1 देन नंद प्रयाग नंबर 2 देन कर्ण प्रयाग नंबर 3 देन रुद्र प्रयाग नंबर 4 देन देव प्रयाग नंबर 5 तो अलकानंदा सांगे किए बसुँच मुझे कहबी है ये देख प्रथम है कौन प्रथम देखला आम विष्णु प्रयाग मुझे लिखुची विष्णु प्रयाग है देन नंद प्रयाग देन विष्णु प्रयाग नंद प्रयाग देन कर्ण प्रयाग देन रुद्र प्रयाग एटा सब है लिखि नब रुद्र प्रयाग देन योर फिफ्थ रे इट इज योर देव प्रयाग ठीक अच्छे तो विष्णु प्रयाग रे किए दियो प्रथम अलकानंदा सांगे किए अलकानंदा सब जगह अलकानंदा को रिवर फॉर्म होके एटा रोची अलकानंदा रहा बुझ केमती इजिली मुझे तुमको कहीदे केमती तुम इजी बार ये अलकानंदा देन दिस इज ऑल्सो अलकानंदा कौन देख अलकानंदा सांगे किए रहा धोली गंगा देन है विष्णु प्रयाग नंद प्रयाग रे किए है नंदाकिनी अलकानंदा सांगे किए रहा धोली गंगा देन नंदाकिनी है कौन कहली अलकानंदा सांगे दिस इज योर है विष्णु प्रयाग की फॉर्मेशन होची धोली गंगा है धोली गंगा मिसिकी होची तमरो विष्णु प्रयाग देन नंदाकिनी इट इज योर नंदाकिनी देखो ये नंद प्रयाग रे क्रिया आसी नंदाकिनी है धोली गंगा
देन नंदाकिनी नंदाकिनी आसी होची नंद प्रयाग रे नंदाकिनी देन पिंडार गंगा आसी कर्ण प्रयाग हला देन पिंडार गंगा एटी मु कोन लिखली दिस इज योर पिंडार गंगा हला पिंडार गंगा अलकानंदा पिंडार पिंडार गंगा मिसी कोन हेले योर कर्ण प्रयाग हला अलकानंदा आउ की रहला कर्ण प्रयाग हला अलकानंदा आउ पिंडार गंगा सेमती अलकानंदा संगरे रुद्रप्रयाग किए मिसी मंदाकिनी देखो एटी की रोची मंदाकिनी दिस इज द सी मंदाकिनी इज हियर दिस इज मंदाकिनी हला मंदाकिनी देखुछ मंदाकिनी टी बाहर दिस इज मंदाकिनी केदारनाथ रो बाहर हला these are all as per Hindu mythology these are all your pious river हला बहुत ही sacred river है मानसु then finally your भागीरथी देव प्रयाग जोटा हमें देखिले एठी हला सो मंदाकिनी हला then your भागीरथी तो एठी हमें जान ले पांचटा प्रयाग विष्णु प्रयाग नंद प्रयाग कर्ण प्रयाग रुद्र प्रयाग एंड देव प्रयाग दे ऑल हला जो प्रयाग अछि अलकानंदा हला मेन मेजर स्ट्रीम अलकानंदा संगे एमाने मिसी की दिस प्रयाग करछन दिस हला पांच प्रयाग हला सो दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया इतर क्वेश्चन पचले आराम से तुम करि परियो ता पूर्व देखो एडी जो कहबी को ग्लेशियर को रिवर बाहर जेमति फॉर एग्जांपल अलकानंदा कोड वाला बद्रीनाथ रु हला एडी हला अलकानंदा हला बद्रीनाथ रु सेमति तमरा मंदाकिनी बाहरला केदारनाथ रु भागीरथी बाहरला गंगोत्री ग्लेशियर रु यमुनोत्री रु किए बाहरला यमुना ग्लेशियर यमुनोत्री ग्लेशियर किए बाहरला यमुना रिवर तो हमें जानले कोन हला यमुनोत्री रु यमुना गंगा हला गंगोत्री हला जोड़ा कि हमें भागीरथी कहूँ भागीरथी हला तमर गंगोत्री यमुना भागीरथी पुराण रे भागीरथी को मेन कुआ होची गंगा हला एक्चुअली भागीरथी सेमती मंदाकिनी कुआ होची काकू केदारनाथ को आउ अलकानंदा हला तमरा बद्रीनाथ को ठीक अछि अलकानंदा हला बद्रीनाथ हला बर्तन आगु जीवा सेमती हला आउ कोन चले मेजर ट्रिब्यूटरीज के गंगा जेहेतु बहुत बड़ रिवर हला एगुडा मु करछि तो सेही अनुसार तमे देखि देबो को ट्रिब्यूटरीज पाखरे की मेजर अछि जेमति ट्रिब्यूटरीज रे की द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा आर मेनली हला यमुना रामगंगा गंडक काली मेजर की मेजर ट्रिब्यूटरी हला यमुना रामगंगा गंडक काली घाघरा कोसी बूढ़ी गंडक हला घाघरा कोसी बूढ़ी गंडक बागमती गोमती टॉन्स सोन महानंदा घुराई कमला दामोदर जलांगी भैरव गोराई एंड मतभंगा माने सब मेजर ट्रिब्यूटरीज केमती तुम देखियो म तुमको एठी कहि दोछि कोड तुम देखियो ई जिंस गुडा हला फिजिकल पॉलिटिकल बहुत अंग देखिया पड़ियो सब जंग रिवर गोटे जगह मिलबनी जमी तुम फिजिकल देखुच फिजिकल एटी मैक्सिमम जिन तुम एपटू पाइज फिजिकल रे हला एटी भी देखि परियो दिस इज आल्सो यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर आल्सो हला फिजिकल रे भी हला पॉलिटिकल दिस इज आल्सो फिजिकल जेटी तुम देखुच मैक्सिमम जिन पाइप रे को रिवर को पाखरे जाइछन की हला हु आर क्रॉसिंग दैट वन हला फिजिकल पॉलिटिकल जेमती मु कहि फॉर एग्जांपल एटी आ गोटे मु चालली किए जेमती फॉर एग्जांपल मु नेली एटी पुनपुन हला पुनपुन रिवर जति मु कहिबी पुनपुन हला तमर जति फॉर एग्जांपल तमे देखो बिहार पटना खोलो पटना र शहर हला तमर पुनपुन रिवर ऊपर एटी देखो पुनपुन पटना सिटी Patna जो अच्छी बिहार कैपिटल दैट इज लोकेटेड ऑन नियर द बैंक ऑफ योर पुनपुन रिवर जैसे फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग हैला पुनपुन रिवर इज एन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा हैला द पटना सिटी located on its bank हैला located on its bank पुनपुन रो
ठीक अच्छे सेमती तुम देखो जमी कह जाए कि बिहार रो दुख किए जमी कह जाए कोसी रिवर इज द दिस इज कोसी कह जाए कौन द सरो ऑफ बिहार है सरो ऑफ बिहार बिहार क्या कह जाए कोसी रिवर को कह जाए द सरो ऑफ बिहार सेमती ओडी गंडक बागमती तुम प्रायतः देखो समस्ते ये रिवर गुड़ा प्रायतः नेपाल सब आसान प्राय नेपाल सब खसी है नेपाल खसिक से रोचे मोस्टली दे केम फ्रॉम नेपाल सेमती घोड़ाई कमला दामोदर है दामोदर जमी कह वंस अपन ए टाइम जमी कह दामोदर है द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर सब पॉल्यूटेड रिवर भितर दामोदर को गणा होता बट बर्तमान दामोदर इज मोर with the effect with the effort of your government है दामोदर इज नाउ वन ऑफ द क्लीन रिवर इन इंडिया दामोदर जो देखियो मैक्सिमम दामोदर कोठी बोइछि दामोदर को कह सर ऑफ बेंगल वेस्ट बेंगल एंड झारखंड रे दामोदर मेन बोइछि है वेस्ट बेंगल आउ झारखंड रे तुम दामोदर रिवर टा मेजरली फ्लो करछि कोठी वेस्ट बेंगल आउ दामोदर केमती गोमती टॉन्स सोन है महानंदा एमाने समस्त बोलते सोन रिवर जमी कहबी सोन रिवर ये दीटा जिन तुमको कहबी है सोन रिवर इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा गंगार जी अच्छा सोन है तुम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा है सोन अच्छा तो ये आम जानले दिज आर द मेजर योर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा मुझे तुमको सजेस्ट करी कौ कौ जगह दे कौ सिटी देखी सब रिवर कर प्रायतः मैक्सिमम तुम देख मोस्टली हिमालयन रिवर्स गुड़ा गंगार प्रायतः से नेपाल रू बाहरी नेपाल रू बाहर से मैक्सिमम बिहार उत्तर प्रदेश और वेस्ट बेंगल देखी जाइछन्ति गंगार मैक्सिमम जदि तुम देखिबो को तीनटा स्टेट है किए किए बिहार प्रथम है यूपी बिहार और वेस्ट बेंगल गंगार ये तीनटा स्टेट मेजरली है ये तीनटा स्टेट गंगार है गंगार मैक्सिमम जो ट्रिब्यूटरी सिस्टम टा अच्छी तीनटा स्टेट जब तुम क्वेश्चन पचारे तुम आंसर हम कौन है मेजर है कौन लिखुचे मेजर गंगा बेसिन lies in these three states है ये तीनटा स्टेट रे गंगा बेसिन मेनली रोच है ये तीनटा दिस थ्री है यूपी बिहार आउ वेस्ट बेंगल ये तीनटा भितर रोच मेजरली है ठीक अच्छे सेमती देखीदेव जमी सोन कहुए सोन विषय में अलरेडी जानते सोन बाहर तुम कौटू आमर कंटक बाहर की नॉर्थवर्ड फ्लो हो मन रख सोन इज द रिवर जोटा कि नॉर्थवर्ड फ्लो हो गंगार जाकि मिसी मन रख तुमको ये कही जमती कौन करी सोन रिवर कथा मन पड़े सोन रिवर कथा मुझे कही इज योर ये तुम कही दिस इज योर नर्मदा है दिस इज सोन रिवर आउट बाहर किए महानदी आम दिस इज योर महानदी आगर भी कही सोन रिवर इटू जाइए गंगा फ्लो कर दिस इज योर गंगा मेजरली सोन जाइए मिसी दिस इज नॉर्थवर्ड फ्लो सोन फ्लो कर कौटू नॉर्थवर्ड फ्लो को सोन फ्लो कर then Hooghly river again Hooghly river is one of the major distributaries of Ganga that flows through the Kolkata Hooghly river को जनरल तुम जानते हो कि हावड़ा ब्रिज जो अच्छे हावड़ा ब्रिज सपोज मुझे कहली Hooghly river रो हावड़ा ब्रिज है ये धरली हावड़ा ब्रिज
है हावड़ा ब्रिज इन कोलकाता, हावड़ा ब्रिज इन कोलकाता वेस्ट बेंगल रे इज ऑन कोडी, इज ऑन रिवर हुगली है। आ हुगली है तुम डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, मन रख हुगली है कौन, इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, हुगली रिवर। ठीक अच्छे, सो दिस इज ऑल अबाउट गंगा ऊपर गले। नेक्स्ट आम आसला यमुना रिवर। जेमती तुम गंगा देख सेमती यमुना रिवर भी गोटे बहुत बड़ सिस्टम। यमुना है गंगार राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मेजर। ठीक अच्छे, यमुना रिवर कौन कहली, द यमुना रिवर ऑरिजिनेट्स वेस्ट ऑफ द गंगा। गंगार वेस्ट तुम बाहर किए यमुना रिवर ऑफ द गंगा सोर्स एट एन एलिवेशन ऑफ 6330 मीटर ऑफ एन यमुनोत्री ग्लेशियर। ये देख लो गंगा जमी बाहर कौटी राइट, ये यमुनोत्री ग्लेशियर रु किए बाहर यमुना, यमुना बाहर कौटू यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक अच्छे, ये देख पूरा दिल्ली शहर जो अच्छे ये देखुच यमुना, दिस इज यमुना, देखुच तुम यमुना शहर, दिस इज यमुना, दिस इज न्यू दिल्ली है। यमुना ये बाहर यमुना आसिक ये रही यमुना, दिस इज यमुना मेजरली फ्लो हाउ इट हैज मिस इलाहाबाद। ठीक अच्छे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक अच्छे, एपटा है तुम लेफ्ट है गंगार, एपटा है तुम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो यमुनार भी सेमती मेजर अच्छा किए किए यमुना तुम देख चंबल बानस पढ़ा आगू। यमुना है यमुनोत्री ग्लेशियर वन ऑफ द इंपोर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। गंगार यदि वन ऑफ द गोटे इंपोर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है तुम किए, दैट इज योर है यमुना रिवर, यमुना मेनली। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ है यमुना आर चंबल, बेटवा, केन, सिंध, रिंद एंड बगाहिन रिवर है। कौन कहली, चंबल, बेटवा, केन, सिंध, रिंद एंड बगाहिन रिवर है योर यमुनार इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी। देखिए जमती मुझे कहली तुम केमती देख एग्जाम पढ़ला बेले देख मुझे कही केमती केमती सब क्वेश्चन तुम आसो। फॉर एग्जांपल मु कहली चंबल, चंबल रिवर तुम देखुच चंबल, काली सिंध, पार्वती, सिंध है सेमती बेटवा, केन एम सब है। आउ एपटे चंबल किए इंपोर्टेंट है बानस, चंबल भी किए इंपोर्टेंट किए है चंबल बानस है। तुम कौन जान लो चंबल इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज किए है चंबल, बेटवा, केन, सिंध, रिंद एंड बगाहिन है। तुम ये भी देखुच तुम चंबल पुणी चंबल ट्रिब्यूटरी अच्छा किए काली सिंध आउ पार्वती। सेमती तुम जदि आटलास खोलुच चंबल गोटे टिके खोल देख उज्जैन सिटी ये देख दिस इज चंबल है। चंबल गोटे अच्छी सिप्रा रिवर मन रख। चंबल यदि किए देखुच काली सिंध आ गोटे ठीक अच्छे चंबल को किए सिप्रा रिवर मुझे कहली किए चंबल ये कर दूसरी डायग्राम ये कर सिप्रा रिवर सिप्रा है। फॉर एग्जांपल जमती द फेमस महाकाल टेम्पल है महाकाल टेम्पल महाकालेश्वर वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग सब बड़ ज्योतिर्लिंग जब कहि महाकालेश्वर टेम्पल महाकाल बाबांकर है कौटी सिप्रा रिवर ऊपर दिस इज ठीक अच्छे महाकालेश्वर टेम्पल ये कहली फेमस उज्जैन टेम्पल जब मुझे कहि फेमस उज्जैन टेम्पल कौटी यही सिप्रा रिवर ऊपर से अच्छी है कौटी उज्जैन है महाकालेश्वर टेम्पल कर ये बाबा ये सिप्रा रिवर ऊपर
तुम जब पॉलिटिकल मैप खोल पॉलिटिकल मैप रे तुमको आहुरी क्लारिटी देखियो मन रख बिना मैप रे तुम जब रिवर सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम देखुच इट इज वेरी डिफिकल्ट तो देखी पढ़ डायग्राम रे तुमको बहुत हेल्पफुल रहिबो इनफैक्ट तुम जानि परिबो तुमरो क्लैरिटी रहिबो तुमको ये रहिबो जेम एठी देखुछ तुम एही देखो ठीक अछि चंबल एठी सिप्रा देखुछ एठी पर्टिकुलर सब जिंस एठी देछि हैला पुणी देखिबा हैला उज्जैन सिप्रा सेमती चंबल उपरे तमरो अगेन दीटा बड़ बड़ परीक्षा रे पचारथिले दीटा मल्टीपर्पस डैम बनाई बड़ बड़ डैम अगेन एठी मु लिखुची टू मेजर एठी मु लिखिबी टू मेजर हैला मल्टीपर्पस डैम मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट river valley project has made on Chambal river data one is your data multipurpose dam one is your Rana Pratap Sagar हला एटी तुम देखुच दीटा जिनस गोटे है तुम एटी दैट इज एटी देख तुम दीटा जिनस देछि पचास परीक्षा राणा प्रताप सागर डैम देख चंबल उपरे पॉलिटिकल देख फिजिकल देख दीटा तुम एका संगे पाइबो ठीक अछि राणा प्रताप सागर डैम एटी तुम भल भाव देखुच दिस इज राणा प्रताप सागर डैम जोटा कि राजस्थान रे अछि चंबल उपरे आ गोटे है गांधी सागर डैम हैला दीटा जिनस राणा प्रताप सागर डैम हैला कोटी इन राजस्थान ठीक अच्छे सेमती तुम गांधी सागर डैम है गांधी सागर डैम इन योर मध्य प्रदेश एमपी दीटा राणा प्रताप सागर डैम आ गोटे तुम गांधी सागर डैम एमपी है ये दीटा परीक्षा क्वेश्चन पचार मन रखियो है दिस इज वेरी इंपोर्टेंट राणा प्रताप सागर डैम आउ गांधी सागर डैम दीटा कौन है दीटा तुम चंबल रिवर ऊपर है चंबल रिवर गोटे इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना सो पढ़ला बेले तुम सब भाग भाग करके पढ़ो कि ए रिवर क्या जॉइन कर रिवर क्या जॉइन कर कौ माने मेजर प्रोजेक्ट अच्छी है सो दिज आर द थिंग्स एमती एनालिसिस करके पढ़ले तुम आहुरी तुम क्लैरिटी रहा जिनस को बुझा नेक्स्ट देखा सेमती द टोटल लेंथ ऑफ द यमुना इज 1300 किलोमीटर जब मुझे कहि टोटल लेंथ ऑफ यमुना केते इट इज द 1300 किलोमीटर 1300 किलोमीटर प्राय आसी यमुनार है इट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा है गंगार है मोस्ट लार्जेस्ट एंड इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा दैट जॉइन्स एट प्रयाग नियर अलाहाबाद जोटा कि जॉइन करछि कोठी प्रयाग नियर अलाहाबाद पाखरे सेटा जॉइन करछि ठीक अच्छे ये अगेन फिजिक्स वाला तरफ जोटा कि हमर लिंक ये लिंक तुम यूज करिवो ए लिंक यूज करे तुम डायरेक्टली है पेज रे लैंड करिवो जोथरे कि तुम वेरियस कोर्सेस जोटा कि तुमको ऑफर करा होची तार विषय तुम जाने पाइबो सब बड़ जिंस है एते बेनिफिट एते कम प्राइस रे जोटा कि तुम जानिबा बहुत जरूरी एंड टेल टू ऑल योर फ्रेंड्स दैट हाउ PW is making a revolutionary steps that everyone can attend your competitive exams in a very affordable price. Okay? So use this one, it will be helpful to all of you, right? तो हमें जान ले यमुना ऊपर जान ले यमुना जमती वर्तमान देखिबा कि यमुना ऊपर केमती फ्लड आस्तिला दिल्ली रे लास्ट ईयर हैला केजरीवाल सरकार केते हैरान गेला काहे कि ना यमुना रो तुम देखियो मैक्सिमम बैंक को एनक्रोच करा है यमुना बैंक को माडी बसी कि यमुना आर देखिब माने बहुत यमुनार प्रॉब्लम माने तार कर फ्लड आसला अरे तुम नदीर पानी को माड़ी बसते जगह तो नदी पुणी बहब केमती से नदी पशिगला घर भितर है सो दैट इज व्हाट द मेजर प्रॉब्लम कि रिवर को बर्तमान सब बड़ जिनस कि रिवर
तमे रिवर को जदि तमे माने करूच कैच करूच रिवर एम्बैंकमेंट को एनक्रोच करूच सो रिवर विल आल्सो your माने rush to the habitations and that is what happened in the last year in Delhi, right? ठीक अच्छे सो ये जानले कौन it is the largest and most important tributaries of the Ganga south border that joins at Prayagraj near Allahabad है ना प्रयागराज जोटा कि अलाहाबाद पाखरे तुम ये देखुछ है गंगा ये है प्रयागराज अलाहाबाद पाखरे तुम ये जॉइन करछि कोठी है यमुना जॉइन करछि गंगा को जॉइन करछि प्रयागराज अलाहाबाद पाखरे एठी भी तुम देखि परिबो एठी देखछ है अलाहाबाद पाखरे से जॉइन करछि प्रयागराज ठीक अछि नेक्स्ट नेक्स्ट आसीबा हमें ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है मेजर तापर देखिबा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो तुम देखुच एंटायरली ये आसाम भीतर फ्लो करुछ ब्रह्मपुत्र देख है ये देखियो तुम एटा तुम देखिली प्लस या संगे तुम तुम एटलास भी खोलिक देखियो एटलास में तुमको बहुत हेल्पफुल रहबो अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट देखुछ एटी दिस इज एटलास टोटल it देखो it originates in the Kailash range of the Himalayas है तो देखियो ब्रह्मपुत्र कोड बाहरची it originates है in the Kailash range रो बाहरची of the Himalayas near मानसरोवर lake ठीक अछि मानसरोवर लेक पाखरे तुम देखियो जदी है देख ये सब एक नंबर पेज जब देखुच ये पेज रे तुम देखुच ये तुम केमती देखा ये देख दिस इज ब्रह्मपुत्र देखुच ये लेक मानसरोवर पाखर ये बाहर दिस इज ब्रह्मपुत्र है ब्रह्मपुत्र कौट बाहर कैलाश रेंज ऑफ द हिमालय नियर मानसरोवर लेक इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है जिते वर्ल्ड जी तुम अच्छी लॉन्गेस्ट रिवर जमी नाइल रिवर होगा कि अमेजन होगा कि मिसोरी मिसिसिपी होगा कि यांगसी कियांग है सी कियांग से भीतर सेमती ये भी गोटे लेना रिवर है सेमती ये भी इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एंड पासेस थ्रू द तिब्बत इंडिया एंड बांग्लादेश हैविंग 2960 किलोमीटर लेंथ है पाखापाखि केते 2960 और 3000 किलोमीटर पाखापाखि लेंथ अप्रोक्स also in Tibet its origin is known as is from 𝐎𝐚𝐴 glacier तिब्बत रो कोड बाहरची 𝐎𝐚𝐴 glaciers रू it is origin होची 𝐎𝐚𝐴 glaciers रू एटा originate होची where it is and named as Sangpo है ठीक अछि where it is named as your Sangpo है चाइना रे कौन कह को जगह ये जानाटा तुम 𝐎𝐚𝐴 ग्लासियर्स जोटा कि तुम चाइना रे तिब्बत चाइना एटा को 𝐎𝐚𝐴 ग्लासियर्स कह है तो तिब्बतन प्रोविंस रो बाहर ता नाटा 𝐎𝐚𝐴 एटा मन रखियो पचारती बेले बेले तुमको है 𝐎𝐚𝐴 ग्लासियर्स है सांगपो इट एंटर्स इंडिया इंडियन टेरिटरी इन अरुणाचल प्रदेश सो अरुणाचल प्रदेश रे कौन होची इंडियन टेरिटरी पसुची है इंडियन टेरिटरी अंडर द नेम ऑफ दिहांग जितले ब्रह्मपुत्र इंडिया को पशुची को ना रे दिहांग तुम ये देख ये तो ब्रह्मपुत्र तुम बाहर कौट एमती ये कलर चेंज कला बेटर लगे तुमको ब्रह्मपुत्र ये बाहर बाहर की एमती पशुची ये ना कर ब्रह्मपुत्र यहाँ तुम किए सांगपो पहले ये सांगपो ता ना कौटी This is in Tibet, China. Tibet, China. मुझे लिख ली तो ये है कौन दिहांग ना ही कौन दिहांग ठीक अच्छे ये आम देखीदे मैप रे आहरी भल जिन
देखो ये मैप रे और भी दिहांग ता नाटे दिहांग और सियांग मन रख दिहांग जी सियांग भी सी दिहांग और सियांग कह दिहांग और सियांग है गोटे ना है तुम कौटा ब्रह्मपुत्र दिहांग और सियांग भी कह अच्छा तापर देख पुणी द रिवर ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया है मुझे कहबी enters India by taking a sharp turn at नामचा बरुआ है नामचा बरुआ गोटे जगह अच्छी जो कि रिवर ब्रह्मपुत्र टेकिंग एन शार्प टर्न एटी नोच एटी तुम देखि परिवो है इंडिया है शार्प टर्न को पेज रे देखियो नामचा बरुआ तुम कोठी देनी प्रथम एई पेज रे देछि तोर 11 नंबर पेज रे प्रथम फिजिकल एटी देखो दिस इज नामचा बरुआ और नामचा बरुआ फॉर योर इंफॉर्मेशन इट इज नॉट इन अरुणाचल प्रदेश इट इज इन चाइना है अगेन तिब्बतन चाइना तो मुझे कहली कौटा नामचा बरुआ गोटे पहाड़टा यहाँ है तुम कौटी इट इज इन द चाइना नामचा बरुआ तो ये देख तुम है सदिया यही जगह दिस इज नामचा बरुआ दिस प्लेस इज योर नामचा बरुआ है नामचा बरुआ यही जगह है नामचा बरुआ चाइना ये कौन है ब्रह्मपुत्र यही जगह तुम शार्प टर्न नहीं यू टर्न नहीं तुम शार्प टर्न नहीं पशि कौटी है इंडिया रे पशि नामचा बरुआ तो नामचा बरुआ तो इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र किए सेमती ब्रह्मपुत्र रे भी इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी अच्छा जमती देखिला सुबानसिरी मानस तिस्ता है सुबानसिरी सब गोटे कर देखा सुबानसिरी मानस तिस्ता कामेंग मोरा गंगाधर धारला धानसिरी बूढ़ी दिहांग एंड कालांग अब इत सब मेजर मेजर ट्रिब्यूटरीज मुझे कहीदे ओ किए पुणी अगेन पॉलिटिकल मैप को जाओ तुमको कहूँ सुबानसिरी जमी सुबानसिरी प्रोजेक्ट बना हो गवर्नमेंट है ये देख देख ये मुझे कहूँ ये तुम देख तिस्ता है ब्रह्मपुत्र ये आसला है तिस्ता ये कहीदेली किए तिस्ता रिवर दिस इज योर तिस्ता है ये मुझे मैप रे कर दूँ तुमको इजी रही जमी कर खातार भी तुम से गुड़ा करनब तिस्ता रहा पर पुणी नेक्स्ट ईयर है तिस्ता देन योर मानस फिजिकल पॉलिटिकल दीटा मिसेक देखिए यू विल बी गेट क्लियर है तिस्ता तिस्ता है टोटल कोटी एंटायरली सिक्किम रे बहुत तिस्ता एंटायरली सिक्किम रे है तिस्ता रिवर वेरी मेजर देन नेक्स्ट योर मानस है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोटी अच्छी से मानस है देन है मानस परे next you can see this is your सुबानसिरी तुम देख है दिस इज योर सुबानसिरी ये आसला तुम किए दिस इज योर सुबानसिरी है सुबानसिरी सुबानसिरी पर तुम आस ऊपर किए है देन देबांग दिहांग गला सुबानसिरी देहांग तापर एठू पुणी तुम जॉइन कला किए दैट इज योर देबांग दिहांग आउ एटा हला तुम देबांग ठीक अच्छे आउ एपटू किए आसला पुणी एपटे आसला तुम ये देखुच तुम ये क्लीयरली दिहांग दिबांग आउ एपटे देखुच तुम जदि लोहित आसिक जॉइन कर लोहित तुम ये फिजिकल पाउन तुम पॉलिटिकल रे जिनसरा पाइबो दिस इज योर लोहित जस्ट लुक एट हियर हला लोहित देख अरुणाचल प्रदेश रो इटो आसी सॉरी
म्यांमार रू आसिक जॉइन कर लोहित देख दिस इज लोहित है मेक इट वेरी क्लियर दिस इज योर लोहित जॉइन कर योर लोहित तो ये मेजर मेजर ट्राइब्यूटरीज में देली लोहित देबांग सुबानसिरी मानस तीस्ता है ये मेजर मेजर मुझे कहली है तुम जब आस कौटी वेस्ट रु ईस्ट आड़ को प्रथम है तीस्ता जोटा कि सिक्किम रे देन मानस देन सुबानसिरी है देन योर देबांग तार दिहांग ता नाटा दिहांग और सियांग है कौट ब्रह्मपुत्र नाटा अरुणाचल देन योर देबांग तापरे लोहित तो क्रोनोलॉजिकली तुम एमती सजेले एटा पाइबो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट ऑलरेडी क्वेश्चंस या भीतर पचारि सकछन ऑलरेडी हैला तो एटा हला मेजर मेजर ट्रिब्यूटरीज हैला ठीक अछि ब्रह्मपुत्र पुणी जीवा पुणी देखिबा द ब्रह्मपुत्र रिवर इन बांग्लादेश इज नोन एज जमुना बांग्लादेश रे कोन अछि ब्रह्मपुत्र कोन कहै जाय जमुना बोली कहै जाय ठीक अछि व्हाइल गंगा नोन एज पद्मा देयर मन रख गंगार बांग्लादेश रे एते बड़ गोटे जगह बांग्लादेश रे ता ना अछि कोन इट इज एडी ठीक अछि एटा हला तमरो कोठी बांग्लादेश इट दिस इज योर बांग्लादेश बांग्लादेश रे तमर गंगा ना होछि तमर पद्मा आउ ठीक अछि आउ जमुना हला तमरो ब्रह्मपुत्र ठीक है आफ्टर कंबाइंड स्ट्रीम दे आर नोन एज मेघना ओनली जितले से माने कंबाइंड हेयंती सेटा नोन एज योर मेघना एठी तुमको देखौ छ आउथरे क्लियरली देखो एठी बांग्लादेश देखछो तमे दिस इज बांग्लादेश भला भाबे देखो एठी बांग्लादेश रे हैला एठी मो डायग्राम टा कर दउ छ आउरी क्लियर हो तमरा एठी मु कहली इतनी पार्ट है तुम जदि कह दिस इज योर बांग्लादेश ठीक अच्छे भल बुझ ये तो तुम देखल यहाँ आसला तुम किए ब्रह्मपुत्र दिस इज योर ब्रह्मपुत्र एपट आसला किए गंगा है सो ये तुम देखुच गंगा एपट आसला ब्रह्मपुत्र मिसिले कौटी ब्रह्म कौटी बांग्लादेश रे बांग्लादेश रे से माने मिसिले मिसिला परे सेठी हला तांका नाटा कोन हला ता ना हला तांकर ठीक अछि ठीक हला या ना हला बांग्लादेश रे कोन नियै छि पर्टिकुलरली ना हला गंगारा इन बांग्लादेश इज नोन एज योर पद्मा ठीक अछि पद्मा इन बांग्लादेश मन लिखले हला बांग्लादेश ये हला जमुना ठीक है जमुना इन बांग्लादेश है मिसे की जो कंबाइंड स्ट्रीम टा हला तंकर नाटा हला एटी कोन इज योर मेघना सो हमें कौन जानले कि गंगा आउ ब्रह्मपुत्र कंबाइंड स्ट्रीम टा हला कोठी बांग्लादेश रे ता ना रहउची मेघना हला डायरेक्टली मन रख गंगा और ब्रह्मपुत्र तमर डायरेक्टली दे डोंट फॉल इन द योर बे ऑफ बंगाल डायरेक्टली सन पड़ी नांदी समान मिसिकी समान जो सृष्टि कले कंबाइंड स्ट्रीम दैट इज योर मेघना मेघना तापर तुम देखो डिस्चार्ज कोठी बे ऑफ बंगाल सो क्लियर एनसीईआरटी भी सेम जिंस तुमको देछि बट क्लियरली तुमको एटी मु डायग्राम करी के बुझेली दैट इज फॉर योर हेल्पफुल राइट सो अगेन आफ्टर द कंबाइंड स्ट्रीम दे आर नोन एज योर मेघना हैला पर्टिकुलर सन को जाय मेघना ओनली हैला तो दिस इज ऑल अबाउट तुम देखछो पूरा बांग्लादेश टा एंटायर यदि तुम देखछो एंटायर बांग्लादेश इज लोकेटेड ऑन योर पर्टिकुलरली गंगा और ब्रह्मपुत्र से जो कह जाए लार्ज वर्ल्ड रो लार्जेस्ट जदि रिवर एंड डेल्टा जदि देखिबो इट इज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हैला दिस इज वेरी फेमस अगेन पुणी कौन इंडियास नेशनल वाटर वे पुणी अगेन कौन कह जाए ब्रह्मपुत्र इज द सरो ऑफ आसाम माने पाखापाखि 7-8 मास तुम जदि देखिबो हैला फ्लड जदि हम आसाम इज फेसिंग
बहुत सारा धन जीवन क्षय क्षति बहुत होची इनफैक्ट योर काजीरंगा राइनोसोर्स भी सेमानकर प्रॉब्लम रहउची हैला मेनली सो नेशनल वाटरवे 2 NWW2 forming an inland navigation water transport system from Sadia to Dhubri on Brahmaputra river in Assam एटी देखुछ तमे ओटी that is your Sadia to Dhubri ठीक अछि Sadia to Dhubri particularly हैला जदि तमे देखुछ कि ब्रह्मपुत्र रिवर मेजरली सादिया टू धुबरी मेनली हैला सादिया एटाला तमरो नेशनल वाटरवे 2 परीक्षा एटा पचारंती हैला पचारले कोन करिवो तो एटी तमे देखुछि नेशनल वाटरवे टू NWW2 कहजे नेशनल वाटरवे हैला नेशनल वाटरवे 2 जोटा कि तमर करछि कोड जॉइन करछि सादिया टू धुबरी दीटांगल Assam रे Sadia to Dhubri they both are in Assam Sadia au Dhubri both are in Assam सेमती हला this is very important inland navigations वर्तमान इंडिया रे सबटु मोस्ट इंपोर्टेंट काहे कि ना inland navigations रे हमर मेजरली हमर ट्रेड एक्टिविटीज क्रिएट हो ट्रेड एक्टिविटी जेमती नेशनल वाटरवे जेमती मैं आउत लिखि दोची हला मेजर किए inland navigation canal national waterway 1 हम लिखि दोची हला inland trade कोडी इंडिया रे होची मेजर inland trade मेजर हला inland trade routes मेजर inland trade navigation better it will be major inland navigation trade route route so national waterway 1 कोटी को रिवर ऊपर ठीक अछि एटी मु लिखली गंगा रिवर कोटी कनेक्ट करछि that is your प्रयागराज ठीक अछि प्रयागराज टू योर हल्दिया को रिवर ऊपर गंगा प्रयागराज हला उत्तर प्रदेश रे हल्दिया हला वेस्ट बंगाल रे हला एटा हला प्रथम मेजर सेकंड के आसला नेशनल वाटरवे 2 हला एटा सब परीक्षा रे पचार दिस इज वेरी इंपोर्टेंट नेशनल वाटरवे 2 का ऊपर आसला हला नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र रिवर ऊपर है कोड कहला पर्टिकुलरली सदिया टू धुबरी है अगेन दीटांग आसाम रे सदिया भी आउ धुबरी भी also in Assam third रे that is your national waterway 3 एटा कोडी हला एटा एंटायरली तमरो केरला रा बैक वाटर जदी कहबी एंटायरली कोठी केरला बैक वाटर दिस देखिसो नेशनल वाटरवे 3 पूरा बैक वाटर हला कोडू एटा म जदी कहबी बैक वाटर ऑफ केरला हला कोड मेनली करछ एटा कोझिकोड टू हला कोल्लाम अगेन
कोझिकोड टू कोल्लाम पुणी है मेनली अगेन केरला है टोटल केरला रोच तो दिस आर द मेजर मेजर इंपोर्टेंट जब कहबी है तुम इनलैंड नाविगेशन रूट जोटा कि परीक्षा तुम यहाँ पचारूँ है आउ जब मुझे कहबी इनलैंड नाविगेशन आमर कौटी अच्छी द हेडक्वार्टर ऑफ ये नोट आ गए दूसरी है द हेडक्वार्टर ऑफ इनलैंड नेविगेशन है ना इनलैंड IWW वाटरवे इनलैंड वाटरवे डिपार्टमेंट है इनलैंड वाटरवे इज एट कोटी नोट रे दूची हेडक्वार्टर कोटी इनलैंड वाटरवे कहती IWW डिपार्टमेंट ऑफ IWW है मिनिस्टर ऑफ वाटर रे अच्छी कोटी एट नोएडा इन उत्तर प्रदेश है नोएडा उत्तर प्रदेश मेजरली यहाँ अच्छी है इनलैंड वाटरवे रूट IWW है नोएडा उत्तर प्रदेश ये वेरी मेजर इंपोर्टेंट या भर मुझे गोटे जिन कहि NWW3 जोटा अच्छी कौटा कोची योर कोझिकोड टू कोल्लाम यहाँ है तुम बीजीएस्ट है ये मुझे लिखी दूची चेंज करके कलर रे बीजीएस्ट इनलैंड नेविगेशन है बीजीएस्ट इनलैंड नेविगेशन रूट है दैट इज योर कोझिकोड टू कोल्लाम बीजीएस्ट इनलैंड नेविगेशन रूट है तुम कोझिकोड टू कोल्लाम है बीजीएस्ट है सबुठ माने जब मुझे कहबी यहाँ 24x7 है यहाँ तुम सब ओपन थाए 24x7 माने है मैक्सिमम जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू दूसरी दिस योर पर्टिकुलरली दिस योर NWW3 एंटायरली कोझिकोड कोल्लाम मैक्सिमम टोटल है मैक्सिमम रेवेन्यू ये पचार तुमको तुम कौन लिख है मैक्सिमम रेवेन्यू share no maximum revenue contribute to है GOI माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब मैक्सिमम किए दूची ताले हमरो एटा है योर NWW3 सबुठ बेसी मैक्सिमम दूची तुमरो एटा ठीक अछि तो ये तुम देखुच पर्टिकुलरली मुझे आउ थे रिपीट कर मानस वाइल्ड लाइफ जब देखिए नेशनल पार्क ये सुबानसिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तिस्ता है आउ देबांग लोहित एगोटे समस्ते आसिले अब ब्रह्मपुत्र यदि कह ब्रह्मपुत्र मन रख एंटायर कोर्स रे ब्रह्मपुत्र नाविगेबल नुह केवल यू सादिया धुबरी भितर ब्रह्मपुत्र है नाविगेबल ये ब्रह्मपुत्र ट्रेड रूट हुए यही जगह ब्रह्मपुत्र इज ए ब्लेसिंग्स टू द पीपुल ऑफ आसाम पर्टिकुलरली है आसाम और पाखापाखि मेघालय आउ एथिरे भी है मैक्सिमम जगह ब्रह्मपुत्र नले इट इज द सौर ऑफ आसाम कहीं मैक्सिमम माने फ्लड से आने ओडा जदि तुम देखियो फ्लड्स जदि आसाम को इट इज बिकॉज ऑफ योर ब्रह्मपुत्र बिकॉज ऑफ ब्रह्मपुत्र आसाम फेसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ योर है मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ फ्लड्स इन ए ईयर ठीक अच्छे आउ जो तुम देखुच ब्रह्मपुत्र है इंडिया है सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया रे जदि देखियो ता लेंथ रे गंगा रु बड़ किंतु इंडिया रे है सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आउ द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया ठीक अच्छे तो है नेक्स्ट क्लास रे पुणी कंटिन्यू हमें करवा है पेनिनसुला रिवर पार्ट रे बिफोर दैट वन पुणी आउ थे कहबी हमर ओपीएससी
वाला तरफ पीडब्ल्यू फैमिली तरफ जो जो कोर्स प्रोवाइड करा होची मिनिमम हैला मिनिमम योर अफोर्डेबल रेट रे एवरीवन कैन दैट योर अपीयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि हमर दिया होची ओडिसा रा जदी ओसीएस पे देखिबो सक्षम बैच जोटा कि ओनली हैला 4499 ने दिया होची प्लस योर इंक्लूडिंग 360 हैला क्लियर 360 जोतरे कि ओनली मिसले ओनली लेस देन 6500 भितर तमरो पडियो जोतरे कि तमरो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब जिंसर गाइडेंस मिलिबो इतरे खाली तमरो टोटल प्रीलिम्स मेंस हैला सब जिंस इतरे इंक्लूडेड अछि जोतरे कि तमे जदी आउटसाइड कोचिंग देखिबो इट इज मोर देन हैला 80-90,000 इवन इफ 1 लाख सुपर भी आसी हैला भुवनेश्वर ऊपर कलिंगा वीर जो देखियो बैच ओडिशा पुलिस रो ओनली 699 रे कलिंगा वीर बैच रो विजय बैच ओसीएस प्रीलिम्स रो दैट इज 999 रे आसी देन ओडिशा डिस्ट्रिक्ट पुलिस जूनियर क्लर्क रो ओनली 1299 रे ओडिशा एग्जाम्स महापैक जो तक आसी ओडिशा गवर्नमेंट रो इतरे कि 4499 हला 4999 रे सॉरी 4999 रे हला 4500 इतरे तो सब जिनसर एग्जाम इतरे इंक्लूडेड अछि सब एग्जाम रो तुम इतरे पाई परियो फैसिलिटी देन दीक्षा बैच यू विल गेट इंटीग्रेटेड ओसीएस बैच हला दीक्षा बैच जोटा कि तमे 1999 रे पाई परियो इंटीग्रेटेड ओसीएस बैच एवरीथिंग सो एते गुडाय तमे सुविधा फ्रेंड्स जदी तमे एठी पाई परछ पिला माने एई गुटिए जागा रे तमे हला प्लेटफॉर्म रे जोटा कि वेरी अफोर्डेबल रेट जोटा कि आगुरु मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अपेयर हेबा पई इट वाज रियली ड्रीम बट नाउ इट इज पीडब्ल्यू तरफ रु जोटा गुड रेवोल्यूशनरी स्टेप नि इट इज रियली एन चेंजिंग इवेंट इन लाइफ चेंजिंग इवेंट ओके सो दिस इज एन आई विल दिस वन लिंक हमर प्रोवाइड करा हिची हला लिंक रे तमरो सेटे कर सो थैंक यू ऑल ऑफ यू we'll next we'll meet again okay thank you we'll continue with our sessions from river system we have studied already river system will continue with the river system of Himalayan rivers we have almost completed. Now we'll continue with the peninsular river system. Peninsular river system देखिवा ता पूर्व मु एटा कहबी कि हमरो फिजिक्स वाला तरफ रु जोटा कि पीडब्ल्यू ओपीएससी वाला हमरो वेरी एक्साइटिंग कोर्सेस वी आर प्रोवाइडिंग दैट इज योर कलिंगा वीर बैच जोटा कि ओडिशा पुलिस कांस्टेबल पई बेसिकली एंड सक्सेम ओपीएससी फाउंडेशन बैच आल्सो देन विजय बैच OPSC prelims fine. With the Saksam upare I will tell. Then your Odisha district police that is 1299 only, and Odisha state exams Mahapak only 4999 re sabu jinso tame setre paucho. Okay. Ao Diksha batch re 1999. तापर जदि कहबी Saksam OCS batch जोतरे कि only खाली prelims means no also interview also included सेतरे आउ गोटे जिंस अछि दैट इज क्लियर 360 दैट इज ओनली फॉर लेस देन 2000 जदि मिसेबो होल टोटल इज 6500 ओके इवन इफ माने जदि म कहबी 6500 तमे टोटल एंटायर सिविल सर्विस प्रिपरेशन पाउछो व्हिच इज रियली अमेजिंग तमे जदि बाहरे अलगा इंस्टीट्यूशन देखियो दे आर नॉट चार्जिंग नियर अबाउट 1 लाख आल्सो इवन इफ about 70-90,000 1 lakhs pakha नौचंदी even more than that also but here PW तरफ जो निया जाइछि steps initiatives that is one can dream one individual dream can be successful competitive exams में and it can be very affordable rate okay खाली OCS exam छड़ा भी अलग सब exams रे बहुत दिया होछि ठीक अछि so this is a particularly a huge your game changing event for in your life okay नेक्स्ट देखियो हमें रिवर सिस्टम कथा हम ऑलरेडी पढ़ी थिले कि हिमालयन रिवर्स वी हैव कंप्लीटेड नाउ वी विल गो फॉर द पेनिनसुला रिवर्स माने कोटा जदि हम कहबी पेनिनसुला रिवर्स माने विंध्या तळु को जतिकी जो माने रहले सपोज दिस इज विंध्या ओके दिस इज विंध्या माउंटेन हम कहले दिस इज विंध्या माउंटेन राइट दिस इज विंध्या माउंटेन और लेट्स से a better mountain diagram बनौछि विंध्या माउंटेन जदि हम कहबी this is let's say this is Vindhya mountain let's say this is your Vindhya mountain ना Vindhya mountain एठी अछि तो Vindhyas रो जदि कहबी this is your Vindhya mountain तो Vindhya mountain तळु को जो रिवर गुडा रहले से माने असले तमरो पेनिनसुला रिवर्स
हिमालयन रिवर्स ताको कहा जाउची कि हिमालयन रिवर्स और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर्स ताको ऊपर कहा जाउची पेनिनसुलर रिवर्स माने विंध्या तळु जो माने राइट देखिबा पेनिनसुलर रिवर्स से किए जेमती महानदी गोदावरी महानदी नर्मदा तापी गोदावरी कृष्णा कावेरी है पेनगंगा वेनगंगा एम सब बहुत जिनस रही वन बाय वन विल डिस्कस प्रथम देखिए पेनिनसुलर रिवर सिस्टम रे को पर्टिकुलरली है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम देखिए को रिवर आसुचंदी जानिबा द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम मेनली कवर्स द सेंट्रल ऑफलैंड्स को जगह कवर करछि द सेंट्रल ऑफलैंड्स द डक्कन एंड द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट है कौन करछि द डक्कन द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट rivers here are generally monsoon feeded basically rivers generally are here are basically monsoon feeded samani monsoon feeded and hence not perennial unlike the Himalayan rivers okay they are not perennial in nature unlike the Himalayan rivers perennial माने चिरस्रोता सब बळे काहे कि Himalayan rivers हम जानि चंदी कि Himalayan rivers माने हेले तमरो बेसिकली ग्लासियल फीडेड से माने ग्लासियर रु पानीटा से माने बेसी पाउछंती हिमालयन रिवर्स बट एठी एमाने मानसून माने वर्षा हेले एमाने पानी हबो वर्षा न होले पानी नहीं हैला सो बेसिकली वी कैन से दैट वन दैट दिस रिवर्स आर नॉट पेरेनियल इन नेचर अनलाइक योर हिमालयन रिवर्स सिरोसता नो ठीक अछि आ माने नो जो पानी बिल्कुल ड्राई हे जाय सेमति नहीं ठीक अछि पानी रहे बट हिमालयन रिवर्स रे जेंति सब बेले पानी थाए अंकर है ड्राए पीरियड रे पानी रहे केवल मनसून पानी आसिले मनसून रेन हेले पानी रहे ठीक योर पेनिनसुलर रिवर्स रे सो जनरली जदि हम कहबा द पेनिनसुलर रिवर्स आर कैटेगराइज्ड एज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कहा जाए वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग दीटा कहा जाए वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जदि हम कहबी किए those drains to Arabian Oceans है west flowing rivers माने जो माने those drain to your Arabian Oceans like ये नर्मदा तापी the साबरमती लुनी and the माही नर्मदा तापी साबरमती लुनी and माही एटा हला मेजर जो माने west flowing rivers आसुंदी है नर्मदा तापी लुनी माही तमे एटी देखुछ है this is your नर्मदा this is नर्मदा then this is your Tapi then your Luni है inland drainage करछि then Mahi then Sabarmati एमान ठीक अछि जानिबा एमान के विषय रे प्रथम आसिला द आगे जीवा वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऊपर तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एमान हेले बेसिकली मेजरली दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखु जोटी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हमर की आसिला नर्मदा मेन आसिले हैला नर्मदा आसिला नर्मदा पर की then Tapi है this is Tapi then this is Mahi and this is Sabarmati है नर्मदा तापी माही साबरमती आ ऊपर हमर की रहला लुणी है ऊपर रहला हमर लुणी रहला देखिबा नर्मदा विषय देखिबा द नर्मदा रिवर ऑरिजिनेट्स नियर अमरकंटक प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश नर्मदा कोठु बाहर छी अमरकंटक प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश दिस इज द प्लेस है नर्मदा देखिए जदि छत्तीसगढ़ ये जगह पर्टिकुलरली है ये जगह तुम छत्तीसगढ़ ऊपर दिस इज योर अमरकंटक प्लेट्यू दिस इज है अमरकंटक ठीक अच्छे है अमरकंटक प्लेट्यू अमरकंटक प्लेट्यूटा मेजर एठी अमरकंटक प्लेट्यू बाहर छी having length of 1312 किलोमीटर केते लेंथ 1312 किलोमीटर okay it is the largest and longest of all west flowing rivers in peninsular India जेतेटा भी अछंती peninsular rivers ऊपर it is the largest and the longest all west flowing river जेते कि west flowing river अछंती सबुटु longest आउ largest west flowing rivers है नर्मदा देन नर्मदा कथा यदि कहबी नर्मदा तुम इतने पढ़िबो नर्मदा ऊपर मेजर कौन कौन अच्छी नर्मदा ऊपर यदि कहबी है नर्मदा ऊपर आमर है ये कहबी नर्मदा ऊपर किए किए अच्छी द
सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर मल्टी रिवर वैली मल्टीपर्पज डैम ना, मल्टीपर्पज डैम was multi-purpose dam has constructed Sardar Sarovar, multi-purpose dam Sardar Sarovar constructed on Narmada. ठीक अच्छे, नर्मदा रिवर ऊपर ये मेनली कंट्राक्ट होगी अच्छी, ठीक अच्छे, सरदार सरोवर डैम ऊपर एथरे कौन होची खाली ड्रिंकिंग वाटर छड़ा केवल खाली नुह जे इरिगेशन सब इरिगेशन छड़ा आ पावर सप्लाई जनरेशन छड़ा भी तमरो यो ड्रिंकिंग वाटर भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी करा होची। तो हम कौन कौन मल्टीपर्पस कौन पे आइटम कहली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपर्पस माने हला इरिगेशन ड्रिंकिंग इरिगेशन पर पावर जनरेशन आउ एंड ड्रिंकिंग वाटर है। तो मेजरली मल्टीपर्पस माने है दिस आर द थिंग्स मल्टीपर्पस इरिगेशन ड्रिंकिंग पावर जनरेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर मेजरली राइट। तो नर्मदा पर आसी नेक्स्ट हमर किए तापी एंड लुणी। तापी जदि कहबा तापी हैला वेस्ट बेंग रिवर भीतर सेकंड लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट हैला। नर्मदा हैला तमरो द लॉन्गेस्ट वेस्ट बेंग रिवर्स, तापी हैला सेकंड लॉन्गेस्ट। तापी कथा कहबी तापी ओरिजिनेट्स नियर मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैला। मुल्ताई पकरू बाहर छी तापी हैला, तापी in Multai in Betul district of Madhya Pradesh having length of 724 km। ता लेंथ केते 724 km। It is the second largest west flowing rivers in India हैला। जदि हम कहबी second largest west flowing river ठीक अछि जति भी अछंती एटा हला तमरो second largest your west flowing rivers even if longest also ठीक अछि केते 724 km। नर्मदा केते थरा 1300 पाखापाखि 12 पाखापाखि है 1312। पुणी तापी कथा यदि कहबी तापी जदि तुम ये देखुच तापी कोठी बाहर मुल्ताई बेतुल मध्य प्रदेश को जगह दिस इज योर है बेतुल डिस्ट्रिक्ट मुल्ताई। मुल्ताई गोटे जगह अच्छे एमपी रे मुल्ताई बेतुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश है। बेतुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ को जगह एटा एमपी मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश रे मेनली अछि। सेमती वेयर द लुणी जदि मु पुरी तापी ऊपर हां तापी ऊपर आउ कोन अछि तापी ऊपर जानिया जदि तापी रो मेजर उकाई सागर प्रोजेक्ट डैम हैला। उकाई सागर मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट MRVP हैला। उकाई सागर हैला किए मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट उकाई सागर इज ऑन तापी रिवर हैला, इज ऑन तापी रिवर मेजरली उकाई सागर डैम ठीक अछि। उकाई सागर डैम जोटा अछि दैट इज मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट मेनली। सेमती वायर द जदि लुणी कथा आसीबा सो बर्तमान हम जानले हैला। नर्मदा सरला तापी सरला दीटा मेजर रिवर जो माने वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैला। देन जदि हम आसीबी के देन असला योर तापी सॉरी लुणी। लुणी जदि हम कहबी लुणी ओरिजिनेट करछि कोठी इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एट द अन्ना सागर इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैला। अन्ना सागर इन द अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान को जगह अजमेर डिस्ट्रिक्ट से करछि हैला। अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इट्स लेंथ इज 482 किलोमीटर हैला ठीक अछि। अजमेर डिस्ट्रिक्ट जदि हम कहबी को जगह रे तमे एटलास भी तमे देखि परिबो अजमेर तुमको जदि डाउट हो को जगह रे अजमेर अछि
This you can see here. Aravalli ro ei pakhare Ajmer district is here. This is Ajmer. तमे देखुछो Ajmer Aravalli range रो ऊपर देखो Ajmer. Ajmer कौन पाई फेमस? Ajmer हला तमरो ख्वाजा मायुद्दीन चिश्तींकर दरगाह अछि सेठी सूफी बाबा सूफी सेंट हला अजमेर रे अजमेर रे सब जानिथिबो चादर चढ़ाया पे जानती जार मन्नत थाए एटा अजमेर जाइकी दिस अजमेर रे ए सूफी बाबा जो अछंती तांको चादर चढ़ा हुए तुम देखिथिबो बहुत सारा फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड हो कि इवन इफ हमर नरेंद्र मोदी जी सी भी जाइकी एटी चादर चढ़े छन हला अच्छा नेक्स्ट Luni originates Ajmer district of Rajasthan. Its length is 482 km. 482 km. ठीक है कार लुणी रा तुम कहबी इट इज योर 482 किलोमीटर हैला सुक्री जदि हम कहबी सुक्री इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी परीक्षा एटा ऑलरेडी पचारि सारी सुक्री विषय हैला सुक्री हैला लुणी रा गोटे मेजर ट्रिब्यूटरी तमे जदि ट्रिब्यूटरी तमे जदि देखिबो इफ यू सी हियर in the map it is also clearly mentioned about the Sukri. तो मैं देखो सुक्री ऊपर पूरा पूरा मेंशन है सुक्री दिस इज देखो अरावली रेंज रो सुक्री है सुक्री हला तार राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखो एठी देखो दिस इज सुक्री यू कैन सी है सुक्री दिस इज सुक्री अरावली पखरे सुक्री पखरे दिस इज योर लेफ्ट बैंक सुक्री हला तारा मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी सेम द हेड्स मेन ट्रिब्यूटरी लुणी लुणी विषय जदि कहबी लुणी हला इट इज द only major west flowing rivers that doesn't directly drain to the Arabian Sea, rather it's make an inland drainage. तो बेटी देखो लुणी आसी कौन है रान ऑफ कच्छ ये जो एरिया टा तमर कौन रान ऑफ कच्छ भला भाবে सुना दिस एरिया इज योर रान ऑफ कच्छ तो लुणी कौन है इनलैंड ड्रेनेज करछि लुणी मेक्स एटी कौन कहबी लुणी हला makes inland drainage. Luni makes your inland drainage. Luni forms inland drainage. Inland drainage system Luni करछि हैला जोटा कि से डायरेक्टली तमर एठी कोटा दिस इज योर अरेबियन सी अरब सी म कहबी दिस इज योर अरेबियन सी हैला ए पार्टटा सो लुनी एठी कोन करछि इनलैंड ड्रेनेज करछि को जगह रे रान ऑफ कच्छ पाखरे ठीक अछि खाली लुणी संगे न लुणी संगे तमरो माचू रुपेन एमाने भी अछंती जो माने इनलैंड ड्रेनेज करछन बट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स लुणी हला तमरो मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जे करछि तमरो इनलैंड ड्रेनेज राइट सेम थिंग लुणी गला पर सुक्री विषय जानले सुप्ची हला मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हला मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी सुक्री नेक्स्ट असला तमरो साबरमती आ गोटे रिवर देखुछ एठी हला सो नर्मदा गला तापी गला लुणी गला देन साबरमती दिस इज योर साबरमती कथा हम कहबी अगेन ये भी बाहर छु कोटू नियर मेवार इन अरावली रेंज मेवार गोटे डिस्ट्रिक्ट अछि राजस्थान रे हला राजस्थान इज वन डिस्ट्रिक्ट इज देयर दैट इज योर मेवार दिस इज मेवार दिस डिस्ट्रिक्ट हला अरावली रेंज हला मेवार इन अरावली रेंज रा दैट इज मेवार दिस डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान having length of 300 kilometers हैला साबरमती जदि कहबी ता लेंथ हला 300 किलोमीटर साबरमती ऊपर हमें जानि चंदी हैला को मेजर सिटी जेमते हम कहबी गांधीनगर अहमदाबाद एटी देखो पॉलिटिकल देखियो को मेजर सिटी हैला को रिवर ऊपर अछि फॉर एग्जांपल चलो देखिबा की अछि जस्ट लुक एट हियर गांधीनगर की अच्छी साबरमती गांधीनगर अहमदाबाद है ये देखुच गांधीनगर अहमदाबाद है हिम्मतनगर ये हम देखुच गांधीनगर अहमदाबाद एम अच्छा साबरमती उपर है किए
मेजर गांधीनगर गुजरात कैपिटल किए है गांधीनगर गांधीनगर मेनली अच्छी देन योर ये देख गांधीनगर गांधीनगर पर अहमदाबाद है अहमदाबाद है मेजर अच्छे कौटी साबरमती नियर द बैंक ऑफ योर साबरमती रिवर सेमती है एंड तापर कौन अच्छी साबरमती फाइनली आसी कोटी ट्रेन होती तुम देखो गल्फ ऑफ खंबात रे ठीक अच्छे साबरमती आसी कोटी ट्रेन होती गल्फ ऑफ खंबात रे ट्रेन होती नेक्स्ट देखिए द माही रिवर है माही रिवर ऑरिजिनेट्स नियर विंध्यास at an elevation 500 meter कोड बारची है originates near Vindhyas at an elevation 500 meter its total length is 533 kilometer जदि देखियो एठी है और कोठी एससी माही है विंध्यास रेंज पाखरे एठी है नियर विंध्यास पर्टिकुलर जदि तुम देखुछो at an elevation it's है नियर विंध्यास है at an elevation 500 मीटर रे मध्य प्रदेश रो बाहरी की से पुणी नीचे कौन पुणी राजस्थान जे कि पुणी गुजरात रे एंटर करछि हला किछि पार्ट मध्य प्रदेश रे गला पर पुणी राजस्थान तने जदि हम देखिबी माही कोठी कोठी बहुछि राजस्थान एमपी रु बाहरला राजस्थान रे पसिला हला किछि वाटा एमपी रु फ्लो कला पर राजस्थान रे पसिला दिस इज एटी देखा बाउंड्री देन अगेन से पुणी पछी कोठी दिस इज योर गुजरात रे से मैक्सिमम टाइम फ्लो करछि ठीक अछि माही विषय जब मुझे कहबी माही अगेन पुणी कौन है माही ड्रेन्स टू कोटी अगेन दिस इज गल्फ ऑफ खंबात ये जो जगहटा है ये कौटा गल्फ ऑफ खंबात एरिया देखुच गल्फ ऑफ खंबात दिस एरिया ठीक है ये देख दिस द एरिया ऑफ गल्फ ऑफ खंबात देखुच दिस इज गल्फ ऑफ खंबात रीजन तो माही कौन कला ये फ्लो कला परे माही आसिक ये ड्रेन आउट हो गला ये जगह अच्छा पुणी कौन जानले ता लेंथ है पाखापाखि 533 किलोमीटर माही रे जदि लेंथ मु कहबी इट इज योर 533 किलोमीटर माही रो देखछो तमे 533 माही अच्छा माही विषय कौन जानिबा माही हैला ओनली गोटे रिवर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जे कि और माने हैला एंड टोटल ऊपर इंडिया रे ओनली वन रिवर माही जे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दी थर काटुची दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाइछि माही 80 थर काटला पुनी 80 थर काटला दी थर तो एठी तमे लिखियो कोन माही हैला द ओनली रिवर इन इंडिया द ओनली रिवर इन इंडिया दैट cuts the tropic of कैंसर है ट्वाइस दी थर काटी ठीक अच्छे दी थर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तुम ये आटलास से भी देखी पारिबो माही केमती दी थर काटी है ये तुम देख देखुच ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर केम दी थर काटी माही ठीक अच्छे नेक्स्ट ये देख माही दिस इज माही ये देख माही केमती काटी ये दी थर काटी दिस इज टॉपिक ऑफ कैंसर ये तुम टॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 माही ये काटी है गोटे ये काटला आ गोटे ये काटला दी थर ठीक अच्छे नेक्स्ट आसवा तो यहाँ गला है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आम जानले बर्तमान आस पढ़ा दैट इज योर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स मेजर है वेस्ट फ्लोइंग गला नाउ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स माने मोस्टली दिस रिवर्स दे ड्रेन टू द बे ऑफ बंगाल बेसिकली समान कोठी के ड्रेन होचंदी बे ऑफ बंगाल को ड्रेन होचंदी ड्रेन टू द योर बे ऑफ बंगाल एटा हमर देखो एटी जो पटे आमे रहउजबा हमर जो पटे ओडिसा पटे एपट को हला बे ऑफ बंगाल पार्ट गुजरात महाराष्ट्र केरला हला समान हले को पटे आउ गोवा कर्नाटक एमाने तुम अरेबियन सी आड़ आम रोचे एपटे कोटी बे ऑफ बंगाल पटे है वी आर इन द साइड ऑफ बे ऑफ बंगाल अच्छा पुणी मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स को माने हु आर द मेजर रिवर्स जेन जानिबा किए सुवर्णरेखा ब्राह्मणी महानदी
गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी है कावेरी एमाने मेजर मेजर आ गोटे भाई भी अच्छे मेजर मेजर एमाने ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ठीक अच्छे। ठीक अच्छे या पेपर जब मुझे कहबी मेजर अच्छा वन बाय वन ये मुझे कही दूची है जदि मुझे प्रथम है ये मुझे लिखी दूची प्रथम द गोदावरी रिवर लिखली कौन द गोदावरी रिवर ये लिखी नियो है गोदावरी रिवर कौन लिखा गोदावरी originates from the Triambakeshwar Udvarchi Triambakeshwar hills Triambakeshwar hills near Nasik in Maharashtra त्रयंबकेश्वर आम जानते त्रयंबकेश्वर भी है तुम गोटे ज्योतिर्लिंग त्रयंबकेश्वर ऊपर आम जानते इट इज ए ज्योतिर्लिंग जंक्शन 12टा ज्योतिर्लिंग अच्छी भगवान भोलेनाथ भर त्रयंबकेश्वर है वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग अल्सो ये पहाड़ पाखे है ज्योतिर्लिंग ये वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग ये एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन जानिक रख हेल्प हम गोटे जिते भी 12टा ज्योतिर्लिंग अच्छा भर त्रयंबकेश्वर है वन ऑफ द देन गोदावरी है ऑरिजिनेट्स है नासिक महाराष्ट्र देन गोदावरी अगेन जदि कहबी है गोदावरी है द गोदावरी रिवर द कहीं लगेली बिकॉज दिस इज स्पेसिफिक द गोदावरी रिवर इज द longest and largest among all peninsular among all peninsular and east flowing rivers जिते भी पेनिनसुलर अच्छी आउ ईस्ट फ्लोइंग होते भितर तुम गोदावरी है द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट मन रख है गोदावरी जदि मुझे कहबी है गोदावरी मेजरली है गोदावरी जदि मुझे कहबी गोदावरी मेजर मेजर ट्राब्यूटरी किए द मेजर ट्राब्यूटरीज ऑफ गोदावरी कौन कहबी द मेजर tributaries of गोदावरी किए गोदावरी रिवर लिखी नहीं एगुड़ा सब है मेजर ट्राइब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर किए आसो वैनगंगा पेनगंगा then इंद्रावती वार्धा मंजरा ठीक अच्छे वैनगंगा पेनगंगा इंद्रावती मंजरा सबरी सेवेंथ रे और मनेरू एमाने मेजर या भर समस्त इंपोर्टेंट रिवर वैनगंगा पेनगंगा इंद्रावती वार्धा मंजरा सबेरी सबरी आउ मनेरू है मंजरा उपर जब मुझे कहबी तुम या भर पुणी हम कौ कौ डैम बेले परीक्षा पचारती कौ कौ मेजर मेजर डैम अच्छी
है तुम सब मन रख फिजिकल पॉलिटिकल दीटांग देखियो है दीटांग देखियो जो कि तुम रहिबो ठीक अछि है जदि तुम देखुच योर मंजरा उपरे किए फेमस है निजाम सागर डैम हैदराबाद पाखे ये देख निजाम सागर डैम मंजरा देखुच ये मंजरा है ये किए मंजरा है तार किए अच्छी फेमस द निजाम सागर डैम है निजाम सागर डैम इज लोकेटेड ऑन इट निजाम सागर डैम इज मेनली लोकेटेड ऑन योर मंजरा रिवर ऊपर किए अच्छी निजाम सागर डैम मेजरली है निजाम सागर डैम मन रख यहाँ अच्छा सेम थी गोदावरी पर आम कौन देखा गोदावरी रिवर गला मेजर आम देखिले गोदावरी रिवर है मेजर गोदावरी रिवर है बहुत बड़ रिवर जोटा कि मेजरली जब देखियो आंध्र प्रदेश है मेजरली महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना फ्यू पार्ट्स ऑफ योर मध्य प्रदेश तार जो बेसिन देखियो ओडिशा आल्सो है आउ कर्नाटक आल्सो बहुत बड़ गोटे एरियाटा गोदावरी कवर कर तार गोदावरी बेसिन टा है केमती केमती माने जदि तुम देखियो दिस इज द एरिया जो गोदावरी कवर कर मध्यता बेसिन एरियाटा एति ठीक अच्छे एति एरिया नहीं कि पुणी ओडिशा सादर्न ओडिशा नहीं कि एति सच एन ह्यूज बेसिन्स ऑफ योर गोदावरी दिस इज द बेसिन बेसिन माने कौन तारा ये मुझे कहली गोदावरी बेसिन से कहबी है गोदावरी बेसिन ठीक है बहुत बड़ एरिया गोटे गोदावरी कवर कर बहुत गोदावरी कह जाए है बहुत बड़ रिवर वृद्धा गंगा भी कह जाए गोदावरी ठीक अच्छे नेक्स्ट दैट इज योर कावेरी रिवर जदि कहबी कावेरी रिवर ऑरिजिनेट्स नियर ब्रह्मगिरी हिल्स कौट बाहर ब्रह्मगिरी हिल्स पाखु कावेरी रिवर बाहर है ऑफ कर्नाटका एंड एडजेसेंट वेस्ट टू वेस्टर्न घाट है ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ कर्नाटका बाहर एंड एडजेसेंट टू योर कर्नाटका आल्सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज योर दक्षिण गंगा भी कहा जाए और गंगा ऑफ द साउथ कावेरी कौन कहा जाए दक्षिण गंगा और गंगा ऑफ द साउथ कावेरी है देख रिवर को सब गोटे मार दर्जा दिखाई जमती गोटे मदर तार गोटे सैक्रिफाइसिंग नेचर सो ऑल्सो रिवर ऑल्सो द सेम थिंग रिवर हमको केवल दिए बट इन रिटर्न आम कौन करूँ रिवर को पल्यूट करुचु वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द रिवर एमती बस रे गले जहाँ पाइले दे फोपाड़ दे रिवर ऊपर को तो रिवर रे भी है फिश एक्वेटिक सिस्टम अच्छा जो मैंने से लाइफ अच्छी ओके प्लांट्स एनिमल्स एक्वेटिक सब अच्छा बट वी आर नॉट केयरिंग फॉर देम आम फोपाड़ दूसरे रिवर को पल्यूट कर रिवर पानी को बिना भी आम चली पार जमी मुझे कहबी जमी भुवनेश्वर अच्छी कुआखिया नदी भुवनेश्वर इज एंटायरली रनिंग ऑन द कुआखिया रिवर बट महानदी है कटक और संबलपुर मेनली दौड़ुची तापर भी केते पल्यूट है सो दैट इज व्हाट वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स तो कावेरी देखिले कावेरी रिवर ऑरिजिनेट्स कोठी परीक्षा पचारे ब्रह्मगिरी हिल्स मन रख है समस्त एमन कोठी वेस्टर्न घाट ब्रह्मगिरी हिल्स भी तुम अच्छी कोठी दिस इज आल्सो इन वेस्टर्न घाट ठीक अच्छे वेस्टर्न घाट ब्रह्मगिरी हिल्स को जगह अच्छी इट इज इन द कर्नाटका है कर्नाटका मेन अच्छी ब्रह्मगिरी हिल्स एडजेसेंट टू द वेस्टर्न घाट दिस इज आल्सो कॉल्ड योर दक्षिण गंगा भी कहा जाए है दक्षिण गंगा बिकॉज वेरी इंपोर्टेंट रिवर सेमती द मेजर ट्रिब्यूटरीज आर हेमावती की हेमावती हेरांगी लोकपावनी लक्ष्मण तीर्थ श्रीमसा अर्कावली सुवर्णवती भवानी कबानी एंड अमरावती तार कौन कौन मेजर ट्रिब्यूटरीज हेमावती हेरांगी लोकपावनी लक्ष्मण तीर्थ श्रीमसा अर्कावली भवानी कबानी और अमरावती मैंने मेजरली अच्छा इट फ्लोज थ्रू कौन कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु है कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु है कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज ए लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यू बिटवीन दी स्टेट्स केरला तमिलनाडु आउ कर्नाटका भितर मेजर डिस्प्यूट जदि कह इट इज योर कावेरी रिवर अच्छा ता पूर्व आ गोटे जिन कहबी ये गोदावरी पर आ गोटे जिन छाड़ी दैट इज योर
ये गोदावरी और कृष्णा मझे किए रहा द इठी द कृष्णा है कृष्णा रिवर। अच्छा कृष्णा रिवर कथा जब मुझे कहबी तुम कृष्णा देखुच एंटायरली महाराष्ट्र कृष्णार जब मैक्सिमम फ्लो देखिए महाराष्ट्र आउ तेलंगाना भितर महाराष्ट्र और तेलंगाना भितर कृष्णार मेजर फ्लो है ये मुझे कौन कहबी द कृष्णा कृष्णा है इट ऑरिजिनेट्स कृष्णा ऑरिजिनेट्स कोठी रोची कृष्णा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम है महाबलेश्वर महाबलेश्वर हिल्स है जोटा कि वेस्टर्न घाट रे लाइज इन वेस्टर्न घाट है महाबलेश्वर हिल्स वेस्टर्न घाट रे कोठी इन महाराष्ट्र पुणे पाखरे है महाराष्ट्र महाबलेश्वर कोठी है योर ऑरिजिनेट्स गो टू कृष्णा महाबलेश्वर हिल्स है मेनली वेस्टर्न घाट आउ कोठी एटा मेजरली तुम महाबलेश्वर है तुम योर पर्टिकुलरली पुणे रे वेस्टर्न घाट रे महाबलेश्वर ये देखिए दिस इज महाबलेश्वर देखो ये है महाराष्ट्र में ये पाखे कृष्णा यही जगह पर्टिकुलरली ठीक अच्छे पुना पाखे अच्छा पुणी कौन है कृष्णार है पुणी तुम लिखी कृष्णा कृष्णा is the second largest river in peninsular India. Second largest river, and also among the east flowing river. जितने कृष्णा पर कहे कृष्णा ट्रिब्यूटरी किए द important tributaries of Krishna किए नंबर 1 मुसी भीमा तुंगभद्रा घाट प्रभा मेजर में लिखु माल प्रभा है मुसी भीमा तुंगभद्रा घाट प्रभा माल प्रभा देन 6th रे मुन्नेरू 7th रे जिंजी है एम मेजर मुसी भीमा तुंगभद्रा घाट प्रभा माल प्रभा मुनेरू आउ डिंडी एम मेजर जो मैंने है कृष्णार मेजर इंपोर्टाट ट्रिब्यूटरीज है घाट प्रभा माल प्रभा मेजर ठीक अच्छे या भितर जो तुम कहबी है हैदराबाद सिटी लोकेटेड क्या यही मुसी पाखे द सिटी हैदराबाद
is located on its bank major ठीक अच्छे सेमती पूना है द सेम सिटी पुणे है लोकेटेड ऑन इट्स बैंक कोटा भीमा ठीक अच्छे तो मेजर मेजर एमान हेले पर्टिकुलरली आउ एथिरे जदि मु कहबी कृष्णा ऊपर की अछि फेमस नागार्जुन सागर डैम जदि कहबी कृष्णा ऊपर की अछि मेजर नागार्जुन सागर डैम कौन लिखि परिबी नोट रे द फेमस नागार्जुन सागर डैम located on its on this river located on Krishna ठीक है नागार्जुन सागर डैम फेमस नागार्जुन सागर डैम मेनली यार ऊपर अछि कृष्णा ऊपर तो कावेरी आल्सो वी हैव कंप्लीटेड कावेरी देखलो तुम ब्रह्मगिरी हिल्स ऊपर आ ये रहिला तमरो है ना कृष्णा रहिला तमरो योर महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट प्राय तो तुम गोटे जिन सब देखुच समस्ते गोदावरी भी तुम देखुच गोदावरी कोठी बाहरला त्रयंबकेश्वर हिल्स समस्ते प्राय वेस्टर्न घाट ही समस्ते बाहर प्राय तुम देख गोदावरी हो कृष्णा हो कावेरी तीन टांग पड़ल तीन टांग मेजर समस्ते बाहर कौटू है तुम देखुच है ठीक अच्छे समस्त वेस्टर्न घाट गोदावरी देख ये वेस्टर्न घाट है कृष्णा है पर्टिकुलर कृष्णा जब देखुच ये जगह ये भी वेस्टर्न घाट यहाँ टोटाल एंटायरली है वेस्टर्न घाट ये है कावेरी है ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका दिस इज ऑल्सो वेस्टर्न घाट माने कंप्लीटली देखिए कहबी है वेस्टर्न घाट टा डोमिनेट कर जगह वेस्टर्न घाट ये भी तुम वेस्टर्न घाट ठीक अच्छे तो ये रही तुम मेजर मेजर तुम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ओडिशा रिवर्स गुड़ा जो ओडिशा टिके जोटा कि नेबी ओडिशा रे सही पार्ट रे तुम ओडिशा रिवर गुड़ा करदेवी इनक्लूडिंग महानदी है बाकी सब गुड़ा भी कह महानदी सुवर्णरेखा बैतरणी ब्राह्मणी एगुड़ा सब कह ठीक अच्छे है वर्तमान यहाँ सरला दैट इज एबे आ गोटे इंटरेस्टिंग नुआ पढ़ा दैट इज आमर इकोनॉमिक ज्योग्राफी ठीक अच्छे तुम जेहेतु तुम यहाँ मेजर मेजर सेक्शन जोटा कि परीक्षा सब क्वेश्चन परीक्षा पचारे सो यही चैप्टर गुड़ा तुमको बहुत हेल्पफुल हम सब जगह है इकोनॉमिक ज्योग्राफी जब आम देखा कौन कौन बुझाए मेजर इकोनॉमिक ज्योग्राफी इफ आई से इट इज द मेजर बैकबोन ऑफ कंट्रीज योर इकोनॉमिक ग्रोथ को मिनरल को रिसोर्सेस मेनली इकोनॉमिक ज्योग्राफी को मेनली माने सपोर्ट करे इकोनॉमिक ज्योग्राफी व्हिच पर्टिकुलरली को पार्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफी जदि मैं कहबी है व्हिच आर द मेजर सोर्स इकोनॉमिक ज्योग्राफी रे किए है मैं कहबी को मिनरल रिसोर्सेस which mineral resources mainly है जमती कहबी कोल है नेचुरल गैस कोल है नेचुरल गैस है ठीक अच्छे देन योर फ्यूएल रे जदि मैं कहबी देन न्यूक्लियर फ्यूएल है एमाने इकोनॉमिक रे अपार्ट फ्रॉम मिनरल्स एमाने भी ठीक अच्छे फ्यूएल मिनरल रिसोर्सेस ये मुझे कहीपर कौन मिनरल रिसोर्सेस रे पर्टिकुलरली जदि कहबी दिस इज योर फ्यूएल मिनरल रिसोर्सेस है कोल रहा नेचुरल गैस रहा मेजर फ्यूएल रे फॉसिल फ्यूएल्स न्यूक्लियर भी रहा तो वन बाय वन आम देखा माने केमती आम कंट्री बर्तमान जब मुझे कहबी कोल है एनटीपीसी बर्तमान कौन जो भी आमर
थर्मल पावर प्लांट रहुची ताको मेजर ड्रिवन बाय द कोल्स सो कोल्स जो देखिबो कोल है पर्टिकुलरली बर्तमान स्टिल आज भी इंडिया 65% मोर देन पावर प्रोडक्शन इज फ्रॉम कोल दिस इज अ वेरी ट्रुथ जदि आम रिन्यूएबल सोर्स को जाऊँ बट दिस आर द ट्रुथ है कौन देखिए एनर्जी फ्यूएल रिसोर्सेस जोटा कि पढ़ले कौन देखिए बर्तमान है न्यूक्लियर पावर प्लांट जब मुझे कहबी न्यूक्लियर पावर प्लांट plays a very major role nuclear power plant plays a very major role in your power generation है कौन कहबी played a major role in power generation in India जदि हम जदि कहबी स्टिल है 3% पाखापाखि 3 to 4% जदि कहबी 3% प्लस जदि कहबी है कंट्रीब्यूशन इज देयर ठीक अच्छे 3 to 4% कंट्रीब्यूशन रोज किए न्यूक्लियर पावर मेजर न्यूक्लियर पावर 3 to 4% को जगह ऑपरेटिंग साइट्स न्यू साइट्स यदि देखो ये दिल्ली नरोरा भीमपुर माही बंसवाड़ गोरखपुर है को जगह न्यू साइट्स एगुड़ा सब ओपनिंग साइट्स ऑपरेटिंग साइट्स किए मेजर मेजर आम देखा मेजर ऑपरेटिंग साइट्स किए देखा ये है एगेन मुझे कहबी the establishment of atomic energy institute यदि मैं कहबी establishment of atomic energy institute at Trombay है ट्रम्बे कोठी महाराष्ट्र है establishment of your atomic energy institute at Trombay केबे हेतला in 1954 1954 मसिया रे ट्रम्बे रे प्रथम हेतला है एटा later it was named as BARC भाभा atomic research center BARC माने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन 1967 कौन है दिस इज योर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है बार्क ताको कहा जाए तमे होमी किए थिले मेजर हमर इंडिया रा होमी जहांगीर भाभा मेनली है मेजर किए थिले होमी जहांगीर भाभा जी आमर बार्क किए थिले भाभा एटॉमिक रिसर्च हमर मेजर किए थिले लेट साइंटिस्ट किए थिले एमिनेंट होमी जहांगीर भाभा है मेन थिले जी आमर करथिले कौन पर्टिकुलरली न्यूक्लियर पावर टाकू न्यूक्लियर पावर सेक्टर को ये मेजरली एंकर कंट्रीब्यूशन थिले इज एन ग्रेट साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा इज एन ही वाज एन ग्रेट साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा ठीक अछि द न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इन इंडिया किए है तो आम जानले कौन बार्क हितला प्रथम हितला तमरो एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट जोटा कह जाए AEI आपको शॉर्ट फॉर्म बेले परीक्षा आसते तुम कंफ्यूजन हेनी यहाँ को बेले बेले कौन कह जाए एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट को AEI है ट्रम्बे ये है बार्क तो 1954 रे AEI है तार 13 वर्ष पर बार्क है 1967 ओके कौन देखिए न्यूक्लियर पावर स्टेशन मेजर किए इंडिया रे फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया रे किए परीक्षा पचारे यहाँ कह फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है that is nuclear reactor set up in 320 megawatt in Tarapur 1969 है तारापुर केबे हेतला 320 megawatt तारापुर in 1969 है 1969 रे तारापुर हेतला देन रावत भट्टा ठीक अछि तारापुर ने कोठी 320 megawatt एटा हला तारापुरटा इट इज इन योर महाराष्ट्र तारापुर है तुम कौटी इट इज इन द महाराष्ट्र सेमती रावत भट्टा
है 300 मेगावाट दैट इज इन कोटा राजस्थान को जगह कोटा है कोटा प्रकल्प आम जानी कोटा है कोटा फैक्ट्री गोटे पिक्चर अच्छे तुम देखी है जो कि पिला माने सब आईआईटी प्रिपेयर पे जाउछन कोटा मेजर सो इठी है रावत भट्टा कोटा इन राजस्थान सेमती कल्पकम है दैट इज 440 मेगावाट इन तमिलनाडु कल्पकम कोठी तमिलनाडु रे ठीक अछि नेक्स्ट काकरापाड़ा इन गुजरात गुजरात रे किए काकरापाड़ा राइट देन काईगा इन कर्नाटका कर्नाटक रे किए काईगा नारोरा इन यूपी ठीक अच्छे नारोरा इन यूपी तो महाराष्ट्र है गोटे तारापुर राजस्थान है कोटा तमिलनाडु है कल्पकम काकरापड़ा गुजरात काईगा कर्नाटका नारोरा है यूपी ठीक अच्छे आउ गोटे अच्छी तुम कल्पकम ये देखुच दिस इज कल्पकम है कल्पकम दिस वन कल्पकम इन तमिलनाडु आ गोटे एगुड़ा सब तुम देछि आटलास रे एठी भी देछि आटलास रे बहुत जगह तुम देछि है आटलास रे भी तुम खोजिकी पाई परियो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जोड़ा कि आटलास रे भी कवर होइछि तुमरो मु तुमको जस्ट गोटे मिनिट देखै दोछि को जगह तुम देखिले मैक्सिमम जिनस पाई परियो माइका डोलोमाइट आयरन ओर आउ गोटे जदि तुम देखिए पर्टिकुलरली इट इज योर है जदि आम देखा दैट इज योर कुदानकुलम सेवेंथ जदि कहबी किए 7 नंबर दैट इज योर कुदानकुलम इन तमिलनाडु सेटा भी गोटे आउ गोटे तो ये कौन जाने हमें तमिलनाडु रे 2 नंबर है जदि पचार मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियर को जगह अच्छी इट इज योर इन तमिलनाडु है तमिलनाडु रे केते जानले 2 नंबर ऑपरेटिंग मैं कहबी ऑपरेटिंग है न्यूक्लियर पावर स्टेशन है न्यूक्लियर पावर स्टेशन तमिलनाडु 2 numbers then महाराष्ट्र महा 1 number then कर्नाटका 1 number काईगा सॉरी कर्नाटका पर then your गुजरात also 1 number 5th रे यूपी है 1 number हेगला बे 2 3 4 5 6 आउट की रहिला राजस्थान 6th रे रहिला योर राजस्थान also 1 number हेगला यूपी राजस्थान है गुजरात कर्नाटका महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु सो टोटल हमारे टोटल मिसे के टोटल है टोटल योर 7 नंबर्स है यहाँ मन रखि एटा ऑपरेटिंग एटा जो मुझे लिखली दीज आर ऑल ऑपरेटिंग्स मींस बेसिकली है ऑपरेटिंग से माने आहरी भी बहुत गुडे प्रोजेक्ट होची बट बेसिकली जदि मु कहबी न्यूक्लियर पावर को से बेसी करूना रीजन है कि इट इज बिकॉज ऑफ योर
your because of your and it is hazardous in nature, and it is not friendly, eco-friendly. I mean, say that one hazardous in the sense of it is not environmental, it is not friendly, and also to the human habitations, it is not friendly. That is why these nuclear sites in India, moreover, they are running in a restricted manner. They are always operating away from the your settlements. ठीक अच्छे एटा हला तमरा न्यूक्लियर ऊपर है वर्तमान देखिबा नेक्स्ट एनर्जी की की आसी कोल जेमते न्यूक्लियर गला है ठीक अच्छे न्यूक्लियर गला देन आसिला हमें कोल कोल जदि कथा कहबी वर्तमान है मेजर पावर हमर जदि इंडिया रे देखिबो इट इज ड्रिवन बाय योर कोल इंडस्ट्री कोल है मेजर जे चलाउची सब जिंस कोल फैक्टर ऊपर कोन देखिबा कोन इंडिया जदि देखिबा है कोल माने एटा बेसिकली इट इज एन फॉसिल फ्यूएल कहबी है it is your fossil fuel basically है coal है तुम्हारा fossil fuel the coal deposits in India जदि कहबी coal deposits in India chiefly the Gondwana deposits है जदि मैं कहबी chiefly किए तुम्हारा Gondwana deposits coal deposits है Gondwana deposits among that bituminous grade जदि मैं कहबी bituminous grade are dominant India जदि मैं देखिबी major हमर coal deposits हम पढ़ी कौन कौन दीटा जगह मेनली हुए गंडवाना डिपोजिट्स है गंडवाना कोल्स है इंडिया रे जति हमर जो गंडवाना गोटे है तुम कोन सीरीज अछि गंडवाना कोल है मेजरली इंडिया जो जियोलॉजिकल आज पर जियोलॉजिस्ट जोड़ा कि हम टाइम्स के हिसाब से नबा गंडवाना कोल है जो फॉर्मेशन हेतिला इंडियन कोल्स है सेही है दैट बिलोंग्स टू गंडवाना कैटेगरी है गंडवाना डिपोजिट्स अमंग दैट द बिटुमिनस ग्रेड है बिटुमिनस ग्रेड आर डोमिनेट जते भी अछि ता भितरु है कि बिटुमिनस है ग्रेड आर डोमिनस अगेन बिटुमिनस माने मु कौन कहबी पुणी है बिटुमिनस माने मु कौन कहबी ना चारि वेराइटी रो टाइप्स ऑफ कोल मैंने कहबी जदी टाइप्स ऑफ कोल को वेराइटी कोल अछि वन है योर जदी मु कहबी एंथ्रासाइट then bituminous lignite peat चारि वेराइटी मेजर कोल अछि जदि हम देखिबा हैला सबटु हाईएस्ट ग्रेड रो की लो ग्रेड रो हाई ग्रेड जदि कहबी लो ग्रेड टू हाई ग्रेड एटा देखो लो ग्रेड टू हाई ग्रेड है पीट है सबुठू है कंचालिया कोल माने एते बेसी न थाए आ कार्बन परसेंटेज भी बहुत लिग्नाइट भी है माने रॉ फॉर्म रे टिके माने टिके एडवांस स्टेज रे थाए बट टिके रॉ फॉर्म रे एते मैच्योर न थाए बिटुमिनस मैच्योर हेई थाए बट अधिक सबुठू जदी जदी देखिबो है भलो कोल सबुठू है सेटा हला तमरो एंथ्रासाइट है एटा कौन डिपेंड करे योर कार्बन परसेंटेज पीट रे कार्बन परसेंटेज कम एंथ्रासाइट रे अधिक एंथ्रासाइट ऊपर गले कौन हो डायमंड हे ठीक अछि सो कोल रो ई वेराइटी कोल्स जोटा कि लो ग्रेड रो हाई ग्रेड तमे जाउछो इंडिया रे जदी हम देखिबा ए ग्रेड ता बिटुमिनस ग्रेड ता हमर सबटु मिलुछ हमर एंथ्रासाइट ता बेसी नाही हैला बहुत कम जगह रे अछि जम्मू कश्मीर रे अछि कालोल गोट जगह रे है बिटुमिनस है मेजर ये जगह रे तो ये देख को जगह रे इंडिया मेजर मेजर अच्छी ये भल भाव इंडिया मेजर कोल डिपोजिट्स कोठी जदि मैं कहबी है ब्रह्मपुत्र मेन मेन किंटे रिवर रे अछि किछटा रिवर रे गोटे तुम ये ब्रह्मपुत्र रिवर ऊपर अच्छी इंडियन कोल ऊपर को रिवर रे मेजर है रिवर ब्रह्मपुत्र गोटे है को रिवर्स गोटे है नंबर ब्रह्मपुत्र रे सेकेंड है तुमर ये देखिए दैट इज दामोदर है दामोदर ऊपर गोटे अच्छी यहाँ थर्ड रे इट इज योर है महानदी ये अच्छे आमर किए
महानदी ऊपर तीन टा 3 नंबर फोर्थ रे जदि देखियो मेजर दैट इज योर ये गोदावरी तो परीक्षा पढ़ले तुम कौन लिखो चारिटा मेजर रिवर जे कि इंडिया कोल को माने कोल डिपॉजिट्स एठी दिस रिवर वैलीज आर मेनली कंस्टिट्यूट your coal deposits one is your in northeast that is your Brahmaputra second one is your Damodar third is your Mahanadi fourth is your Godavari है so जदि हम साउथ रू नॉर्थ जीवा गोदावरी देन महानदी देन दामोदर देन योर ब्रह्मपुत्र ठीक अच्छे ये चारिटा रिवर दे मेजरली यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द गंडवाना कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया वन बाय वन देखिए तो हमें जान ले बिटुमिनस ग्रेड है ना डोमिनेंट द बिटुमिनस ग्रेड जब मैं कहबी द बिटुमिनस ग्रेड इज फाउंड इन द स्टेट को स्टेट रे बिटुमिनस ग्रेड मेजरली फाउंड होची देखिबा हला प्रथम हला झारखंड झारखंड रे तुम कहबी इंपोर्टेंट कोल फील्ड्स हियर आर किए बोकारो झरिया डाल्टनगंज हला की कहली बोकारो झरिया आउ डाल्टनगंज गिरिडी राजमहल है ए माने बोकारो एठी भी आ गुड जिंस हम लिखिबी किए एठी तमर रहिला धानबाद आल्सो देयर धानबाद है धानबाद इज आल्सो देयर एंड राजमहल दिस मेनली कवर्स योर दामोदर वैली एरिया मेजर कोटा करची दामोदर वैली एरिया तमे एठी भी देखि परिबो है दामोदर वैली एरिया दिस एरिया दामोदर वैली एरिया राइट झारखंड मेजर है झारखंड रे जदी कहबी सेमती ओडिसा रे किए आसी इंपोर्टेंट कोल्ड फील्ड्स हियर किए अगेन दामोदर वैली रे ताने महानदी एरिया रे किए आसी आर तालचेर तालचेर आसला हमर ठीक अछि तालचेर आसला ईब रामपुर ईब बेला तालचेर माने हमर को जगह नेली एठी अनुगुल ढेंकानाल बेल्ट है अनुगुल ढेंकानाल देन ईब झारसुगुड़ा देन रामपुर है रामपुर जदि नेबी ईब झारसुगुड़ा देन एट देखो तुम तालचेर से ठीक अच्छे रामपुर माने से संबलपुर पखापाखि है संबलपुर संबलपुर एरिया रे तापर कोन लिखली दो तालचेर हैज ह्यूज कोल रिजर्व्स है तालचेर हैज ह्यूज कोल रिजर्व्स बट आर हैविंग लो ग्रेड लिग्नाइट जदि मु कहबी तालचेर भी जदि अछि तमरो ह्यूज कोल रिजर्व तालचेर रे बट दे आर हैविंग लो ग्रेड योर लिग्नाइट पर्टिकुलरली तालचेर रे अछि है लो ग्रेड इट लिग्नाइट होबनी इट लो ग्रेड बिटुमिनस सॉरी है लो ग्रेड बिटुमिनस कोड पाउचंदी तमे तालचेर रे पाउच है द कोल रिजर्व्स इन ओडिशा इज मेनली कवर्स द महानदी वैली एरिया को जगह रे मेनली देखा होची महानदी वैली एरिया रे कोल टा हमर देखा होची तमर ए एटलास रे तमे देखियो एथरे तमर क्लियरली एटी मेंशन अछि है दिस पेज 47 पेज रे ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलास रे एटी तमर क्लियरली दिखे को एरिया देखुछ पूरा महानदी वैली एरिया एटी बोकारो झरिया गिरिडी राजमहल ये आगोटे जिनस ऊपर आगोटे मुझे छाड़ी गली है तुम बोकारो हाँ अच्छी धानबाद मुझे लिखली धानबाद डाल्टनगंज सब जंग तुम देखियो जदि मुझे तुमको सजेस्ट करी पॉलिटिकल फिजिकल दीटा मिसेक पढ़ो इट वुड बी मोर हेल्पफुल टू यू ठीक अच्छे नेक्स्ट जीवा तो एंथ्रासाइट कोल तुम देख लो इट इज सब हाईएस्ट ग्रेड देन बिटुमिनस देन लिग्नाइट पीट इना पुणी देखा आहरी कहबी मु तो यहाँ तुम देख लो पर्टिकुलरली ये देखी देख तालचेर देछि है छत्तीसगढ़ रे कोरबा तुम देखा है वन बाय वन पुणी सेमती मध्य प्रदेश रे किए आछि मेजरली है
मध्य प्रदेश में देखुची मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दुईटा नब कहीं मध्य प्रदेश आगुरी सिंगल थिला है छत्तीसगढ़ जो 2000 मसीह छत्तीसगढ़ न्यूली फॉर्म्ड है मध्य प्रदेश रे बहुत सारा कोल ब्लॉक है माने भी मध्य प्रदेश रे भी अच्छी आउ छत्तीसगढ़ रे भी अच्छी बट मेजोरिटी तुम छत्तीसगढ़ रे अच्छी देखिबा कौन छत्तीसगढ़ देखिए यदि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रे इंपोर्टेंट कोल फील्ड्स हियर आर के सिंगरावली है सिंगरावली कोल फील्ड छिंदवाड़ा सतपुरा are all are in Madhya Pradesh है basically सिंगरावली छिंदवाड़ा and सतपुरा just look at here देखो ये सिंगरावली then छिंदवाड़ा and सतपुरा है मैक्सिमम देखो सिंगरावली योर छिंदवाड़ा and सतपुरा तुम्हें केमती खाली गोटे जगह जब तुम न पाच you have to look into your also the other side मैं आप जब देखिबा here ये देखो मध्य प्रदेश ये भी तुम कंपेयर कर मध्य प्रदेश ठीक अच्छे शाहपुर यही जगह भी तुम कर दुईटा पेज रे 47 पेज आउ नहीं तुम कंपेयर भी कर दिस इज द पेज ठीक अच्छे सेमती छत्तीसगढ़ कोलफील्ड किए कोलफील्ड कवर्स योर कोरबा मंद रायगढ़ एंड हासदो है कोरबा मंद रायगढ़ एंड हासदो and both the states coalfield lies at महानदी रिवर वैली माने समस्त तुम देखियो यदि कोडा कोडा कोरबा मंद रायगढ़ एटी तुम देखुचो है एटी जदि देखियो एटी कोरबा देची ठीक अछि दिस इज कोरबा मंद रायगढ़ जस्ट लुक एट हियर कोरबा रायगढ़ एटी देची कोरबा इज हियर छत्तीसगढ़ कोरबा है कोरबा मंद रायगढ़ देखा ये बेल्ट है पूरा कोरबा मंद रायगढ़ और भी तुम देखो दिस इज आल्सो ये भी देची कोरबा मंद रायगढ़ है एटा गोटे बेल्ट है मंद रायगढ़ इज ए बेल्ट दिस इज ए बेल्ट है वन स्ट्रेच बेल्ट है वन स्ट्रेच बेल्ट एंड हासदो है गोटे कौन हासदो गोटे भी रिवर देखा हासदो रिवर तुमको कहूँ कौन हासदो है महानदी गोटे ट्राब्यूटरी जानी तुम हासदो बेल्ट हासदो एरिया हासदो गोटे डिस्ट्रिक्ट भी है दिस इज आल्सो ए प्लेस आल्सो ए ट्राब्यूटरी ऑफ महानदी ए ट्राब्यूटरी ऑफ महानदी है ट्राब्यूटरी ऑफ महानदी हासदो की गोटे मेजर ट्राब्यूटरी महानदी गोटे मेजर ट्राब्यूटरी है हासदो वेस्ट बंगाल किए रानीगंज एरिया इज द मेजर कोल फील्ड while Darjeeling and Borjora are the small coal fields. रानीगंज है किए रानीगंज इज द मेजर कोल फील्ड वेस्ट बंगाल तुम देख रानीगंज ब्रिटिश माने आसीते प्रथम रानीगंज एरिया रे से प्रथम कोल फील्ड को देखते है इट्स अ मेजर कोल फील्ड रानीगंज एरिया है मेजर कोल फील्ड while Darjeeling and Borjora are the small coal fields. Darjeeling ता है बहुत स्मॉल है तुम ये देखुच रानीगंज ठीक अच्छे रानीगंज एरिया रे है मेजर कोल फील्ड आ गोटे किए है आल्सो किए जीव आ गोटे रानीगंज आ गोटे मुझे छाड़ी आसानसोल है आसानसोल रे भी कोल फील्ड इटे आसानसोल रे भी मेजर आसानसोल रे भी है then Darjeeling Borjora the small coal fields mainly lies in the Damodar river valley basins Damodar river valley basins रे माने रहउछन कि रानीगंज योर आसानसोल then Darjeeling and Borjora माने मेजरली रहउछन है वेस्ट बंगाल रे तमे देखिबो बहुत सारा मूवी भी अछि रानीगंज रे केमती प्रथम ब्रिटिश आसी प्रथम सेठी करथिले है दिस इज वेरी नाइस है बहुत बढ़िया से जगह रे है दिस इज योर वन ऑफ द oldest coal field in India है oldest coal माने ड्यूरिंग जब मैं कहबी ड्यूरिंग ब्रिटिश colonial time period है ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पीरियड रे मेजरली एटा हेतला है दिस पर्टिकुलर पार्ट ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पीरियड
सेमती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रे किए किए एटा तमर गला सो एठी हम जानले किए एई पार्ट रे हमरा आसिला किए महानदी एठी आसिला महानदी एपटे आसिला हमर किए दिस इज योर दामोदर देखि दोछ दामोदर रिवर है ना एटला तमरो महानदी रिवर ऊपरे ओडिसा रे एठी भी हमर के आसला दिस इज आल्सो महानदी गेला दामोदर है दामोदर गला महानदी पुणी महानदी है देन दामोदर तापर आस पुणी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अगेन जेमती छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश कथा कहली सेमती तेलंगाना आउ आंध्र प्रदेश रे भी सेम थिला है तेलंगाना 2015 मसिया रे है मोस्ट 1 जनवरी 2015 मसिया रे it is it was becoming an independent state है 2014 सेप्टेम्बर लास्ट बड़ को एटा डिक्लेयर है दैट तेलंगाना विल फॉर्म इन सेपरेट स्टेट फ्रॉम आंध्र प्रदेश है तो तेलंगाना फॉर्मेशन होला पर कोन होला पुणी पुणी बहुत सारा कोल ब्लॉक से माने कोन होचंदी आज भी एकाठी से माने करचुंदी फॉर एग्जांपल आ भीतर तेलंगाना रे बेसी अछि जेमि कहली द इंपोर्टेंट कोल फील्ड्स लोकेटेड आर इन सिंगरेनी है एंड कोथागुंडम तंडूर कोलफील्ड एटा गोटे पैच मुझे तुम देखिए गोदावरी सिंगरेनी कोथागुंडम तंडूर ऑल लाइज इन द गोदावरी वैली रीजन समस्त देखो ये गोदावरी वैली रीजन रे अछन तुम देखुछ हैला तंडूर हैला सिंगरेनी एटी तुम देखुछ सिंगारेनी पर्टिकुलरली हैला जोड़ा कि तुमरो आंध्र प्रदेश माने एटी देखियो सिंगारेनी हैला सिंगारेनी देन योर तंडूर and Kothagundam. एमाने समस्त गोटी जगह रे लाइज इन गोदावरी रीजन दे मेजरली लोकेटेड एट तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश से मेजर कोठी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रे मेजरली लोकेटेड हला दे मेजरली लोकेटेड इन द तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश सिंगारेनी कोथागुंडम एंड तंडूर हला सिंगारेनी कोथागुंडम एंड तंडूर बेसिकली आकु जदि म कहबी हला आ भितरे सबुटू हला मेजॉरिटी कोल फील्ड्स कोठी अछि तेलंगाना रे है तेलंगाना रे कौन अच्छी मेजर कोल फील्ड्स आर लाइज इन तेलंगाना मेजर कोल फील्ड्स लाइज इन तेलंगाना आंध्र प्रदेश रे कम सिंगरेनी सिंगरेनी रेटी कौन अच्छी पर्टिकुलरली जब तुम कहबी अगेन दिस इज आसला तुम गोदावरी ये जमी कहले महानदी ये सेमती गोदावरी रिवर वैली ऊपर आसला ठीक अच्छे अगेन तो सिंगरेनी रे सबुठ पुराना कंपनी जमती आमर किए कोल इंडिया है सब पुराना जमी मुझे कहली कोल इंडिया इंडिया रे किए CIL किए कोल इंडिया लिमिटेड ठीक अच्छे कोल इंडिया लिमिटेड है रहा सेमती CCL कौटी तेलंगाना दैट इज योर सिंगारेनी कोलियारी कोल लिमिटेड SCCL सिंगरेनी सिंगारेनी कोलियारी कोल लिमिटेड है कौन देखिए इतरे सबुठ पुराना माने इवन इफ जदि कहबो एटा हला 150 है पाखापाखि 155 इयर्स ओल्ड ठीक है मोर देन दैट 155 इयर्स ओल्ड सिंगारेनी कोलियारी कोलफील्ड लिमिटेड तो ये देखिले तेलंगाना रे है तो सिंगरेनी कोथागुंडम आज भी जो तुम बाइफर्केशन है तेलंगाना तेलंगाना मैक्सिमम बिजली प्रोडक्शन जो पावर प्रोडक्शन होची तेलंगाना गोदावरी है सेमती सो जानले ये कि आंध्र प्रदेश आउ ए मैप रे तुम क्लियरली देखुछ आंध्र प्रदेश रे टिके कम अच्छी बट मैक्सिमम है तुम कोटी तेलंगाना रे है डिविजन है पर तेलंगाना रे मैक्सिमम तुम कोल रही अगेन दे ऑल कम्स इन योर गोदावरी है रिवर ऊपर
सेमती आसला कि महाराष्ट्र देन नेक्स्ट आसला महाराष्ट्र महाराष्ट्र कोठी द इंपोर्टेंट कोल फील्ड्स आर इन द चंदावार्धा हला चंदावार्धा एंड कामती बांदेर दे चीफली लाइज along the गोदावरी वैली एरिया मोस्टली से माने कोठी लाइज करछंती गोदावरी वैली एरिया रे से माने लाइक करछंती एठी हला को जगह रे पर्टिकुलरली वार्धा वैली वार्धा हला गोदावरी रो ठीक अछि ट्रिब्यूटरी वार्धा रिवर हला कोन गोदावरी रो ट्रिब्यूटरी दिस इज एन ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी मन रख ठीक अछि हला ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी वार्धा वार्धा हला बहुत रिच कोल अगेन मन रख सब जंग बिटुमिनस ग्रेड रो लिग्नाइट रो मिलुचंते माने टोटल हला ता छडा अलगा बेसी न वार्धा तो मेटी देखुचो महाराष्ट्र ए पार्ट रे देखुचो वार्धा वैली लिखा आइछि वार्धा वैली एठी वार्धा वैली एरिया अच्छा ता पूर्वरु मुडी गोटे जिनस कहबी हला एठी तमे देखुचो नईविली गोटे लिखा आइछि तमिलनाडु रे बहुत जगह दिया है तमिलनाडु है ये मुझे लिखी दूसरी नईविली एरिया है नईविली ठीक अच्छे नईविली एरिया एटी भी तुम देखुच नईवेली एरिया नईविल एरिया देखा है लोकेटेड एट तमिलनाडु है लोकेटेड एट कोटी तमिलनाडु एरिया रे है तमिलनाडु है स्टेट लोकेटेड इन तमिलनाडु particularly this area or coal field is having rich lignite डिपोजिट्स किए माने रिच लिग्नाइट डिपोजिट्स हमारे मेजरली रिच लिग्नाइट डिपोजिट्स है एटी मिले कोटी तमिलनाडु मेजरली रिच लिग्नाइट डिपोजिट्स here found here ठीक अच्छे again the government of India माने GOI has established नईविली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन परीक्षार पचार गोटे नईविली लिग्नाइट कॉर्पोरेशंस जोटा कि हम कहूँ NLC नईविली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ठीक अच्छे इन तमिलनाडु है तमिलनाडु नईविली लिग्नाइट corporations which is a public sector enterprise public sector unit ठीक है so this is all about neighborly lignite corporation जोटा कि तुम देखुच है मैक्सिमम यही जगह ही तुम your productions होची neighborly lignite corporations रो your basically lignite lignite तरल कोइला एई जगह से देखुचंती lignite is not a matured coal but mostly in a liquid form of coal है जोतरे कि mainly जिंदल
मोस्टली जिंदल इज डूइंग दिस वन जिंदल टू देखा देखी करके वर्तमान योर आदित्य बिरला हो कि योर एनटीपीसी हो कि टाटा स्टील हो से टेक्नोलोजी यूज कर ठीक अच्छे ओके है नई बिल कॉर्पोरेशन आम जानले कि सीआईएल आउ ये दिस इज ऑल टोटल जोटा कि तुम जान नॉर्थ साउथ रे अगेन आउथरे समरी कर दूची कि नईवेली है तमिलनाडु है नईवेली एनएलसी नईवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन जेटी तुम देख लो एनएलसी है ये तुम गोदावरी आंध्र प्रदेश आउ महाराष्ट्र को मेन करुच्ची दिस ये कोल गोदावरी जदि नब गोदावरी 3टा स्टेट को मेन लिखुची तुम तेलंगाना आंध्र प्रदेश आउ योर महाराष्ट्र ये है तुम पर्टिकुलरली ये जब देख ठीक अच्छे योर कावेरी जोटा कि लिग्नाइट तुम रोचे महानदी देखुच किए किए ओडिशा छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश दामोदर है तुम झारखंड आउ वेस्ट बेंगल एंड वेयर आसाम रे टोटल तुम एंटायरली योर ब्रह्मपुत्र है एंटायरली जब तुम देखुच ब्रह्मपुत्र सो ये मेजर मेजर कोल डिपोजिट्स जोटा कि इंडिया यहाँ नुहे तुम जम्मू काश्मीर मिलनी कि गुजरात किसी जगह मिलनी कि है अल्प अल्प जगह बट मेजरली जो देखिए है मेजर कोल डिपोजिट्स आमर जदि अच्छी 90 है मोर देन 95% ताले ए एरिया रे मेजरली मैंने ए एरिया रे से देखुं ठीक अच्छे तो एगेन मुझे कहबी है आमर पीडब्ल्यू तरफ जो भी गोटे रेवोल्यूशनरी स्टेप निहाई है फॉर एक्सेस फॉर टू एजुकेशन इन एंड वेरी अफोर्डेबल रेट खास कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके दबा गोटे स्वप्न समस्त तो से जो है तो मेनली कलिंगवीर बैच जोटा 699 रे सक्षम ओसीएस बैच में प्रिलिम्स मेंस इंटरव्यू सब जिन पाइब है 4499 आ गोटे क्लियर 360 जो तुम प्रिलिम्स टेस्ट दब है से मेन्स लेखा देली ता भी इवैल्यूएट हम प्लस इंटरव्यू गाइडेंस पाइब से अनदर है लेस देन 2000 तो जदि 6500 ये कहली एति प्लस 2K तो पाखापाखि तुम जदि मु टोटल नेबी 6.5K रे तमे टोटल पाउच फिल्म इंटरव्यू है मेन्स प्रिलिम्स प्रिलिम्स माने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड प्रिलिम्स मेन्स और इंटरव्यू सब जिन एथरे पछ इट्स अ वेरी गुड लाइफ चेंजिंग इवेंट okay definitely it will be helpful those who are having माने इकोनॉमिकली जोटा कि वेरी वाइबल फॉर एवरीवन कैन अफोर्ड दिस वन सेमती विजय अलग अलग बैच भी चलते विजय बैच 999 रे देन ओडिशा डिस्ट्रिक्ट पुलिस दिस इज आल्सो जूनियर क्लर्क सी भी 1299 देन ओडिशा एग्जाम्स पैक 4999 बहुत जिन अवेलेबल तुम कर परियो देन दीक्षा बैच आल्सो 1999 हैला सो दीस आर द ऑल थिंग्स वन कैन अवेल दैट वन ओके so thank you all of you we'll meet again thank you for have a good day thank you we'll continue with our this sessions economic geography today we'll go for the economic geography part we'll cover the economic geography part of India this is a very important part जदि हमें देखिबा before that मैं तमन केटा कहक चाहिए फिजिक्स वाला तरफ रो पीडब्ल्यू तरफ रो we have got very decisive steps steps जदि हमें देखिबा we are providing very affordable price रे कलिंगवीर बैच जोटा कि 699 रे हमें प्रोवाइड कुछ ओनली एंड सक्षम ओपीएससी बैच रे 4500 रे हमरो प्रीलिम्स कम्स जोटा कि ओसीएस मेंस प्रीलिम्स कम मेंस 2024-25 एथरे गोटे क्लियर 360 अछि जोथरे कि तुमको एडिशन हबो क्लियर 360 रे जो कि तुम प्रिलिम्स नॉट ओनली द प्रिलिम्स मेंस जोटा कि प्रिलिम्स रे और मेंस रे तुमरो लिखी की पेपर इवैल्यूएशंस प्लस योर गाइडेंस फॉर योर इंटरव्यू आल्सो दैट आल्सो यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस बैच है सक्षम बैच इज वेरी इंपोर्टेंट जोटा कि बाहर तुम देखियो इट इज मोर देन lakhs of rupees they are taking but here only है less than your 7000 also 6500 रे तुम एंटायरली पाउछो सो इट्स अ वेरी रेवोल्यूशनरी स्टेप्स टेकन विजय बैच ओसीएस प्रीलिम्स 999 रे देन ओडिशा डिस्ट्रिक्ट पुलिस बैच ओडिशा एग्जाम्स महापैक 4999 इथरे सब तुम 2.0 सब जिन तुम इंक्लूड आसुरे देन दीक्षा बैच 1999 इथरे भी रहउची राइट तो लिंक भी अच्छी मझे मझे सेटा मु कहबी इकोनॉमिक ज्योग्राफी जदि हम देखिबा इकोनॉमिक ज्योग्राफी रो क्वेश्चंस वेरी ऑफन दे आर आस्किंग फ्रॉम द इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्वेश्चंस जोथरे कि तमरो मेजर पार्ट तमरो कवर हो इकोनॉमिक ज्योग्राफी रे देखिया वर्तमान को जगह रे हमर कवर रहउची पर्टिकुलर इकोनॉमिक ज्योग्राफी रे
खाली आम कंटिन्यू करते पढ़ी आमर योर कोल्स है यूरानियम कोल कोल आम जानते बर्तमान आज जाना पेट्रोलियम पेट्रोलियम विषय यदि हम जाना जियोलॉजिकली इंडिया इज नॉट ब्लेस्ड विथ योर पेट्रोलियम रिजर्व्स बट को जगह अच्छी पेट्रोलियम रिजर्व्स जदि हम देखा बॉम्बे हाई है मुंबई हाई रे एठी ठीक अच्छे मुंबई हाई बॉम्बे हाई रे हमर अच्छी पेट्रोलियम रिजर्व्स जदि मैं कहबी मुंबई हाई पेट्रोलियम रिजर्व्स अच्छी प्लस जदि हम देखा है और एठी ब्रह्मपुत्र बेसिन्स है ब्रह्मपुत्र बेसिन्स रे भी है एठी भी अच्छे ब्रह्मपुत्र बेसिन्स और मुंबई हाई है यही जगह तुम बेसी पाइबा तुम है पेट्रोलियम रिजर्व्स है जियोलॉजिकली आमर ब्रह्मपुत्र रे इनलैंड भितर जदि लैंड भितर देखिबा ताले एटा ब्रह्मपुत्र बेसिन्स आ जदि हम एपटे देखिबा ताले सी भितर देन इट इज योर ब्रह्मपुत्र देन इट इज योर मुंबई हाई जोटा कि अरेबियन सी रे दिस इज योर अरेबियन सी है अरेबियन सी रे एटा आसी बेसिकली ठीक अच्छे सो बर्तमान जदि देखिबा जानिबा कोन इन इंडिया ऑयल वाज डिस्कवर्ड इन दिग्बोई कोठी हेतला ऑयल वाज डिस्कवर्ड इन दिग्बोई दैट इज द अपर आसाम एरिया है अपर आसाम एरिया रे मेनली ऑयल डिस्कवर्ड हेतला इन 1890 1890 मसिया रे बट इन 1866 1866 मसिया रे वेल आर ड्रिल्ड इन अपर आसाम वैली कोठी डिस्कवर हेतला अपर आसाम वैली रे फॉर एक्सप्लोरेशंस ऑफ योर पेट्रोलियम है जदि हम कहबा को जगह रे 1890 रे बट इन 1866 oil was drilled in the upper Assam valley for the explorations of petroleum right ठीक अच्छे oil was discovered 1890 रे हेतला then but in 1866 well was discovered in the upper Assam valley for the explorations of petroleum दिग्बोई परे ओडी हेतला upper Assam है तो प्रथम जदि हम देखिबा कि पर्टिकुलरली ब्रिटिश एरा टाइम रे प्री इंडिपेंडेंस टाइम रे जिनसरा दिग्बोई रे मेजरली हेतला दिग्बोईटा कोठी है आसाम रे देखुछ एठी दिस इज योर दिग्बोई ए जगह हला तमर दिग्बोई है आसाम रे अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल फील्ड इन इंडिया कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ ऑयल जदि मैं कहबी ऑयल इज बीइंग कैरिड इन द फॉलोइंग स्टेट्स कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशंस को जगह रे आसाम रे को जगह रे इट इज दिग्बोई नाहरकटिया शिवसागर है दिग्बोई नाहरकटिया शिवसागर डिब्रूगढ़ नूनमती है दिग्बोई नाहरकटिया शिवसागर डिब्रूगढ़ नूनमती नूनमती जोटा आज का डेट रे गुवाहाटी भी सेम नूनमती एंड गुवाहाटी आर द सेम ठीक है नूनमती एंड गुवाहाटी आर द सेम देन बंगाईगांव एंड नुमालीगढ़ है बंगाईगांव एंड नुमालीगढ़ जदि देखियो आटलास रे जदि तुम देखुछ इट इज बी आल्सो क्लियर ठीक अच्छे ये तुम देखुच गुवाहाटी मन रख गुवाहाटी और नूनमती दिटांग एका दिस इज गुवाहाटी है गुवाहाटी एंड नूनमती आर द सेम है आउ बंगाईगांव सब जगह बंगाईगांव ना ये क्लियरली देखौची देखुछ दिस इज बंगाईगांव है बंगाईगांव ये जगहटा ठीक अच्छे एटा तुम कौन अच्छी है ऑयल फील्ड अच्छी एंड नुमालीगढ़ आल्सो दिस आर द आसाम जदि देखिबो ब्रिटिश माने जेतरे आसीथिले आसाम हला सबटु ओल्डेस्ट हला एठी प्रथम तमरो हला आसाम रे ही तमरो मेजर हेतिला ऑयल एक्सप्लोरेशन फर्स्ट इंडिया ता परे तमरो जाई कि हला कोठी अरे माने मुंबई हाई रे एटा तम मन रखियो प्रथमे मुंबई तमरो दिग्बोई परे तापर एटा अच्छा एठी यदि हमें देखिबा होरी पुनी कोन कोन अछि नेक्स्ट जदि देखिबा कि गुजरात रे सेमति कोठी गोटे गला तमर कोठी आसाम पर आसला कोठी गुजरात रे अंकलेश्वर कालोल दहेज हैला अंकलेश्वर आसला देन कालोल दहेज बारकोल कोयाली खेड़ा मेहसाना और लुनेज को जगह रे हैला अंकलेश्वर आसला कालोल दहेज बारकोल कोयाली खेड़ा मेहसाना और लुनेज ये सब एरिया है तुम मेजर एरिया मन रखियो तुम केमती क्वेश्चन पचारे क्वेश्चन तुम मोस्टली दे देथिबे कॉलम ए कॉलम बी करके और एल्स गोटे एरिया देथिबे सेटा को तुमको चेक करिया पड़ियो को जगह एटा रेफर होउची पर्टिकुलरली हैला नेक्स्ट देखिए महाराष्ट्र के द बॉम्बे हाई
जदि नीलम ऑयल फील्ड है बॉम्बे हाई रे किए दैट इज द नीलम ऑयल फील्ड बॉम्बे हाई नीलम ऑयल फील्ड सिचुएटेड है महाराष्ट्र गुजरात गला आसाम गला गुजरात गला महाराष्ट्र कोठी है नीलम ऑयल फील्ड तक कह जाए मन रखियो बॉम्बे हाई इज आल्सो नोन एज नीलम हाई ऑयल फील्ड है बॉम्बे हाई इज आल्सो नोन एज योर नीलम ऑयल फील्ड आपको भी कह जाए सेम बॉम्बे हाई इज आल्सो नोन एज योर नीलम ऑयल फील्ड है नीलम ऑयल फील्ड भी कह जाए इट इज सिचुएटेड 170 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ मुंबई है नॉर्थ वेस्ट ऑफ मुंबई रु इटा सिचुएटेड अच्छी नॉर्थ वेस्ट ऑफ मुंबई मैक्सिमम प्रोडक्शंस ऑफ ऑयल इन इंडिया आर फॉर्म्ड हियर एंड ऑलमोस्ट है एंड आल्सो नेचुरल गैस प्रोड्यूस्ड हियर जदि मैं कहबी एठी किए किए मैक्सिमम ऑयल प्रोडक्शन जदि मैं कह यही जगह सबुठ बेसी ऑयल प्रोडक्शन से किए किए अच्छी एथिरे ओएनजीसी हेल्प करुच्ची आईओसीएल मेन ओएनजीसी और आईओसीएल रो जॉइंट वेंचर अच्छी पर्टिकुलरली है ओएनजीसी और आईओसीएल रो जॉइंट वेंचर अच्छी जेवी तो से कौन मैक्सिमम इंडिया जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होची हमर एई जगह ही तुम मेजरली होची ठीक अच्छे ओएनजीसी और आईओसीएल ठीक अच्छे पुणी है नेचुरल गैस भी कौन होची तापर भी तुम नेचुरल गैस प्रोडक्शंस भी ए जगह होची नेचुरल गैस भी प्रोडक्शंस तुम ए जगह होची along the east coast region along the east coastal region जदि मैं कहबी it is the Krishna Godavari basins है जोटा कि कहउची कृष्णा गोदावरी बेसिन्स दैट इज रावा फील्ड रावा ऑयल फील्ड तक कहउची कृष्णा गोदावरी बेसिन्स रे कोन अछि मन रखो रावा ऑयल फील्ड तो एटी तमे दुईटा जिंस मन रखो है तमे कवर कलो आसाम गुजरात गुजरात पर देन वी हैव कवर्ड आल्सो महाराष्ट्र महाराष्ट्र जोटा कि मुंबई हाई दैट इज आल्सो कॉल्ड योर नीलम ऑयल फील्ड नीलम एंड रावा ऑयल फील्ड जोटा कि केजीबी बेसिन को जाए केजीबी बेसिन कहउची है एटी जैसा देखो ठीक अछि दिस इज योर केजीबी बेसिन्स कृष्णा गोदावरी बेसिन्स एटा को कहउची है ऑयल फील्ड कोठी दिस इज कहउची केजी बेसिन केजीबी कहउची केजी बेसिन माने कृष्णा गोदावरी बेसिन्स वी कैन से कृष्णा गोदावरी बेसिन्स है कृष्णा गोदावरी बेसिन्स एथरे भी तुमरा मिलुची देयर इज वन केस यू नो प्रीवियसली जोटा कि वाईएसआर रेड्डी है से सही समय हेइतला जतरे रिलायंस संगे तंगर वाज अ बिट रिलक्टेंट टू देवा पई बट तापर इवेंचुअली सेल वाला वर्तमान एटा ऑन ऑपरेशन केजी बेसिन इज ऑपरेशन वर्तमान रिलायंस र मेन अछि केजी बेसिन इज ऑन ऑपरेशन है ऑयल एटी एक्सप्लोरेशन होची है कृष्णा गोदावरी एटी देखियो एटी कौन देछि बेसिन्स विथ commercial productions and oil, then basins with known occurrence oil, then coal and lignite field particularly है coal and lignite field इस जगह ठीक अच्छे coal and lignite field सेमती along the east coastal region जो तुम कहली it is the Krishna Godavari basins है रावा oil field, then नारीमनम है नारीमनम ऑयल फील्ड नारीमनम ऑयल फील्ड कहबी नारीमनम ऑयल फील्ड इन तमिलनाडु को ऑयल फील्ड अछि इट इज योर नारीमनम है इट इज योर नारीमनम ठीक है तमिलनाडु जो ऑयल फील्ड कह जाए नारीमनम ऑयल फील्ड सेमती राजस्थान रे पेट्रोलियम एंड गैस फील्ड्स राजस्थान जो देखिबा राजस्थान रे भी किछि कंसीडरेबल किछि भी अल्प डिपोजिट अछि राजस्थान रे हला जदि एटी देनी एई जगह तमरा नेचुरल गैस एटी पर्टिकुलरली राजस्थान दिस कम्स पार्ट योर जैसलमेर पाखरे तमे देखिबो एई जगह तमरा राजस्थान रे अछि एटी जे मु कहबी जैसलमेर हला जैसलमेर आउ प्लस बार्मर एरिया है जैसलमेर और बार्मर एरिया रे तमरा एई जगहटा पाइब मेनली ए डेजर्ट है केमती तमे देखियो एटी तमे देखुचो दिस एरिया जैसलमेर बार्मर एटी देखुचो राजस्थान पूरा थर डेजर्ट भितर ही अछि जैसलमेर बार्मर एई जगहटा पूरा तमर देखो जैसलमेर बार्मर
है तो ये कौन देखले पेट्रोलियम एंड गैस फील्ड आर आल्सो फाउंड इन जैसलमेर एंड बार्मर एरिया ऑफ राजस्थान है जैसलमेर और बार्मर एरिया ऑफ राजस्थान रे भी तमरो एठी मिलुची पेट्रोल डिपोजिट काहे कि जेतले हमरो जदि हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल रे जिबा जियोलॉजिकल टाइम स्केल को आजे कि एई जगह रे तमरो पैलियोजिक टाइम रे पैलियोजिक एरा टाइम रे बहुत जगह रे तमरो ह्यूज सब्सिडेंस मेराइन सब्सिडेंस हेतला और सेही जगो एई जो तमरो पेट्रोलियम और जो गैस रहउची बिकॉज ऑफ दिस रीजन सेठी अवेलेबल होउची राइट। अच्छा आमर जो फिजिक्स वाला लिंक टा मु कहउतले एई लिंक रे गले डायरेक्टली तमे पेज रे लैंड करिवो एंड यू कैन अवेल ऑल द कोर्स इन अफोर्डेबल कॉस्ट जोड़ा तुमको अवेलेबल जोड़ा मु कहितले हला बाय यूजिंग दिस लिंक। अच्छा नेक्स्ट आगु को जिबा। अच्छा वर्तमान गला तुम पेट्रोलियम वर्तमान आसवा नेचुरल गैस दिस इज आल्सो इंपोर्टेंट नेचुरल गैस रे कौन रीजन रिच इन पेट्रोलियम आर आल्सो रिच इन नेचुरल गैस हला जो गुडा रिच इन पेट्रोलियम जो कि आल्सो रिच इन नेचुरल गैस कौन कौन कृष्णा गोदावरी बेसिन्स जदि हम कहली हला नंबर 1 देखले इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस इन द कंट्री एबे जते अच्छी हमरो जति की अच्छी हमरो नेचुरल गैस रो कृष्णा गोदावरी बेसिन हला सबुटू लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ योर नेचुरल गैस मैक्सिमम नेचुरल प्रोड्यूसर गैस की करछि कृष्णा गोदावरी बेसिन जस्ट रिमेंबर दिस वन राइट। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गेल के करतला एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गेल दैट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गेल हला एस्टैब्लिश्ड इन 1984 1984 मसिया रे एंड स्टार्टेड इट्स फास्ट नेचुरल गैस प्रोडक्शन थ्रू हाजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन। तो ये हमें बुझीबा प्रथमे जस्ट 1 मिनट कौन लिखले एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गेल केबे हितला एडा गोटे क्वेश्चन पचारिबो 1984 मसिया रे गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड हैला ये हला पायोनियर जे कि हमरो नेचुरल गैस र कंट्री रे जो डिस्ट्रीब्यूशन होची गेल इज द मेन एजेंसी व्हिच डिस्ट्रीब्यूट हला प्रोडक्शन थ्रू हाजीरा बीजापुर एंड जगदीशपुर पाइपलाइन हाजीरा बीजापुर एंड जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मेजरली हला कोटी कोटी हाजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन ठीक अछि हाजीरा इन गुजरात दिस इज हाजीरा देन बीजापुर देन जगदीशपुर एटी मु कहली एटा हला गैस पाइपलाइन नेटवर्क दिस इज योर हाजीरा बीजापुर देन जगदीशपुर जगदीशपुर है तुम यूपी रे बीजापुर है तुम एमपी रे हाजीरा है तुम गुजरात रे ठीक अच्छे तीन टा है हाजीरा बीजापुर एंड जगदीशपुर तीन टा ठीक अच्छे हाजीरा बीजापुर और जगदीशपुर जो कि तुम प्रथम गैस पाइपलाइन एटा मन रखियो हाजीरा है गुजरात रे है बीजापुर रे तुम मध्य प्रदेश और जगदीशपुर है तुम उत्तर प्रदेश माने दिल्ली पाखापाखि तुम जगदीशपुर तुम आस ठीक अच्छे दिस गैस पाइपलाइन later on this SBJ pipeline get extended to Bijapur है to Bijapur later on कौन है इटा extended है extended to New Delhi extended to Bijapur to New Delhi माने बीजापुर पुनी न्यू दिल्ली माने ए ब्रांच सा गोटे गला एपट को है बीजापुर माने एपट को और भी ब्रांच एटी गला एपट को दिल्ली और को एपट थ्रू रे गला है सेटा मु तुम देखैली है तो बीजापुर टू न्यू दिल्ली दैट इज कोटा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड न्यू दिल्ली रे सब बेसिक ये अछि दैट इज इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड हला जगदीशपुर कोलकाता सो वर्तमान कोन हला एबे जो एक्सटेंशन हला गवर्नमेंट वर्तमान करछि बीजापुर एठी हला तमर बीजापुर टू न्यू दिल्ली दिस इज बीजापुर टू दिस इज न्यू दिल्ली हला न्यू दिल्ली सेम थी एपड हमर कोन हला गैस रे एपड जगदीशपुर रो एपड कोड आसला दिस इज योर ठीक अछि सॉरी दिस इज योर कोलकाता ठीक अच्छे दिस इज कोलकाता लेट्स से है तो एठी तमर एक्सटेंशन हला तो तमर न्यू दिल्ली रु तमर कोड गला जगदीशपुर रु
है जगदीशपुर कोलकाता गला आ बीजापुर गला कोटी की तमरा न्यू दिल्ली। तो गैस पाइपलाइन बर्तमान कौन अच्छी जदि तुम फसिल फ्यूएल देख फसिल फ्यूएल्स कार्बन इमिशन करे फसिल फ्यूएल रे तमरा पॉल्यूशन हुए दैट इज नॉट डाउट अबाउट दिस वन बट इफ यू कंपेयर टू द कोल and in between natural gas are less emitter of carbon in compared to your coal भला भाव मन रख माने कार्बन इमिशन जो करूछन नेचुरल गैस इज कंपेयर्ड टू कोल दे आर लेस नेचुरल गैस कम करे कार्बन इमिट कम करे ठीक अछि। सो गेल हैज कंस्ट्रक्टेड जामनगर लोनी कौन कहले जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन 1300 किलोमीटर अप्रॉक्स भाया दिल्ली है गेल कौन कर कंस्ट्रक्टेड जामनगर लोनी गैस पाइपलाइन ठीक अच्छे। दिस इज द लॉन्गेस्ट पाइपलाइन इन द वर्ल्ड है जामनगर लोनी है लॉन्गेस्ट पाइपलाइन इन द वर्ल्ड दिस आर द गेल है लॉन्गेस्ट पाइपलाइन इन द वर्ल्ड जामनगर रे ठीक अच्छे। जामनगर टू लोनी लोनी कोटी उत्तर प्रदेश रे तमे देखिबो लोनी है तुम उत्तर प्रदेश रे है जामनगर कोटी अच्छी जामनगर तुम एठी अच्छी दिस इज जामनगर है जदि देख जामनगर टू लोनी लोनी है दिल्ली पाखे दिस इज लोनी नंबर 1 उत्तर प्रदेश रे लोनी है सब लॉन्गेस्ट पाइपलाइन है जामनगर लोनी जामनगर जब तुम देखो ये क्लीयरली देख ये देख गुजरात रे अच्छा सॉरी जामनगर टा तुम यही जगह सॉरी टिके ऊपर को नहीं गली जामनगर इज हियर यही जगह दिस इज जामनगर जामनगर एटा दिस इज जामनगर जामनगर टू लोनी लोनी है कोटी मथुरा पाखरे देख ठीक अच्छे मथुरा पाखरे जब तुम देखो जामनगर लोनी ये क्लीयरली देखा ठीक अच्छे मथुरा बिजनौर मुरादाबाद ठीक अच्छे लोनी यही पाखे जामनगर लोनी यही पाखे सब लॉन्गेस्ट पाइपलाइन यहाँ तुम मन रख है जोड़ा दिखाई है कंस्ट्रक्टेड जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन दैट इज 1300 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेट भाया दिल्ली दिस द लॉन्गेस्ट पाइपलाइन इन द वर्ल्ड वर्ल्ड रे सब लॉन्गेस्ट पाइपलाइन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट गेल इज ऑपरेटिंग एलपीजी प्लांट्स है गेल इज ऑपरेटिंग एलपीजी प्लांट्स एट वेरियस प्लेसेस है वेरियस प्लेसेस रे गेल इज ऑपरेटिंग योर वेरियस प्लांट्स है दोज आर योर विजयपुर एमपी वगोडिया गुजरात लकवा असम औरिया यूपी उजार महाराष्ट्र ठीक अच्छे विजयपुर एमपी वगोडिया गुजरात लकवा असम and Oriya and Uzarian Maharashtra. So these are the places where our LPG plants basically majorly our roach GAIL operate kurchi. GAIL is majorly operating this year. Vijaypur, Bagadia, Lakwa, Oriya and Uzar in Maharashtra. They are majorly operating here. वर्तमान एटा हमर सरला मेजर हमें देखिले है को जगह आमर रोचे पर्टिकुलरली है बर्तमान आम इकोनॉमिक ज्योग्राफी जब हमें देखिले जमी आम पढ़िले वी हैव स्टडीड योर कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस यूरानियम कोठी होची सेमती गोटे एबे गोटे जो जो जगह मेजर हमर आसछि क्वेश्चन सब सेमती आम देखिबा योर मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स एचपी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को नदी ऊपर को प्रोजेक्ट कौन फेमस सेगुडा सब कवर करिवे ठीक अछि जमती देख है मेजर एमआरवीपी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया एमआरवीपी माने कौन है तुम मन क्वेश्चन आसतो सर व्हाट इज एमआरवीपी माने कौन एमआरवीपी माने है मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट माने है आम कौन करवा इट इज योर मल्टी ठीक है रिवर वैली प्रोजेक्ट ठीक अच्छे कौन कौन हुए दीज आर द टू थिंग्स इरिगेशन दीटा जिनस हुए मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट रे वन इज योर इरिगेशन है इरिगेशन ड्रिंकिंग वाटर मल्टी रिवर वैली
इरिगेशन ड्रिंकिंग वाटर आ गोटे है तुम पावर जनरेशन है आ गोटे है तुम पावर जनरेशन दीज आर द थ्री इंपोर्टेंट जोटा कि तुम पर्टिकुलरली कोट हुए मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट MRVP देखा ना प्रथम किए आसला महाराष्ट्र कौन कौन अच्छी मल्टी रिवर वैली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सब मल्टी रिवर वैली कौन कौन मेजर एचईपी कौन देखिए भीमपुरी एचईपी महाराष्ट्र किए भीमपुरी एचईपी गोटे अच्छी भीमपुरी एचईपी इंपोर्टेंट एटा सब देख देख नॉर्मली जदि तुम देखियो बहुत गुड़े अच्छी बट मेजर जोड़ा नेशनल लेवल इंपोर्टेंट and they have got the significant contributions in providing the your power contribution to the country से माने ए विषय डिस्कशन करिबा हला भीमपुरी एचईपी क्योना एचईपी खपोली एचईपी क्योना रिवर ऊपर हम कहली क्योना रिवर ऊपर दिस इज ऑन द क्योना रिवर हला एटा कहा पर क्योना रिवर ऊपर एटा अछि ठीक अछि क्योना एचईपी अछि कहा पर क्योना रिवर ऊपर योर अछि तमरो पर्टिकुलरली क्योना एचईपी है वन ऑफ द मेजर एचईपी इन महाराष्ट्र दिस इज मुझे वन ऑफ द मेजर एचईपी ठीक अच्छे महाराष्ट्र मेजर एचईपी इन महाराष्ट्र नेक्स्ट खपोली भी देन भोला पूर्ण एचईपी पाइथन देन वैतरना भटनागर तिलारी पाइथन भटनागर एंड तिलारी विजय कर्नाटक किए शिव समुद्रम एचईपी कर्नाटक किए शिव समुद्रम एचईपी इज इंटरलिंक्ड विथ कृष्णराज सागर रिजर्वायर का संगे अच्छी कृष्णराज सागर रिजर्वायर संगे तुम शिव समुद्रम एचईपी लिंक्ड अच्छी देन शरावती है काली नदी महात्मा गांधी एचईपी है शरावती काली नदी देन महात्मा गांधी एचईपी भद्रा लिंगनमक्की मुनीराबाद एंड सिमसापुरा ठीक अच्छे गोटा गोटा कहली महात्मा गांधी एचईपी भद्रा लिंगनमक्की मुनीराबाद एंड सिमसापुरा है एवढा मेजर मेजर कहते तुम कर्नाटक या भर किए सबुठ वन ऑफ द आइटम कहि ओल्डेस्ट एचईपी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया सबुठ जदि मुझे कहि सबुठ पुराणा किए यहाँ तुम ओल्डेस्ट शिव समुद्रम एचईपी कर्नाटक जमती आम जानी एम विश्वेश्वरैया मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ही वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दिस शिव समुद्रम एचईपी मन रख यहाँ ठीक अच्छे देश स्वाधीनता पूर्व जदि मुझे कहि इट इज बिफोर 1900 है शिव समुद्रम एचईपी प्रथम होता जोटा कि इंटरलिंक्ड विथ क्या संगे कृष्णराज सागर रिजर्वायर संगे से इंटरलिंक्ड अच्छी कृष्णराज सागर संगे जमती शरावती इज ए रिवर दार है कार कावेरी गोटे शरावती है कावेरी योर कावेरी गोटे तुम ट्रिब्यूटरी महात्मा गांधी एचपी भद्रा लिंगनमक्की दिस इज ऑल्सो इंपोर्टेंट लिंगनमक्की तुम कहते कि लिंगनमक्की सर आम केमती पाइबे लिंगनमक्की है जोड़ा जोड़ा मुझे देखा पर्टिकुलरली आटलास अच्छी दिस इज लिंगनमक्की जस्ट सी कर्नाटक खोल दिस इज देख लिंगनमक्की जॉग फॉल्स पाखे शरावती उपर अच्छी देखुच लिंगनमक्की कर्नाटक देख ये जो जॉग फॉल्स लिखे कर्नाटक वेस्टर्न है नॉर्थ वेस्ट पाखापाखि कर्नाटक सो मुनीराबाद ऑल्सो एंड सिमसापुरा है ठीक अच्छे सेमती तमिलनाडु किए मेटूर एचईपी बर्तमान मेटूर एचईपी कंट्रोवर्शियल थी तुम देखिए प्राइम मिनिस्टर बर्तमान कहते मेटूर एचईपी है वन ऑफ द ओल्डेस्ट है ओल्डेस्ट ठीक अच्छे यहाँ है द ओल्डेस्ट एचईपी मुझे लिखुची सब पुराणा ओल्डेस्ट एचईपी वन ऑफ द ओल्डेस्ट एचईपी इन इंडिया one of the oldest HEP in India plus plus and controversial and also controversial कहा संगरे controversial regarding water sharing है controversial water sharing नहीं कि तमिलनाडु आउ कर्नाटक भितर झगड़ा लगी है मेटूर एचईपी देन पायकर एचईपी है पैकर एचईपी then पापनासम एचईपी कहली पापनासम एचईपी then कोडार
then Solayar, then Aliyar, then Moyar HP, then Sakarpati HP, then Surliyar HP. है these are all the HPs majorly जो मैंने तमिलनाडु रे मेजर मान अच्छा ठीक है जी. नेक्स्ट फोर्थ रे आंध्र प्रदेश रे श्रीशैलम एचपी. दिस इज आल्सो इंपोर्टेंट. श्रीशैलम कहां पर? कृष्णा रिवर ऊपर. दिस इज इंपोर्टेंट हैला. श्रीशैलम एचपी हैला मेजर मेजर एचपी मु कहि दोची. ओडा आंध्र प्रदेश रे हैला श्रीशैलम एचपी. देन योर नागार्जुन सागर एचपी. नागार्जुन सागर रिवर कहां पर पर्टिकुलरली हैला ठीक अछि. कहां पर? कृष्णा ऊपर. कृष्णा रिवर ऊपर नागार्जुन सागर हैला. कृष्णा रिवर ऊपर नागार्जुन सागर. आउ को रिवर ऊपर मेजरली डिंडी बोली गोटे रिवर अछि मन रख. कृष्णार गोटे ट्राब्यूटरी डिंडी रिवर हैला मन रख. एटा डिंडी तमे देखिबो जति एठी हैला डिंडी रिवर तमे देखुछो. अच्छा नागार्जुन सागर एटी देखुछ. नागार्जुन सागर डिंडी ऊपर. जस्ट लुक एट हियर. दिस इज नागार्जुन सागर जोटा डिंडी रिवर ऊपर हैला. नेक्स्ट लोअर सिलेरू. लोअर सिलेरू एचपी. अपर सिलेरू एचपी हैला. देन माचकुंड आंध्र प्रदेश रे माचकुंड देखो. माचकुंड इज आल्सो ए कंट्रोवर्शियल. मुझे कौन लिखिबी? माचकुंड रिवर. माचकुंड रिवर इज एन कंट्रोवर्सी ठीक अछि. कंट्रोवर्सी हैला इन बिटवीन ओडिशा एंड आंध्रा हैला. ओडिशा और आंध्रा को लेकी कंट्रोवर्सी एठी है. ओडिशा और आंध्रा को लेकी हैला माचकुंड रिवर मेजर. सेमती निजाम सागर हैला. निजाम सागर अछि मेजर. निजाम सागर कहां ऊपर पुणी हम जानि छथि. निजाम सागर हैला कहां ऊपर? निजाम सागर डैम हैला तमरो कृष्णा रिवर ऊपर हैला. कृष्णा निजाम सागर हैला कृष्णा ऊपर. कृष्णा रिवर ऊपर कृष्णा रिवर पर निजाम सागर हैला. कहां पर पर्टिकुलरली? इट इज इन द मंजरा रिवर ऊपर. मंजरा हैला गोटे ट्राब्यूटरी ऑफ कृष्णा. नेक्स्ट बालीमेला एचपी. बालीमेला एचपी ओडिशा पुणी अगेन इट इज ए कंट्रोवर्शियल सेम. बालीमेला एचपी भी नेकी माचकुंड ऊपर अछि कंट्रोवर्सी ओडिशा आंध्र प्रदेश ऊपर. प्राय तो देखियो सदर्न ओडिसा जो जो रिवर गुडा अछि प्राय ओडिशा संगे कंट्रोवर्सी संग हैला. ओडिशा माने सदर्न ओडिसा रे ओडिशा आंध्र प्रदेश संगे कंट्रोवर्सी संग. सेमती हिमाचल प्रदेश रे किए? भाकरानंगल डैम. हिमाचल प्रदेश रे भाकरानंगल डैम. देहर गिरिबाटा बिनवा आंध्रा रुक्ति रोंगटोंग हैला. देन भावनगर बायरासियोल चमेरा नाफ्था झाकरी. बायरासियोल चमेरा नाफ्था झाकरी तेहिन एचपी. बायरासियोल नाफ्था झाकरी एंड तेहिन एचपी ठीक अछि. केरला रे किए हैला. हिमाचल प्रदेश रे सब इंपोर्टेंट मन रखो. नाफ्था झाकरी ठीक अछि. तेहिन एचपी रोंगटोंग बायरासियोल चमेरा एंड भावनगर दीज आर हैला. एंड भाकरानंगल. भाकरानंगल कहां पर अछि? भाकरानंगल हैला तमरो पर्टिकुलरली सतलुज रिवर ऊपर अछि. सतलुज ऊपर ठीक अछि. भाकरानंगल अछि तमरो सतलुज रिवर ऊपर. भाकरानंगल मेनली अछि तमरो सतलुज. आउट हैला तमरो तेहिन एचपी. तेहिन इज एचपी इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपोर्टेंट. तेहिन एचपी राइट. सेमती केरला रे किए? इदुक्की सबरीगिरी कुटियाडी हैला. इदुक्की रहला सबरीगिरी कुटियाडी. देन सोलायार अलियार मोयार एंड देन साखरपत्ती एंड सुरलियार हैला. दीज आर आल्सो द इंपोर्टेंट. इदुक्की सबरीगिरी माने मेजर केरला रे हैला. मेजर मेजर इदुक्की रे तमे देखितो. इदुक्की प्रोजेक्ट वर्तमान केते हेवी फ्लड आसी इदुक्की रे हैला. इट इज एन हेवी फ्लड ठीक अछि. इदुक्की ठीक अछि. हेवी फ्लड ठीक है. सबरीगिरी कुटियाड सबरीगिरी तमे देखितो. सबरीमाला टेंपल जोड़ा अछि एई सबरीगिरी नै कि भी सबरीगिरी ठीक अछि.
कुटियाड़, सोलायार, अलियार, मोयार एंड साक्रापति। ठीक अच्छे। नेक्स्ट ओडिशा रे सेमती हमर किए आछि ओडिशा रे मेजर मेजर एचपी हीराकुद तमे देखुछ बालीमेला हीराकुद हमर अछि मेजर एचपी हीराकुद रा महानदी ऊपर बालीमेला एचपी। ठीक अच्छे। हीराकुद हला महानदी रे अछि महानदी ऊपर सेमती चिपिलिमा चिपिलिमा आल्सो महानदी ऊपर चिपिलिमा एचपी आल्सो महानदी रिवर ऊपर टिकरपड़ा एचपी सी भी महानदी हला टिकरपड़ा आल्सो महानदी रेंगाली आल्सो महानदी। ठीक अच्छे। रेंगाली आल्सो महानदी डुडुमा जोटा हला हमर मेजर मेजर एचपी डुडुमा हला को ऊपर का ऊपर डुडुमा अछि माचकुंड रिवर ऊपर हला माचकुंड। ठीक अच्छे। माचकुंड डुडुमा हला का ऊपर तमरो माचकुंड रिवर। सेमती गुजरात रे किए हला तमर एगुटा देख मेजर हीराकुद चिपलिमा टिकरपड़ा रेंगाली एमाने सब तमर महानदी ऊपर डुडुमा हला माचकुंड। सेमती गुजरात रे किए उकाई कदना सरदार सरोवर हला उकाई कदना एंड सरदार सरोवर। ठीक अच्छे। एथर मैं कहि दूची को मेजर मेजर रिवर कहा पर अछंती सरदार सरोवर जेमते मैं कहली सरदार सरोवर कहा पर अछि सरदार सरोवर नर्मदा रिवर ऊपर डैम टा अछि नर्मदा ऊपर हला मेजर उकाई अछि तमरो तापी रिवर ऊपर हला उकाई अछि कहा पर तापी रिवर ऊपर मेजर रिवर बेल एमन सब कोन करछन जेमते मैं कहली फॉर एग्जांपल सरदार सरोवर डैम कंस्ट्रक्शन हैला खाली नो सरदार सरोवर इरिगेशन हैला खाली तमर नो जे हैला खाली पावर जनरेशन छड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट हैला इरिगेशन आउ ड्रिंकिंग वाटर सेटा हैला पर्टिकुलरली जो जो एरिया टा तमरो मेनली इट सरदार सरोवर डैम जो थियरी हैला जोटा कि पर्टिकुलरली गोटे एरिड पॉकेट को पानी जगिया पे सेतर कोन जोटे बहुत डेंसली पॉपुलेटेड हैला से पार्ट को तमर सरदार सरोवर डैम टा सेति पे हेत। वेस्ट बंगाल रे के सेमती पंचित डैम पंचित रिवर ऊपर पंचित हैला दामोदर रो ट्रिब्यूटरी हैला पंचित हैला वेस्ट बंगाल रे मयूरकाशी बहुत इंपोर्टेंट एगुडा सब हैला डीवीसी जो अछि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन रो हैला डीवीसी रे माने हैला सब पार्ट दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एचपी एटा हैला गोटे हैला बिफोर इंडिपेंडेंस हैला वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक अछि। बिफोर इंडिपेंडेंस दिस प्रोजेक्ट इज देयर बिफोर इंडिपेंडेंस हैला डीवीसी प्रोजेक्ट रो पार्ट किए पंचित आउट हैला मयूरकाशी डीवीसी हैला गोटे बिफोर इंडिपेंडेंस स्टार्ट हेतला आउ एटा पर्टिकुलरली गंगार जो वाटर गुडा वेस्ट होतला बांग्लादेश को पळौतला से जुगु तमरो डीवीसी क्रिएशन हैला बहुत बड़ गोटे मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट दिस वन डीवीसी प्रोजेक्ट। झारखंड रे के आसीबो मैथन डैम तलैया डैम पंचित एचपी हैला मैथन तलैया आउ पंचित हैला मैथन तलैया आउ पंचित ए तीनटा जंक मेजर हेले मैथन तलैया आउ पंचित मेजरली। उत्तर प्रदेश रे किए रिहांद खोडरी छिब्रो एचपी हैला रिहांद खोदरी एंड छिब्रो एचपी मेजर उत्तर प्रदेश रे किए हेले रिहांद हैला इज एन ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर ऊपर खोदरी एंड छिब्रो एचपी दिस आर द मेजर एचपीज जोटा कि तमरो आसले उत्तर प्रदेश रे। ठीक अछि। रिहांद हैला कार रिहांद रिवर ऊपर हैला रिहांद रिवर ऊपर अच्छा। नेक्स्ट पुणी हैला जम्मू काश्मीर रे हैला जम्मू काश्मीर भी सेमती जदी हम जिबा जम्मू काश्मीर ठीक अछि के आछे जम्मू काश्मीर रे करा एचपी हैला करा एचपी देन दुलहस्ती मेजर रिवर दुलहस्ती हैला क्या ऊपर चेनाब रिवर ऊपर हैला एटा इंपोर्टेंट दिस इज आल्सो इंपोर्टेंट दुलहस्ती पचारे क्वेश्चन दुलहस्ती आल्सो इट इज हैला ठीक अछि वाटर शेयरिंग की कंट्रोवर्शियल छ दुलहस्ती चेनाब सेमती सलाल एचपी सलाल ठीक अछि सलाल एचपी चेनाब रिवर ऊपर सलाल भी अछि दीटा दुलहस्ती आउ सलाल एटा जेरा इंपोर्टेंट परीक्षा पचारन एटा दुलहस्ती आउ सलाल तीन दीटा के इंपोर्टेंट तमे एथिरे भी देखि परियो तमे पाइबो
दुलस्ती आउ सलाल दिटांग देन लोअर झेलम एक्सेट्रा है लोअर झेलम भी मेजर जब देखियो जम्मू एंड कश्मीर लोअर झेलम इज अ मेजर पार्ट ऑफ झारखंड रे किए तेहेड़ी एचपी तेहेड़ी गढ़वाल ऋषिकेश किजाऊ डैम गढ़वाल ऋषिकेश एंड किजाऊ है सोंग डैम SONG सोंग डैम देन कोटलीवेल डैम दिस इज ऑल्सो सोंग डैम एंड कोटलीवेल डैम उत्तराखंड तेहरी गढ़वाल ऋषिकेश किजाऊ डैम एंड कोटीवेल है मेजर उत्तराखंड रे सोंग डैम है मोस्टली है एगुड़ा सब बहुत इंपोर्टेंट और बहुत पावरफुल एचपी कहीं एमाने बहुत प्रॉफिट दौरान गवर्नमेंट को दिस एचपीज आर प्रोवाइडिंग मोस्ट प्रॉफिट टू द आवर गवर्नमेंट राइट राजस्थान रे किए देखो जेते हाइट रहिबो सेते ऊपर पड़िबो सेते कोन हो तुम टर्बाइन माने घुरिबो जेते टर्बाइन हबो जेते जोर रे बुलिबो सेते माने तमरो योर माने तमरो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशंस रे सेटा हेल्पफुल हुआ बेसी जनरेट हो राइट दैट इज द थिंग राजस्थान में किए राणा प्रताप सागर डैम है एंड जवाहर सागर डैम दीटा चंबल रिवर ऊपर एटा परीक्षा क्वेश्चन पछला दिस क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड है ऑलरेडी आस्क्ड एटा प्रीलिम्स रे एटा पचारि सरचंदी ऑलरेडी कोठी ठीक अछि यूपीएससी रे पचारि सरचंदी एटा ऑलरेडी ए क्वेश्चन राणा प्रताप सागर एंड जवाहर सागर तुमको मन पड़तो सर राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर हम केमती पाइबु एटी क्लियरली एटी मेंशन है जे देखो ठीक अच्छे राणा प्रताप सागर ये देखा है गांधी सागर है चंबल उपर है जवाहर सागर भी सेटा भी अच्छी तुम चंबल कोटे राजस्थान दीटांग अच्छे राणा प्रताप और जवाहर गांधी सागर है तुम कोटी है मध्य प्रदेश मुझे आसुनी आग को पुणी देख चंबल रिवर सेमती ये देख मध्य प्रदेश पुणी देला मध्य प्रदेश देख गांधी सागर एवं देखुल सो राणा प्रताप गांधी सागर और जवाहर समस्ते चंबल रिवर ऊपर अच्छा एंड चंबल इज ए ट्राब्यूटरी ऑफ यमुना मन रख नोट करनी चंबल इज ट्राब्यूटरी ऑफ यमुना गांधी सागर गला पेंच बारगी और नर्मदा रिवर ऊपर पेंच आउ बारगी एचपी एमएनएल नर्मदा ऊपर देन बनसागर है टॉन्स ऊपर किए है बनसागर बनसागर है तुम कहा ऊपर टॉन्स रिवर ऊपर है बनसागर राइट देन सिंगरावली है तुम रिहांद ऊपर सिंगरावली है तुम कहा ऊपर रिहांद ऊपर है सिंगरावली है सिंगरावली है तुम रिहांद नदी ऊपर तुम सिंगरावली सिंगरावली तुम देखो सिंगरावली है मेजर देखो ये सिंगरावली है मध्य प्रदेश से सिंगरावली ये रोज मध्य प्रदेश है सिंगरावली 16 रे हिमाचल प्रदेश आसची है पुणी आम देखिए हिमाचल प्रदेश रे किए हिमाचल प्रदेश रे भाकरानंगल डैम है भाकरानंगल डैम पुणी ये भाकरानंगल पुणी सतलुज ऊपर हिमाचल रे है सतलुज ऊपर है भाकरानंगल रुक्ति पुणी सतलुज ऊपर भाकरानंगल और रुक्ति दीटा मेजर डैम जोटा कि हिमाचल प्रदेश रे अच्छंती है कहा पर सतलुज रिवर है सतलुज रिवर रे अच्छंती सतलुज रिवर ऊपर दीटा अच्छंती सतलुज रिवर ऊपर सेमती रोंगटोंग अच्छी स्पीति रिवर ऊपर स्पीति है गोटे इंपोर्टेंट रिवर स्पीति है कार झेलम संगे मिसी झेलम ट्राब्यूटरी है किए स्पीति है रोंगटोंग रोंगटोंग दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपोर्टेंट रोंगटोंग एचपी दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपोर्टेंट रोंगटोंग देन बायरासिलुल रावी रिवर ऊपर बायरासिलुल अच्छी कहा पर रावी रिवर ऊपर रावी ऊपर किए अच्छी बायरासिलुल देन सेमती नाप्था झाकरी अच्छी सतलुज ऊपर है नाप्था झाकरी अच्छी सतलुज ऊपर तेहिन एचपी इज इन योर रावी रिवर ऊपर तेहिन है कहा पर रावी ऊपर तेहिन एचपी इज इन रावी ठीक है सो दीज आर द मेजर हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय भाकरानंगल और उक्ति है सतलुज रे रोंगटोंग स्पीति बायरासिलुल इज इन रावी रावी रिवर ऊपर नाप्था झाकरी सतलुज ऊपर अगेन
देन तेहिनीचिपी रग्बी एगुड़ा सब मेजर मेजर जो तुम कवर कर हिमाचल पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश मेजर है ए रिवर इज द वेरी इंपोर्टेंट मन रख बहुत क्वेश्चन एगुड़ा कि कंप्लीटली है ये तुम कहि क्वेश्चंस ऑफ आर्ट्स प्रीलिम्स रे है एगुड़ा सब पचारि सारी वेरी इंपोर्टेंट इन यूपीएससी दीज आर वेरी इंपोर्टेंट राइट नेक्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रे समथि किए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रे अच्छा ये अगेन मुझे कहबी ये जो लिंक्स फिजिक्स वाला सब लिंक्स दिया है लिंक रे डायरेक्टली तुम पेज रे लैंड कर परिबो एंड एज पर चॉइस तमे तमरो कोर्स नहीं परि जदि तमे ओसीएस पे कहउछ सक्षम बैच आई वुड सजेस्ट बिकॉज़ दिस इज एन यू नो इट्स एन वेरी लाइफ चेंजिंग इवेंट माने बहुत कम अफोर्डेबल रेट रे तमे यू कैन गेट ऑल प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब जिंस पाई परिबो सो आई वुड सजेस्ट टू यूज दिस लैंड पेज सो दैट यू कैन डायरेक्टली हैला land those space and go for as per your choice right अच्छा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कहबी केमती लोकटैक एचपी नॉर्थ ईस्टर्न कथा जदि हम देखिबा वर्तमान नॉर्थ ईस्टर्न किया आसी लोकटैक एचपी मणिपुर रे उमियाम खारदुम हैला खांगडोंग हैला कोठी लोकटैक हैला मणिपुर रे देन उमियाम आउ खांगडोंग इन मेघालय दिखु दोयांग नागालैंड रे बेले भावती कि नागालैंड रे किसी नहीं बट नागालैंड रे मेजरली दिखु आउ दोयांग दुईटा मेजरली अच्छी दिखु एंड दोयांग इन नागालैंड देन गुमती हैला एटा मेजर गोटे गुमती हैला गुमती हैला रिवर दैट इज इन त्रिपुरा हैला त्रिपुरा रे की अछि गुमती हैला गुमती देन बाराबी इज इन नागालैंड कोपिली and Subansiri दीटांक कोपिली एंड सुबानसिरी इन आसाम हैला कोपिली एंड सुबानसिरी दीटांक इंपोर्टेंट देखो खपोली पड़थिला कोडी देखो दीटा जिंस खपोली हैला महाराष्ट्र रे आ ये हैला कि कोपिली खपोली आ कोपिली दीटांक अलग अलग हम लिखि दउची खपोली बेले कंफ्यूजन रहइबनी खपोली एचपी जदि हम कहबी इट इज इन महाराष्ट्र खपोली ठीक है खपोली इज इन महाराष्ट्र बट कपोली एचपी इज इन इट इज कपोली इज इन आसाम दिस हैज टू बी वेरी क्लियर खपोली आउ खपोली है तुम महाराष्ट्र रे आउ कोपिली है आसाम रे एटा मन रखि पचारि सारी परीक्षा दिस इज इंपोर्टेंट परीक्षा ऑलरेडी ये दुईटा पचारि सारी तुम खपोली आउ कोपिली ऊपर है वेरी बेसिक जिनस गुड़ा ठीक अच्छे ओके सो एचपी भी हमें कवर कले आज पढ़ले हमें है पेट्रोलियम भी पढ़ले प्लस वी हैव कवर्ड योर पेट्रोलियम पर जदि हमें देखा वी हैव कवर्ड नेचुरल गैस आल्सो आउ एपटे हमें कवर कले मेजर एचपी इंडस्ट्री बर्तमान देखिबा मेजर इंडस्ट्री सेक्टर हैला मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया इंडस्ट्री किए कि को मेजर इंडस्ट्री इंडिया रे अछंती जो माने मेजर कंट्रीब्यूट करछंती हैला प्रोडक्शंस रे देखिबा इंडस्ट्री देखो इंडस्ट्री जदि कहै जो इंडस्ट्री हैला बैकबोन कोनोसी कंट्री रो इकोनॉमिक ग्रोथ पई इंडस्ट्री इज द बैकबोन मेजर बैकबोन है इंडस्ट्रियल ग्रोथ है एनी डेवलपमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री है डिपेंड्स ऑन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ सो फॉर दिस इकोनॉमिक ग्रोथ योर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इज मेजर देयर कंट्रीब्यूट इज ए मेजर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज वेरी मच इनएविटेबल ठीक अच्छे तो देखिए किए मेजर प्रथम हम किए स्टील प्लांट तो मेजर जदि मुझे कहली इंडस्ट्रियल ग्रोथ में किए मेजर पर्टिकुलर मैं कहबी आयरन एंड स्टील प्लांट ठीक अच्छे मेजर किए आयरन एंड स्टील प्लांट आयरन और स्टील प्लांट ये मैंने ही मेजर कौन करती दे डिसाइड द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ आयरन एंड स्टील प्लांट देखिबा आयरन एंड स्टील प्लांट किए प्रथम देखिबा यदि हैला सेल इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट सेल माने किए स्टील प्लांट किए मेजर हमर किए गवर्नमेंट रो पीएसओ दैट इज सेल माने स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड हैला हम कहली कोन सेल माने स्टील अथॉरिटी
इंडिया लिमिटेड है ताको हम कौन कहते दैट इज योर सेल सेल इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है राउरकेला स्टील प्लांट प्रथम देखा किए किए आरएसपी जोटा कि हम ओडिशा रे अच्छे राउरकेला स्टील प्लांट जानिबा इथु क्वेश्चंस बहुत पचारछन्ती है इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जदि मु देखिबी राउरकेला स्टील प्लांट है हमर इंडिया राउरकेला स्टील प्लांट दिस इज इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट माने पब्लिक सेक्टर माने पीएसयू माने पब्लिक सेक्टर यूनिट गवर्नमेंट which is mainly run by your government, right? Established through collaborations with Germany. तो बर्तमान तुम क्वेश्चन बेले पचारे कि राउरकेला स्टील प्लांट को किए बनैतिला राउरकेला स्टील प्लांट की किए मेनली करथिला ताको हला किए जर्मनी हला राउरकेला स्टील प्लांट मुझे कहबी कुआ जाए आरएसपी एतरा कहा संगरे हला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीओआई प्लस जर्मनी एटा मन रखो जीओआई प्लस जर्मनी एटा मन रखो क्वेश्चन एटा पचारिबे एगुडा सब जो लिखुचे एगुडा सब गोटे क्वेश्चंस हैला जर्मनी सेमती भिलाई स्टील प्लांट को कौन कहा जाए बीएसपी भिलाई कोठी वेयर इज भिलाई इन छत्तीसगढ़ ठीक अछि छत्तीसगढ़ रे भिलाई स्टील प्लांट दैट इज सेट अप विथ कोलैबोरेशन विथ सोवियत कोलैबोरेशंस इन 1959 एतरा केबे 1959 मसिया रे ये हेतिला 1959 रे सोवियत कोलैबोरेशंस है विलाई स्टील प्लांट सोवियत छत्तीसगढ़ सोवियत कोलैबोरेशन 1959 रे विलाई विलाई छत्तीसगढ़ रे सोवियत सोवियत माने से समय किए थिला एटा हला तमरो यूएसएसआर हला यूएसएसआर ठीक अछि यूएसएसआर मेनली करथिला देन दुर्गापुर स्टील प्लांट दैट इज योर डीएसपी तक कुआ जाए दैट इज एट दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल सेट अप इन ब्रिटिश कोलैबोरेशन इन 1965 ब्रिटिश कोलैबोरेशन संगे हेतला 1965 रे ब्रिटिश तो एटा हम कोन देखले विलाई हला विलाई माने एटा हम लिखली बीएसपी विलाई स्टील प्लांट का संगे हेतला हला अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस ये दैट इज यूके सॉरी यूएसएसआर माने फॉर्मर यूएसएसआर जोटा कि हला रशिया जोटी भांगले यूएसएसआर रो किए बा जन्म हला तमरो रशिया यूएसएसआर सेमती दुर्गापुर हला दुर्गापुर हम कहली वेस्ट बंगाल दुर्गापुर डीएसपी दुर्गापुर स्टील प्लांट का संगरे अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस यूके यूके गवर्नमेंट दैट इज यूके हला ब्रिटिश कोलैबोरेशंस माने यूके गवर्नमेंट आसला हला केबे 1965 रे ए दिटा हला तमरो 1959 राउरकेला भी और विलाई भी और ये हला तमरो 1965 देन आसला तमरो बोकारो स्टील प्लांट बीएसएल हला मेडी कहबी किए बोकारो स्टील प्लांट बीएसएल ठीक अछि बीएसएल इन झारखंड दैट इज 1964 हला सेट अप विथ सोवियत कोलैबोरेशन हला का संगरे अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस यूएसएसआर Soviet collaborations. The plant is held as the country's first Swadeshi steel plant built with maximum indigenous content. Hela maximum indigenous content eti achi ke this BSL Bokaro steel plant. ठीक अछि एटा को हला with Soviet ये संगे USSR संगे हला this plant is held with the country's first Swadeshi steel plant. कोन पई एटी सब प्रकार हमर indigenous product बेला ताटिया चमचा खड़िका है एनी टाइप ऑफ योर स्वदेशी जिनस सब बनाला कोठी एई तमरो बोकारो स्टील प्लांट वेयर इज बोकारो इज इन झारखंड ठीक अछि बोकारो स्टील प्लांट सबुड बड़ वन ऑफ द वेरी प्रॉफिट मेकिंग स्टील प्लांट इन इंडिया ठीक अछि जति कि भी सेल रो यूनिट अछि ता भीतर बोकारो स्टील प्लांट हला सबुड बेसी प्रॉफिट मेकिंग मन रखता बेटा हला विथ मैक्सिमम इंडिजिनियस कंटेंट इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट मटेरियल एंड नो हाउ इक्विपमेंट्स माने जेंति तमरा ट्रैक्टर रहला ट्रैक्टर जो हळ करिवार लंगलटा ट्रैक्टर रो लंगलटा हला ठीक अछि कि तमरा जो माने पर्टिकुलरली तमरा बेलचा कुराडी जो भी जिंस हला सब एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हला मोस्टली इट जेंति मु कहली महिंद्रा ट्रैक्टर रो कोन ट्रैक्टर पई तमरा सब दरकार तमरा को एग्रीकल्चर रे ताको टाणिया पई 100 करिया पई हला मैक्सिमम जो दरकार एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सब बोकारो स्टील प्लांट बनेला दैट इज व्हाई बोकारो की कोआ जाय कंट्री रो फर्स्ट स्वदेशी स्टील प्लांट है
सेमती इस्को स्टील प्लांट जब देखिए इस्को स्टील प्लांट कौन कौन आईएसपी कोटी एटा बर्नपुर आसानसोल वेस्ट बेंगल इस्को कोटी है बर्नपुर आसानसोल वेस्ट बेंगल रे है द प्लांट इज इक्विप्ड विथ लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस ऑफ द कंट्री ठीक अछि लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस जदि कंट्री रे कहबो कि इस्को बर्नपुर इस्को स्टील ठीक अछि लार्जेस्ट बर्नपुर इस्को बर्नपुर ठीक अछि इस्को बर्नपुर इसको बर्नपुर इन आसानसोल ठीक है वेस्ट बंगाल रे that is modernized in 2015 with investment of 16,000 crore which is real total production of 2.9 million tons annually basically kete 2.9 million tons we can say 2.9 million tons है इसको बर्नपुर अच्छा सो इसको बनपुर विषय में जानले इटा भी आसानसोल अछि हैला एटा भी इसको बनपुर इटा मेजरली तमरो इंडिया गवर्नमेंट रो आ प्लस यूके गवर्नमेंट भी इथरे रही छै हैला अच्छा स्पेशल स्टील प्लांट्स वर्तमान देखिबा की स्पेशल रे एटा तो गला हमर मेजर स्टील प्लांट या छडा भी गवर्नमेंट कोन कोछि स्पेशल स्टील प्लांट रखी छि जोथरे की alloy स्टील प्लांट बेसिकली म कहबी alloy steel plant that is ASP Durgapur रे West Bengal रे supplies to the Indian Ordnance Factory माने हमर कोटा Indian Ordnance Factory कहा को आउ जे हमर जोटा की आर्मी को हैला Indian Army Ordnance Factory माने कोटा हमर सब गुळा बर्द हैला गन आर्टिलरी सब जिंसटा तेरु Indian Ordnance माने बेसिकली Indian Army को जोटा हमर सब तमरो पर्टिकुलरली गन्स आर्टिलरीज इक्विपमेंट सब दरकार Indian Army ठीक अछि फाइटिंग इक्विपमेंट से के बनो alloy steel plant दुर्गापुर वेस्ट बेंगल एटा मन रखो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट एटा सब तुमर एग्जाम पई एटा सब पचरबे alloy steel plant किए हैला दिस इज सप्लाइंग फॉर योर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैला एटा तुमर दुर्गापुर वेस्ट बेंगल दिस इज वेरी इंपोर्टेंट नेक्स्ट सालेम स्टील प्लांट कोठी दैट इज मारमंगलम रा पट्टी सालेम रे पर्टिकुलरली तमिलनाडु रे हैला सालेम कोठी सालेम हला तुमर तमिलनाडु रे हैला सालेम इज तमिलनाडु रे सेमती विस्वेसरैया आयरन स्टील लिमिटेड विस्वेसरैया तटे कोन को जाय हला VISL दिस इज वेरी आल्सो वेरी इंपोर्टेंट हला विस्वेसरैया कोडी एटा भद्रावती ताको को जाय बळे बळे भद्रावती स्टील प्लांट हला विस्वेसरैया स्टील प्लांट इज आल्सो नोन एज कोन को जाय भद्रावती स्टील प्लांट मन रखडा बहुत इंपोर्टेंट भद्रावती स्टील प्लांट दिस इज आल्सो नोन एज योर भद्रावती स्टील प्लांट विस्वेसरैया स्टील प्लांट is also known as your Bhadravati steel plant. Kodi, this is in the Karnataka. Hala? That is also ferroalloy plant. Karnataka is in Karnataka ferroalloy plant. This is also very important. Bhadravati steel plant. Next. ठीक है सो तमे जो देखिबो साउथ इंडिया रे की मेजरली तमाने में रहले की आंध्र प्रदेश रे विशाखापट्टनम स्टील प्लांट रहला देन एपट रहला तमिलनाडु रे सालेम आ भद्रावती रहला तमरो कोठी कर्नाटका रे हला दिस इज इन द कर्नाटका गोटेला तमरो ताले कर्नाटका रे गोटेला तमिलनाडु रे हला ऑर्डिनेंस फैक्ट दिस आर द इंपोर्टेंट अच्छा रिफ्रैक्टरी प्लांट्स के सेल रे रिफ्रैक्टरी प्लांट्स हला सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट हला सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट गोटेला तमरो दिस भंद्रादिया इन झारखंड हला भंद्रादिया इन झारखंड सेल रिफ्रैक्टरी देन विलाई इन छत्तीसगढ़ रे विलाई देन रामगढ़ इन झारखंड देन इट इज योर रांची इन झारखंड हला रांची हला तमरो झारखंड रे ठीक अछि सेल हला इफको मेन रिफ्रैक्टरी वर्तमान तुम जानि को व्हाट इज रिफ्रैक्टरी व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्रैक्टरी प्लांट्स कौन रिफ्रैक्टरी माने पर्टिकुलरली कैन से हला रिफ्रैक्टरी माने कौन पर्टिकुलरली वी कैन से these are your हला particularly bricks or molds that are हला high heat resistance
है दैट आर हाई हीट रेजिस्टेंस रिफ्रैक्टरी है ब्रिक्स हो कि मोल्ड हो दैट आर हाई हीट रेजिस्टेंट जमी कहला सेल रिफ्रैक्टरी दैट इज बंदिरा झारखंड रे है विलाई रे छत्तीसगढ़ रे है रामगढ़ इन झारखंड है आ गोटे तुम देख झारखंड रे दीटा बदिरिया आउ रामगढ़ दीटा इफको देन सेल रे पुणी झारखंड रे अच्छे रांची रे भी अच्छे गोटे आ गोटे भिलाई रे so these are all refractory जोटा कि सेल रो मेजर जो थ्री तुम जानु सेल हाउ इट इज एन इंपोर्टेंट प्लेइंग ए इंपोर्टेंट रोल इन शेपिंग कंट्रीज नीड है कंट्री रो जो नीड हमर रहउची सेल रो केते पाइवोटल जदि हम देखियो हमर इंडिपेंडेंस परे है सेकंड 5 ईयर प्लान रे हमर मेजर थ्रस्ट का को दिया मेजर थ्रस्ट हम देलु ए पर्टिकुलरली योर इंडस्ट्रियल ग्रोथ और से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्लेज ए वेरी वाइटल रोल फॉर दिस वन राइट आगु को जीवा सो दिस इज ऑल अबाउट तुम पढ़िल मेजर सेल रो है आम पढ़िले पर्टिकुलरली सेल रो यूनिट विषय आम पढ़ले दिस इज ए मेजर स्टील प्लांट विषय आम जानिले बर्तमान है अच्छा सेमती इंडस्ट्री माने सेमती मुझे कहबी खाली इंडस्ट्री माने कहले बुझे हेबनी कि आयरन एंड स्टील छड़ा भी तुम अलग सेक्टर भी अच्छे आयरन एंड स्टील छड़ा किए जन तुम कहबी आलाइड सेक्टर रे कॉटन कल्टिवेशन कॉटन इंडस्ट्री की कह बहुत बड़ इंडस्ट्री कॉटन इंडस्ट्री जब इंडिया रे देखियो बहुत बड़ इंडस्ट्री कॉटन भी तुम कवर करे देखिवा कौन कौन है इंपोर्टेंट फैक्ट्स ऑन कॉटन मिल्स कॉटन ऊपर हमर कौन कौन अच्छी पर्टिकुलरली इंडिया रे है द फर्स्ट कॉटन मिल जब मैं कहबी है इंडिया जब कहबी द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1818 एट फोर्ट ग्लॉस्टर ठीक अच्छे कोठी होता प्रथम कॉटन जमी हम इंडिया कह जाए कि पाखापाखि माने ए मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन देयर लाइवलीहुड है डिपेंड्स ऑन योर कॉटन कॉटन माने पर्टिकुलरली कॉटन प्रोडक्शंस माने कॉटन रो आज जो हम जो शर्ट पिंचंदी है घरे जो क्लोथ्स अच्छी आम जो भी गारमेंट दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉटन सो प्रथम कोठी होता 1818 मसीह इट इज एट द फोर्ट ग्लॉस्टर इन योर कोलकाता है कोलकाता पाखे फोर्ट ग्लॉस्टर जो अच्छी से होता बट वाज ए कमर्शियल फेल्युअर माने से समय कौन होता जेहेतु ब्रिटिश टाइम था कमर्शियल फेल्युअर होता ठीक अच्छे फोर्ट ग्लॉस्टर इन 1818 The second cotton mill जब मैं कहबी second cotton mill है in India was established in KGN Dabbar है KGN Dabbar in 1854 KGN Dabbar that is in 1854 and was named as Bombay Spinning and Weaving Company ठीक है Bombay Spinning and Weaving Company कोड कह जाए KGN Dabbar है second cotton mill particularly second cotton mill कोठी Bombay KGN Dabbar that is Bombay Spinning and Weaving This mill is said to mark the true foundation of the modern cotton industry in India. देखो प्रथम ता माने मुइने कौन कहली कॉटन इंडस्ट्री एटी मोर डायग्राम करछु बेटर रहइबो तमरा ठीक अछि दीटा जगह गोटे हला तमरा एटी हला मुंबई हला ए पार्ट दिस इज योर मुंबई कॉटन अगर कोडी कोडी थिला आई एम टेलिंग अबाउट द कॉटन मिल्स इन इंडिया कॉटन मिल्स इन इंडिया दीटा जगह इंडिया रे क्लस्टर थिला गोटे हला तमरा एपटे गुजरात पटे एपटे ए पटे प्लेसटा दिस इज एपटे हला तमरा दिस इज योर गुजरात को कहले आओ हला आओ एटा हला तमरा महाराष्ट्र तो कॉटन बेल्ट कोठी थिला ए जगहटा हमर थिला कोटा कॉटन बेल्ट वेस्टर्न इंडिया रे कोटा थिला दिस इज योर कॉटन बेल्ट ठीक अछि ईस्ट वेस्टर्न इंडिया रे आ एपटे हमर थिला कि कोलकाता ठीक अछि कोलकाता हला रीजन टू कोलकाता एपटे रांची एपटे हमर थिला ओडिसा रा ई पार्ट नेकी दिस इज रांची ठीक अछि आ एपटे हमर ओडिसा ठीक अछि एपटे हमर थिला ईस्टर्न इंडिया आ वेस्टर्न इंडिया दीरे पार्ट रे थिला हला मेन कॉटन मिल्स एपटे थिला तो एक्चुअली प्रथम आरंभ होइला कोड ब्रिटिश माने प्रथम आरंभ करथिले कोलकाता रे बट एक्चुअली जदि तुम देखियो मुंबई रे जोटा हला माने महाराष्ट्र रे सेटा हमर हला मेजर
कौन कहला सेकेंड कॉटन मिल जोड़ा आरंभ होला इन इंडिया वाज एस्टाब्लिश केजी एंड डाबर 1854 मसीह माने 36 वर्ष पर सी 1818 रे हला फोर्ट क्लस्टर देन केजी एंड डाबर नेम्ड एज बॉम्बे स्पिनिंग मिल एंड वीविंग मिल ठीक अछि दैट इज इट इज सेड टू बी द ट्रू फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न कॉटन इंडस्ट्री इन इंडिया हला मॉडर्न कॉटन इंडस्ट्री जोटा हम कहबी दैट इज द ट्रू फाउंडेशन राइट सेम थिंग इन अहमदाबाद मु कहबी इन अहमदाबाद also referred as the Manchester of India. जदि मैं अहमदाबाद को कहबी this is also referred as Manchester of India. ठीक अछि अहमदाबाद को कहबो this is the Manchester of India. से जो कहा जे कहा को अहमदाबाद को माने एटा हला तमर अहमदाबाद टा कोठी पर्टिकुलरली देखो this is Manchester this अहमदाबाद. तब देखो हमर बहुत सारा ओडिया भाई माने सब अहमदाबाद जाई सेठी काम करचंदी हला मा सेठी बहुत माने मिल्स अछि पर्टिकुलरली जदि देखिबा हला अहमदाबाद also referred as Manchester of India. Manchester कोठी Manchester को कहा कहीं कंपेयर करा जाए कारण Manchester is a place where it is in the England रे भी Manchester अच्छी सेम थी कि ताइटे भी बहुत सारा कल कारखाना there is mills also there cotton mills also industrial revolution देखियो Manchester is a significant place in the world सेम थी इंडिया रे अहमदाबाद को कंपेयर कराई छी Manchester संगरे जोटा कि इंग्लैंड रे अछि यूके रे हला द ओपनिंग ऑफ द Sahapur mill in 1861 यदि मैं कहबी Sahapur mills in 1861 in Calico mill in 1863 marked as the city's spectacular rise is one of the world's prime cotton manufacturing locales in Gujarat. तो गुजरात जदि देखियो वर्ल्ड रो प्राइम लोकेशन भितरे गुजरात भी आस जेमति कोन कहली Sahapur हला मिल्स इन 1861 Sahapur हला गोटे Sahapur mills सेमति Calico mill गुजरात बोलछ Sahapur mill जेमती आसला सेमती Calico mill भी आसला जो माने मेजर मार्क्ड एज द सिटीज स्पेक्टाकुलर राइज ऑफ द वर्ल्ड्स प्राइम कॉटन वर्ल्ड रो जेमती मु कहबी मेजर कॉटन रे ताले ए माने भी आसीबे अच्छा वर्तमान हला किए तमाने जानले इंडिया रे को मेन हला किए कॉटन लीडिंग स्टेट्स मु कहबी कि कॉटन लीडिंग स्टेट्स कि हम कंट्री रे कॉटन लीडिंग स्टेट्स नंबर 1 कहबी को माने लीड करछन मेजर कॉटन लीडिंग रे नंबर 1 टू ने मेजर हम लिखि दो कि महाराष्ट्र हला तापरे मोडी लिखि प्रथमे गुजरात प्रथमे लिखुची गुजरात महाराष्ट्र तेलंगाना हला देन ठीक अछि गुजरात कला महाराष्ट्र तेलंगाना ठीक अछि आउ एपटे साउदर्न स्टेट रे आल्सो आंध्रा एमाने मेजर लीडिंग स्टेट्स हला जो माने कॉटन इंडिया रे जदि देखिबो कॉटन रे को माने एमाने मेजर लीडिंग स्टेट्स गुजरात महाराष्ट्र तेलंगाना आउ आंध्र प्रदेश तो कॉटन जदि देखिबो हम इंडिया रे गोटे मेजर पॉपुलेशन से माने ई कॉटन ऊपर अछन तो एटा तमे जानलो ताले मीडियम में पढिले कॉटन रे के 1818 रे फर्स्ट क्लस्टर्स अछि हला कोलकाता रे देन सेकंड रे हला केजी एंड डाबर अहमदाबाद रे मैनचेस्टर जोटा हला तमरा शाहपुर आउ कैलिको मिल्स हला दीटा का मन रख शाहपुर आउ कैलिको मिल्स ठीक अछि ठीक अच्छे सो ये आम जानले अबाउट कॉटन बर्तमान सेमती जानियो जेमती कॉटन जानले सेमती देखियो जूट रे की अछि जूट इज आल्सो वेरी मच इंपोर्टेंट जूट पई अच्छा जूट रे देखिबा की जेमती कॉटन भी करा जाय सेमती जूट भी बहुत प्रॉफिटेबल मन रख जेमती आज कॉटन बढ़िया जूट भी हमको बहुत सारा दिए माने माने लाइवलीहुड जेमती देखिबो हला मेजर चंक जेमती कॉटन रे भी सेमती दीज आर ऑल द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री माने एग्रो अलाइड इंडस्ट्री को कहंती सेमती जूट भी काम करे जूट रो भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन अछि फॉर एग्जांपल्स मु कहबी कि हमर ओडिसा रे भी जूट मिल्स अछंती हला सो जूट मिल गोटे इंडिया रे गोटे बहुत मेजर माने पॉपुलेशन भी जूट ऊपर भी कह जाय जूट को भी कह जाय तमर कोन दैट इज आल्सो योर व्हाइट गोल्ड भी कह जाए जूट को जब देखिबा कोन जो जूट इंडस्ट्री इज अमंग द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया हला ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्री जूट इंडस्ट्री कोन कह जाए
one of the oldest and most prominent industries in India. Hela jute industry. The major jute producing states ki India रे major jute producing state ki one is your West Bengal, Assam, Bihar, Odisha, Andhra Pradesh. हला इंडिया रा किए मेजर जूट प्रोड्यूसिंग किए को माने गोटे तुम वेस्ट बेंगल, आसाम, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश. ठीक अच्छे. या भितर जदि मु कहबी वेस्ट बेंगल है इंडिया रा वेस्ट बेंगल है इट कंट्रीब्यूट्स more than 80% of 75 to 80% more than 75 to 80% of ठीक अच्छे 75% to 80% jute production in India. है वेस्ट बेंगल कौन कर 75 ରୁ 80% जूट प्रोडक्शन जोड़ा होची त माने हला वेस्ट बेंगल करछे हला 75 ରୁ 80%. However, the Indian jute industry particularly mainly depends on the West Bengal due to the higher number of mills. West Bengal कौन अछि सबुटु बेसी higher number of jute mills अछि particularly West Bengal मन रखो एटा higher number of jute mills present in the West Bengal. देखिबा jute manufacturing existed as a handloom industry but large scale industry targeted in 1855 को जगह रहीतला हैला jute industry रे कोन हबो हैला handloom industry. handloom माने particularly कोन jute रो कोन बाहर हैला garments माने particularly मु कहबी clothes हमर जा भी होची clothes ठीक अछि carpet हैला handicrafts ठीक है clothes carpets handicrafts हैला आउ योर also एटा हमरा मेजर इथरे गल handicrafts. then एपटे गला हमरा automobiles रे automobile industry भी यूज करे हैला automobile industry एमदी ठीक अछि जेमती कार रे इंटीरियर डिजाइन रे यूज हुए ना इंटीरियर डिजाइन माने पर्टिकुलरली कार मैट ठीक अछि सेमती सब जगह हैला. सो जूट रो केते माने देखो वाइड यूसेज होची जूट रो सेमती हम कोन देखिबा कोठी हेतरा प्रथमे लार्ज स्केल इंडस्ट्री स्टार्टेड इन 1855 इन रिसरा नियर कोलकाता पाखरे नियर रिसरा प्रथम आरंभ होइतला. द फर्स्ट जूट मिल जदि मु कहबी इंडिया रा फर्स्ट जूट मिल वाज सेट अप बाय ब्रिटिशर्स नियर जॉर्ज ऑकलैंड एट रिसरा. यो को ब्रिटिशर्स प्रथमे करथिले हला रिसरा रे हितला से ब्रिटिशर का नाम कोन थिला ताका नाम थिला जॉर्ज ऑकलैंड हला जोटा कि रिसरा रे करथिले known as the Auckland mill हला ऑकलैंड मिल ताको कहै known as the your ऑकलैंड मिल ठीक अछि. सो इटा हम जानले कि रिसरा जो जगहटा रिसरा रे ही प्रथमे तमर हेतला प्रथम जूट मिल जोतरे कि प्रथमे जॉर्ज ब्रिटिश के जॉर्ज ऑकलैंड करथिले रिसरा रे. आ एटा केबे हेतला हला फर्स्ट जूट मिल एबे हेतला इंडिया रे. ओके तो जूट मिल जदि मु कहबी इंडिया रे इट इज आल्सो डेटेड बैक टू हला केबे अगेन 1855 हला 1855 रे प्रथमे कोठी हेतला रिसरा रे हेतला. बट जदि तमे कॉटन देखुछ कॉटन रे अलग प्रकार जस्ट लुक एट हियर कॉटन हेतला केबे 1818 मुडी कंपैरेटिव स्टेटमेंट कोन देली इंडिया रे प्रथमे कॉटन हला तापरे जूट आसला माने दो पाखा पाखी 1818 मसिया आ सिएला केते 1855 मसिया माने पाखा पाखी 37 वर्ष रो डिफरेंस पे दिले. प्रथमे कॉटन नेक्स्ट आसला जूट एटा तमे मन रखियो. अच्छा हला कॉटन और जूट भितर कॉटन भितर मते कहली एटा हला तमरो वेस्टर्न इंडिया ठीक अछि. वेस्टर्न इंडिया पार्टटा से पडला ईस्टर्न रे. वेस्टर्न इंडिया रे हमर रहला मेजरली किए गुजरात महाराष्ट्र आ ईस्टर्न इंडिया रे हमर रहले किए
ये मेजरली मुझे लिखली वेस्ट बेंगल है ओडिशा बिहार है जोटा आगुरी झारखंड थी से बिहार ये पर्टिकुलाली एमान रहा इवन इफ आसाम ऑल्सो मुझे ऑल्सो आसाम ऑल्सो देयर ठीक अच्छे एमान मेजर मेजर आउ एपटे किए रहिले एपटे गुजरात देन महाराष्ट्र एमान रहिले मेजर है गुजरात और महाराष्ट्र मेजर रहा एपटे वेस्ट बेंगल ओडिशा बिहार आउ आसाम अच्छा वर्तमान आसवा कि टॉप 10 जूट प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट्स किए को स्टेट्स माने मेजरली से माने कंट्रीब्यूट कर जूट प्रोडक्शन ये जानवा दिस इज वेरी इंपोर्टेंट टू नो है को स्टेट एमाने मेजरली रहउछन है जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स रे इंडियन स्टेट्स रे किए रहिले जेमती कहली नंबर 1 रहिला किए अच्छा जूट प्रोडक्शन जो हो टॉप प्रोड्यूसिंग जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडियन स्टेट्स रे केले 1000 बेल्स जूट रो यूनिट है कौन बेल ठीक अच्छे बेल इज द यूनिट जमती तुम कौन कर बेल्स बेल जमती तुम केजी ओजन जमती कर कौन हुए है जूट जूट आउ कॉटन रो बेल ठीक अच्छे ये कौन लिखली द यूनिट है यूज्ड फॉर weighing कॉटन कौन कहली रॉ कॉटन एंड जूट ठीक अच्छे रॉ कॉटन और जूट को किए बेल जमी तुम केजी कर हाथ धरच केजी सेमती है रॉ कॉटन और जूट है कौन कौन है रॉ कॉटन जूट रे ये वेस्ट बेंगल नंबर 1 केते इंडिया प्रोडक्शन रो वेस्ट बेंगल देख वेस्ट बेंगल है 7592.76 है 7592.76 है तुम वेस्ट बेंगल माने टोटाल एतिक माने जदि हमें धरिबा पाखापाखि लेट्स से 9000 धर मु धरुची 9000 रु है तुम पाखापाखि है पाखापाखि तुम केवल वेस्ट बेंगल है तुम माने 7600 है धर मुझे नौ के 7600 लेट्स से मुझे कहूँ ये तुम 800 आउ ये रहा तुम है 790 है ये रहा तुम 95 38 29 11 आउ बाकी रहा सपोज ये 8 और केते रोचे पाखापाखि रफली है प्लस ये मुझे कहली यहाँ धर ये तुम पाखापाखि 1750 लेट से है तो ये रहा के रहा 7600 मुझे कहली के पाखापाखि तो 9300 धर मुझे धरली 9350 धर लेट से ये आम बेल हो 9350 रु पाखापाखि 7600 माने मोर देन 80% तुम ये देख जो आम प्रथम करी कहीं कहली ताने मोर देन 80% इज ओनली है वेस्ट बेंगल बाय वेस्ट बेंगल ये बुझुच वेस्ट बेंगल है सब नंबर 1 ये तुम निजे देख तुम आगे मुझे कैलकुलेशन कली 9350 जब बेल हो प्रोडक्शन टोटल टॉप 10 कंट्री भर केवल 7600 है अप्रोक्सीमेट है वेस्ट बेंगल पाखे मैंने मोर देन 80% कैन यू इमेजिन दैट वन ठीक अच्छे ओके सो वेस्ट बेंगल देन सेकेंड आसाम सेकेंड रे आसला तुम फर्स्ट सेकेंड है तुम आसाम फर्स्ट वेस्ट बेंगल सेकेंड आसाम थर्ड बिहार 787 मेघालय फोर्थ रे आसी थैंक्स टू मेघालय फोर्थ रे फिफ्थ रे आसी नागालैंड है 38 ओडिशा मार पाखापाखि आहरी इंप्रूवमेंट हो पार ओडिशा रे आसी हमर पर्टिकुलरली 29 सिक्स्थ पोजीशन रे आसी पाखापाखि इट इज नियर अबाउट 29 to 30 है बेल हमर आसी है आंध्र प्रदेश 10 11 पाखा 11 10.44 त्रिपुरा 8 छत्तीसगढ़ 9 झारखंड योर 0.83 ओनली मिनिमल तो दीज आर द मेजर थिंग जोटा हम देखलो टॉप 5 रे वेस्ट बेंगल आसाम बिहार मेघालय आउ नागालैंड ओडिशा बेसी फरक नहीं ओडिशा टिके जदि यही सब योजना गुड़ा बंद हो कालिया बलिया है तो बहुत सारा जिन लोक मैंने कम कर फील्ड ठीक अच्छे
ओके आज पे एतिकी ठीक अच्छे ओके सो नेक्स्ट जदि मु कहबे अगेन पीडब्ल्यू तरफ जोटा भी आमर प्रोवाइड करा अगेन सी आमर मेजर पीडब्ल्यू रो मोटो है एक्सेस एजुकेशन कैन एक्सेस टू ऑल है एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इट्स ए ड्रीम टू मेनी है गोटे बड़ ऑफिसर होगापी कि बड़ गोटे गवर्नमेंट जॉब पाइबापी सो बर्तमान आजिका डेट में देखिए लक्ष लक्ष टका नौ है तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने बट पीडब्ल्यू तरफ लेस देन 7,000 जैसे मुझे कहली सक्षम बैच इतने कम प्राइस रे प्रोवाइड करा सक्षम बैच जोटा कि दैट कैन एवरीवन कैन अफोर्ड दिस वन है everyone can afford है so that is what the major purpose to help the students those who are really needy those who are है and semanakara स्वप्न साकार करिया पे this is an great steps taken by your PW particular सक्षम बैच जेमति देखिलो है इतने क्लियर 360 अछि जोटा कि तमरो ऐड कले है 6,500 हबो है एटा 4,499 और यदि क्लियर 360 तमे नोचो क्लियर 360 it is near about पाका पाकी 1,999 मु कहबी है मिसले रहिबा देन कलिंग वीर बैच 699 700 पाखापाखि विजय बैच 999 ओडिशा डिस्ट्रिक्ट पुलिस बैच 1299 रे ओडिशा एग्जाम महापैक दैट इज 4,999 एंड आल्सो दीक्षा बैच दिस इज 1,999 सो एते गुडा तमरो बढ़िया बढ़िया एग्जाम जोटा कि इतने कम रे तमे पाउछो एंड डेफिनेटली इट विल वर्क मैजिक डेफिनेट जो मानक स्वप्न अच्छी कि गोटे गवर्नमेंट एग्जाम देकी है आम माँ बापा स्वप्न साकार करूँ प्लस निजर गोटे एस्टाब्लिशमेंट सो दिस इज डेफिनेटली दिस इज एन ग्रेट इनिशिएटिव टेकन बाय योर फिजिक्स वाला फैमिली राइट सो थैंक यू ऑल ऑफ यू विल कंटिन्यू विथ द नेक्स्ट सेशन थैंक यू हैव अ गुड डे थैंक यू ऑल ऑफ so we'll continue with your Indian geography Purboru just wildlife. Today we'll go for the wildlife sanctuaries, national park and the biosphere reserves. Exams re questions most commonly through पचरा जाए है so we'll in-depth study गोटे करिवा उपरे है and definitely it will be fruitful. ता पूर्व व्यक्ति कहबी कि हमर फिजिक्स वाला तरफ पीडब्ल्यू फैमिली तरफ हमर प्रोवाइड करा होची your this courses offers basically जदि मैं कहबी कलिंगा वीर बैच जोटा कि हमर 699 सक्षम बैच जोतरा कि OCS रा जोतरा कि तमर प्रीलिम्स कम्स हला प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब इथरे इंक्लूड हबो आ इथरे गोटे प्लस क्लियर 360 अछि हला 4499 रे ओनली विजय बैच हला दैट इज OCS प्रीलिम्स में 999 रे ओडिशा डिस्ट्रिक्ट पुलिस जूनियर क्लर्क 1299 ओडिशा एग्जाम्स महापैक 4999 and दीक्षा बैच दैट इज 1999 जोतरे कि एते अफोर्डेबल प्राइस रे हैला एनीवन कैन अफोर्ड दिस वन जोतरे कि तमरो जनरली आज के डेट जति म कहबी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स गोटे अपियर हबा इट्स एन स्वप्न समस्त पई ठीक अछि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रे दैट टू बी वैरायटी ऑफ योर देखु छ एटी तमे वैरायटी ऑफ एग्जाम्स तमरो सब वैरायटी रो एंड दैट टू बी इन अफोर्डेबल रेट जति तमे सिविल सर्विस कथा कहबा बाहर इट इज मोर देन 1 लाख ओके इवन इफ 80-90,000 जोटा कि तमे मात्र हैला जदि वो बिलो 10,000 तमे पाउछो एंड इवन इफ जदि क्लियर 360 ऐड करछु 6,500 हैला 7,000 बिलियर तमे पाउछो so this is definitely bring proof to be your beneficials for your preparations and that to be cost बहुत मैटर करे बिना कॉस्ट तो कोनो जिंस हबनी बट हियर पीडब्ल्यू तरफ जो गोटे स्टेप नि आइछि तो डेफिनेटली इट इज एन लाइफ चेंजिंग इवेंट समस्त को पई हैला नेक्स्ट देखिबा राइट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तुम कहबी हम सही जिन कवर करियो जोटा कि इंडिया रे है मेजर पार्ट जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे कहबी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इफ आई से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द एरियाज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स है जदि हम देखिबा आज ऑफ नाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया रे है केतेटा अछि केतेटा माने 543 जोटा कि अछि हमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केते जगह रे को स्टेट रे केतेटा है सेटा सब आज हम कवर करिवा ता पूर्व हम जानिबा कि व्हाट इज वाइल्ड लाइफ पर्टिकुलरली वाइल्ड लाइफ पर हम जदि कहबा व्हिच एनिमल्स है आर पर्टिकुलरली वाइल्ड लाइफ पर जनरली हमको बाघ भालू एगुडा सब पळे से हाथी तो मोस्टली वाइल्ड लाइफ्स आर पर्टिकुलरली दोज एनिमल्स व्हिच आर नॉट डोमेस्टिकेटेड है डोमेस्टिकेटेड नोस वन माने गृहपालित पशु नुह along with वाइल्ड लाइफ माने हमें एथे भी बोथ फ्लोरा फौना भी आसी माने हमर गच्छ भी आसी प्लांट्स आल्सो कम्स इन दैट
है खाली प्लांट्स नो खाली जरूर माने एनिमल्स नो आल्सो प्लांट्स आल्सो देयर तो देखिबा यदि वाइल्ड लाइफ रे यदि तुम देखुछ एटी कोन बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिस सम एलिफेंट्स दे आर रोमिंग ठीक अछि काहे कि जंगल भितरे इट इज देयर होम तांको घर हला एटी जंगल भितरे इट इज देयर होम हला वाइल्ड लाइफ देखिबा ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जदि हम कहबी इज ए प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ इंपोर्टेंस फॉर फ्लोरा फौना और फीचर्स ऑफ द जियोलॉजिकल एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स हला basically wildlife jodi mu kahibi wildlife sanctuary is a protected area of importance of flora fauna or features of geological and other interest hala which is reserved and managed for conservation and to provide opportunities for study or research basically kon hue reserved and managed for conservation and to provide opportunities for study and research. Study or research. Tourism is not allowed in this sanctuaries. Tourism generally allowed no in sanctuaries as they serve a natural habitat. Tourism generally you are allowed no as they serve a natural habitat. Basically, tourism basically allowed no, but there are some restricted. Generally wildlife no, but there are some restricted. Jadhi bhi hochi very restricted manners. है देखिए वर्तमान सेमती एज पर कौन अच्छी द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जदि कहबी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अच्छा वर्तमान एक्ट माने कौन एक्ट माने हला रूल्स एंड रेगुलेशंस पर्टिकुलरली रूल्स एंड रेगुलेशंस माने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रे हला दिस पर्टिकुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स दे आर गवर्न्ड बाय योर rules or they are protected by rules and regulations as per the our government. For example, no one can harm them without any self interest. माने मोरा माने हला सेल्फ इंटरेस्ट माने गोटे मनीष माने व्हेन ए सबु जगह रे पशु पक्षी गछ लता हार्म किए करे व्हेन देयर इज अ सेल्फ इंटरेस्ट. That means if I say take the examples of these elephants are they are poaching mane poaching of elephants mane for what because of their tusker tanga danta pai jemti the poaching or the killing of rhinoceros in Assam's Kaziranga National Park Pavitra and Manas National Park because of their one horned rhino. So because of all such activities, human activities, animal poaching or killing of innocent animals, wildlife animals has been regulated by with your rules and regulations. It hala tamara that is why this Wildlife Protection Act 1972 se asila particularly hala Wildlife Protection Act came into existence. Next, it provides for the establishment of protected areas in India. Wildlife sanctuaries of India are classified as IUCN category 4 hala IUCN category 4 re asila wildlife classified IUCN that is on International Union for Conservation of Nature. As of November 2023, 573 wildlife sanctuaries were established in India. है जब मुझे कहबी आज ऑफ नवेम्बर 2023 सुधा ठीक अच्छे 573 है 573 43 कहते इट इज 73 573 है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आमर होइछन. So can you imagine near about we are touching 600 इतने बड़ो इंडिया रे इतने माने मैक्सिमम साइज है 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज were established in India covering near about 1.24 lakh square kilometer approximate I am telling it लक्षे 23,762 लिखा है मु लिखली 1.24 lakhs approximate square kilometer. That means that is near about 3.76% of the nation's land area है as per the database of November 2023. देखो कितने बड़ा वाइड 3.76 माने नियर अबाउट मुझे एटा दिस इज अ क्वेश्चन एगुड़ा सब क्वेश्चंस रे पचारे प्रीलिम्स रे 3.76% और नियर अबाउट वी कैन से 4%.
3.76% or 4% we can say. अच्छा, among this project tiger हैला मु कहली among this project tiger governs 53 tiger reserves हैला project tiger govern करछि 53 tiger reserves which are special significance for the conservation of Bengal tiger, which are special significance for the conservation of Bengal tiger. 53 tiger reserves generally, हैला 53 tiger reserves which are special significance for the conservation of the Bengal tiger, project tiger. ठीक अछि. तो वर्तमान देखिबा कि बर्तमान आम जानिले 573 अच्छी योर रिजर्व्स ठीक अच्छे ता भितर आम देखा को स्टेट रे केतेटा अच्छी. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट टू नो दिस वन राइट. देखिबा वन बाय वन. स्टेट वाइज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आंध्र प्रदेश रे केते टोटल मु कहली आंध्र प्रदेश रे केते एरिया आंध्र प्रदेश रा पाखापाखी 1,60,229 kilometer square. These are all the area like kilometer square. Number of wildlife sanctuary, area, percentage, state percentage area है ना state area केते percentage area. तो आंध्र प्रदेश में देखिले केते खाली तुम एटा मन रख है ना. नंबर 1 मु कहले आंध्र प्रदेश ठीक अछि. आंध्र प्रदेश नेला पाखापाखी 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक अछि. आउ स्टेट रे केते 4.23. तमर क्वेश्चन एटा पछे केते एरिया स्टेट एरिया एटा स्टेट रो एरिया आंध्र प्रदेश रो एरिया ला एति की आउ वाइल्ड लाइफ एरिया केते हला 6771 ताने पाखापाखी 4.23% तमर जदी आसुची हैला. तमर क्वेश्चन पछरे एटा आंध्र प्रदेश प्लस 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लस केते एरिया 4.23%. एटा म कहली परसेंटेज रे. सेम थी अरुणाचल प्रदेश केते आसी अरुणाचल प्रदेश आल्सो 13 नंबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसी 9.09%. कैन यू इमेजिन 9.09. सेम थी आसाम आसला आसाम रे केते हला 17 नंबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2.2% हला. बिहार राष्ट्र केते 12 टा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हला असला 3.03%. बिहार 3.03. देन छत्तीसगढ़ it is 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हला 2.78 हला छत्तीसगढ़ रे. गोवा it is 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी it is 17.5 गोवा रे 17.5%. गुजरात again 23 this is 8.48% हला गुजरात रे केते 8.48%. हरियाणा हला 7टा near about 0.27%. हरियाणा रे 0.27%. then हिमाचल प्रदेश केते आसला 28. कैन यू इमेजिन हिमाचल प्रदेश आसला 28 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक अछि. 10.99 एरिया रा आ भितर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड मु तुम कहि दिबी सेटा तुम परीक्षा रे सब पचारिबे. मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केते को स्टेट रो परसेंटेज एरिया हैला माने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया दिस डेडिकेटेड हेची तार टोटल स्टेट एरिया टू सबुडो हाईएस्ट केते केते परसेंटेज आ से अनुसार को स्टेट हाईएस्ट ए दुटा जिंस हम काउंट करबा हैला. हिमाचल रे हला तमर केते 28 नंबर्स. सेमती झारखंड रे 11टा झारखंड रे मु कहली केते 11टा 2.45% हैला. कर्नाटक रे केते आसी कर्नाटक रे पाखापाखी 38 टा. कैन यू इमेजिन 38 हैला असला 4.28% कर्नाटक रा. केरला रे हैला केरला रे असला केते 18 नंबर्स पाखापाखी 5.55 हैला. मध्य प्रदेश रे आसी केते हैला मध्य प्रदेश लिखा है नहीं एटी लुचि मध्य प्रदेश है 24 हैला. दिस इज 24 आ पाखा पाखा से 2.29% मध्य प्रदेश हैला. दिस इज मध्य प्रदेश. नेक्स्ट देखिबा सेमती महाराष्ट्र एडा सब मन रखियो को जगह केमती कहूची. महाराष्ट्र रे केते आसी 49 नंबर ठीक अछि. देन 2.55% अगेन परसेंटेज एरिया रा हैला एरिया परसेंटेज एरिया हैला एरिया परसेंटेज what लिखली कौन states area states total
areas percentage 2.55. Manipur, it is 3.17% Manipur re. Then Manipur re, then Meghalaya re 4 चारटा आसी Meghalaya re कहते 0.42%. सेमती Mizoram it is 9 आसी कहते 6.45% Mizoram re. Then Nagaland, it is 4 it is 0.26%. ठीक है जी. Then Odisha रे केते आसी, it is 19 numbers. एटा मन रखो, एटा क्वेश्चन हम ओडिशा रे केतेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अछि. We can say this one. This is also 19. ओडिशा रे हमर 19 टा असला केते हमर स्टेट एरिया रे 4.46%. एटा ओटा हमर क्वेश्चन जाई परिबो हैला. ओडिशा रे हमर केतेटा 4 हमर टोटल एरिया रे टोटल हमर ओडिशा रे जति एरिया अछि तार 4.56% of the total geographical area of Odisha is dedicated to our wildlife sanctuary as of now, right? Punjab re kete achi 13 number, it is 0.65. Rajasthan re kete, it is 25 number, 1.63%. Next, Sikkim re 7 achi 5.62. Tamil Nadu केते आसी 33 5.46%. तमिलनाडु केते आसी 5.46% तमिलनाडु. तेलंगाना 9 4.94% तेलंगाना रे. देन त्रिपुरा तेलंगाना असला पर कि त्रिपुरा रे केते आसी त्रिपुरा रे 4 only 4. Then it is 5.76% त्रिपुरा. ठीक है जी. उत्तर प्रदेश रे केते आसी 26 that is 2.42%. उत्तराखंड उत्तर प्रदेश गला 26. उत्तराखंड that is 7 5.03%. उत्तराखंड है तुम्हारा 5.03. Then West Bengal आसी केतेटा 16 टा 16 numbers 1.62%. Then Andaman and Nicobar रे केते आसी पाखापाखि Andaman and Nicobar रे आसी हमरो 97. एटी लुटची एची Andaman Nicobar केते आसी 97. एटी मन रखा 97 आसी Andaman Nicobar रे हैला. नेक्स्ट आसला किए चंडीगढ़ इट सब यूनियन टेरिटरी आसला. ठीक अछि. एबे आसला किए यूनियन टेरिटरी. दीज आर ऑल स्टेट्स. बर्तमान एटी आसला यूटीज रे किए आसला. यूटी रे चंडीगढ़ रे आसला केते हैला 2 नंबर हैला 22.82%. बाप माने कैन यू इमेजिन चंडीगढ़ रे 22.82%. सेमती दादर नगर हवेली इट इज 1 only 1. Daman Diu asla. Daman Diu is also 1.96%. Then Delhi 1.32%. Jammu Kashmir 14 1.1% area. Ladakh 15.22. Ladakh only 2%. हैला दीटा अछि 15.22%. लक्षद्वीप रे 32 हैला टोटल स्क्वायर किलोमीटर एरिया. लक्षद्वीप रे 1 सॉरी लक्षद्वीप रे तमरो 0.03%. पुडुचेरी 1 it is 0.81%. पुडुचेरी 0.081% पुडुचेरी हैला. सो टोटल ऊपर मु कहली केते जदि हमें देखिबा वर्तमान काउंट करिबा को स्टेट रे सबुटो अधिक हैला. जदि मैं कहबी हमें लिखिबा एटी हैला स्टेट वाइज मैं लिखली स्टेट वाइज आर समरी बार करिबा हाईएस्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी WLSK नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3. ठीक है जी. सेमती हैला यूटी रे किए यूटी यूनियन टेरिटरी वाइज हाईएस्ट हैला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी.
किए देखिए 1 2 3 रैंक रैंक किए सब हाईएस्ट किए रैंक रे दिज आर ऑल रैंक तो ये मुझे कहबी किए प्रथम आसवा आम जान किए कर्णाटका है कर्णाटका केते 38 नंबर देख देख ये तुम देख कर्णाटका हम देखीदे किए किए नंबर 1 रे कर्णाटका देख 38टा ये फर्स्ट रैंक सेकेंड आसो देख कर्णाटका है फर्स्ट रैंक कर्णाटका है फर्स्ट सेकेंड किए आसला भला देख ये किसी नहीं सब 38टा सेकेंड देख तमिलनाडु आसो 33 नहीं सॉरी इट इज स्टेट वाइज तुम 49 है महाराष्ट्र आई एम सॉरी महाराष्ट्र 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश 24टा बोधे हाँ कर्नाटक ये मुझे करेक्शन कर कर्नाटका ये आसला तुम सेकेंड है ये मुझे देखिए टी करेक्शन कर कर्नाटक आसला तुम ये सेकेंड आसला है ये मुझे लिखिली यहाँ तुम आसो कर्नाटक सेकेंड नंबर आसो फर्स्ट आसला तुम किए महाराष्ट्र मुझे लिखिली महाराष्ट्र आगे देखीदेवा है किए ठीक अच्छे 38 प्रथम आसा तार 49 रे ये फर्स्ट नंबर स्टेट रे फर्स्ट सेकेंड आसला कर्नाटका थर्ड किए आसी थर्ड आसो तुम तमिलनाडु देख आउ किसी भी कहीं ना तमिलनाडु अच्छी थर्ड रे है थर्ड रैंक दिस इज है थर्ड तमिलनाडु थर्ड है ये है फर्स्ट कर्नाटका है तुम सेकेंड तो ये आम कौन जानले नंबर 1 रे महाराष्ट्र केते 49 नंबर्स देन कर्नाटका 38 numbers then your Tamil Nadu that is 33 numbers है 1 2 3 तुम जान लो 49 38 and 33 तीनटा फर्स्ट सेकेंड थर्ड आसले सेमती है यहाँ मन रख परीक्षा एमती आस महाराष्ट्र सेकेंड आसला कर्नाटका थर्ड आसला तमिलनाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी परीक्षा पढ़ले यहाँ कर सेकेंड यूटी जदि मुझे कहबी है यूनियन टेरिटोरी किए आसो है यूनियन टेरिटोरी प्रथम कौन जानले अंडमान्स है अंडमान्स एंड निकोबार मैंने केते आसले पाखापाखि 97 नंबर तुम देखुच देखो ये अंडमान्स आसले 97 सो यूटी रे ये फास्ट सेकेंड के आसो यूटी रे सेकेंड यूटी रे आसो जम्मू काश्मीर यूटी रे आसो सेकेंड देखुच थर्ड रे के आसो 14 आसला थर्ड रे लद्दाख आउ चंडीगढ़ दीटा आस मैक्सिमम है लद्दाख आउ थर्ड रे दीटा आसवे लद्दाख आउ चंडीगढ़ है तो ये तुम देख लो किए आसला J&K जम्मू काश्मीर यूटी रे पाखापाखि केतेटा 14 नंबर है आउ एपटे आसला किए लद्दाख एंड चंडीगढ़ है ईच 2 नंबर मन रख ईच 2 नंबर लद्दाख और चंडीगढ़ ईच 2 नंबर ठीक है लद्दाख और चंडीगढ़ ईच 2 नंबर दीटा के तो ये तुम देखी पार्छ टोटल 14 ईच 2 नंबर एठी तो यू कैन ड्रॉ ये तुम देखी पार्छ देयर आर टोटल महाराष्ट्र 49 कर्नाटका तमिलनाडु 1 2 3 स्टेट कैटेगरी यूटी रे तुम प्रथम नंबर 1 अंडमान निकोबार दैट इज 97 14 है तुम J&K आउ लद्दाख आउ योर चंडीगढ़ ईस्ट 2 धर क्वेश्चन तुम पकेला सपोज व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ योर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से तुम महाराष्ट्र भी अच्छी अंडमान्स भी अच्छी
कर्णाटक भी अच्छी, लद्दाख भी अच्छी, जम्मू सब से जगह तुम चूज कर अंडमान कहीं स्पेसिफिक देनी प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड है जदि टोटाल देछि यूटी और स्टेट मिसेकी सब जंग देन योर आंसर शुड बी अंडमान एंड निकोबार। इज इट ओके? वर्तमान जीवा नेशनल पार्क। ठीक अच्छे, नेशनल पार्क इज ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट टू नो। नेशनल पार्क रे जानिबा कौन नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गला एरिया वाइज जदि मु कहबी हला प्रथम किए जदि मु कहबी अरेंज एरिया वाइज हला डब्ल्यूएलएस हला छोट ताटू बड़ हला नेशनल पार्क ताटू बड़ हला बायोस्फीयर रिजर्व हला एटा हला तमरो एरिया वाइज मु कहली दिस इज योर एरिया वाइज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एरिया वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर। नेशनल पार्क देखिबा ठीक अछि नेशनल पार्क रे किए कौन पाई नेशनल पार्क असला व्हाट इज द कांसेप्ट बिहाइंड दिस वन व्हाई नेशनल पार्क केम हला कौन व्हाट इज द थॉट्स बिहाइंड कौन पाई हला अगेन टू प्रोटेक्ट इट। नेशनल पार्क्स हला इन इंडिया आर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर बेसिकली इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर पाई को हला नेशनल पार्क्स को हला कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरियाज। इंडिया's फर्स्ट नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936 1936 मसिया रे प्रथम नेशनल पार्क इंडिया रे एस्टैब्लिश करा मन रख ठीक अच्छे दैट इज नोन एज को जगह रे इंडिया रे प्रथम नेशनल पार्क दैट इज उत्तराखंड रे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जोटा कि कहा जाए हला उत्तराखंड रे इट इज आल्सो नोन एज सही समय कौन थला प्रथम हेलिस नेशनल पार्क ठीक अच्छे हेलिस नेशनल पार्क प्रथम याकू कहत हेलिस नेशनल पार्क हला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को भी कहा जाए हेलिस नेशनल पार्क भी सही समय एटा कहत केबे 1936 मसिया एटा गोटे क्वेश्चन समान कर दिस इज आल्सो ए क्वेश्चंस टू ऑल ऑफ यू हला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क्स आल्सो नोन एज योर हेलिस नेशनल पार्क हेलिस हला स्पेलिंग ता मतलब हेलिस सॉरी हेलिस नेशनल पार्क ठीक अछि हेलिस नेशनल पार्क ठीक अछि I'm sorry, this is Hemis National Park. I'm sorry, this is your Hemis National Park. ठीक है Hemis National Park in Guwahati. Hemis, हला make a correction. It is Hemis National Park. गुवाहाटी 1936 मसीह रे माने बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस रो 11 वर्ष पूर्व एठी प्रथम हेतल हला फर्स्ट नेशनल पार्क। अच्छा कौन करिबा करेंटली देयर आर 106 टा नेशनल पार्क वर्तमान हम देखिबा हला देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू नेशनल पार्क है इन टर्म्स ऑफ एरिया इट इज मोर एंड इट इज मोर प्रोटेक्टेड गवर्नमेंट रो बेसी है रूल्स रेगुलेशन तमरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोठी नेशनल पार्क ऊपर currently total 106 national parks in India. Further legislations strengthening the protection of wildlife was introduced in 1980s. Further कौन है इंट्रोड्यूस करा वाइल्ड लाइफ इंट्रोड्यूस इन 1980s 1980 मसीह रे करा है तो वर्तमान आम केतरा जानले 106 टा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केतरा थिला 573 एटे हला 106। अच्छा there are total 106 existing national parks in India covering an area of 44,402 or काका जदि कहबी 44.5 k हला 44.5 हला k किलोमीटर स्क्वायर 44.5 k किलोमीटर स्क्वायर माने 44,500 किलोमीटर स्क्वायर एरिया which is accounting for 1.35% near about हला केते 1.35% of total geographical area of the country रो total TGA total geographical area of the country रो हला total हला तमरो कोटा 1.35% नेशनल पार्क सेटा केते थिला 3.76 ये हला 1.35 एगुडा सब मन रखियो हला दिस आर द की पॉइंट्स that they usually ask in exam right next देखिबा हमर हला वर्तमान देखिबा हमर को एरिया स्टेट और यूटी रे को बडा तमरो आसुची हला नेशनल पार्क और एगुडा सब कवर हो मन देखि सुनिबा जेम एट मु कहली अंडमान निकोबार यूटी रे हला केते हला 9 नंबर्स हला अल्फाबेटिकल जदि जिबा अंडमान निकोबार रे केते आसी 9 नंबर्स टोटल के कैम्बेल बे नेशनल पार्क गैलाथिया बे नेशनल पार्क तुम जदि देखिबो एठी तमरो टोटल एठी देइची इफ यू सी
ठीक अच्छे ये मैप रे तुम देख ये पर्टिकुलर एठी भी देछि तुमरो हला 37 पेज रे एठी क्लियरली देखैछि को नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व इवन इफ तुम ये देख ये सैडल पीक मिडिल बटन एगुड़ा सब देछि पढ़िबा गोटे गोटे हला कैम्पबेल बे गैलाथिया नेशनल पार्क महात्मा गांधी मेराइन नेशनल पार्क जोटा कि ता नाटा एठी परीक्षा पचारंदी वंडूर नेशनल पार्क को आ जाए महात्मा गांधी इज आल्सो नोन एज योर वंडूर नेशनल पार्क हैला अंडमान निकोबर ये देखो महात्मा गांधी ये देछि पर्टिकुलरली महात्मा गांधी वंडूर ये देखो दिस इज वंडूर नेशनल पार्क ये जगह देछि ठीक है जी देन मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क माउंट हैरियट नेशनल पार्क नॉर्थ बटन रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क सैडल पीक नेशनल पार्क साउथ बटन आइलैंड ठीक अच्छे सैडल पीक मिडिल बटन साउथ बटन एगुड़ा सब जगह इथरे देछि ठीक अच्छे so these are all the 9 marine national park in Andaman तुम पाइबो हैला 37 पेज तुम देखियो ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस एटा क्लियरली इट मेंशन हिच हैला वेरी इंपोर्टेंट मन रख परीक्षा रे तमरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क मोस्ट कॉमन से क्वेश्चन पचार छन हैला नेक्स्ट मध्य प्रदेश रे केटा 11 नंबर रा 11 टा मध्य प्रदेश रे अछि कोन कोन बांधवगढ़ नेशनल पार्क हैला बांधवगढ़ कोन पे फेमस आल्सो टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश हैला सबुटो अधिका हैला जेमति हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करते सेमति हमें नेशनल पार्क रे भी करिवे हैला बांधवगढ़ हैला बांधवगढ़ नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क देन माधव नेशनल पार्क बांधवगढ़ कान्हा और माधव फोर्थ रे मांडला फॉसिल नेशनल पार्क वन बिहार नेशनल पार्क पन्ना नेशनल पार्क पन्ना हैला पन्ना नेशनल पार्क देन पेंच को कहे पेंच नेशनल पार्क दैट इज आल्सो इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच नेशनल पार्क इज आल्सो नोन एज योर इंदिरा प्रियदर्शिनी नेशनल पार्क संजय नेशनल पार्क सतपुरा नेशनल पार्क डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क हैला सतपुरा पर किए डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क देन पलपुर कुनो नेशनल पार्क हैला किए पलपुर कुनो ठीक अच्छे पलपुर कुनो नेशनल पार्क एटा सो ऑल टोटल तुम जान लो पेंच नेशनल पार्क भी आल्सो कह जाउ किए इंदिरा प्रियदर्शिनी हैला इंदिरा प्रियदर्शिनी भी कह जाउ काकू दिस योर पेंच नेशनल पार्क भी आल्सो कह जाउ तमरो इंदिरा प्रियदर्शिनी हैला आ एपटे हला तमरो के संजय नेशनल पार्क आल्सो तो ये हमें टोटल जान ले 11 नेशनल पार्क्स आर देयर इन मध्य प्रदेश राइट नेक्स्ट योर कर्नाटक रे केते आसी किए 5 पांचटा नेशनल पार्क आछन कर्नाटक रे दैट इज योर बांदीपुर नेशनल पार्क देन बनेरघट्टा नेशनल पार्क हैला बनेरघट्टा जो देखियो तमे बेंगलोर रो साउथ आड़ को तमर बनेरघट्टा अछि हैला बेंगलोर रो साउथ आड़ नेक्स्ट कुद्रेमुख नेशनल पार्क नागरहोल नेशनल पार्क अंक्सी नेशनल पार्क हैला कुद्रेमुख बनेरघट्टा और एटाला अंक्सी नेशनल पार्क अंक्सी ठीक अछि अंक्सी नेशनल पार्क नेक्स्ट सेमती झारखंड रे की आसिला झारखंड रे अछन केतरा दीटा ओनली 2 नंबर्स आर देयर इन झारखंड दैट इज योर हैला बेतला नेशनल पार्क मु कहली बेतला नेशनल पार्क एटी मन रखो वेरी क्लियरली एटी बेतला नेशनल पार्क हजारीबाग नेशनल पार्क बेतला दीटा बेतला और हजारीबाग ठीक अच्छे झारखंड रे हैला एगुड़ा तुम सब केमती पचारिबो कॉलम ए और कॉलम बी करके पचारिबे कॉलम ए और कॉलम बी ठीक अच्छे माने नेशनल पार्क नेम ऑफ नेशनल पार्क देन स्टेट ठीक अच्छे नेम ऑफ नेशनल पार्क एंड स्टेट गुजरात रे किए ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात रे ब्लैक बक नेशनल पार्क कौन था ना वेलाभद्र हैला वेलाभद्र नेशनल पार्क गुजरात रे गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गिर शासन गिर कोटी अछि गिर अछि तमर को जगह रे एटा तमर काठियावाड़ा मन रख को पेनिनसुला रे काठियावाड़ा पेनिनसुला नेक्स्ट मरीन गल्फ ऑफ कच्छ पार्क हला देन बनसदा नेशनल पार्क एटा हला गुजरात मेजर एबिडा सब हला मरीन कच्छ एटी जति तुम देखुछ देख
काठियावाड़ रे गिर गिर एटी लिखा है गिर नेशनल पार्क ए जगह गिर ठीक अच्छे गिर अच्छी ठीक अच्छे मरीन नेशनल पार्क अच्छे देखो ऊपर मरीन नेशनल पार्क है बानसडा और ब्लैकबक है नेक्स्ट वेस्ट बेंगल किए आसी सुंदरबंस वेस्ट बेंगल किए आसी सुंदरबंस नेशनल पार्क बक्सा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क सुंदरबंस आसी देन बक्सा टाइगर रिजर्व देन गोरुमारा नेशनल पार्क है बक्सा देन गोरुमारा नेशनल पार्क फोर्थ रे जालदापड़ा नेशनल पार्क आसी जालदापड़ा नेशनल पार्क नेवरा वैली नेशनल पार्क देन सिंगालीला नेशनल पार्क है जालदापड़ा नेवरा वैली एंड सिंगालीला ठीक अच्छे जालदापड़ा नेवरा वैली एंड सिंगालीला है दीज आर द मेजर मेजर नेशनल पार्क जोटा कि तुम देखुच कौटी वेस्ट बेंगल है पुणी एकदम मुझे कहूँ वेस्ट बेंगल है बहुत इंपोर्टेंट बिकज इट इज है वेस्ट बेंगल तल पर्सन वेस्ट बेंगल टे लंबाड़िया तल पर्सन आसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए ऊपर पर्सन गुड़ा पुणी हिमालय पाखे शिवालिक्स पाखे लगी है तुम ये देख जालदापड़ा है गोरुमारा सब जगह ये अच्छा बक्सा सब जगह ये देख बक्सा गोरुमारा सुंदरबंस भी रहा देन जालदापड़ा है नेवरा वैली नेशनल पार्क एंड सिंगालीला है नेवरा आउ सिंगालीला ये कन्फ्यूजन हुए नेवरा आउ सिंगालीला रे मन रख दीटा जगह तुम वेस्ट बेंगल बहुत जन परीक्षा पचारे भूल भाल करते हैं दीटा गला वेस्ट बेंगल नेवरा आउ सिंगालीला नेक्स्ट देखियो महाराष्ट्र किए पुणी महाराष्ट्र 6 नंबर्स टोटल है महाराष्ट्र 6 नंबर्स दैट इज चांदोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र देखिए इट इज चांदोली नेशनल पार्क नीगांव नेशनल पार्क है संजय गांधी देख से भी रिपीट होती देख ये पूर्व कौन थी संजय नेशनल पार्क जब तुम देखो है संजय नेशनल पार्क कौटी है तुम मध्य प्रदेश संजय बट ये कौन संजय गांधी नेशनल पार्क ये देख है संजय गांधी नेशनल पार्क जोटा कि कहुच्छे महाराष्ट्र में बोरीविली इट इज ऑल्सो नोन एज योर बोरीविली संजय गांधी और बोरीविली नेशनल पार्क देन तडोबा नेशनल पार्क तडोबा नहीं होची तडोबा नेशनल पार्क देन गुगामल नेशनल पार्क गुगामल देन पेंच जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क है पेंच गुगामल पर किए आसी पेंच नेशनल पार्क है पेंच ना कौन दैट इज योर जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क पेंच नेक्स्ट जम्मू कश्मीर 3 नंबर से किए आसी जम्मू कश्मीर रे डाचिंगहाम नेशनल पार्क ठीक अच्छे डाचिंगहाम नेशनल पार्क डाचिंगहाम जम्मू कश्मीर किए आसी डाचिंगहाम नेशनल पार्क देन खिस्तवाड़ नेशनल पार्क डाचिंगहाम पर किए आसी खिस्तवाड़ also there डाचिंगहाम and खिस्तवाड़ then सलीमली that is city forest national park सलीमली also city forest national park सलीमली right so तीनटा जिनस इतरे आसी you can see here also ठीक अच्छे ये देख डाचिंगहाम खिस्तवाड़ ये आसी आउ सलीमली सब जगह तीनटा ये अच्छा जम्मू कश्मीर है खिस्तवाड़ डाचिंग माने लगा लगी अच्छा तुम किए सलीमली आउ डाचिंगहाम खिस्तवाड़ एपट को अच्छी है नेक्स्ट पुणी है सलीमली जोटा कि सलीमली इज ऑल्सो नोन एज योर सिटी फॉरेस्ट सलीमली कौन कहुच्छी सिटी फॉरेस्ट भी कहुच्छी है लद्दाख है हेमिस नेशनल पार्क दिस इज वेरी फेमस लद्दाख रे हेमिस नेशनल पार्क है ये तुम पर्टिकुलरली ठीक अच्छे स्नो लेपर्ड जमी हिमाचल भी देखा जाए एठी भी देखा जाए नेक्स्ट कम टू योर राजस्थान किए आसी दारहा नेशनल पार्क दारहा नेशनल पार्क कौटी आसी राजस्थान रे कौन कहुच्छी दारहा को दैट इज ऑल्सो नोन एज मुकुंद्रा हिल्स मन परीक्षा पचारे कौन करेंगे मुकुंद्रा हिल्स भी तुम कहुच्छी दारहा नेशनल पार्क राजस्थान दैट इज मुकुंद्रा हिल्स कहुच्छी देन एपटे जब देखुच इट इज डेजर्ट नेशनल पार्क है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट डेजर्ट नेशनल पार्क है डेजर्ट नेशनल पार्क केओलाडो नेशनल पार्क इट इज ऑल्सो नोन एज योर केओलाडो
केओलाडो माने सेम जिंस केओलाडो घाना जोटा केओलाडो नेशनल पार्क सेम जिंस केओलाडो घाना नेक्स्ट रणथंबोर नेशनल पार्क देन सरिस्का टाइगर रिजर्व रणथंबोर एंड सरिस्का दीटा है रणथंबोर एंड सरिस्का आगु देखिबा है सेमती मु कहया कथा एई पेज रे जो जो जिंसोडा तमर देइची यू कैन कवर ऑल दिस थिंग्स this is the thing that you can cover here next Assam re satata 𝐿 national park 𝐿 you can say then Kaziranga national park Manas national park Kaziranga pore Manas national park Orang national park ठीक है काजीरंगा पर किए ओरंग नेशनल पार्क नमेरी नेशनल पार्क नमेरी देन रायमोना नेशनल पार्क ठीक है रायमोना नेशनल पार्क देन दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क वी कैन से दिहिंग पटकाई है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क रायमोना पर दिहिंग पटकाई सो दीज आर द वेरी इंपोर्टेंट जब मुझे कहबे आसाम रे है सबु जंग कहीं ना एटा शिवालिक्स है शिवालिक्स पाखरे हिमालय रा शिवालिक्स पार्ट रे है दीज आर द ऑल योर शिवालिक्स पार्ट राइट ओडिशा रे हमर दीटा नेशनल पार्क अछि ओनली टू नेशनल पार्क्स आर देयर इन ओडिशा दैट इज योर सिमलीपाल नेशनल पार्क एंड भितरकनिका देयर आर टू नेशनल पार्क इन ओडिशा दैट इज ये किए सिमलीपाल औ भितरकनिका है ई दीटा जंग हमर अछि कोठी ओडिशा रे सिमलीपाल औ भितरकनिका उत्तर प्रदेश रे दैट इज ओनली टू सॉरी उत्तर प्रदेश रे ओनली वन दैट इज दुधवा नेशनल पार्क तुम जानछ उत्तर प्रदेश रे गोटिए नेशनल पार्क ओनली दैट इज योर दुधवा नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क तुम ये देखुछ दिस इज उत्तर प्रदेश रे ओनली वन जोटा कि नेपाल संगे सटिक अछि देखुछ एटी पूरा नेपाल संगे सटिक जोटा अछि जेटा दुधवा नेशनल पार्क है बिहार बिहार रे किए वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार रे किए वाल्मीकि नेशनल पार्क इज इन बिहार राइट बिहार है बिहार रे तुम वाल्मीकि नेशनल पार्क सेमती केरला रे किए आसला केरला रे इंपोर्टेंट दैट इज केरला रे एराभिकुलम नेशनल पार्क दिस इज वेरी इंपोर्टेंट एराभिकुलम नेशनल पार्क इन केरला है एराभिकुलम नेशनल पार्क मठीकेतन नेशनल पार्क मठीकेतन दिस इज मठीकेतन नेशनल पार्क पेरियार नेशनल पार्क एटा भी आसला पेरियार है मठीकेतन पर किया आसला पेरियार साइलेंट वैली नेशनल पार्क है साइलेंट वैली इट इज वेरी फेमस वी ऑल नो साइलेंट वैली बहुत ही फेमस है जोटा कि तुम नीलगिरीस पाखे ये तुम देख है ये तुम देखुच साइलेंट वैली जोटा कि साइलेंट वैली तुम कवर करोटा केरला आउ मेजर केरला तमिलनाडु किछि पार्ट दिस इज साइलेंट वैली देखुछ साइलेंट वैली नेशनल पार्क देन पंबादन सोला नेशनल पार्क है पंबादन सोला एंड दिस इज योर अन्नाईमुदी सोला नेशनल पार्क दीज आर ऑल 6 नंबर्स इन केरला वेरी इंपोर्टेंट केरला देखुछ सबु जंक मेजर नेशनल पार्क वेस्टर्न घाट रो तमरो केरला रे सब आसुची जस्ट अ मिनट है मेजर नेशनल पार्क एटी आसी अन्नाईमुदी सोला आल्सो नेशनल पार्क इन केरला रे है पर्टिकुलरली एटा सब जंक दे ऑल lies in Western Ghat area. Then Tamil Nadu Rastikete 5 number that is your Gindi National Park Gindi, then Gulf of Mannar National Park Gindi, then Gulf of Mannar, then Indira Gandhi that is Annamalai National Park Indira Gandhi तमिलनाडु के इंदिरा गांधी दैट इज योर अन्नामलाई नेशनल पार्क इंदिरा गांधी और अन्नामलाई नेशनल पार्क एठी भी देन मुड्डुमलाई सब देख इंदिरा गांधी जोटा कि एठी कोच देख अन्नामलाई नेशनल पार्क जोटा सेटा ला इंदिरा गांधी प्लीज मेक ए रिमेंबर ऑफ दिस अन्नामलाई जोटा मुड्डुमलाई सेटा ए सॉरी इंदिरा गांधी सेटा मुड्डुमलाई गोटा हला अन्नामलाई हला
मन रख अन्नामलाई मुडुमलाई दीटा किंतु इंदिरा गांधी कहला माने अन्नामलाई को बुझिबो अम्मा देन मुकुर्ती नेशनल पार्क हला मुकुर्ती नेशनल पार्क दिस इज आल्सो वेरी फेमस मुकुर्ती नेशनल पार्क हला दिस वन सो दिस आर द ऑल टोटल 5 नंबर्स इन तमिलनाडु ठीक अछि तो आमे केतरा 106 टर हिसाब नो मेजर मेजर सेमती हरियाणा रे के 2 नंबर्स कालेसार नेशनल पार्क मु कहली कालेसार नेशनल पार्क एंड देन सुल्तानपुर नेशनल पार्क कालेसार एंड सुल्तानपुर दीटा कालेसार एंड सुल्तानपुर देन हिमाचल प्रदेश रे क्रिए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क पिन वैली नेशनल पार्क गोटेला ग्रेट हिमालयन आ गोटेला पिन वैली नेशनल पार्क हैला देन इंदरकिला नेशनल पार्क खीरगंगा एंड सिंबलबाड़ा ठीक अछि ग्रेट हिमालयन पिन वैली इंदरकिला खीरगंगा एंड your Simbelbada National Park. These are all the national parks in Himachal Pradesh. Majorly Himachal Pradesh रे माने अछंती मेजर हैला ठीक अछि ग्रेट हिमालयन पिन वैली इंदरकिला हैला खीरगंगा एंड सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क हैला नेक्स्ट एटी देखिबा छत्तीसगढ़ रे केतटा छत्तीसगढ़ देयर आर 3 नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ दैट इज योर इंद्रावती हैला इंद्रावती छत्तीसगढ़ रे इंद्रावती कोन को जे कुटरू नेशनल पार्क कुटरू ठीक अछि कुटरू नेशनल पार्क ठीक अछि कुटरू नेशनल पार्क देन कांगेर घाटी नेशनल पार्क कुटरू एंड कांगेर घाटी देन गुरु घासीदास कोटा कहली गुरु घासीदास आल्सो नेशनल पार्क गुरु घासीदास कांगेर घाटी गुरु घासीदास एंड इंद्रावती जोटा कि इंद्रावती को जाए कुटरू बट परीक्षा पचाइतना ऑलरेडी कुटरू नेशनल पार्क दिस इज आल्सो कुटरू नेशनल पार्क हला दिस आर द 3 नेशनल पार्क्स इन योर छत्तीसगढ़ नेक्स्ट आसिले उत्तराखंड किए देखिबा वन बाय वन उत्तराखंड रे किए आसी जिम कार्बेट नेशनल पार्क हम देखिले उत्तराखंड रे जिम कार्बेट जोटा कि हमें कहले हला हेमिस नेशनल पार्क जोटा सेटा भी जिम कार्बेट पर किए आसले नंदा देवी नेशनल पार्क सब जगह एठी अछि जिम कार्बेट और नंदा देवी जस्ट लुक एट हियर हला उत्तराखंड जदी देखियो तमे जिम कार्बेट और नंदा देवी इज हियर जिम कार्बेट नंदा देवी राजाजी नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क राजाजी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स गंगोत्री गोविंद हला गंगोत्री एंड गोविंद आल्सो ठीक अछि गंगोत्री एंड गोविंद नेशनल पार्क आल्सो तेलंगाना रे किए तीनटा हला ठीक अछि गंगोत्री गोविंद एगुडा सब वेरी इंपोर्टेंट उत्तराखंड रे टोटल 6 टा ठीक अछि एटा रिसेंट हला गोविंद नेशनल पार्क हला आउ हला गोविंद नेशनल पार्क हिची एटा पुराना हला सब जिम कार्बेट प्राय तो सब नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स गंगोत्री हला राजाजी गोविंद रा तमरो एटा न्यूली इनकॉर्पोरेटेड हिची जोटा गोविंद नेशनल पार्क हला ने सबटु पुराना तमरो जिम कार्बेट देन वैली ऑफ फ्लावर नंदा देवी सब जगह वेरी ब्यूटीफुल प्लेस जब देखियो हिमालय रे एक्चुअली ब्यूटी जदी तमे देखियो नेशनल पार्क विषय नंदा देवी इज वन ऑफ देम माने आई मीन उत्तराखंड इज वन ऑफ देम तेलंगाना जदी पाउछ तमे 3 नंबर्स किए काजू रेड्डी नेशनल पार्क काजू रेड्डी ठीक अछि काजू रेड्डी नेशनल पार्क बनस्थली नेशनल पार्क मृगबनी नेशनल पार्क काजू रेड्डी बनस्थली एंड मृगबनी ठीक अछि काजू रेड्डी बनस्थली एंड मृगबनी मणिपुर रे किए मणिपुर रे आछंती योर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ठीक अछि मणिपुर रे दीटा आछंती मणिपुर रे दीटा केबुल लामजाओ हला हम जानि चंती एंड सिरोही एटा पचारिथिले सिरोही नेशनल पार्क इट वाज न्यूली इनकॉर्पोरेटेड सिरोही नेशनल पार्क इन मणिपुर ठीक अछि सेमती सिक्किम रे किए आछी सिक्किम रे ओनली 1 नंबर दैट इज कंचनजंगा नेशनल पार्क वी कैन से कि आछी कंचनजंगा हला वेरी फेमस वी नो दैट वन एटी तमे देखुछो हला सिक्किम रे दिस इज कंचनजंगा ठीक अछि कंचनजंगा नेशनल पार्क इज हियर सेम थी अरुणाचल प्रदेश रे के 2 नंबर्स दैट इज मोलिंग नेशनल पार्क नामदप्पा नेशनल पार्क हला मोलिंग और नामदप्पा अरुणाचल प्रदेश रे किए मोलिंग एटी देखुछ तमे मोलिंग नेशनल पार्क और नामदप्पा दीटा जंग अछंती ठीक अछि नामदप्पा आल्सो ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क ठीक अछि
नेक्स्ट मिजोरम रे किए 2 numbers, that is मुरलेन नेशनल पार्क, मुरलेन एंड फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क आउट मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम रे। त्रिपुरा रे किए 2 numbers, क्लाउडेड लियोपर्ड, त्रिपुरा किए आसला क्लाउडेड लियोपर्ड, ठीक अच्छे, क्लाउडेड लियोपर्ड आसला त्रिपुरा रे। देन बाइजन नेशनल पार्क, बाइजन है क्लाउडेड लेपर्ड आउ बाइसन, दीटा क्लाउडेड लेपर्ड आउ बाइसन अच्छे, क्लाउडेड लेपर्ड आउ बाइसन नेशनल पार्क 2। नेक्स्ट आसला मेघालय रे, इट इज 2 numbers, मेघालय रे दैट इज बल्फक्रम नेशनल पार्क एंड नॉकरेक, दीटा बल्फक्रम एंड नॉकरेक, देयर आर 2 नेशनल पार्क, बल्फक्रम एंड नॉकरेक दीटा। नागालैंड रे किए हैला एटा 2 numbers, नागालैंड रे ओनली 1, दैट इज इंतांकी हैला, इट इज वेरी फेमस न्यूली, दैट इज इंतांकी नेशनल पार्क, इंतांकी नेशनल पार्क हैला नागालैंड रे इंतांकी नेशनल पार्क। तो वर्तमान हमें देखिबा कि अगेन स्टेट वाइज किए हैला नेशनल पार्क रे बट कहबे किए स्टेट वाइज हैला हाईएस्ट नेशनल पार्क, हाईएस्ट नेशनल पार्क स्टेट वाइज सेमती रैंक 1 2 3 कहबी रैंक 1 2 3 सेमती यूटी वाइज हैला यूटी वाइज हाईएस्ट नेशनल पार्क सेमती किए 1 2 3 स्टेट वाइज देखिबा किए हैला स्टेट वाइज आम देखिले मध्य प्रदेश सब बड़ अच्छी 11 नंबर है, ये मुझे लिखिली कौन मध्य प्रदेश 11, मध्य प्रदेश पर किए अच्छी वेस्ट बेंगल 6, महाराष्ट्र 6 है, राजस्थान 5, केरला 6, तमिलनाडु 5, आसाम 7 है 11 पर आसाम 7, कर्नाटक टिके देखीदेवा गुजरात 4, कर्नाटका 5, तो आसला किए है आसाम आसी 7टा आउ किछि भी नहीं, मैक्सिमम आसला आसाम है, आसाम आसला। देन 6 नंबर आछि तमर किए उत्तराखंड इच 6, उत्तराखंड 6 है, उत्तराखंड 6, केरला 6 है, उत्तराखंड 6, केरला 6 और महाराष्ट्र 6, वेस्ट बंगाल भी 6। तो ये हम कौन देखले स्टेट वाइज, ये हम लिखि देउचंदी हैला। तो स्टेट वाइज किए ले नंबर 1 हैला मध्य प्रदेश हैला मैं लिखिली, एमपी हैला केते पाखापाखि 11 नंबर्स हैला मध्य प्रदेश। सेकेंड रे आसला किए आसाम 7 नंबर्स, एथरे आसला 6 नंबर किए महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु और गुजरात, एमने आसले ईच 6 नंबर है 6 नंबर। ये देखिए हमें 6 रे आसले किए आउथरे हम कंफर्म करछि केरला, केरला केरला 6 नंबर, केरला महाराष्ट्र, केरला महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल, केरला महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल 6 नंबर ताले आसले किए
केरला महाराष्ट्र और वेस्ट बेंगल गुजरात नुह बेंगल आसला महाराष्ट्र आसला वेस्ट बेंगल महाराष्ट्र केरला कौन लिखिले है ये लिखिली महाराष्ट्र वेस्ट बेंगल ये 4 5 ये आ गोटे किए केरला इज योर केरला है इच 6 नंबर सेमती यूनियन टेरिटोरी हम किए देखा अंडमान सेकेंड जानले अंडमान आसला केते 11 नंबर है 9 नंबर अंडमान ठीक अच्छे अंडमान रे 9 नंबर्स है बाकी जदि तुम देख टोटाल आउ अलग थी तुम देख लक्षद्वीप आने प्राय नहांती है नेशनल पार्क लक्षद्वीप चंडीगढ़ एगुड़ा नेशनल पार्क ना तो ये ओनली अंडमान से दरकार नहीं आप्लिकेबल नॉट आप्लिकेबल एनी है नॉट आप्लिकेबल तो दिस इज ऑल तुम टोटाल पचारा तुम जान नंबर 1 है एमपी देन आसाम देन योर महाराष्ट्र वेस्ट बेंगल केरला इज 6 नंबर ओडिशा रे हमर 2टा नेशनल पार्क है अंडमान से 9टा सो दिस इज ऑल अबाउट आवर नेशनल पार्क है देखिले हमें नेशनल पार्क ये टोटाल गला तो समरी है ये ऊपर एटा इजी गोइंग वर्तमान वर्तमान आसीबा बायोस्फीयर रिजर्व इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बायोस्फीयर रिजर्व कौन बायोस्फीयर रिजर्व जदि देखिबा कौन कौन इंडिया रे हमर अछि बायोस्फीयर रिजर्व दिस इज द टोटल वर्तमान सुधा टोटल 18 नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व टोटल 18टा बायोस्फीयर रिजर्व अछि देखिबा कौन कौन हैला बायोस्फीयर रिजर्व देखिबी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द साइट्स established by countries and recognized under UNESCO's Man and Biosphere program है Man and Biosphere program that is MAP ठीक है MAP है Man and Biosphere program to promote sustainable development based on local community efforts and sound science है कौन कहली sustainable development based on local community efforts and sound science particularly है so the program of biosphere reserve was initiated by UNESCO in 1971 1971 रे this program was initiated है UNESCO biosphere reserve 1971 रे मन रख है मैप जो कांसेप्ट है धीरे धीरे वर्तमान एटा कोन है यूनेस्को रो आसिला केबे 1971 रे है मैप केवल गवर्नमेंट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल मैन माने मैन एंड बायोस्फीयर है मैन भी सेतिकी नेचर पे रेस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द नेचर सो द पर्पस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व इज टू कंजर्व इन सिटू है ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ तो बायोस्फीयर रिजर्व रो मेन पर्पस कोन है टू कंजर्व द लाइफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ सब वेराइटी लाइफ को कंजर्व करिया पे है दैट इज मेजर है तमरा स्टेप नियला कोठी है पर्टिकुलर नियला बायोस्फीयर रिजर्व्स इन सिटू इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ अलोंग विथ इट्स सपोर्ट सिस्टम है अलोंग विथ इट सपोर्ट सिस्टम इन इट्स टोटलिटी सो दैट it could serve as a referral system for monitoring and evaluating changes in natural ecosystem है evaluating changes in natural ecosystem so these are the things right ठीक अच्छे है so evaluating the changes in natural ecosystem right next there are total 18 biosphere reserves there are total 18 biosphere reserves in India they protect larger areas of natural habitat ठीक अच्छे there are total केते 18 biosphere reserves है 18 biosphere reserves है in India they protect large areas of natural habitat than typical national park or animal sanctuary है than typical national park or animal sanctuary टोटल ऊपर हमर इंडिया रे केतरा अछि 18टा बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया हैला एंड सैंक्चुअरी एंड ऑफन इंक्लूडेड वन और मोर नेशनल पार्क्स और रिजर्व्स along with buffer zones that are open to some economic uses along with that one there are some buffer zones that are used to the economic uses कौन देखिबा प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड
not only to the flora and fauna of the protected regions, it is not only granted but also to the human communities who is inhabit these regions and their ways of life. जी भी कौन कुछ human community जो कि inhabit तक अटकोच human community mainly, right? So बर्तमान हमें देखिबा which are those national biosphere reserve जेंति हम देखले एटी biosphere reserve किए हला एटी मेजर ऊपर टोटल देछि biosphere reserve इंडिया रे कोड. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. सो हमें जानले टोटल 18 टा biosphere reserves इंडिया रे अछन. देयर आर टोटल 18 biosphere reserves. वन बाय वन देखिबा. प्रथम हला मु कोन देछि नेम एरिया and location माने को स्टेट रे कोटा कोटा देछि एरिया नेम एंड लोकेशन. This is also very important exam point of view जदि तमे देखिबो questions are frequently asking from this, right? जेमति प्रथम कहली नीलगिरी हला नीलगिरी एरिया हला 5520 that is part of Wayanad, Nagarhole and Bandipur. कोटा कोटा हम कहली part of हला नीलगिरी पार्ट ऑफ वायनाड, नागरहोल एंड बांदीपुर. ता माने हला तमिलनाडु रे तमिलनाडु हला पर्टिकुलरली हला तमिलनाडु हला तमरो को स्टेट रे अंडर रे जाउछ. वायनाड एरिया हला केरला, नागरहोल कर्नाटका, बांदीपुर एटा तीनटा स्टेट को कवर करछ एरिया. नीलगिरी जदि मु कहबी अगेन नीलगिरी इज ए ट्राई जंक्शंस. एटी देखो दिस इज नीलगिरी. एटी देखो नीलगिरी रो किछि पार्ट एटी केरला रे अछि हला तमिलनाडु रे अछि आउ कर्नाटक रे अछि. बट मेजर जदि देखिबो तमरो नीलगिरी फॉरेस्ट केरला रे मैक्सिमम देन तमिलनाडु कर्नाटक मिसिकी हला तीनटा नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व रे तीनटा स्टेट को शेयर करे. क्वेश्चन पछले तमे कोन करिवो दैट इज योर हला केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु. सेमती नंदा देवी किए नंदा देवी रे दैट इज योर उत्तराखंड. ठीक अछि उत्तराखंड रे नंदा देवी हला नंदा देवी हला उत्तराखंड. Nokrek is in part of Garo Hills in Meghalaya. Nokrek is in part of Garo Hills in Meghalaya. ठीक है जी part of Garo Hills in Meghalaya. Great Nicobar, Andaman Nicobar Islands. Great Nicobar कोठी हला Andaman and Nicobar Islands. Great Nicobar is in Andaman and Nicobar Islands. Great Nicobar, right? Same thing. Gulf of Mannar, that is Gulf of Mannar in between India and Sri Lanka. ठीक है जी देखो एटी वन बाय वन देखो जी हला नंदा देवी देखो नंदा देवी इज इन उत्तराखंड. दिस इज उत्तराखंड. नंदा देवी उत्तराखंड यूके हला. नॉकरेक इज इन मेघालय हला नॉकरेक इज इन मेघालय, राइट? देन ग्रेट निकोबार एंड गल्फ ऑफ मन्नार. ग्रेट निकोबार कोठी हला निकोबार आइलैंड रे. इट इज ग्रेट निकोबार. दिस इज निकोबार आइलैंड अंडमान निकोबार रे हला अंडमान और निकोबार रे ग्रेट निकोबार. देन गल्फ ऑफ मन्नार एटी देखछ गल्फ ऑफ मन्नार माने दिस इज असला कोठी तमिलनाडु रे हला तमिलनाडु रे. ठीक है जी एटा आसीबा हमें एरिया एटा हम पढो छी तार एरिया वाइज पुनी हमें देखिबा. जेमति तुम एटी देखिलो नीलगिरी हला 5520, नंदा देवी हला केते एरिया स्क्वायर किलोमीटर 5860, नॉकरेक हला 820, निकोबार हला 885, गल्फ ऑफ हला 10500 गल्फ ऑफ मन्नार हला. पुनी आसा मानस असला केते 2837 ताका आसाम रे. मानस हला केते 2837 आसाम रे. सुंदरबन आसी 8360 सुंदरबन 8360 वेस्ट बंगाल रे हला. मानस एटी देखो तमे मानस आउ देखो मानस आसाम रे. इट दिस इज मानस आसाम. अगेन सुंदरबन वेस्ट बंगाल हला ममता दीदी को घरे चलबे ना वेस्ट बंगाल. ठीक है जी. नेक्स्ट हला 8360. देन सिमलीपाल ओडिसा रे सिमलीपाल आसी ओडिसा दैट इज 4374. दिब्रु साइखोवा इन आसाम. दिब्रु साइखोवा हला दिब्रु साइखोवा इन आसाम. दिहांग दिबांग दैट इज अरुणाचल प्रदेश. दिहांग दिबांग इट इज योर अरुणाचल प्रदेश हला. दिहांग दिबांग तुम देखछो इट इज योर अरुणाचल
ठीक अच्छे अरुणाचल प्रदेश दिहांग दिबांग है अरुणाचल प्रदेश देन 11th रे क्या 11th रे दैट इज पंचमाड़ी है इट इज दिब्रु साइको 756 दिहांग दिबांग है 5111 है 5111 देन पंचमाड़ी 492 मध्य प्रदेश रे दिहांग दिबांग अरुणाचल पंचमाड़ी देन कंचनजंगा 2620 इन सिक्किम ये देखिबा एटी देखो दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश दिब्रु साइको एटी भी रहिला दिस इज आल्सो अरुणाचल प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश देन है आमर एटी रहिला सिमलीपाल ओडिशा गोटे आमर ओनली वन बायोस्फीयर रिजर्व्स पंचमाड़ी है पंचमाड़ी इट इज आल्सो इन मध्य प्रदेश एमपी नेक्स्ट देखो अगस्थमलाई कोडी आसला दैट इज एरिया 1828 अगस्थमलाई कोडी आसला 1828 कोडी आसला इट इज इन केरला ठीक है जी अगस्थमलाई इज इन केरला है सेमती पन्ना आसला 2999 स्क्वायर किलोमीटर एमपी ये देखिबा अगस्थमलाई ये देखो सेम ठीक है जी दिस इज अगस्थमलाई दिस इज देखो इन केरला एकदम साउथ ऑफ द केरला जब तुम पचार क्वेश्चन रे नीलगिरी और अगस्थमलाई रे व्हिच वन इज नॉर्दर्न और व्हिच वन इज सदर्न सदर्न पचाले हला मोर सदर्न हला तमर अगस्थमलाई रे ऊपर को अछि तमर किए नीलगिरी पन्ना रिजर्व्स एटी देखो पन्ना मध्य प्रदेश रे पन्ना हला ग्रेट रन ऑफ कच्छ पुणे असला तमे देखेन ग्रेट रन ऑफ कच्छ 12,454 है गुजरात ग्रेट रन ऑफ कच्छ सेम द कोल्ड डेजर्ट असला किते 777 कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश रे है कोल्ड डेजर्ट है तमरा हिमाचल प्रदेश रे देन योर अचनामकर अमरकंटक 3835 अचनामकर अमरकंटक किते 3835 अचनामकर छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश इट इज छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश ठीक है अचनामकर अमरकंटक दैट इज 3835 है दिस इज योर कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश एंड दिस इज योर अचनामकर अमरकंटक इन मध्य प्रदेश कोल्ड डेजर्ट है हिमाचल रे अचनामकर अमरकंटक इज इन मध्य प्रदेश दिस वन देन छत्तीसगढ़ एमपी अचनामकर अमरकंटक जोटा सेटा बोथ को करछि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बोथ आर देयर हैला छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश रे देन शेषाचलम हिल्स फाइनली दैट इज इन 4756 दैट इज इन आंध्र प्रदेश शेषाचलम हैला so this is all about your 18 biosphere major biosphere reserve वर्तमान जानिबा एटी दीटा क्वेश्चन पचारिबो मु लिखुछि क्वेश्चन 1 which biosphere reserve is largest in area है in India of course in India आंसर कौन हम या भितर ये देखियो सब किए सब बड़ बर्तमान रन ऑफ कच्छ फर्स्ट है सेकेंड रे मुझे कही दूची गल्फ ऑफ मन्नार 10,500 थर्ड रे किए आसीबो है थर्ड जदि आसीबो दैट इज योर सुंदरबंस इट इज सुंदरबंस और ये कौन लिखले इटी इट इज आंसर है तुम इट इज योर नंबर 1 इट इज गल्फ है सॉरी इट इज रन ऑफ कच्छ गुजरात रन ऑफ कच्छ को जार मुझे लिखी दूचे एकदम है गुजरात रे फर्स्ट रैंक दिस इज फर्स्ट रैंक है फर्स्ट रैंक फर्स्ट सेमती सेकेंड रे आसीबो किए सेकेंड रे तमर आसीबो गल्फ ऑफ
मन्नार एमती क्वेश्चन गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु थर्ड रे आसो ये थर्ड रे आसो तुम सुंदरबंस है सुंदरबंस इट इज इन द वेस्ट बंगाल सो दीज आर द थ्री है तीन टा ठीक अच्छे सेम थी पचार जदि क्वेश्चन आ गोटे है ये गोटे क्वेश्चन गला सेकेंड क्वेश्चन व्हिच इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन कहबी द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया एरिया वाइज ऑफ कोर्स ये आंसर हम आंसर कौन हम स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क तुम एरिया वाइज देख ये सबुठ है ये सब कम आसला स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क भितर पांचमाड़ी नेशनल पार्क मन रख पांचमाड़ी 492 सब देख सब कम है सब कम जब आस किए पांचमाड़ी नेशनल पार्क तापर बहुत जन कहती नहीं दिब्रु साइखोवा नहीं दिब्रु साइखोवा 756 नॉकरेक भी 820 सब स्मॉलेस्ट है तुम पांचमाड़ी ठीक अच्छे पांचमाड़ी नेशनल पार्क है तुम सब है इट इज योर पांचमाड़ी दैट इज योर पांचमाड़ी नेशनल पार्क है पांचमाड़ी कोटी इन मध्य प्रदेश पांचमाड़ी नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश ठीक अच्छे ओके है सो ये क्वेश्चन सब पचारे जोटा कि तुम देख लो आउ गोटे पचारे मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व कोठी अच्छे तुम देखो जदि मैक्सिमम नंबर को जगह तुम कहीपर है जमी कमन है केरला तमिलनाडु है आउ गोटे एपट किए रहा केरला तुम देखुच अगस्त मलाई दीटा केरला आउ मध्य प्रदेश ठीक अच्छे मध्य प्रदेश रे गोटे आसला तुम अचनामकर अमरकंटक ये देख लो अचनामकर अमरकंटक आउ ये आसला किए मध्य प्रदेश गोटे तुम ये पंचमाड़ी एमपी तो तुम ये देखिपर ये डायग्राम रे तुम ये क्लीयरली देखिपारछ है मध्य प्रदेश रे एमपी रे 2 नंबर्स तुम देखिए यदि एमपी रे 2 नंबर्स आउ केरला रे भी 2टा नंबर्स तो दिस इज है मेजर मेजर ईच 2 ये है मैक्सिमम ये 2टा कर केरला आउ तुम केरला आउ ये भी तुम पर्टिकुलरली एमपी भी तमिलनाडु भी आम कहीपर कहीं तमिलनाडु भी 2टा रहीपर कहीं गल्फ ऑफ मन्नार आउ एटा रोचे है तीन टा तुम जो देखो दीटा मैंने नौ बाकी सब जिनस एते ना आसाम रे भी 2टा मुझे सॉरी आसाम रे भी 2टा कौ मैंने 2टा नौ आसाम रे भी 2 नंबर्स मुझे आसाम रे भी 2 नंबर्स ये 4टा ये तुम देखिपार आसाम रे भी तुम 4टा देखिपार आसाम दिस इज ऑल्सो आसाम है आसाम रे दिब्रु साइखोवा आउ एपटे आसमर किए है दिब्रु साइखोवा गोटे आसाम रे आ गोटे मानस भी आस 2टा तो ये आम जानले टोटल है कि दीटा इच एमपी है जब मुझे कहि इच मध्य प्रदेश केरला तमिलनाडु आसाम इच दिस स्टेट्स आर इच बियरिंग 2 नंबर्स ऑफ बायोस्फीयर ठीक अच्छे आपको जमी पढ़ल से हिसाब से तुम पढ़ो डेफिनेटली श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस तुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व डेफिनेटली इट विल कम है नेक्स्ट ठीक अच्छे पुणी मुझे कहबी कि आमर जो पीडब्ल्यू तरफ जो रेवल्यूशन निया जो अफोर्डेबल है प्राइस सब दिया अगेन जो यू कैन ऑप्ट वन कैन एक्ट है एंड सजेस्ट टू योर पीयर्स आल्सो फ्रेंड्स आल्सो अबाउट दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल इंडिया लेवल रो जोटा होची कि ओडिशा लेवल रो यू कैन है डेफिनेटली यू कैन अटेंड ऑल दिस थिंग्स कलिंग बीर बैच है जोटा कि ओडिशा पुलिस पर 699 रे सक्सेम बैच आसी हमर जोटा कि ओडिशा सिविल सर्विस पई प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू दीटा 4499 रे विजय बैच 999 रे देन ओडिशा दृष्टि पुलिस दैट इज है डिस्ट्रिक्ट पुलिस दैट इज 1299 रे एते एंड ओडिशा एग्जाम्स महापैक 2.0 जो आसी 4999 जो कि तुम सब जिन पाई पार एंड दीक्षा बैच योर इंटीग्रेटेड दैट इज 1999
है तो एते गुड़ाए सुविधा तुम गोटे जगह सब जिन पाई पड़ दैट टू बी सो अफोर्डेबल रेट रे है एनीवन कैन अफोर्ड आजिका डेट रे तुम देखो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रे बाहर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट दियो इट इज टू हाई कॉस्ट तो से अनुसार जो देखो दीज आर द है स्पेशल जोटा कि दिखाई गोटे पीडब्ल्यू फैमिली तरफ इज एन रेवल्यूशन अप्रोच फॉर एनीवन कैन अफोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो जीवन में जो स्वप्न अच्छी माँ बापा जो स्वप्न अच्छी है कि पुओ मोर झील हो कि गोटे बड़ गवर्नमेंट ऑफिसर हम डेफिनेटली पीडब्ल्यू फैमिली तरफ यही सब जिन बेनिफिट्स प्रोवाइड फैसिलिटी कराई लिंक प्रोवाइड जोटा कराई लिंक थ्रू तुम डायरेक्ट गले यू कैन एक्सेस टू द योर पेज है आप डाउनलोड करा पड़ो तुम पेज एक्सेस करके तमें वेराइटी ऑफ तुम कोर्स एनालिसिस करके यू कैन ऑप्ट फॉर दैट वन ठीक अच्छे तो थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर ऑल योर पेशेंस थैंक यू गुड डे थैंक यू टेक केयर we are going to study Odisha geography part naba Odisha geography hame janchandi that very much important for our OPSC exam civil service mein ओडिशा जोग्राफी जदि मु कहबी आज मेजर जदि अच्छी सबुठु हला ओडिशा जोग्राफी जो मेजर पार्ट जोटा हला ड्रेनेज सिस्टम इज वेरी वाइटल जोटा कि रिवर सिस्टम भी कहजे ड्रेनेज सिस्टम हला ड्रेनेज सिस्टम रे हमें रिवर्स मेनली कवर करबा को रिवर ओडिशा रे मेजर इंपोर्टेंट रिवर स्टार्टिंग फ्रॉम हला आपण जो देखिबो सुवर्णरेखा हला देन योर बुढ़ा बलंग बैतरणी ब्राह्मणी महानदी ऋषिकुल्या सब रिवर इथरे कवर करवा ठीक अच्छे तो ये देखिए बर्तमान वन बाय वन ये देखुच टोटल ड्रेनेज सिस्टम रे वी आर कवरिंग द रिवर ऑफ ओडिशा जोटा कि हमें ड्रेनेज सिस्टम भी कह जाए है नॉर्थ रु साउथ हमें आसवा तो ये तुम देखुच है बालेश्वर पाखे सुवर्णरेखा देन वन बाय वन देन योर बुढ़ा बड़ंग है देन योर ब्राह्मणी ठीक अच्छे देन सॉरी देन बैतरणी ब्राह्मणी क्रोनोलॉजिकली एथरे मु तुमको कहबी हला क्वेश्चन कौन केमती केमती पचारिबे प्रथमे हला ता पूर्वरु गोटे क्वेश्चंस मु देबी धर क्वेश्चंस एमती भी जनरली पचारे हला एडी हम देखिबा एडी देखो पिला माने कि अरेंज द क्वेश्चन लेखो अरेंज द फॉलोइंग rivers arrange the following rivers from north to south direction in Odisha है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ओडिशा रे तमे सजेब रिवर्स जेमती है जमती ये तुम देखुच दिस इज द क्लीयर पिक्चर केमती तुम धर क्वेश्चन पड़ता से ही क्रोनोलॉजी रे तुम जीव कौन लिख नॉर्थ रु साउथ रे प्रथम लिखिली इट इज सुवर्ण रेखा आंसर कौन हम सुवर्ण रेखा देन बुढ़ा बड़ंग बैतरणी then ब्राह्मणी then महानदी then ऋषिकुल्या then वंशधारा है देन नागावली है वंशधारा आउ देन नागावली तुम यदि आटलास भी देखुच ये आटलास रे भी क्लारिटी अच्छी पूरा दिस इज द थिंग्स एटा ये तुम देखि परिबो ठीक अच्छे तो दिस आर द क्रोनोलॉजी देखुच नॉर्थ रु साउथ हिसाब रे एठी देखुच लेखिनी हला वंशधारा नागावली कारण वंशधारा नागावली भी हमर ओडिसा रा दिस इज देखो वंशधारा नागावली एठी देखुच बीएन एटा ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पचारथिला अरेंज करिवो ईस्टर्न घाट वंशधारा
तापर नागावली प्रथम V तापर N वंशधारा नागावली देन ऋषिकुल्या तापर एठी देखो महानदी हला ब्राह्मणी बैतरणी हला साळंदी जे ट्रिब्यूटरी ऑफ बैतरणी रो देन बुढ़ाबड़ंग और सुवर्णरेखा तमन हला 1 2 3 4 5 हला 5 6 7 8 देखो तुम एठी भी देखो तुम निजे लिखला एठी हला 1 2 3 4 एठी पर्टिकुलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 देखो एठी 8टा रिवर तुम देखो एठी नॉर्थ रु साउथ हिसाब रे हला ठीक अछि नॉर्थ टू साउथ these are the chronology north to south हिसाब तुम देखलो these are the directions you arrange the following rivers from north to south हला from ओडिसा रा ठीक अछि तो वर्तमान देखिबा वन बाय वन परीक्षा एमती क्वेश्चन पचाल तुम आराम से करि परिबो आ पढिला बेले always think in that way that how I am going to solve the questions हला सेटला सबले माइंड रखियो जोटा कि एई भलिया भाबरे एमती ही तुमर पचारचुनी आइदर तुमको नॉर्थ रु साउथ पचारंतो कि साउथ रु नॉर्थ पचारंतो कि तुमर सर तुमर नाही ऊपर बुढ़ा बड़ंग कि सुवर्णरेखा देनी तुमर ब्राह्मणी रु स्टार्ट कले कि बैतरणी रु स्टार्ट कले तो इन दिस वे यू कैन अरेंज द हला रिवर्स प्रथम देखिए महानदी रिवर हला महानदी रिवर ऊपर कौन कौन देछि महानदी रिवर इट ऑरिजिनेट्स नियर दंडकारण्य फॉरेस्ट हला फार्सिया विलेज ऑफ सिहोया टाउन नियर रायपुर डिस्ट्रिक्ट हला एटा गोटे पार्ट रे एटा भी कहंती हला देयर आर महानदी दीटा जिंस मजी कहबी सिहोया टाउन छत्तीसगढ़ इट्स टोटल लेंथ इज 860 किलोमीटर टोटल लेंथ इज योर 860 किलोमीटर हला ठीक अछि महानदी ऊपर आउ कोन कहंती अगेन जदि हम कहबी महानदी हला महानदी ऊपर कोन कहबी आ ऊपर कोन लिख परिबा इट आउ गोटे सेंस रे अलगा ज्योग्राफर्स माने ज्योग्राफिकल सेंस रे आउ गोटे वे रे कोन कहै जाय इट ऑरिजिनेट्स महानदी originates from Mahanadi originates from Amarkantak Amarkantak plateau or hills whatever Amarkantak hills better rakho Amarkantak plateau of ठीक अच्छे अमरकंटक प्लेट्यू कमा देखिए नियर माइकल रेंज है ना नियर माइकल रेंज ऑफ छत्तीसगढ़ ठीक अच्छे माइकल रेंज ऑफ छत्तीसगढ़ एटा एटा परीक्षा पचारते माइकल रेंज पाखर छत्तीसगढ़ रे एटी केम तमे देखिबो दिस इज महानदी रो हैला Michael range. This is your Michael range. You can see this is your Michael range. आउ एटी महानदी बाहरला एटी ठीक अच्छे इम्पोर्टेंट आउ एपटे तुम ठीक देखो ये सोन रिवर ये मुझे तीन टा दिस इज योर नर्मदा ठीक अच्छे आउ एपटे दिस इज योर आवर महानदी ठीक अच्छे थ्री इंपोर्टेंट रिवर्स जोटा आम जानी थ्री इंपोर्टेंट रिवर्स ये लिखिपर है गोटे तुम है किए नर्मदा महानदी आउ गोटे सोन रिवर सोन ठीक अच्छे दिस इज तीन टा बाहर माइकल रेंज तो ये आम कौन लिखिपर फ्रॉम दिस है परीक्षा भी ये पचारे ये क्वेश्चन फ्रॉम दिस रेंज फ्रॉम दिस माइकल रेंज ओके फ्रॉम दिस माइकल रेंज थ्री इंपोर्टेंट रिवर्स emerges है one is your नर्मदा है नर्मदा महानदी आउ एंड सोन रिवर ठीक अच्छे तो नर्मदा महानदी सोन
नर्मदा पड़ुची तुम अरेबियन सी रे, महानदी पड़ुची बे ऑफ बंगाल रे, वेयर द सोन नॉर्थवर्ड फ्लो करके गंगा संगे मिसुची. सोन इज ए इंपोर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा हैला मन रख. दिस इज गंगा ऊपर. तो ये तुम देखिलो दिस इज बे ऑफ बंगाल हैला एंड दिस इज योर अरेबियन सी हैला, अरब सी, अरेबियन सी और अरब सी आ एटा हला गंगा ऊपर जाई मिसुची हैला. सो दिस इज ऑल अबाउट इंपोर्टेंट थिंग्स जोटा परीक्षा रे क्वेश्चन रे पचारंती हैला. महानदी सिस्टम ऊपर मु कहितली को ए ऊपर. अगेन महानदी विषय कौन कौन जानिबा. महानदी इज ए मेजर रिवर इन ईस्ट सेंट्रल इंडिया. ईस्ट सेंट्रल इंडिया महानदी इज ए मेजर रिवर, drains an area of near about 1,41,600 स्क्वायर किलोमीटर. माने यदि हम देखिए महानदी बेसिन एरिया रे पाखापाखि 1.41 लाख स्क्वायर किलोमीटर महानदी है. महानदी यदि तुम देखिए इट इज 7th लार्जेस्ट बेसिन एरिया. महानदी यदि देखिए बेसिन एरिया रे महानदी बेसिन एरिया केते 7th लार्जेस्ट महानदी. ठीक अच्छे 7th रैंक रे. द महानदी इज आल्सो नोन फॉर योर हीराकुद डैम पे महानदी भी हमें जानते वर्ल्ड रो जदि हमें देखिबा हीराकुद डैम इज द लॉन्गेस्ट मैग्नरी डैम और अर्देन डैम वर्ल्ड रे हैला. खाली एशिया रे नो वर्ल्ड रे हैला. द डैम द रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा. मुझे कहबी एटा मु कोन पे लिखिली. ठीक अछि महानदी कथा एक जदि मु कहबी एठी अगेन. ठीक अछि महानदी रिवर है महानदी सॉरी महानदी रो कौन लिखली द हीराकुद डैम कौन लिखली द हीराकुद डैम इज द लॉन्गेस्ट है ना अर्देन डैम. अर्देन कौन थी लॉन्गेस्ट अर्देन डैम और मैग्नरी डैम, अर्देन डैम और मैग्नरी डैम. ठीक है डैम इन द वर्ल्ड. इट्स नॉट ओनली एशिया आल्सो. पाखापाखि है द टोटल लेंथ द टोटल बेटर रेंज लिखि देबो. ठीक है the total length is 26 kilometer including dikes and walls. The total can you imagine 26 kilometer, that is what our Hirakud dam is. 26 kilometer पाखापाखि लंबा वर्ल्ड रे इतने बड़ लॉन्गेस्ट डैम कोठी भी नहीं. एंड मन रखो इट इज एन लॉन्गेस्ट अर्देन डैम. अर्देन डैम माने माटी बंध. मैग्नरी डैम भी कहते अर्देन डैम जहाँ मैग्नरी डैम भी से. अच्छा आ पूर्व में कौन लिखिली कि हीराकुद डैम सॉरी महानदी रिवर फ्लोज थ्रू द मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा. तार रीजन है कि महानदी रिवर जो फ्लो करुच्ची मन रख अमरकंटक जो प्लेट्यू रीजन जस्ट एटी मो संगे एटलास को देख. अमरकंटक जो अच्छी पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़ रे पाखरे. ठीक अच्छे ये जगह पर्टिकुलरली है दिस इज अमरकंटक जो बाहरी है माइकाल रेंज. ये देखुच तुम माइकाल रेंज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश. देख आगुरी जो 2000 मसीहा पूर्व जो वेन द छत्तीसगढ़ formed in November 2000, but before that it was Madhya Pradesh. In November 2000 Chhattisgarh become a separate state. But say जो जगह अमरकंटक माइकल रेंज दैट इज एन ट्रांस बाउंड्री आई मीन दैट इज एन कॉमन बाउंड्री से बाहरी. तो महानदी किसी पार्ट मध्य प्रदेश रे आज भी रोचे इट्स एन ओनली पॉलिटिकल डिवीजन बट फिजिकली है किसी पार्ट तुम मध्य प्रदेश रे भी आसूची बट मेजर पार्ट इन छत्तीसगढ़ तापर तो ओडिशा रे. ठीक अच्छे सो दैट इज व्हाई आई सेड इट कि क्वेश्चन जदि से गुड़ा पचारे अकॉर्डिंगली विल सी द चॉइसेस आल्सो. राइट अगेन है चूज करिवो. अगेन द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदीज के महानदी आर द सेहोनाथ, हासदो, ईब, मंद. है सेहोनाथ, हासदो, ईब, मंद है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज. है सॉरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. वेयर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज किए तेल, जोंक आउ ओंग. तेल, जोंक आउ ओंग. तुम जदि एटी एटलास रे देखुछ
ये सब जिन तुम तुम जो देखो तेल जोंग ओंग सेहनाथ है एवरीथिंग इज गिवेन इन आटलास है ये तुम देख क्लीयरली सब जिन लिखाई देखुच ये पेज रे सब जिन अच्छे तेल जोंग कोंग तुम जो सदर्न ओडिशा जीव देख ये जोंग ओंग तेल है जोंग ओंग तेल ये पूरा देखा है आपर है तुम सेवनाथ सेवनाथ हैज दो ईब ठीक अच्छे आउ मंथ ठीक अच्छे एगुड़ा सब जाक छत्तीसगढ़ तीन टा जाक सब ये जो देखुच सेवनाथ हैज दो आउ तुम ईब मंथ एम समस्ते छत्तीसगढ़ बाहर मन रख छत्तीसगढ़ बाहर की है एमाने ओडिशा को करछन बट मेजरली ई बास को ओडिशा रे मिसिंग बट हैज दो सेवनाथ और मंद एमाने महानदी संगे मिसी चंदी कोठी छत्तीसगढ़ रे ईप हला छत्तीसगढ़ बाहर की सेठी महानदी संगे मिसी आइछन सेठी मेन स्ट्रीम संगे बट ईप टा छत्तीसगढ़ बाहर की हला झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ भितरे पसी की महानदी संगे हीराकुद डैम रे मिसी ईप रिवर वेयर एमाने सब कोठी तेल जोंग ओंग एमाने ओडिशा रे ही एमाने अछंती ठीक अछि प्लाट्यू पाखे ओडिशा रे ही एमाने अच्छे तेल जोंग ओंग एंड मोस्टली साधारण ओडिशा जदि तुम देखियो है कोराप जो भवानीपाटना है बलांगीर एपटे तुम तेल रिवर जोंग ओंग सब एपटे अच्छा है दिस आर द पचारे तुम मेजर मेजर केतरा 7टा मेजर है ट्राब्यूटरीज ता भीतर लेफ्ट बैंक राइट बैंक मुझे कहीं डिटेल कहूँ बिकॉज सिंस वी आर स्टडिंग द ओडिशा ज्योग्राफी सो वी नीड टू नो इन डिटेल्स द डिटेल्स ऑफ द ट्राब्यूटरीज ऑफ आवर स्टेट राइट tributaries of Mahanadi and since Mahanadi is an important river lifeline of Odisha okay so Mahanadi gala Mahanadi pare ame देखिले सुवर्णरेखा रिवर टा हम पुणी देखुं सुवर्णरेखा रिवर तुम देखुच अगेन है सुवर्णरेखा रिवर एकदम बालेश्वर है जब तुम देखुच बालेश्वर पूरा ऊपर अच्छी बालेश्वर किए आसुच्छी मेनली है भाबलपुर पोर्ट है तालसारा पोर्ट एगुड़ा सब अच्छी सुवर्णरेखा पोर्ट रे सुवर्णरेखा रिवर रे तो इट ऑरिजिनेट्स नियर रांची प्लाट्यू बेसिकली रांची प्लाट्यू इन झारखंड है झारखंड और रांची प्लाट्यू सुवर्णरेखा रिवर बाहर सुवर्णरेखा रिवर को कौन कहा जाए ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज योर स्वर्णरेखा रिवर है स्वर्णरेखा रिवर इट वाज फ्लोज थ्रू द इंडियन स्टेट्स ऑफ झारखंड वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा बेले पचारती क्वेश्चन जमी तुम महानदी कहली सेमती एटा भी वो कहा भितर फ्लो कर इंडियन स्टेट्स ऑफ योर झारखंड वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा तुम ये देख भल भाव मैप रे ठीक अच्छे झारखंड रो रांची प्लाट्यू मुझे कही दिस इज योर रांची प्लाट्यू और छोटा नागपुर प्लाट्यू ठीक अच्छे देख तुमको मुझे आगुरी भी कही छोटा नागपुर प्लाट्यू यहाँ है टोटाल दिस इज योर छोटा नागपुर प्लाट्यू ठीक अच्छे छोटा नागपुर प्लाट्यू ओके छोटा नागपुर प्लाट्यू रो नॉर्दर्न हाफ टा तुम किए छोटा नागपुर प्लाट्यू रो ऊपरटा है तुम हजारीबाग दिस इज योर हजारीबाग प्लाट्यू है हजारीबाग प्लाट्यू एंड तलटा है तुम रांची प्लाट्यू ये तुम भल भाव मन रख ठीक अच्छे क्वेश्चन जेहेतु तुम बर्तमान यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चन पचार तुम ये जान छोटा नागपुर प्लाट्यू को दिफल करी उपरटा है तुम हजारीबाग तलटा है तुम रांची प्लाट्यू से जो मुझे मेंशन कली रांची प्लाट्यू बाहरी ये झारखंड रे बसला कि वेस्ट बंगाल गला देन ओडिशा आसिक ड्रेन कर तो ये तुम देखुच तो इट फ्लोज थ्रू द इंडियन स्टेट्स ऑफ झारखंड वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा तीन टांकर मन रखियो जोटा कि आटलास रे भी तुम जिते भी पढ़ुच मन रख आटलास इज मैंडेटरी आटलास रे ही तुम सब जिनस तुम पाइपर विदाउट सीइंग द आटलास यू शुड नॉट स्टडी तुमने पढ़िया हेले पढ़ले बेसी तुम बेनिफिट पाइबनी तुम फ्रुटफुल हेनी जदि तुम आटलास न देखुच ये तुम देख निजे देख सुवर्णरेखा बाहर सुवर्णरेखा बाहर की है झारखंड बाहला टिके वेस्ट बंगाल पशि पुणी भद्रक आम बालेश्वर में पशि जाइए ठीक अच्छे सुवर्णरेखा पाखे किए अच्छे मेजर सिटी जदि मुझे कहि फेमस सिटी किए है मुझे कहि द सिटी किए फेमस सिटी किए जमशेदपुर सिटी द सिटी जमशेदपुर है लोकेटेड ऑन इट्स बैंक ठीक अच्छे जमशेदपुर लोकेटेड ऑन इट्स बैंक टोटल लेंथ के सुवर्णरेखार इट इज 395 किलोमीटर
395 किलोमीटर है कार सुवर्णरेखा रिवर लेंथ। देन आसो बुढ़ा बड़ंग रिवर है, देन इट इज कॉल्ड योर बुढ़ा बड़ंग रिवर। बुढ़ा बड़ंग रिवर कौन हम? द बुढ़ा बड़ंग रिवर फ्लोज थ्रू द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मयूरभंज एंड बालेश्वर इन द इंडियन स्टेट्स ऑफ ओडिशा है। क्या भितर आसी? मयूरभंज आ बालेश्वर भितर नहीं कि बुढ़ा बड़ंग मेनली आसी है, मयूरभंज आ बालेश्वर नहीं कि। It originates near Simlipal Hills, Mayurbhanj. It originates near Simlipal Hills. हला Simlipal Hills पाखरे एटा मेनली ऑरिजिनेट करछि बुढ़ा बड़ंग रिवर, राइट? ओके, ठीक अछि। बुढ़ा बड़ंग रिवर एटी देखुछ तमे, एटी क्लियरली दिस इज बुढ़ा बड़ंग रिवर, एटा हला बुढ़ा बड़ंग रिवर, दिस इज सिमलीपाल हिल्स रो बाहरछि। बुढ़ा बड़ंग ओडिसा रे ही बाहरछि, ओडिसा बाहर को से जाई हला, ओडिसा रे बाहरछि सिमलीपाल रो बाहर की से कोठी पछछि चांदीपुर पोर्ट पाखरे आसी पड़िछि, ठीक अछि हला, इन द इंडियन स्टेट ऑफ ओडिशा। देन इट ऑरिजिनेट्स इन द सिमलीपाल हिल्स मयूरभंज ऊपर। तो जदि देखियो तुम बुढ़ा बड़ंगटा मैक्सिमम तुम फ्लो करछि कोठी दीटा जगह रे, मैक्सिमम बालेश्वर रे फ्लो करछि, मयूरभंज रो बालेश्वर भीतर से मेजर तार बेटर हैला। मयूरभंज रो बालेश्वर भीतर तुमरा तार प्रकार योर बुढ़ा बड़ंग दीटा रिवर ता माने, ठीक अछि। एटी हम देखिले हैला, तो ये मुझे लिखिपारि बुढ़ा बड़ंग रिवर कोठी फ्लो कला? योर फ्लोज इन मयूरभंज है, मयूरभंज एंड है बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट मेनली है जी। ये दीटा डिस्ट्रिक्ट रे से मेनली फ्लो कर मयूरभंज आउ बालेश्वर भितर, ठीक अच्छे। नेक्स्ट बैतरणी रिवर आम देखिले, बैतरणी रिवर देखिए कौन? बैतरणी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम गोनासिका, गोनासिका हिल्स रु गुप्तगंगा हिल्स इन द नॉर्दर्न केन्दुझर है, गोनासिका हिल्स दैट इज गुप्तगंगा इन नॉर्दर्न केन्दुझर। आफ्टर फॉर अबाउट हाफ किलोमीटर द रिवर फ्लोज अंडरग्राउंड and it is not visible outside. बैतरणी कौन होची किछ समय किछि गला परे हैला, इट इज हैला पर्टिकुलरली गोनासिका पाखरु बाहरी छै एठी, तापर किछि फ्लो गला परे सेला को होची कि एठी केउंझर हिल्स रे से बाहरी छै पर्टिकुलरली हैला। किछि जन जियोलॉजिस्ट माने कहंती जेतु एटा झारखंड को लागि कि अछि, तो तमर रांची प्लेटू रे साइड रो सेठी भी बाहर छै, बट मोस्टली एटा तमर देखा गोनासिका हिल्स जोडा केन्दुझर रो तोटी देखिले, ठीक अच्छे। इट अबाउट हाफ किलोमीटर रिवर फ्लोज अंडरग्राउंड फ्लो करछि, इट इज नॉट विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड, से जो ताको गुप्त गंगा कहा जाए। माइथोलॉजिकली बैतरणी कहा जाए, इट्स एन वेरी सैक्रेड रिवर हैला, सैक्रेड रिवर जो ताको गुप्त गंगा भी तार ना दिया है, माने इवन इफ तमर जदी मोक्ष की तर्पण करछो हैला, विसर्जन करछो, ठीक है, अस्थि विसर्जन सब ब्राह्मणी रे तमर मोक्ष ये होबे आज पर द माइथोलॉजिकल। Okay. So Baitarani is also known as named the Gupta Ganga Kwaje or the Gupta Baitarani in Gonasika of Kendujhar. Gonasika बहुत पवित्र जगह, Gonasika Kendujhar district in Odisha state of India at an elevation of 900 meters above the sea level ऊपर से rise करछि। The beginning of portions of the Baitarani acts as the small part boundary between the states of Odisha and Jharkhand. ये जोटा मु एनपे कहली किसी जन जियोलॉजिस्ट माने कहउछन कि बैतरणी जतले आरंभ होईछि किछि पार्ट तार स्मॉल पार्ट झारखंड रे भी ओवरलैप करछि, बट मोस्टली वी हला मेजर हमें देखु कि योर गुप्त गंगा जोटा कि हमर गोनासिका हिल्स केन्दुझर, ठीक अछि। बैतरणी रे जदी मेजर फ्लो देखियो कोठी कोठी, इट फ्लोज मेनली इन हला, इट फ्लोज बैतरणी कोठी कोठी हला, इट फ्लोज मेनली को डिस्ट्रिक्ट रे जाउछि इन, ठीक अछि, केन्दुझर बाहला, ठीक अच्छे, केन्दुझर जाजपुर है, तुम देखो केन्दुझर जाजपुर है, ये तुम देख केन्दुझर गला, केन्दुझर जाजपुर, ठीक अच्छे। देन जाजपुर परे भद्रक है, जाजपुर परे भद्रक, भद्रक परे हमर केन्द्रापड़ा,
ठीक अच्छे दिस इज द थिंग क्रोनोलॉजी जाजपुर पर तुम आस केन्द्रापड़ा ठीक अच्छे सो यहाँ मेन फ्लो केन्दुझर जाजपुर देन भद्रक देन केन्द्रापड़ा केन्द्रापड़ा पर से जाकि पड़ी हो कौटी बे ऑफ बंगाल ठीक अच्छे बैतरण को जानले आम जब देखा जजाति केसरी जो दशाश्वमेध यज्ञ करते यही बैतरणी रिवर पर बहुत पवित्र रिवर ओडिशार जाजपुर मेजर जब लाइफ लाइन कहशार गोटे मेजर डेंसली पॉकेटेड जो पॉपुलेशन एरिया ये बैतरणी नियर द बैंक ऑफ योर बैतरणी रिवर है बैतरणी सपोर्ट्स योर मिलियंस ऑफ लाइवलीहुड एंड आल्सो द एग्रीकल्चर सिस्टम पर्टिकुलरली है ओडिशा जब देखिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट रिवर इज योर ब्राह्मणी रिवर किए ब्राह्मणी रिवर देखिए है ब्राह्मणी इज ए मेजर सीजनल रिवर in the Odisha state of eastern India. The Brahmani river formed by the confluence of the river South Koel and Sank. दीटा संक आउ कोयल मिसिक तुम ब्राह्मणी रिवर मेनली है नियर द मेजर इंडस्ट्रियल टाउन्स ऑफ राउरकेला पाखे मेजर है ब्राह्मणी रिवर पर ये गोटे जिन कहि एमती ब्राह्मणी एक्चुअली है ठीक अच्छे यहाँ तुम वेद व्यास है वेद व्यास एपटा तुम संक एंड दिस इज योर कोएल है जो तुम ये आटलास भी देखिपर संक आउ कोएल ठीक है लेट मी क्लियर दिस वन केमती है देख आटलास देखले तुम आराम से भी पाइज है संक आउ कोएल केमती बाहरी देख ये देख संक आउ एपटे संक लेफ्ट एपटे संक आउ एपटे कोएल देख ठीक तुम देख क्या राउरकेला ऊपर को संक आउ कोएल यहाँ है संक आउ कोएल यहाँ साउथ कोएल ये मिशन आसिक देन इट इज योर है ब्राह्मणी रिवर ठीक अच्छे दिस इज योर ब्राह्मणी रिवर दिस इज द पिक्चर सब डायग्रामेटिकली तुम कर it will be more helpful to for easier to your understanding see this 80 तुम कौन अच्छी particularly यार ऊपर राउरकेला स्टील प्लांट मुझे कहबी ठीक अच्छे राउरकेला स्टील प्लांट है जो पानी नौ पर्टिकुलरली है या ऊपर गोटे पर्टिकुलरली ब्राह्मणी रिवर ऊपर कौन है गोटे मंदिरा डैम अच्छी मंदिरा डैम रु से माने राउरकेला स्टील प्लांट पानी नौ ठीक अच्छे एंड स्पेसिफिकली दिस मंदिरा डैम has been constructed to provide the water to the Raurkela steel plant है so 1959 मसीह आम जानते Raurkela steel plant होता with the collaborations of your German collaborations है तापर मेजरली जो आमर है ये जो ब्राह्मणी पर्टिकुलरली है मंदिरा डैम ये मन रख मंदिरा डैम जो होता क्या ब्राह्मणी रिवर उपर है तो बिकॉज ऑफ टू प्रोवाइड द वाटर टू द Raurkela steel plant ठीक अच्छे Next देखिए the South Koel who arises in Jharkhand near the Lower Dagga on the other side of the watershed. Lower Dagga near the other side of the watershed that also gives rise to the Damodar river. ठीक है South Koel देखिए both the sources are in Chota Nagpur plateau. Both the sources are in Chota Nagpur plateau. The Sank जब तुम कहि the Sank has its origin near the Jharkhand Chhattisgarh border near the Netrahat hills. Sank जब देखियो को जगह Netrahat hills झारखंड से बाहरी है also it is known as the queen of Chota Nagpur plateau area in Jharkhand ठीक है जी queen of Chota Nagpur plateau. So this is all about Brahmani river. Brahmani is a major industrial river of Odisha है बर्तमान जब देखियो यदि क्वेश्चन पचारे which river is most polluted in Odisha you have to say that one it is your Brahmani river है सबुठ polluted because Brahmani रा major जब देखियो गोटे बहुत polluted है ब्राह्मणी जब देखियो है गोटे बहुत पॉल्यूटेड मेजर इंडस्ट्रियल सिटी देखि से जाउछ सबु जांक है माने सुंदरगढ़ रो आरंभ होला सुंदरगढ़ आरंभ होई के तापर अनुगुल ढेंकानाल कटक एडा माने जाजपुर एगुडा है कि हैला एडा अनुगुल है कि टिके ढेंकानाल पसी के जाजपुर है कि जेकी से फाइनली पड़ी तो मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हे भितर से जाउछ से जगु ब्राह्मणी है मोस्ट पॉल्यूटेड आउ महानदी पर जदि केस थाए लॉन्गेस्ट सेकंड लॉन्गेस्ट सी है
महानदी पर जो सेकेंड लंगेस्ट है ब्राह्मणी रिवर है। नेक्स्ट देखिए सो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्राह्मणी रिवर जानले हमें। नेक्स्ट देखिए किए इट इज योर साळंदी रिवर। साळंदी रिवर भितर जानिबा कोन हला द साळंदी रिवर originates at Simlipal Hills in Mayurbhanj district। Simlipal Hills in Mayurbhanj district साळंदी रिवर बाहरची at हदगढ़ डैम केउंझर it merges with the बैतरणी रिवर हला। तमे एटी देखुछो साळंदी रिवर को ठीक अछि। तमे एटी साळंदी रिवर को देखुछो एटी देखुछो दिस इज साळंदी रिवर। साळंदी रिवर कोन कहबो इट इज एन ट्रिब्यूटरी ऑफ योर कार बैतरणी रे हला। मोटी कोन कहली इट इज एन ट्रिब्यूटरी ऑफ योर बैतरणी रिवर। एटी देखिबा originates हदगढ़ डैम जोटा अछि एटी तमे देखुछो दिस इज हदगढ़ डैम हला। एटा हला तमरा हदगढ़ डैम दिस इज योर हदगढ़ डैम ना बहुत इंपोर्टेंट एटा हदगढ़ डैम। अच्छा सो इट लिखिबो एटी हम कोन कहि परबे कि इट इज ए साळंदी इट इज an important tributary of it is an important tributary of बैतरणी। ठीक अच्छे ब्राह्मणी जदि मैं कहबी साळंदी रिवर बैतरणी रो गोटे इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस है। सो हदगढ़ डैम इन केन्दुझर बैतरणी रिवर हदगढ़ रिजर्वायर आर also comes under wildlife sanctuary in Odisha है। हदगढ़ wildlife sanctuary is also an elephant reserve मन रखा। हदगढ़ wildlife sanctuary जोटा है elephant reserves ପାଇଁ फेमस elephant conservation जो अच्छी प्रोजेक्ट एलिफेंट ए हदगढ़ रे भी हेची। ठीक अछि हदगढ़ वाइल्ड sanctuary जदि मैं कहबी हदगढ़ वाइल्ड sanctuary ठीक अछि और जदि कहबी इट इज प्रोजेक्ट एलिफेंट कंजर्वेशन बेसिकली एलिफेंट हाथी एटी एलिफेंट कंजर्वेशन मेनली एटी करा होची हला। एलिफेंट कंजर्वेशन मेनली एटी रहा होची हला। सो दिस इज हला तापर कोन अछि साळंदी किछि वाटर फ्लो कला परे अगेन बैतरणी से मिसी जाईछि हला। सो इट इज एन इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ योर बैतरणी रिवर। लास्ट वन इज योर हला ऋषिकुल्य। दिस रिवर originates near दारिंगीबाड़ी हिल्स इन कंधमाल डिस्ट्रिक्ट हला। कंधमाल डिस्ट्रिक्ट तमे देखो एटी हला ऋषिकुल्य बाहरछि कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रो दारिंगीबाड़ी हिल्स रो एटु बाहरछि। ठीक अछि हला। तो हला कंधमाल डिस्ट्रिक्ट योर रिवर ऋषिकुल्य माउथ इज फेमस फॉर योर हला नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रेडी टर्टल। हम समस्त जानि छथि हला ऑलिव रेडी टर्टल जो आसे दैट इज फॉर देयर नेस्टिंग इट इज ऋषिकुल्य माउथ इज मेजरली फेमस। ऋषिकुल्य माउथ हला मेनली फेमस फॉर योर हला ऋषिकुल्य माउथ एटी तमे देखुछ ऋषिकुल्य। ठीक अछि माउथ ऑफ ऋषिकुल्य एटा गोपालपुर पोर्ट हला बुढ़ा मोहन पोर्ट आउ पल्लूर पोर्ट एटी एटा तमरो ऋषिकुल्य हियर ऑलिव रेडली टर्टल हला ऑलिव रेडली हला रेडली टर्टल बेसिकली एटी से माने आछन फॉर नेस्टिंग दे आर कम फॉर योर नेस्टिंग पई से माने आछन कोठी ए जगह ऑलिव रेडली टर्टल मेनली। द रिवर माउथ is under monitoring of WWF World Wildlife Fund जोटा अछि मन रख हला World Wildlife Fund एटा। ठीक अछि World Wildlife Fund due to the care of such हला endangered species वर्तमान हला समान सुरक्षित हला आगु समान critically endangered थिले वर्तमान they are हला endangered species। Finally the river merges with the Bay of Bengal। Finally कोन होछि it merges with the Bay of Bengal। तो ऋषिकुल्य ऊपर जदि हम कहबे ऋषिकुल्य मेजरली फ्लो करछि जदि तुम देखिबो गंजाम रु ना पर्टिकुलर फुलबाणी बाहर की गंजाम रे मेनली फ्लो करछि ऋषिकुल्य रिवर। ए दुटा रिवर जो रहिले नेक्स्ट रहिले पर्टिकुलरली हला। अच्छा आ गुडी जिंस ऑलिव रेडी टर्टल हमर तीनटा जगह करंदी गोटे हला तमर गाहिर मथा केंद्रापड़ा पाखरे हला गाहिर मथा इटे ऑलिव रेडी टर्टल गोटे हला गाहिर मथा हला गाहिर मथा
गहिर माता पाखे टोटाल कोटी कईच कोटी आसन तापर आ गोटे तुम एपटे ठीक अच्छे भीतर कनिका ठीक भी आसती भीतर कनिका भी ठीक अच्छे भीतर कनिका गहिर माता आ गोटे तुम ऋषिकुल्या मुहाण गंजाम तीन टा जगह तुम यही कईच गुड़ा आसती अलिब्रिड टेटल तुम नेस्टिंग अंडा देवाई आसती एंड दे स्टेड फॉर 3 to 4 to 4 months maximum 4 months तापर से माने दे गेन बैक टू इन पैसिफिक कोड आसती पैसिफिक ओशियन बेसिकली अच्छा वर्तमान नेक्स्ट रहा दीटा वंशधारा एंड नागावली है दिस आर द टू साउथ फ्लोइंग रिवर्स ऑफ ओडिशा दैट मेनली से माने बहुत कम ओडिशा रे फ्लो करते से आंध्र प्रदेश मेजर प्रायतः माने जदि देखिबो है सदर्न प्लाटियू जदि देखिबो कोरापुट पाखरु माने बाहर की है से माने गजपति किछि जिंस ओडिशा रे कम फ्लो करछन किंतु समानकर ओरिजिन है वंशधारा और नागावली रो ओडिशा रे ही से माने ओरिजिन करछन्ती किंतु मैक्सिमम फ्लोटा तंकर आंध्र प्रदेश रे अछि है ओडिशा बाहर की किछि बाटे फ्लो कला परे से माने जाके बे ऑफ बंगाल रे मिसी जाइछन्ती ठीक अच्छे परीक्षा यूपीएससी क्वेश्चन पचार कि ईस्टर्न घाट रू किए मेजर मेजर बाहर अरेंज क्रोनोलॉजिकली तो इट इज योर वंशधारा नागावली प्रथम है वंशधारा जब तुम नॉर्थ रु साउथ आस इट इज योर वंशधारा देन नागावली है सो दिस इज ऑल अबाउट योर है ओडिशा रिवर्स है ड्रेनेज सिस्टम तुम देखो थैंक यू ऑल ऑफ यू ओके भल भाव रिवाइज कर मैप देखिए पढ़ देन डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट टू रिमेंबर ऑल द ड्रेनेज सिस्टम of Odisha rivers. Okay, thank you all of you. Good day. Thank you.